तशी जी कटारी विरा टीमाची तुम्ही पुऱ्या समजला हरीश कामताना ग्रुप फोटो रब्बेत मागीर जला मागीर काढेत नेक्स्ट मॅच आवडणारी एकनाथ नायक हांका SBT व्हॉलंटियर्स असोसिएशनाचे कार्यदर्शी के मंजुनाथ शणे हांनी स्मरणीक दिवन गौरव समर्पण करका म्हणून म्हणून घेतास 68 ರನ್ನ ಈಕ್ರೆ 6 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सुधीर बघता वग्या सुधीर Right, what a fantastic victory for Team Srinivasa by 10 wickets with 9 balls to spare. And they reached the target of 87 runs in 3.3 overs, all because of Eknath Nayak, who scored unbeaten 68 runs, well supported by Sudhir, who scored unbeaten 19 runs. And with their both openers, they reached the target without losing any wicket in just 3.3 overs. And a fantastic victory for them by 10 wickets against Team Qatari Viras. So Team Srinivas back the complete points with that victory, and the second match in above 45 years category is now going to start between Team Gopalakrishna versus Team Veeravittala. Team Gopalakrishna won the toss and they elected to field first, and we are just waiting for the first ball of the match. I request the openers, please go for bat, please. एक मिनिट अंपैर्स 1 निमिष प्लेयर्स आना एक सूचना 1 निमिष काली रात्री आज पलपल्लेरी आमगेले GSB समुदायाचे कमेंट्रेटर जावन मस्त गुर्तिसिल्लो एक्स VV क्रिकेटर्साचे प्लेयर दम्मा म्हण तुमी ऐकून आसा पुरो कमेंट्री सांगतशिल्लो दैवादीन जालेलो आसा ह्या विशय सांगूक आमकां भारी बेजार जाता तशें देखून
एक निमिषाचे तुम्ही थंय राबून एक निमिषाचे आमगेले दामोदर प्रभू हांकां श्रद्धांजली दिवका म्हूण निमून घेतास तुम्ही आशिल्ले कडेनच एक निमिष राबून दामोदर प्रभू हांकां श्रद्धांजली दिवका म्हूण निमून घेतास. ओम शांती शांती शांती. गेल्या दिसाला आत्माक देव सद्गती प्राप्ती करो म्हणून आयोजकाल तर्फेन प्रार्थना करताची मॅचाक चालन दिता. धन्यवाद. So once again, heartful tribute to Mr. Damodar who expired yesterday night. Fantastic Konkani commentator. And just give him a tribute from all spectators and players. First ball of the second match. Lofted that one this time in a style and he starts the account with that 6. और छक्के के साथ इस वक्त शुरू कर चुके हैं मुरली और गेंद को इस वक्त पुल कर दिया था डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट पर 4 रनों के लिए. He just connected that one from the middle of the bat and driven that one perfect just wide of the mid wicket fielder and finds the gap as well. और इस चौके के साथ 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. The scoreboard moving up to 10 without loss. और गेंदबाज गुरुदत्त here he comes right arm around the wicket bowls. This time again finds the gap. Again a 4. 6, 4 and 4. 14 the score now. And this is a perfect start for Muralidhar Kamath. And got the distance. 20 in 4 balls. 500 strike rate. 20 in 4 balls. And he is looking in a very attacking mood. And again the bowler balls. Lofted! This time this could be a chance and taken. Inside the fence at extra cover. Not quite middling it at the last moment. The ball got his stoppage. And the extra cover fielder made no mistake. First wicket fallen after being playing a fantastic knock. Short but good knock. He is backing to pavilion. Caught by Ganesh Kamath at extra cover of the bowling of Gurudatta. He scored 20 runs in 5 deliveries with a strike rate of exactly 400. And after being playing a short but good knock, fantastic knock for their side, he is backing to pavilion. Manjunath, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. And he is now going to face Gurudatta. Right arm round the wicket, here he bowls. Next one, driven that one. He's got a hand on his follow through at the last moment by the bowler. But couldn't able to grab the ball with his hand. And at last the batsman got a life. So first over completed and a fantastic start. Fantastic start for Team Veeravittala. It's 20 for the loss of 1 wicket after completion of first over they scored. With just 4 overs to go in their innings. So Ramesh Kamath starts the fresh proceedings from the stage and that means from that side end. First ball of his fresh over is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. इस बार गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ. Bowled him, gone for a big one, much straighter line, and he just got the rid of the batsman. Second wicket fallen. 20 for the loss of 2 wicket. और दूसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है. और आउट होने वाले बल्लेबाज यहाँ पर गुरुदत्त आउट होकर पेवलियन वापस लौटते हुए 0 पर. और 20 रनों पर दूसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है. तो इस वक्त नए बल्लेबाज एक और बेहतर बल्लेबाज मोहन पई का आगमन यहाँ पर हो चुका है. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का. ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. बेहतर स्टॉप, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टॉप मेड बाय द फील्डर जस्ट इनसाइड द फेंस एट मिड ऑफ. But couldn't stop the single, and with that single run the scoreboard moving up to 21 for the loss of 2 wicket. And Mohan Pai off the mark with that single. Next one from the bowler, lost it, and 6 runs, 27. So the flowness of runs is now continuing here for the batsmen of Team Veeravittala.
And the scoreboard is now jumping up to 27 now with that 6. Next one, this time just missing out Saadi leg stump. Not so missing too for Saadi leg stump at the last moment. Right delivery called by umpire. Right decision, and there is no possibility of any run. Again, lost it. Flatter version into the wall of the stage. One more 6. Scoreboard moving up to 33 now for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. Except they lost their 2 wicket, they are looking in a good situation. Exactly 16.5 runs per over. They scored in their first 2 overs. 33 for the loss of 2 wicket with 3 overs remaining in overall calculation in their innings. Vivek brought into the attack. First ball of his fresh over is now coming up. This time Mohan Pai hit that one into the gap. And he got the boundary for that. Fantastic struck. After exposing the wicket, he just hit that one pretty hard between wideish mid-on and mid-wicket. At last he finds the gap and got a boundary for that. And with that boundary, the scoreboard moving up to 37 now. Again, driven perfectly into the gap once again. This time at mid-off. Once again, just exposing the stumps. This time he hit that one pretty hard between mid-off and extra cover. And finds the gap as well and got the boundary for that. Consecutive boundaries for Mohan Pai, and the scoreboard is now moving up to 41 now for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. So team Veera Vittala heading towards to a huge total now. And after making some fielding adjustments, the next ball from Vivek is now coming up. Right arm over the wicket to the right-handed batsman Mohan Pai. Is now going to face. Lost that 6 runs in a flatter version. And he scored 14 runs in the first 3 deliveries that he faced. And with that, in this over in fact, and the scoreboard is now jumping up to 47 now. Fantastic progressing here for team Veera Vittala. Still 2 overs to go after this one. And just waiting for the next ball. Right arm over the wicket, the bowler balls. Again driven, but this time can't find the gap. He's got only a single for that stroke. Slight bit of fumble made by the mid-on fielder. And because of that, the batsman have got plenty of time to cross over for the single. And with that single run, the scoreboard moving up to 48 now for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. And once again, Vivek bowls. Right arm over the wicket. Bowled him, gone for a big one. Just played that one with the wrong line, and he paid the penalty for that. The ball passed between his leg and bat and struck to his mid and off stump. Bells are disturbed, and that is the wicket number 3. Still a ball left in this over, and we are just waiting for the number 5 batsman, Raghavendra. One more good striker of the ball. It now comes out to the middle. Raghavendra batted fantastically on yesterday, hitting 4 or 5 sixes and grabbed the victory for his team because of his fantastic batting knock. He hit the 6 in the last ball and brought the memorable victory for his team in the last night. Now he is now ready to face. Vivek comes. Right arm over the wicket bowls. This time just played that one gently push down to a mid-on and gone through for a quick single and get it completely. At last he's off the mark with that single, Raghavendra, and the scoreboard moving up to 1 short of a 50. That means 49 for the loss of 3 wickets now, and 3 overs has been came to an end. Still in overall calculation, it's going to be 2 overs remaining in their innings. That means 12 balls left, and let's see how many runs they will make in this remaining 12 deliveries. So one more high scoring match is now coming up. So the bowler is Nagesh Prabhu is now brought into the attack. Nagesh Prabhu गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघवेंद्र इस वक्त सामना करते हुए. Full toss, pull that one for a huge 6. 50 comes up for team Veera Vittala. 55 for the loss of 3 wicket. Full toss delivery and a smash hard down to a deep mid wicket fence for a huge one. Again driven that one, not connected that one properly, but he got a single for that stroke. Scoreboard moving up to 56 now. 56 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है. अब तक 56 रन यहां पर बन चुके हैं और कुल मिलाकर 10 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नागेश मोहन पई के लिए ये गेंद. इस बार मोहन पई ने ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में. राघवेंद्र दौड़कर चले आए स्ट्राइकर एंड पर. मोहन पई 2 कदम दौड़कर रुक गए और यहां पर आसान सा रन आउट होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर. बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची थी और आखिरकार आसान सा रन आउट यहां पर करते हुए फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद गेंदबाज. नेक्स्ट उग्राणा सेवक्स आणि सतीश स्ट्रायकर्स नेक्स्ट मॅच टायमारी
आज ही सकाळी 32:08 स्टार्ट जावच्याक आमगेल्या श्रीनिवासा टिमांनी कटारी वेरात आणि सहकार केलेला आसा तुमकां धन्यवाद. तशी नेक्स्ट अंडर आर्म म्हळ्यार ज्युनियर कॅटेगरी स्टार्ट जाता. उग्राणा सेवक्स आणि सतीश स्ट्रायकर्स तुम्ही कुठले प्लेयर रजिस्ट्रेशन कोरका कोणी येनी म्हणजे आत्ता फोन करना पाहिजे. मॅच स्टार्ट जाता टायमारी आणि लाईव्ह कोण पळयतास की पूर जन सांगता आसाची टायमारी लाईव्ह स्टार्ट जाता तस देखून तुम्ही डिले करची नाका. पुरे टुर्नामेंट डिले जाता म्हणून सांगून ह्या टुर्नामेंटान तू पुरे टायमारी वचुका आज टाईट आसा शेड्यूल. रात्री सांजवेळा सन्मान कार्यक्रम हे पुरे आसा तस देखून प्रति एक टिमाचे सहकार जावका. सीधा प्रसार पळयतल्या सर्व जनान टायमारी प्लेयर्सान मॅच स्टार्ट जावच्याक सहकार कोरका. नेक्स्ट उग्राणा सेवक्स आणि सतीश स्ट्रायकर्स. उग्राणा सेवक्स आणि सतीश स्ट्रायकर्स दोन टीमाचे रजिस्ट्रेशन कोरका. सतीश स्ट्रायकर्स उग्राणा टीम आयला नाव टीम आयला नाव आधी टीम आयला नाव दोन्ही आधी टीम आयला नाव नाही स्टार्ट नेक्स्टची कुठले. So Ravindra Bhatt is now comes out to the middle, and in fact it's Mohan Pai departs and Raghavendra is still at the crease. Next one just gone for a big one, not connected that one properly, but he got a single for that stroke. And with that single, the scoreboard moving up to 57 for the loss of 4 wickets now. 57 run बन चुके हैं 4 wicket के नुकसान पर. And the next one from Nagesh B comes. Right arm over the wicket, bowls to Ravindra Bhatt. This square early, not quite connected that one properly, but he got a single for that stroke. एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 58 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. और चौथा ओवर उनके पारी का प्रगति पर. राघवेंद्र इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं. फुल टॉस पल्स एंड he's got the distance and that ball gone many a miles from the fence on the roof of the college, and that is an absolutely fantastic struck. And with that 6, the scoreboard is now jumping up to 64 for the loss of 4 wickets now. So 4 overs completed. One more high scoring match is now progressing here. 64 for the loss of 2 wickets, and the last over starts in their innings. First ball, this time gone for a big one, misses. Just gone for drive. Missing the line complete and collected by the short third band fielder. No ball. In fact, the first ball yet to be bowled. First time in this over, the bowler comes left arm around the wicket to Ravindra Bhatt. Wide 65, 65 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. रविंद्र का मत इस वक्त सामना करते हुए, रविंद्र भट्ट इस वक्त सामना करते हुए 6 रनों के लिए उछाल दिया इस वक्त. एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के ऊपर से 71 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 71 for the loss of 4 wicket now in the over number 5th and the last in progress. और गेंदबाज महेश राव गेंदबाजी करते हुए इस बार चूके स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछालना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. अगली गेंद पुल्स फ्लैटर वर्जन जस्ट ओवर द फील्डर सेट and he got the distance at last in a flatter version. 77 the score now. 77 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और 3 गेंदें अब कुल मिलाकर उनके पारी में बाकी. और महेश राव गेंदबाजी करते हुए रविंद्र भट्ट के लिए ये गेंद 6 रन. 6 number 3 in this over from Ravindra Bhatt, and now he is also looking on fire. 83 the score now, and just a couple of balls now remaining in their innings. सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में. This time driven just over the bowler set, gone through for a quick single. This could be in trouble and he's gone. और रविंद्र भट्ट की पारी पर पर्दा यहाँ पर गिर चुका है. 3 छक्के इस ओवर में वो लगाए, उन्होंने लगाए और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 83 for 5. And now just a last ball remaining in their innings. Raghavendra is now going to face the last ball of their innings, and the bowler is Mahesh. So the last ball of their innings is now coming up. Mahesh to Raghavendra. इस बार बल्लेबाज ठीक तरह से तैयार नहीं थे, तो इस वजह से अंतिम गेंद पर फेंके गए गेंद को इस वक्त डेड घोषित कर दिया गया है और अंतिम गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद में बल्लेबाज राघवेंद्र और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं.
और अंपायर जो कि विकेटों को इस वक्त सही करते हुए, सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए स्क्वायर लेग पर अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर इस वक्त तैयार महेश राव। राघवेंद्र सामना करते हुए द लास्ट बॉल टॉप एज, बट आई थिंक इट्स गॉट द डिस्टेंस, ही इज गॉट द डिस्टेंस, गॉट इज टॉप एज, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था, टॉप एज पर गेंद जरूर टकराई थी, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। हार्ड एंड हाई एंड इज गॉट अ 6 एंड ही फिनिश द इनिंग्स इन अ स्टाइल विद अ 6. So the innings is up, they finished with the 89 for the loss of 5 wickets in the stipulated 5 overs for team Veera Vittala. Now the target is exactly 90 for team Gopalakrishna. 90 runs they have to score with their stipulated 5 overs, and let's see can they reach the target or not. उग्राणा सेवक्स टीमाचे अंकोणी दिसनाची या मॅच जल्ली कूडले नेक्स्ट तुमगेले टाइम तकीत मॅच स्टार्ट ना मुंजलारी अंपायर कसं डिसिशन घेताची ताका तुम्ही सपोर्ट कर का पुरे मॅच टाइमार स्टार्ट जाता. उग्राणा सेवक्स सतीश स्ट्रायकर्साच्या अंगसाची उग्राणा सेवक्साचे कोणे असं मुंजला जल्दीतली वगैरे रजिस्ट्रेशन कर का. धन्यवाद श्रीमान गोपीनाथ भट्ट जी. और so back to this game, exactly 90 the target, exactly 18 runs per over they have to score for victory in the stipulated 5 overs. 90 exactly they have to score for victory, and their innings now going to start. Their openers are the crease, Ramesh the striker and Nagesh the non-striker. Meantime the bowler starts the fresh proceedings is Raghavendra from the stage end, and we are just waiting for the first ball of their innings. 90 exactly they have to score in the stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. So the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद को उछालना चाहा, गेंद मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और गेंद को इस वक्त विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे फील्ड कर लिया चंद टिप्पों के बाद. आफ्टर कपल ऑफ बाउंसर्स रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला. फिर से एक बार राघवेंद्र गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रमेश के लिए. ये गेंद इस बार बाउंड आउट इनसाइड इट, जस्ट ड्रैग्ड ऑन टू द स्टंप्स, एंड दैट इज द फर्स्ट विकेट फॉलन. Just gone for a multi, not succeeded. He's got his inside edge, and the ball after being got his inside edge, it dragged on to the stumps. Bells are disturbed, and that is the first wicket gone. Ramesh K out for duck, and now it's not for one in the first over. शून्य पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर टीम गोपाला कृष्णा. जहां तक 90 रनों के विशाल से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त चौके और छक्के लगातार उन्हें लगाने होंगे, और 2 गेंदों में रन से कोई भी इस वक्त स्कोर बोर्ड पर दिखाई नहीं देता. वह नए बल्लेबाज सामना करते हुए ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद. Not got the placement right at the situation in this delivery, and the scoreboard says it not for one in the first over. और गुरुदत्त भागवत सामना करते हुए इस वक्त राघवेंद्र की गेंदों का इस दैट इज एन परफेक्ट ऑफ कटर राघवेंद्र द्वारा. राघवेंद्र अपने खेल के दिनों में एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे जब वो वीवी क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व किया करते थे, और यहाँ पर अभी भी पुराने झलक को वो यहाँ पर दिखाते हुए अपने गतकाल के वैभव को अनावरण करते हुए ये गेंद ड्राइव करते हैं कवर पर. मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड दिस टाइम he back to his crease. He's back to his crease at the last moment. He survived his wicket. आधे पिच तक चले गए थे, लेकिन अंतिम क्षण में वापस लौटने में सफल, और इस तरीके से कोई क्षति नहीं. फाइनली नो डैमेज डन, and still team Gopala Krishna yet to get off the mark. It's not for one in the first over. और गेंदबाज राघवेंद्र एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ into the gap as well, and he's got the boundary. Square of the wicket, driven that one perfectly. Pick the cap, and with that boundary the runs are going to begin for them. रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है इस चौके के साथ. 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. तो पहला बेहतर ओवर
राघवेंद्र का समाप्त हो चुका है। सिर्फ 4 रन इस ओवर में बन चुके हैं और अंतिम गेंद पर अगर चौका अगर बल्लेबाज नहीं लगाते तो शायद ये मेडन ओवर कहलाता राघवेंद्र का, लेकिन अंतिम ओवर में स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर ड्राइव करते हुए 4 रन बटोर लिए बल्लेबाज गुरुदत्त ने और पहला ओवर समाप्त हो चुका है राघवेंद्र का। बेहतरीन ओवर इज जस्ट कंसीडर्ड 4 runs and got the wicket of Ramesh after first over chasing the victory target of exactly 19 5 overs. This is an absolutely a slower start for team Gopalakrishna. It's 4 for the loss of 1 wicket after completion of first over. Ravindra Bhatt is now brought into the attack. First ball comes from him. Outside the off stump, kept lower, and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 4 for the loss of 1 wicket. With every dot delivery, the pressure is now building up on the batsmen. हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता हुआ एक लंबा सफर अभी भी उन्हें तय करना बाकी। स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो और गेंदबाज रविंद्र भट्ट इस वक्त तैयार अगली गेंद लेकर जमीन के सारे गेंद खूबसूरती के साथ निकाला मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। He turns it around the corner and finds the gap as well और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। मास्टर्स विभाग में 45 वयोमिति के ऊपर के विभाग में आज दूसरा मैच यहां पर जारी है। टीम गोपालकृष्ण और टीम वीर विट्ठल के बीच में इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत एसवीटी ट्रॉफी 2024 श्रृंखला के अंतर्गत लॉस्ट इट एंड 6 runs. He's got a hand on that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands and it's crossed over the fence for about 6 runs in fact. So a lucky 6 for the batsman and the scoreboard moving up to double figure. 14 for the loss of 1 wicket and a perfect struck in for the bat of Nagesh Ravindra. Next one from him. Full toss, top it. I think this could be a chance. Fielder गेंद के नीचे आते हुए और बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल। इस उम्र में ऐसे बेहतरीन जजमेंट के साथ कैच लपकना उतना आसान नहीं है और यहाँ पर गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी। मिड विकेट पर फील्डर थे मंजुनाथ जो फील्डर थे, गेंद पर उन्होंने अपनी नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल अपने दोनों हाथों से। So second wicket gone, they are looking deep in trouble now. Team Gopalakrishna. It's 14 for the loss of 2 wicket. Number 4 batsman is now comes out to the middle. और नंबर 4 बल्लेबाज विवेक प्रभु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। दाहिने हाथों पर द विकेट रविंद्र भट्ट की गेंद लेग से बाहर टॉप एज एक नहीं जी नहीं गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। टॉप एज पर गेंद टकराई थी लेकिन स्ट्रोक में पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। अभी भी एक लंबा सफर उन्हें तय करना बाकी। 70 और रन चाहिए विजय के लिए। Exactly 70 runs more now they have to score for victory in remaining 3+ overs. Still equation seems to be much stiffer now for them. और रविंद्र भट्ट एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। Driven just wanted to loft that one, not succeeded. He is quite unhappy with himself. अपनी नाखुशी का उन्होंने इजहार किया अपने हाथ को हवे में झटका कर रहा है और आखिरकार ये ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति। 2 overs completed, 20 runs on the board, 70 required, 3 overs remaining. That means 18 balls left. And the required run rate is now gone up to exactly 23.33 runs per over in this situation. और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के यहाँ पर टीम गोपालकृष्णा को विजय यहाँ पर दिला सकते हैं। मुरली इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त टीम गोपालकृष्णा की पारी में। दाहिने हाथों पर द विकेट बेहतर गेंद इस वक्त जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जस्ट वांटेड टू कट दैट वन, नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार गेंदबाज मुरली लेफ्ट इट एंड he's got the distance. मोहन पै जो फील्डर थे जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की गेंद को लपकने की उछलने के बाद, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर सिर से ऊपर जा चुकी थी। 6 रनों के लिए छक्का इस वक्त जुड़ चुका है बल्लेबाज के खाते में। गेंदबाज मुरली left it straight down the ground and he's got the distance in a flatter version. 6 runs into the account of the batsman. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। गुरुदत्त बेहतरीन छक्का, 2 छक्का जड़ चुके हैं इस वक्त
और ये गेंद पैरों पर टकराई, जमीन के सारे गेंद थी, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, मुरली गेंद तक पहुंचते हुए थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहां पर ठीक तरह से बैकअप नहीं था और बल्लेबाज भी क्रीज पर पहुंच रहे थे नॉन स्ट्राइक रन पर और आखिरकार अपने इरादे को अंतिम अक्षर में बदल दिया। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, just gone for a mighty heave at the last moment, beaten completely by that flight, but the ball went just wide of the off stump and the batsman survived in this occasion. No addition to their total. Scoreboard says at 33 now. और अगली गेंद लेकर मुरली तैयार। इस बार गेंद कौन साइड पर उछलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, 1 रन जरूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। रन्स 3 ओवर पूर्ण हो चुके हैं, 34 रन बन चुके हैं। 34 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs scored by team Gopalakrishna. Still they have a long way to go. That means 90 minus 34. That means 56 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in remaining 2 deliveries and the required run rate is now gone up to exactly 28 runs per over. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाज का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सिर्फ चौके या छक्के ही अब गोपालकृष्णा को विजय यहाँ पर दिला सकते हैं और हर गेंद पर चौका और छक्का यहाँ पर लगाना होगा बल्लेबाजों को। बॉल डाउन, परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। बेहतरीन लेग स्पिन गेंद थी और अपने खुशी का वो इजहार करते हुए अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया उन्होंने और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने उनको बधाई दी इस विकेट प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर जो गेंदबाज थे श्रीनिवास जिन्होंने अपने कोटे की पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके एक बेहतरीन लेग स्पिन गेंद के जरिए। तो एक और विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 3 डाउन, दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 11 बॉल्स लेफ्ट, 56 रन्स रिक्वायर्ड। और रामपाई नए बल्लेबाज, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, गेंदबाज की गेंद स्विफ्ट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। राघवेंद्र गेंद को रोक नहीं पाए, 4 रनों का इजाफा, 38 द स्कोर, 52 नीडेड इन 10 बॉल्स इन फैक्ट। 10 गेंदे 52 रन चाहिए विजय के लिए। अभी भी चौके और छक्के की उन्हें सख्त दरकार और गेंदबाज इस वक्त श्रीनिवास गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ड्रिवन डाउन टू मिड ऑन, कांट गॉट एनी रन एंड नाउ द लास्ट चांस for the batsmen now. Almost 9 sixes required in the last 9 deliveries, 52 to get from 9 balls. अंतिम अवकाश बल्लेबाजों के सामने, 9 छक्कों की लगभग जरूरत अंतिम 9 गेंदों पर और गेंदबाज की गेंद इस बार उछाला, रन नहीं मिलेगा एंड नाउ 8 balls and 52 runs required. अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इन बचे हुए 8 गेंदों में ना फेंकते हैं तो यहाँ पर वीर विट्ठल की विजय निश्चित है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, देखते हैं 8 गेंदों में क्या होता है उनकी पारी में। स्वीप किया इस वक्त 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 42 रनों पर, 42 now for the loss of 3 wicket. 50, in fact it's a 48 required in remaining 7 balls. 48 required in 7 balls. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त तैयार। श्रीनिवास दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए for the last time in this over. Here he comes, right arm round the wicket, bowls. Right arm over the wicket, in fact, is now going to bowl. और अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद उनके जूते पर गेंद टकराने के बाद विकेट कीपर द्वारा फील्ड होते हुए एक टिप्पे के बाद फर्स्ट बाउंस एंड ओवर नंबर 4 has been game stood and still the problems are now continuing here for the batsmen of team Gopalakrishna. 42 for the loss of 3 wickets after completion of 4 overs and now it's 48 required in remaining 6 balls. That means in remaining last over. 48 रनों की दरकार अंतिम ओवर में और यहाँ पर निस्संदेह से कहना पड़ेगा असंभव सा लक्ष्य इस वक्त टीम गोपालकृष्णा के बल्लेबाजों के सामने। मोहन पाई नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक, स्टार्टिंग अ फ्रेश ओवर और पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा।
और वाइड के रन के साथ स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 43 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और 47 रन और चाहिए विजय के लिए और अगली गेंद लेकर मोहन भाई लेफ्ट एट नॉट क्वाइट मिड विकेट लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 44 रन बन चुके हैं 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 wickets now and 5 balls now left in their innings 46 to get from 5 deliveries absolutely impossible task in front of the batsmen. Next one from Mohan Pai. Better absolutely fantastic one dragged down to the stumps one more wicket fallen गेंद बल्लेबाज के पैर पर टकराने के बाद ऑफ स्टंप पर जा टकराई गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है विकेट नंबर 4 डाउन 44 for the loss of 4 wicket 4 for the loss of 4 wicket 46 required in remaining 4 balls. Mahesh, the new batsman, is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मोहन पाई की गेंदों का टॉप एट एंड इज गॉट द डिस्टेंस 6 runs 50 comes up और जहां तक रन का सवाल है exactly 50 the score now and now 40 runs required in 3 deliveries. Quicker one from Mohan Pai absolutely fantastic one और जहाँ तक रनों का सवाल है डेड गेंद इस वक्त घोषित की गई वहाँ पर फील्डर गेंद तलाश करने के लिए सीमा रेखा से बाहर चले गए थे तभी मोहन भाई ने गेंदबाजी की थी तो यहाँ पर इस गेंद को डेड बॉल घोषित किया गया है और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार मोहन भाई दाहिने हाथ राउंड द विकेट बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंद को इस वक्त खेलना चाहा चुके और गेंद सीधे उनके पैर पर टकराई बल्लेबाज के रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला डॉट गेंद और 2 गेंदें इस वक्त बाकी 2 balls now left just and just a formality is now remaining in this match. Mohan Pai driven into the gap and has got the boundary 54 now last ball remaining in their innings. अंतिम गेंद बाकी और अंतिम गेंद में चाहिए 36 रन 36 required in remaining last delivery. Lost it 6 runs but that is not enough for them. They lost the match by 29 runs. So 29 runs comprehensive victory by for Veer Vittal against Team Gopalakrishnan. With that 29 runs comprehensive victory they back the complete points. So second match in the Masters category has been came shown and now the third match we straight away coming back to the junior section. The first match of the junior section in the day number 2 of this prestigious cricket tournament SVT Trophy 2024 is now coming up allowed exclusively between Ugrana Sevaks versus Satish Strikers and that match starts with a short while. Till then we're taking a short break and we'll be back right after short break once again with myself Gopi when the next match will going to begin and now it's time for break. Thank you. Dhanyawad. तशीच आत्ता केलेल्या दोन्ही टीम गोपालकृष्ण आणि टीम वीरविठ्ठल तुमगेले एक ग्रुप फोटो जावचो आसा टीम गोपालकृष्ण महेश राव तुमगेले ग्रुप फोटो जावचो आसा सगळे टीमाचे तशीच टीम वीरविठ्ठल तुमगेले एक ग्रुप फोटो जावचो आसा दोन्ही टीमा कॅप्टन आहे सगळे टीम ओनर कोण प्रेस पूरे जन एक पटी स्टेजला येऊ का ग्रुप फोटो का फुडली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच 1 ओव्हर अंतू खाली 4 रन दिवन 1 विकेट काढू तशीच बॅटिंग अंतू लायक परफॉर्मन्स केलेलं तसले 15 रन मारलेले राघवेंद्र पै फुडली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच
राघवेंद्र पै तवलची मॅच मॅन ऑफ द मॅच स्कोर एस बॉलिंग एस 4 रन मात्र दिला 1 ओव्हराक तशीची बॅटिंग आणतो 15 रन मारला का वसंत मामाना स्मरण निधी कोण निघून घेतास So the third match of the day, and the first match in junior category is now going to start between Ugrana Sevaks versus Satish Striker. So news is from the center that the captain of Ugrana Sevaks, after won the toss, they elected to bat first. In fact, and the bat starts within just short while. इससे पहले कि मैच की शुरुआत हो आज पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम माय डियरेस्ट फ्रेंड अंग्रेजी में सतीश को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आइए सतीश धन्यवाद थैंक यू Thank you very much, Gopi. Good morning, everyone, and welcome back for the final day and night of this cricket tournament, prestigious SVT Trophy 2024, and which is proudly organized by SVT Volunteers Association in this most historical Kendra High School cricket ground here in Dongerkery. All set now for the youngsters match, the juniors match, and match will be played between Ugrana Sevaks versus Satish Strikers, and a very important match for both the teams. Of course, Satish Strikers in the last night they managed to come back to their winning track. They won the match in their last league matches. They played against Gopura Gladiators, so that they are a little bit confident side. And coming back to the team, Ugrana Sevaks, of course, they have to do something. Yes. Need to change some changes in their bowling and batting performance as far as the winning this match is concerned. They have to little bit need to correct the mistakes what they did in the previous 2 matches, and they need to come with the positive frame of mind if they wanted to back in the game, if you wanted to get into the points table of this prestigious SVT Trophy 2024. Wait and see. After winning the toss, the captain of Ugranas they elected to ball first, so that first of all going to start from the far end, and bowler will going to start here, and batsman Aditya Bhatt will going to take the strike. 4 men in the offside, 4 men in the on, and wicketkeeper standing a little bit behind the stumps. First ball right above the wicket at this time. Oh, very good. Absolutely a little bit sloppy fielding out there by the fielder at short third man region. He couldn't manage to judge that one. Of course, sometimes it's always the confusion when the ball is falling short of the fielder. How he managed to stop that ball, because sometimes it's in a two mind whether go for the catch or not. By doing that, I think the ball just defeating that fielder went into the boundary, and good start here for Aditya, but got a first run in the form of boundary. But it's a lucky boundary, and definitely it's a stoppable one. But Aditya knows that this was the one area one area where you can get some runs the boundaries quite easily. So delicately they played that by Aditya. Is off the mark with the boundary, and his team also off the mark with that boundary. Absolutely the bright and sunny morning here in this most beautiful cricket ground, and lovely delivery. Absolutely good one there from Pawan Nayak. So far Pawan Nayak in this tournament is very impressive in his bowling, line and length. And unfortunately his team is other bowlers couldn't manage to support him, and that's why the support is very much required from other end when the bowlers are doing a great job. But Pawan, and after that boundary, and bowled one beautiful outgoing delivery, which is really batsman is in a two mind whether go for the stroke or not. Right arm over the wicket balls, short pitch delivery, but missing the direction in that occasion. Ball going down the legs, so that a little margin for error, so that bat umpire has got no hesitation to call that wide. And with that extra score, moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Pranam Naik again from the far end. Pawan Naik from the far end. Right arm over the wicket. Get ready to bowling to. Oh, what a delivery. This is absolutely a peach of the delivery, I want to say. This is the kind of delivery where the batsmen are always troubled. And this is a fantastic outswing delivery.
Just ball is moving from the good line spot and slight a bit of deviation. Batsman tried to reach to the pitch of the delivery. Luckily that ball just missing his outside edge. Right arm over the wicket balls. One more fantastic delivery. This time Aditya just managed to little bit covered his stump and get the ball into his bat. This time he's just waiting for the turn of the delivery, not trying to reach to the pitch of the delivery. That's the main reason that Aditya able to get under that outswing delivery and managed to pick the single down to short cow point region. With the single score, Namuzan to 5 on the board without loss of any wicket. Pawan, 6 lead correction, 6 on the board. And now GK Butt will going to take a strike first time in this over of Pawan Nayak. 6 without loss of any wicket. Right arm over the wicket. Bounce, a lovely delivery. Have a look at the bounce and carry to the fielder. Absolutely exploiting the morning condition and even exploiting his height condition. Of course, he's got a very good height, getting some extra bounce because of that height. And again, a bounce right arm over the wicket, missing the direction. This is the one problem that Pawan has got. After bowling such a great deliveries, it is not acceptable when you are bowling that kind of line, isn't it? He's so good in that bowling, which is bowling outswing delivery, moving from the good line spot, but he's just trying to bring the ball around the legs of the batter and he misses the line. Second wide. 7 on the board. GK Butt. That was a sensible batting here from GK Butt. He knows that this is the delivery. You need to give the respect to that one. He not only gave the respect, but managed to get the single down to short cow point region. After completion of first over, team Satish Strikers managed to start very well. They scored 8 without loss of any wicket. A steady start from these two opening batters. And Pawan Nayak, of course, they bowled very well, but unfortunately, 1 boundary and 3 extras in that over takes enough makes enough for Satish Strikers to get a good start. Adi brought into attack. The morning itself, we can see that we are hearing some noises that shows that the electrifying atmosphere morning itself here in this SVT Trophy 2024, because this is a decider day of cricket. Right arm over the wicket, bounce, cuts that one, but not firmly, just getting the placement down to backward point region for a single. With that single, Scober Namuzan to 9 on the board. GK Butt knows that it's better to give as much strike as possible to his partner Adit Butt, who is a very good striker of the ball. And again from the far end, Aditya to Aditya. Right arm over the wicket, nicely turns that one. Very good stop by the fielder, even though he couldn't manage to stop that from his hand, but putting his body behind the ball, and he managed to stop that bound is very important in this format of a game. So with that, a single score, Namuzan to 10 on the board without loss of any wicket in the over. Number second in progress, Aditya. To GK Butt, nicely turns back, absolutely perfect gap. This is short pitch delivery and ball just short of line delivery, batsman just going back and turns that one very nicely between square leg and the fine leg, and it's going to be a welcome boundary for team Satish Strikers. So with that boundary score, Namuzan to 14 on the board without loss of any wicket. Both the batters are laid the foundation, which is very much required for Satish Strikers in the morning. Right arm over the wicket. There was what a shot, but a lack of placement. GK Butt pulls that one down the ground, but couldn't manage to get the placement right as the mid-wicket fielder fields the ball, and there is no chance at all for any run. It's definitely good, but sometimes it's a frustration for the batter when you hit the ball very well. But again, Aditya, right arm over the wicket to GK Butt. Oh, lovely delivery there. Just a variation, we can see that in that delivery. The last 3 to 4 deliveries bowled with an excellent pace. This time he's just reducing the pace, bowled a little bit slower one. Because of he bowled that slower one, he get an extra deviation in the ball, and the batter completely beaten in the negation. Again, straight to the hands of extra cover fielder. Sandy, the fielder at extra cover, waiting for that one. Of course, the GK Butt just checking the stroke his last moment. He knows that ball will going to travel out of the boundary line, and that's why he's checking the stroke. And while he's checking the stroke, ball went straight to the hands of extra cover. First wicket back into Pavilion. It's 14 on the board for the loss of 1 wicket. Aditya Nayak got a very important breakthrough in the last delivery of his over. So 2 overs completed after completion of over number 2. It's 14 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Aniket is a new batter, and wait and see which will going to be the new bowler. Vinayak Butt will be the new bowler.
He will go into ball the third over of the innings of team of Satish Strikers. Slight a bit of changes in the field here. There is a short third man, there is a backup point, one fielder at cover point. There is no extra cover, but there is a mid-off, mid-on, mid-wicket, square leg behind, in front of square, and one fielder at a short fine leg region. Vinayak round the wicket. To Aditya, one more loose stroke, one more loose stroke. It's all happening in this format of a game. When batsmen try to reach to the pitch of the delivery, one realizing that if he manages to hit the ball will going to travel out of the boundary line. That's why they are checking the stroke in the last moment. A similar, identical mirror display of a previous dismissal in that occasion, because Aniket Nayak, little correction, Aditya Bhatt couldn't manage to get that one down the ground, but he played uppishly and pays the penalty for that. And same thing has happened to his partner GK Bhatt. He's also checking the stroke in the last moment and couldn't manage to keep it down. New batter in his Anirudh Bhatt, and will definitely have a lot of responsibility to take his team's score into 35 to 40. This time Anirudh straight away off the mark. Sensible batting here from Anirudh Bhatt. Just soft and comes into play. Not really try to hit the ball pretty hard. And he picked up a single for that. With that single, scoreboard numbers on to 15 on the board in the over number 3 in progress. That brings Aniket Nayak into the strike. Aniket drives that one right in the gap, and it's going to be a boundary. Diving effort from that fielder Rishit at mid-wicket region. Couldn't manage to stop that one. Of course, that was a stoppable one. I don't think any diving is required in that occasion, because a little bit quick movement which is required from that fielder. But he's tried to stop the ball by diving to his right, but fails to stop the boundary. Lucky boundary and welcome boundary as well for the Satish Strikers from the bat of Aniket Nayak. Scoreboard now moves on to 19 on the board for the loss of 2 wickets. Vinayak pulls out of the boundary line. So all we can see that the players of Satish Strikers couldn't manage to judge that dimension of this cricket ground. Everybody knows that 30 yard is not so easy. They need to keep it down every time we are trying for the pull shot, driving the ball. Always need to be very careful. And nothing much wrong with the stroke, but something wrong with that is couldn't manage to keep it down. And unfortunately, is also back into pavilion after getting a boundary. New batter in is Gopal. Will going to take the strike of Vinayak. Again, nicely placed that one. A very good piece of fielding there by the fielder. Excellent piece of fielding. The same fielder, I think, is a Pawan down at short extra cover region. Made a very good attempt to save the boundary for his team. Just a single. With that single, scoreboard moves on to 20 on the board for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. Vinayak bowls, cuts that one pretty hard, but lack of placement set to the hands of Pawan. Pawan managed to stop that one, but couldn't manage to stop the single from the last delivery of the over number 3. 3 over gone after completion of over number 3. Searching for the right track. Satish Strikers managed to score 21 in 3 overs at the rate of exactly 7 runs per over. Nagankatte Panthers tani team registration korka. Jagli Cherkena already registration kelala sa. Nagankatte Panthers player registration ang reporting korka. Next match tumgela. Ramnath Bhatt brought into attack to ball. Again, cuts that one very nicely, but oh my goodness. The fielder at backward point region not really up to the mark. The second time, the same fielder doing a mistake. And absolutely, the lucky boundary comes up here for team Satish Strikers. Anirudh Bhatt is a very lucky batter. Got a boundary in that occasion where could be a certain single. With that single scoreboard, moves on to 25 on the board. 25 for the loss of 3 wickets. Lot of changes in field. That the fielder at the beginning is in the third man. Now he is coming to backward point and cover point. Now he's coming to mid off. And all we can see that ball which is really following the same fielder every time. And again Vinayak Ramnath Bhatt bowling from the far end. Right arm over the wicket to Anirudh. Anirudh did have nicely placed that one. Absolutely perfect one. Intelligent cricket from Anirudh Bhatt. Even though that is a full toss, he knows that you can't hit the big shot for the full toss, but you need to play that one sensibly. And it was a clever batting there from the batter
Anirudh that getting the placement right between mid-on and the mid-wicket, and he got a second boundary. Consecutive second boundary came from the bat of Anirudh Bhatt. 29 on the board. Right, over the wicket, pulls that one right in the gap. Hat-trick boundary. So Anirudh Bhatt is on fire. Consecutive 3 deliveries, he picked up 3 boundaries for his team, and much required runs coming in this over for Satish Strikers. With that boundary score, now moves on to 33 on the board in the over. Number 4 is in progress. Now bowler is under pressure. Bowler short pitch delivery, 2 short pitch, 1 full toss, 2 short pitch delivery. Right arm over the wicket bounce. This time Anirudh chip that one and out of the boundary line, and it's gone. This time the fielder did a great job that he is not really attempting for the catch. He just left the ball, rightly so. Ball went out of the boundary line. It's a very good innings of Anirudh Bhatt, which is comes to an end. Small cameo from him. Hit 3 boundaries and scored 14 valuable runs. Prathamesh is a new batter in. With the jersey number 777, will go into face next delivery of Ramnath Bhatt. Ramnath Bhatt at last managed to get 1 wicket, the wicket of Anirudh Bhatt, who is looking very dangerous in the middle after hitting 3 boundaries in 3 consecutive deliveries. Now he bowling 5th time in this over. A right arm over the wicket to Prathamesh. Prathamesh drives that one. A good stop there by Pawan in the occasion. Pawan Nayak absolutely is very impressive in the field, and once again is topping that powerful stroke from the batter with that single score, but moves on to 34 on the board, and the bowler will go into ball last time in this over. Right arm over the wicket to GK. Lovely delivery, absolutely perfect one to finish the over number 4. After completion of 4 overs, Satish Strikers managed to score 34, and it's going to be a very, very productive over from the point of view of Satish Strikers. They got 3 boundaries in that over, and altogether they got 13 runs in that over. So last over going to start from the far end, and wait and see how Satish Strikers will going to get the runs. But Sandy will going to try for some economical deliveries, some economical overs, which is very important for team to restrict the flow of the runs in this last over for Ugrana Sevaks. This time lofted but straight out of the park. So the second batsman, they are doing the same mistakes by hitting the ball out of the ground. 3 batters of Satish Strikers are making the same mistake, doing the same mistake here. They're hitting the ball out of the boundary line. So new batter in is Vignesh, just came into middle. Vignesh will go into face Sandy. Again bowler's back drive, and Sandy on his follow through very quickly react to that fielding, and there is no chance at all for any run. Good start there from Sandy. 2 balls, which is 1 dotted and 1 a wicket taking delivery. 3rd time in this over. Right up over the wicket delivers. Vignesh this time nicely placed out mid wicket. They're going for the 6 single, chance of run out, and is gone. So this time Vignesh wanted to get the single by turning the ball down to mid-wicket region, but mid-wicket fielder very quick to react to that one. Returns the ball quickly to the hands of the bowler, and bowler complete the formalities of making a run out. 1 more wicket is back into pavilion. Wickets are tumbling like a house of cards of Satish Strikers in the last 2 overs. 34 on the board. No run scored yet in this final over. 3 balls bowled. 1 dotted delivery, 1 run out, and 1 out. The batsman hit the ball out of the boundary line. So good over is in progress. Right arm over the wicket. Sandy 4th time in this over. Bowls. Cuts that one more wicket. Gopal this time joining their partner. This is a 5th batter of the team Satish Strikers. They are hitting the ball out of the boundary line, and they themselves got out by hitting the ball very firmly and uppishly. Srinath is a new batter in. What a fantastic last over is in progress. 3 wickets in this over, and no run scored. Again across the line he plays it down to square leg region. The fielder at square leg half stopped that one. Very hardly stopped the ball with that single score. Namuzan to 35 on the board for the loss of 7 wickets. It is the first run in this last over. We can see that the last delivery is in progress of Satish Strikers.
Prajwal fools that one, straight to the answer mid-wicket, chance of run out in the non-strikers and a very good backup. The very good backup by the fielder, so that just a single couple of runs which is conceded in this last over. Very good over there from Sandy. Just 2 runs, and after completion of over number 5, Satish Strikers managed to score a Nagangatte 36 Panthers. and set a target of 37 to win this match. 36 the total, 37 going to be a target. ನಾಗನಕಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನ ಟಾಸ್ ಆಯೋಕ ನಾಗನಕಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನ ಟಾಸ್ ಕೋರ್ನು ಒಚ್ಚುಕ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳಿಗ ನಾಗಿಯೋ ನಾಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಳಿಗ So match will going to start, the innings will going to start of team Ugrana Sevaks, 36 going to be a target. First ball, oh, caught behind the wicket. Absolutely dream start. 37 is a target, and Gopal Bhatt picked up a first wicket in his first delivery, and danger man, the hero of the previous match, Ramanath Bhatt, out for golden duck. Fantastic delivery there from Gopal Bhatt. Batter tried to chase that ball, which is the outswing one, and got a leading edge wicketkeeper behind the stump. GK Bhatt completes the formalities of taking that catch. Yeah, very, very interesting. Some sledging is going on here from the fielders of Satish Strikers for the batters of team Ugrana Sevaks, and Vinnu is a new batter. Full toss, drives, and Adi Bhatt is a fielder there in the cow point region, returns the ball, little bit high throw, so that first run comes up here for team Ugrana Sevaks. They open their account with a single, one for the loss of 1 wicket. That brings Sandy into strike. Right over wicket, Sandy once again is a very, very technically sound player, and straight away is off the mark by just driving the ball down to extra cover region for a single. With that single score, but moves on to 2 on the board. The supporters for both the teams, they're cheering their every runs and every wickets, and again from the far end. Right arm over the wicket, bounce to Vinnu. Vinnu drives that one, said, oh, misfield. The fielder at extra cover just waiting for the ball which is kept low while he tried to collect that ball which is kept low, and ball just passing under his hands and went into the boundary. And welcome boundary here for team Ugrana Sevaks, and score but moves on to 6 on the board. Hello. Same, just in the same ala miss. Just in the same. Just in the same color ali. Our confusion ಆಗ್ತದೆ. Gopal Bhatt. Gopal Bhatt from the far end. Right arm over the wicket to Vinnu. Oh, this time Vinnu is in a 2-mind. Whether go for the cut shot or not. But his confusion is that if you go for the cut shot pretty hardly, the chances of ball is landing out of the boundary line. So he's just changing his mind last moment. Try to push the ball. Luckily that ball just missing his outside edge of the bat.
Gopal Bhatt again from the far end. Right arm over the wicket bounce. Short pitch delivery again. Absolutely second short pitch delivery which is misses the bat of Vinu. Good comeback here by the Gopal Bhatt after completion of a first over. Chasing a total score of 37 to win this match. It's 6 on the board. ते उग्राणा सेवक साचे मक्षोचाची लयनार तुला मक्षोचाची उग्राणा सेवक्स मक्षोचाची उग्राणा सेवक साचे लयनार रबो नका ते प्लेयर्स We really understand the excitement of this match, but it will disturb the concentration of the players because it is a small ground and you are very near to the players, so that need to be very careful. And again from the first ball, from the far end. Aniket, the bowler, drives that one down to mid-wicket region for an easy single. With that single scored Namozan to 7 on the board. That means exactly 30 required now in remaining 23 deliveries for team Ugrana Sevaks. Aniket. Right arm over the wicket to Vinu. Vinu this time right behind the line of the ball. This time he just adjusting the stroke for the last moment. That pushes that one down to short extra cover region for a single. With that single scored Namozan to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Aniket again from the far end. Right arm over the wicket balls to Sandy. Sandy said this time shouldering his arm. That will going to be a no ball. That will going to be a no ball because the ball pitches out of the pitch, and as for the new rules and regulation of cricket is concerned, and whenever the ball pitches out of the line of the pitch, then it's going to be a no ball. So that it's a free delivery for Sandy. This time Sandy cuts that one, but not more than a single, just a single. With that single scored Namozan to double figure, 10 on the board, and that means that 27 more runs required for the victory for team Ugrana Sevaks against Satish Strikers from the far end. Right arm over the wicket ball. Second cuts that one right in the gap. Absolutely perfect gap. The winner this time knows that there is a backward point and cover point. There is a little bit gap, and he plays it that one exquisitely in that gap, and he got a boundary for that. With that boundary scored Namozan to 14 on the board. 14 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress. Aniket to Vinovat, and very good leave here from Vinovat, getting his body away from the line of the ball. Let the ball goes into the hands of the wicket keeper, and wide call by umpire. With that extra score, but Namozan to 14 on the board. 15 on the board. Again one more wide with that wide scope, but Namozan to 16 now. 16 on the board. That means another 21 more runs required for the victory. 16 on the board, and they have to get another 21 runs to win this match. Again cuts it straight to the hands of Adi Bhatt. This is a wicket what Satish Strikers badly required in this occasion, because Vinu is looking so good. He's settled down in the middle. This time he wanted to cut the ball, but he cuts it, but straight to the hands of Adi. So wicket number 2, which is back into pavilion at the score of 16 on the board. Still they have to get another 21 runs to win this match. Last delivery remaining in this over. 21 required. That means 19 deliveries remaining. Aniket, right arm over the wicket to Adi. Adi this time tried to reach that delivery. Wide call by umpire. Ball just moving further away with that leg cutter, and batsman is in a two-mind. Try to reach that delivery or not, or to try to cut or not, but ball misses his bat. Wide call, 17 on the board. That means 20 runs required. It's going to be a no ball now. No, wide ball is not a no ball, because after the pitch it is bent into the so wide call by umpire. With that extra score by Namozan to 18 on the board. 18 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Right arm over wicket balls to Adi. Adi this time one more wide. This is absolutely
Aniket conceding some runs. That's extra, and the extras really helping the team. Ugrana Sevaks really getting some extra runs, extra deliveries. It's a very definitely becomes a bonus for the team. 19 on the board. Right arm over the wicket bounce to Adi. Adi this time wanted to play that one defensive stroke. Blocks the ball. It's a prolonged over. Prolonged over which is come and from Aniket. Given a lot of extras in this over. After completion of over number 2, chasing a total score of 37 to win this match. It's 19 on the board. And it looks like a team, Ugrana Sevaks, they are strongly back in the game with that previous over, which is 13 runs came from that over. 18 balls, 18. 19 is the score. 19 is the score, and 18 balls and 18 runs required. 37 is the target. So ball-to-ball run required now onwards for team Ugrana Sevaks. And needed one good over here for Satish Strikers if they wanted to back in the game. So right arm round the wicket here. Vignesh came into attack from the far end. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Vignesh to Sandy. Round the wicket. Ah, top edge. Sandy did the mistake. Because sometimes the full toss delivery is very handy, especially for the Sandy. And Andy bowled the full toss ball. Sandy hit that one out of the park. And wicket number 2, which is back into pavilion. And 19 on the board. 19 without loss. Because 19 was for the loss of 2 wickets. Pawan is a new batter in. The Pawan will go in to take the strike. Vignesh. Ball's nicely driven. Oh, what a stop. Absolutely good save. Because ball went like a tracer bullet towards square leg. And a little time to react, little bit of seconds to react for that square leg fielder. And reacted very quickly to that one. Stops the boundary. Just a single. 20 on the board. Again, plays it down to extra cover region with that single scored Namozan to 21. Directed. But no question of extra run there. With that extra run, scored Namozan to 21 on the board. That's 16 more runs required for the victory. And it's going to be a very, very good matches in progress. 15 balls and 16 runs required for the victory. Pawan is on strike. Vignesh is on attack. Lovely delivery. Batsman wanted to cut that one. Very luckily, if he managed to touch the ball, surely that ball definitely going to the out of the park. And it's lucky for Pawan that he didn't match the ball. And he misses the ball. And a very, very important dotted delivery from Vignesh Bhatt. Right arm over the wicket balls and getting away from the line of the ball. This is the one area where the team Satish Strikers are really conceded so many extras in this match. Scored Namozan to 22. 15 required. 15 required for the victory. Vignesh right arm. Round the wicket bounce to Pawan. Pawan flicks that one. Good piece of fielding there by GK Bhatt. Wicket keeper behind the stump. Just quickly moving to the direction of the ball. Saving runs for his team. One more important dotted delivery. Pressure is now mounting up here for the batter. Great over is in progress. 22 on the board. 15 still required for the victory. Right arm over the wicket. Pulls it handsomely. And ball went into the out of the park. And Pawan had to walk towards the pavilion. So what a great over. What a great over. Finished by Vignesh. Just 3 runs came from that over. And that means in 2 overs. 15 required from 2 overs. And Vignesh brought Satish Strikers strongly back in the game. With that fantastic economical and wicket taking over. Gopalakrishna will go in to try for another good over for his team. Adi is on strike. Gopal to Adi. Adi drives and one more wicket. The wickets are tumbling like a house of cards. So celebration is on here from the fielders of Satish Strikers. Ugrana Sevaks are looking in trouble now. 11 balls, 15 runs required for the victory.
New batter in is Vikas of Vicky. One more young talented batter for the side of Team Ugrana Sevaks. And bowler will go into ball from the far end. GK Bhatt, second time in this over. Right above to Vicky. Vicky wanted to turn that on the onside region. Good change of line there by GK Bhatt, saying that Vikas is tried to shuffle across the line of the delivery, just following the batter, ball outside the line of off stump. Two very good deliveries ball there by GK Bhatt. Right now over the wicket to Vicky. Vicky drives that one down to mid-on region for an easy single. With that single, scoreboard now moves on to 23. After a long time, the scoreboard is moving. 23 means another 14 runs required for the victory in remaining 9 deliveries. 14 required from 9. What a match we are witnessing. Manjunath came into strike now. Experienced campaigner, but they need to convert that experience into performance if his team wanted to win this match. And the Manjunath have to deliver one or two good cricketing strokes in this particular over. 14 required from 9. Right arm over the wicket, GK Bhatt bows. A lovely delivery. Absolutely lovely one there from GK Bhatt. Manjunath wanted to cut that one, but missed it completely from his bat, and the wicketkeeper behind the stump, Anirudh, gathers the ball back to bowler. 14 required from 8 balls. Satish strikers are really tighten up the screws out here. GK Bhatt to Manjunath. Manjunath across the line, plays it down to mid-wicket, but not more than a single. Satish strikers will not going to bother about that singles, and with that single scoreboard now moves on to 24 on the board. 13 more runs required for the victory in 7 balls. GK Bhatt to Vicky. Vicky wanted to play the reverse sweep. There will be a single. There will be a certain single, but they are not interested. Good over from GK Bhatt, and 2 very good overs. One Vikram Egde bowled one fantastic over. After that, GK Bhatt is also bowled a fantastic over. So last over remaining. They need to get another 13 runs to win this match in the last over. Absolutely good comeback here by Satish strikers in this match, because at one stage team Ugrana Sevaks are cruising towards a victory, but unfortunately they lost their momentum, and especially in the last 2 overs, the bowlers of Satish strikers, they managed to bowl some tidy overs, economical overs, and some wicket taken by the bowlers of Satish strikers. Prathamesh will go into ball that last over. He's depending 13 runs in this last over. The Manjunath can try for the victory in this last over. Prathamesh to Manjunath. Absolutely misjudgment. Fantastic delivery. The couple of tinches just inside the line. Misjudgment now. Pressure is on. 13 required. 5 balls remaining. Right arm round the wicket to Manjunath. Went for the reverse sweep. One more dotted delivery. 4 balls remaining. 13 runs required for the victory. A last opportunity. At least 3 boundaries required for the victory. Manjunath facing. Balls, 1 more dotted delivery. Consecutive 3 dotted deliveries. Now 3 balls remaining. 13 runs required for the victory. 3 boundaries will go into tie the match. 3 boundaries will go into tie the match for Ugrana Sevaks. Prathamesh balls. What a fantastic delivery. 4 consecutive dotted deliveries bowled. And Manjunath fails to make a contact. What a great over. Now looks like there's a formalities left in this game. Unless bowler bowling any no ball or white balls. It's a victory which is a show for the striker. And 1 more wicket is back into pavilion. So last ball, 12 required. So far there is a no run scored in this over, bowled by Prathamesh. And 13 required from last delivery. Oh, Dayakar getting some warm welcome to the crease from the crowds and from the opposition. 13 required from last ball. Again, caught behind the wicket, is gone. So Satish strikers once again, they're winning this match. Absolutely all marks go to the bowlers, especially the 3 bowlers.
Prathamesh bowled a maiden over, the last over maiden wicket. Maiden 2 wicket. GK Bhatt bowled fantastic over. Even Vignesh Hegde is the one who brought the team strongly back in the game. And congratulations for the winners. And we'll take a short break here. After the short break, we are into the next match. The next match will be played between Jagali Cherkis versus Naganakatte Panthers. Thank you. सतीश स्ट्रायकर आणि अनेक टीमा उग्राणा सेवक्स दोन टीमा सगळे टीमान एक ग्रुप फोटो घेऊ का दोन्ही सगळे टीमान सतीश स्ट्रायकर सगळे टीम एक ग्रुप फोटो काढू मागीर उग्राणा सेवक्स तुमगे सगळे टीम ओनर समेत एक ग्रुप फोटो घेऊ का तवलच्या मॅच बारी फाईट आशिल्ले हजे मॅन ऑफ द मॅच अनिरुद्ध भट पी पडबिद्री अनिरुद्ध भट मॅन ऑफ द मॅच 14 रन मारलेले बॉलिंगान आमगेले विघ्नेशान लायक बॉलिंग घाल्ला 1 ओवर 3 रन कान 2 विकेट काडला तशी अनेक लास्ट ओवर घालल ताणी मेडन कोण 2 विकेट काडला जाल्यार स्कोर बारी उणे आशिल्ले तंतु 14 रन मारला म्हळ्यार लायक एक स्टार्टिंग येवन ताणें विकेट ओरून एक सायड रबून खेळलाक अनिरुद्ध भट पी हाका मॅन ऑफ द मॅच डिसायड जालेलो आसा स्टेजार येवका हांकां आमगेले बालकृष्ण पै मामान स्मरणीक दिवन गौरव समर्पण करपाक निमून घेता सर मागीर उग्राणा सेवक्स टीम आहे तशीची सगळे ओनर पूर जनान तुम्ही एक ग्रुप फोटो येऊ का उग्राणा सेवक्साचे ओनर पुरे सगळे तुमगेले टीम Dhanyawad Satish. So what a fantastic match ended, and the next match is now going to start. Jagali Cherkis versus Nagankatte Panthers, and the first ball और पहले गेंद को इस वक्त खेला था रन से बल्लेबाज को नहीं मिला तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त जगली चरकेस इस वक्त फील्डिंग करता हुआ नागरकट्टे पैंथर्स इस वक्त बैटिंग यानी बल्लेबाजी करता हुआ अगली गेंद लेकर अंतु इस वक्त तैयार था इन्हें तो ऊपर विकेट कट किया बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त बैकअप होता हुआ वहां पर और एक रन बल्लेबाज इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुका है इस एक रन के साथ स्कोर इस वक्त शुरू हो चुका है एक रन बिना किसी नुकसान के नागरकट्टे पैंथर्स का और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गेंदबाज अंतु इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर उग्राणा सेवक्स डगआउट सोंडिव का इमीडिएटली प्लेयर संघ स्वीप किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए इस वक्त मिड विकेट पर और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के 5 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर नागेश का स्ट्रोक इस वक्त फुल टॉस गेंद थी इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया था मिड विकेट पर 4 रनों के लिए और अगली गेंद लेकर अंतु इस वक्त तैयार था इन्हें तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये फेंका दिस इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची उनके बल्ले को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला अंतु फुल टॉस गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर इनटू द गैप एंड इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर टकराया था लेकिन गेंद इस वक्त निकली थी फाइन और मिड विकेट पर फील्डर दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंच नहीं पाए और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के इट्स 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस अंतु फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्विंग्स एंड दिस टाइम ही फाइंड्स द गैप एज वेल
तो गोपाल कृष्ण भट्ट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त नागनकट्टे पैंथर्स की पारी में ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से पुश कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर पर, बेहतर फील्डिंग वहां पर, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 14 रन बच चुके हैं। गोपाल भट्ट गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। नागेश जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए 3 चौके पहले ओवर में झड़ चुके हैं, सामना करने के लिए तैयार गोपाल कृष्णा की गेंदों का। ये गेंद इस बार मिड ऑफ पर रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, लेकिन यहाँ पर निशाना वहां पर टकरा सकता था, लेकिन इससे पहले कि निशाना स्टंप्स पर टकराया वहां पर गेंद पर हाथ अड़ाया और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गेंदबाज ने और आखिरकार नागेश इस जोखिम भरे रन को सफलता में यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। अगली गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर ड्राइव एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत दूसरे दिन का मैच नंबर 4 खेला जाता हुआ एसवीटी ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत और गोपाल कृष्णा दाहिने हाथ। यह गेंद खूबसूरत, एब्सोल्युटली परफेक्ट कवर ड्राइव। He's just got the right of the pitch of that ball and driven that one perfectly. Absolutely copybook style cover drive played by the batsman. Full toss, गेंद कौन साइड पर मोड़ा इस वक्त, स्कोर लेग पर नॉट मोर देना सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गोपाल भट्ट अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार और फिर से एक बार तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक और एक्स्ट्रा कवर पर रन पूरा कर चुके हैं। बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट, 1 रन का इजाफा। 2 ओवर की समाप्ति, 21 रन बच चुके हैं। 8 runs came from the last over and after 2 overs they made a pretty good start. In fact, they managed to score 21 runs on the board after completion of 2 overs without losing any wicket for Nagankatte Panthers. Vittal but mom. विट्ठल भट्ट नया ओवर प्रारंभ करते हुए पहले गेंद जस्ट गॉन फॉर वाइड स्विंग एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड और गेंद एक्स्ट्रा क्विकर के साथ सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार विट्ठल बट बोल्ड आउट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, मैग्निफिसेंटली बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर एंड ही जस्ट गॉट द हिट ऑफ द बैट्समैन। सौरभ नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए अपील इस वक्त कंबाइन के लिए कि अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। विट्ठल भट्ट जस्ट कीप लोअर एट द लास्ट मोमेंट और बल्लेबाज एक्सपेक्टेशन पूरा अनुमान नहीं लगाया था कि गेंद इतनी नीचे रहेगी। टिप्पा खाने के बाद गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और भाग्यशाली रहे कि गेंद इस वक्त स्टंप्सों पर नहीं टकराए, ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 22 रनों पर। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है विट्ठल भट्ट का। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, पटके भी गेंद क्रैक्स इट अवे थ्रू द ऑफसाइड एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, ऐसा कहना पड़ेगा ऑफसाइड पर गेंद को पंच किया था, थोड़ी सी विड्थ थी और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को पंच कर दिया कवर पॉइंट पर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक का इस बार सेम स्ट्रोक बट स्ट्राइक टू फील्डर दिस टाइम एट कवर पॉइंट। 1 more wicket fall on, wicket number 2 down, it's 26 for 2. .26 for the loss of 2 wicket.
चेक नेक्स्ट महामाया क्रिकेटर्स आणि गोपूर ग्लॅडिएटर्स दोन टिमामध्ये तो मॅच जावचा आसा तुम्ही हांगा म्हणून जाल्यार ही प्ले रजिस्ट्रेशन कोरका मॉर्निंग म्हणून घेतास धन्यवाद। और इस ओवर में अंतिम बार विठल भट्ट गेंदबाजी करते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया कलाइयों के साथ इस वक्त मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट 3 overs had been bowled and they are progressing along nicely and with just 2 overs to go in their innings. तो 2 ओवर में कम से कम 15 से 20 रन यहाँ पर बटोरने होंगे इस वक्त नागनकट्टे पैंथर्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें की चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो और इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए पवन कमेंटेटर बॉक्स की ओर के ओवर से ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद ये गेंद कट किया इस वक्त थर्ड मैन पर 4 रनों के लिए खूबसूरती के साथ So 4 runs into the account of the batsman and 4 runs into the account of Nagankatte Panthers. Scoreboard moving up to 31. Nagli गेंद लेकर तैयार पवन. Is in the air and fell short of a fielder at mid-off. Just check the shot at the last moment. Not succeeded. And the ball got his topper of the bat, but luckily for the batsman, fell short of a fielder at mid-off, and the batsman got a life and a single. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 32 रनों पर 32 for the loss of 2 wicket. और अगली गेंद लेकर पवन इस वक्त तैयार रहा पटके भी गेंद एंड गॉन ही इज गॉन दीपक the new batsman is now comes out to the middle और पवन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दीपक के लिए ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर रन के लिए तो बड़े तेजी के साथ 1 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके इससे पहले के मिड विकेट पर कुछ हद तक मिस फील्ड के बाद गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर और पवन एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघु इस वक्त सामना करते हुए पवन की गेंदों का cuts down to third man gone through a quick single and get it comfortably at last तो 1 रन मिला इस बीच स्ट्रोक्स के साथ ही बल्लेबाज दौड़ पड़े थे और यशस्वीतम 1 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर जबकि 1 गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और पवन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार बेहतर absolutely fantastic delivery and a dot delivery to end the over 4 overs completed and after 4 overs Nagankatte Panthers still searching for the right track it's 34 for the loss of 3 wicket after completion of 4 overs 7 runs came from the last over from Pawan better one from him and now just a last over remaining in their innings Vasudev the bowler is now brought into the attack और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघु के लिए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद वासुदेव ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा फ्लाइट एट पल्स गेंद सीमा रेखा से बाहर नो बॉल एंड 1+1 in fact 2 runs added to the total now और 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रन फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए वासुदेव chipped away this time he won't survive he's gone In fact, that isn't a free hit delivery. Because of that, he survived. तो यहाँ पर फ्री हिट गेंद पर बच चुके हैं ना सिर्फ बच चुके हैं बल्कि 1 रन भी वो प्राप्त कर चुके हैं और 37 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट वासुदेव ट्रैक्स स्ट्राइक के फील्डर एंड नॉट स्ट्राइक एंड बैट्समैन हाफ द वे मार्क लेकिन अंतिम क्षण में
और पिच में स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। गेंद सीधे पहुंची थी इस वक्त पॉइंट फील्डर के हाथों में सीमा रेखा के अंदर जो खड़े हुए थे, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त वासुदेव तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और तीसरी गेंद एक बार फिर से वाइड का इशारा। तो अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए वासुदेव 2 लगातार वाइड और एक नो बॉल इस ओवर में फेंक चुके हैं अब तक। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे देते विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। विकेटों के पीछे बाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें कुल मिलाकर अब उनके पारी में बाकी, और इस बीच वासुदेव इस बार कट किया इस वक्त, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं। पॉइंट पर जब तक फील्ड हो धीमी गति से गेंद उनके पास पहुंची, और इससे पहले बल्लेबाज के पास समय अवकाश था कि 1 रन के साथ अपना चोट बदल सके। 41 बेहतर ओवर, अगर वो 2 वाइड 1 नो बॉल को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो अब तक बेहतर ओवर साबित हो चुका है वासुदेव का। लेकिन इस बार ऑटोमेटिकली गेंद पैरों पर टकराने के बाद विकेट कीपर के स्टंप्स पर टकराई थी, अपील की गई स्टंप आउट के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। तो वाइड का इशारा, तो 42 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और वासुदेव फिर से एक बार तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लंबा ओवर उनका प्रगति पर बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, फुल लेंथ गेंद, और गेंद को विकेट से हटते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, चूके डॉट गेंद, और एक बार फिर से वासुदेव तैयार। पटकी हुई गेंद कट किया इस वक्त, पॉइंट पर रोका गया बेहतर तरीके से, सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 पर। So the innings is up, the stipulated overs are completed, and Nagangatte Panthers managed to score 43 runs in the stipulated 5 overs, and now they set a victory target of 44 for Jagali Cherkes. Jagali Cherkes have to score 44 in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 8.80 runs per over. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं इन 44 रनों के लक्ष्य तक, 44 के लक्ष्य तक जगली चरकेस के बल्लेबाज यहाँ पर पहुँच पाते हैं नहीं तो महामाया। यस, कंटिन्यू। उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर जगली चरकेस की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थँक यू, धन्यवाद। गोपूर ग्लॅडिएटर्स आणि महामाया क्रिकेटर्साच्यात टॉस जावचा आसा, 2 टिमा कॅप्टनांनी हांगा येवका। गोपूर ग्लॅडिएटर्स आणि महामाया क्रिकेटर्स। Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm Thank you very much and welcome back, and thank you DJ Dikshit, and we are back into the game, and Naganakatte Panthers required 44 runs to win this match against team Jagali Cherkes. First ball, a lovely delivery there from Arshit. First ball itself is just testing the temperament of the batter with the flighted and away going deliveries, just moving from the good length spot, a slight leg cutter, and the batter completely missed it, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Arshit Baus this time nicely turns that one down to short fine leg region. Good piece of fielding there by the fielder, just using his feet to stop the boundary, and he succeeded. So batter Anantesh got his first run and from his bat, and Vittal will going to take the strike. Two very good batters have to lay the foundation for Cherkes if they wanted to win the match. Arshit Baus again off the back foot, beautifully plays it down to
third man region. He's so good in that shot. Vittal's signature late cut in the negation there from Vittal. He's so good at that shot, just waiting for the turn of the ball. And he knows that Arshit is trying for the away going delivery. And he just steers that one down to third man region boundary for 4 runs. So with that boundary, scored Namozan to 5 on the board. Arshit, right arm around the wicket, bounced again, wanted to push the ball in the offside region, but ball went to the different direction, that is into the square leg region. And with that single, scored Namozan to 6 on the board without loss of winning wicket. 43, definitely it's going to be a target where you cannot underestimate. And but being the fact that Jagali Cherkis has got some good players in the side, that might be a very good, that might be the worried factor here for the team Naganakatte Panthers. Arshit again, bowling away from us. Right arm round the wicket, lovely delivery again, lovely piece of bowling performance there from Arshit. Even Anantesh trying his level best to get some boundaries in that over, but couldn't manage to get any success. But Vittal got the success to get one boundary. But it's a great over there from Arshit. Very tidy over in that, even though he conceded one boundary in that over. But he managed to pull the things back in the favor of his team. It's 6 on the board, 7 on the board without loss of any wicket. .44, which is going to be a target. That means 37, which is runs required, remaining runs required, and deliveries remaining 24. Saurav bowling second over, right arm over the wicket to Anantesh. Anantesh going for the cut shot, not getting that one from the middle of the bat, got an inside edge of the bat, and before wicketkeeper will go into a run to his right to field the ball, ample time for Anant to complete the single. With that single, scored Namozan to 8 on the board without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. Saurav, right arm over the wicket to Vittal. Vittal cuts that one pretty hard. Lovely shot indeed. He's very strong in the behind the wicket and square of the wicket, and plays it quite nicely down to backward point boundary for 4 runs. So with that boundary, scored Namozan to 12 on the board. The 12 without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. Saurav, third time in this over. Right arm over the wicket to Vittal. Vittal again cuts it down to backup point region for an easy single. With that single, scored Namozan to 13 on the board. 13 without loss of any wicket. Both the batters tried to lay the foundation. They wanted to get some runs. If they wanted to win this match, they need to get some runs straight away. Anantesh again, a nicely driven right in the gap. Good piece of fielding there by the fielder. Sensible fielding there by the very young, talented fielder down at mid-off region. Adi stopping boundary for his team, and just a single there. With that single, scored Namozan without loss of any wicket. Again, Saurav just missing his run-up. So he just stops his run-up and back to his bowling mark. Umpire called it's a dead ball. And Saurav again, bowling right arm over the wicket to Vittal. Vittal this time tried to reach that wide outside the line of off-stump. With that extra, scored Namozan to 15 on the board. Each and every run going to be very crucial in this match. Both the teams has got some good players in the side. Saurav, right arm over the wicket to Vittal. Vittal again tries that one. They're going for the quick single, and they managed to complete that one. Risky, and risky is a part of cricket, and Vittal knows that. You need to get every chances if you wanted to get runs for his team. Last time in this over, scored Namozan to 16 on the board without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. Saurav, right arm over the wicket. Anantesh drives that powerfully, and good piece of fielding there by the fielder. Raghavendra down at mid-on. It's going to be a full toss, which is Anantesh couldn't manage to get the placement right. One more over completed after completion of over number 2, chasing a total score of 44 to win this match. Team Jagali Cherkis are 16 on the board after completion of over number 2. Three overs remaining in the innings of Jagali Cherkis. 28 more runs required for the victory from 18 balls. Nagesh from the from the committee box, and right arm over the lovely delivery indeed. Batsman couldn't manage to make a contact with the bat, even though Vittal tried to
guide that one down to backward point region, but fails to make a contact with the bat. Nagesh is the captain of the side, bowling away from us. Right arm over the wicket, nothing much to do with the delivery. That ball is missing the direction outside the line of leg stump, so that little margin for error. Umpire has got no hesitation. Karthik just signal the white, 17 on the board. Drives that one, but again, good piece of fielding there by Saurav. Chance of run out and it's gone. Great piece of work there by the cover point fielder, and Vittal back into pavilion in the form of run out. Powerfully driven there by Vittal down to cover point region, and Saurav absolutely perfect fielding and returns the ball very quickly to the hands of bowler. And bowler Nagesh completes the formalities of making that run out. First wicket is back into pavilion of Jagalicherke's scoreboard. 17 on the board for the loss of 1 wicket. The first wicket is back into pavilion. The new batter in is Vasudev, one more very quality player for the side of Jagalicherke's. And Jagalicherke's coming back to their performance in this tournament. Probably they are very, very unlucky that after scoring a huge runs in the first match, couldn't manage to depend. This time pulls that one Anantesh. You can't ball the short pitch delivery to that man. He's a very good puller of the ball, and Anantesh this time just right behind the line of the ball, just paid a controlled pull shot down the ground for 4 runs. With that bound, scored moves on to 21 on the board. That means 23 more runs required for the wicket. Anantesh places the ball nicely down to mid-off region for his single. With the single, scored moves on to 22. Match is going to be very interesting. It's going to be anybody's game. Having Anantesh in the middle, definitely the opposition team will not going to relax. Right arm over the wicket, bounce. Lovely delivery indeed. Slower one there from Nagesh. Batsman not really able to read that slower one from Nagesh, and Vasudev fails to get any kind of runs for that ball, and score remains on 22 on the board. Half of the job which is completed, you need to complete another half of the job. That means 22 runs required for the victory. 22 more runs required for the victory in remaining 13 deliveries which is remaining in the innings of Jagalicherke's. Right arm over the wicket, bounce this time outside edge of the bat, but out of the reach of the fielder, and Arshit quickly covering that man, otherwise it's going to be a boundary there. And the batsman just reaching to that delivery which is wide outside the line of off stump. One more single added to total. 23 is the total score. That means 21 required in remaining 2 overs. And the run rate required exactly 10.5 runs per over. It's manageable, especially in this format of games where it could be a small boundaries. But small boundaries in the sense you cannot hit the ball upishly. We need to keep the every strokes down the ground, and that's why it's going to be very interesting, and need to have some different technique as far as the 30-yard format of a game is concerned. Raghavendra bowling with the round the wicket, right arm round the wicket, is going to be a very crucial over for both the team, because team Naganakatte Panthers wanted one economical over. At the same time, team Jagalicherke's wanted one productive over. The over of 12 to 14 is which is badly required. Raghavendra, right arm round the wicket, lovely delivery, just absolutely angling across. Beautiful delivery there from Raghavendra to start with. The pitching in little bit on the off stump, little bit deviation, and batsman completely missed that one from his bat. Raghavendra, right arm over the wicket, delicately played by the batter. Misfield there, the fielder. That misfield will definitely going to cost a lot. What could be a certain single there, and because of that misfield, scoreboard jumps into 27 now. The boundary which is came from that ball. So now we can see that a lot of whoos and ahs goes around the ground. The supporters of both the teams very excited. It's going to be a nail-biting finish, no doubt at all. Raghu will go into ball around the wicket, right arm to Vasudev. Again, this time wanted to steer that one, but not really getting that much of speed enough to defeat that wicket keeper. With that single score, but moves on to 28 on the board. That means 16 required from 9 deliveries. The match is absolutely evenly poised. Raghavendra, right arm over the wicket. Anantesh, what a shot! Absolutely fantastic piece of fielding there by the fielder, but the throw which is not up to the mark. What a great piece of fielding there by the fielder. Absolutely, ball is just rocketing towards fielder, and fielder reacted very quickly to field that one. Absolutely good save, just a single. With that single, scored moves on to
29 on the board. 29 for the loss of 1 wicket. 29 in this sense, 15 more runs required for the victory in remaining 8 deliveries. What a great match we are witnessing here. Raghavendra trying his level best to get one good over here for this team. Round the wicket, balls to Vasudev. Oh, ball! What a fantastic delivery that one. Around the legs. Vasudev thought it might be a wide, but he's a little bit exposing his leg stump. Bowler did the trick. Quite unusual dismissal, we can see that from the batter. And fantastic leg cutter from Raghavendra to dismiss the wicket of Vasudev. And what a great piece of bowling there from Raghavendra. Dilip is a new batter in. 15 more runs required for the victory. The 7 balls remaining. Now let's slide a bit of under pressure situation here for Dongerkery. Desperately needed 1 boundary in this last ball if he wanted to take the match into the final over. Otherwise, always is a little bit difficult task when you needed 15 from last over. Raghavendra, final time in this over. Right arm round. The wicket. Looking for improvising cricketing. So fantastic finish. Great over there from Raghavendra. And now last over remaining. Dongerkery needed 15 in that last. 4 boundaries which is badly required for the victory. Suhas got a ball in his hand. Arshid getting some ideas to this bowler. Maybe they're talking about just concentrate on 3 balls which is required for you in this last over. If you manage to beat 1-2 deliveries in the beginning, then absolutely pressure is on for Anantesh. Anantesh absolutely is a very, very good match finisher. You know exactly what kind of what kind of batting required in this last over. He knows that the 4 boundaries required. Here is Suhas. Right arm over the wicket balls. My goodness. He's saying that it's a no ball. And wait for umpire signal. Will it going to be a... It ball went out of the park. It's got a bat onto that. 1 + 1, 2 runs added to total. And 2 runs in the sense it's going to be a 31. 31 on the board. 13 required. Again looking for the improvising cricketing stroke. Missed it completely by Anantesh. Now 5 balls remaining. 13 required for the victory. This is not a good ball actually from Suhas. Short pitch one. Anantesh probably has got opportunity to get the boundary down to square leg region. He missed it, but still 5 deliveries remaining for him to get runs for his team. That 13 which is required. 5 which is remaining deliveries. Suhas, right arm over the wicket to this time top edge. And ball will go into land it into the fence. This is a huge fish in the net for a team Naganakatte Panthers. Anantesh departs. 4 balls, 13 required. Still the opportunities alive for team Dongerkery. Needed 3 boundaries and 1 single in this last 4 overs, 4 deliveries. Gopalakrishna is the bowler. Next match will be played between Mahamaya Cricketers versus Gopur Gladiators. I request both the teams please get ready. 4 balls. 13 required. Going for the cut. Missed it completely. 13 required from 3. 3 boundaries will go into tie the match, and any mistake from the bowler will go into win the match for the opposition if batter will go into get 3 boundaries and 1 extra. Suhas. Right arm over the wicket balls. What we are talking about extra. The still match alive. 32. That means 12 required from 3 balls. That means 3 boundaries required from 3 balls. Gopalakrishna have to get 1 boundary here if he wanted to take this match into another 2 deliveries of this last over. Balled him, cleaned him up. Suhas has got a different idea. Gopalakrishna wanted to get that 1 to extra coverage and misses the line completely, and he's cleaned him up by the beauty.
2 balls, 12 required for the victory. Now, no one can stop Naganakatte Panthers from the victory because 2 ball, 12 required for the victory. 2 ball, 12 required for the victory. 2 boundaries will not going to help, but no ball boundary will going to help the opposition team. And Suhas will going to ball 5th delivery. Formalities left in this game. Suhas will go into ball. No, what you are talking about the ball formalities. Still 11 runs required from 2 balls. Nothing much worried about that wide ball. Just 11 which is required from 2 balls. Suhas right arm over the wicket. Bows, lovely delivery. 1 ball remaining for the celebration for Naganakatte Panthers because 11 to get from 1, it's absolutely impossible task. Pulls that one too late. 4 runs. 4 runs in the sense they won the match by 6 runs. And very, very nail-biting finish which is comes to an end. The match which is comes to an end between Naganakatte Panthers versus Jagali Cherkis. And Jagali Cherkis couldn't manage to win the match even though they tried their level best. But unfortunately, the defending champion Naganakatte Panthers are once again getting a victory here. And they're justifying why they're the champion of the last edition of this SVT Trophy 2024. Meanwhile, we'll take a short break here. And after a short break, my friend Mr. Gopi will go to take over the microphone. The match between Mahamaya Cricketers versus Gopur Gladiators. जगली चरकेस आणि नागनकट्टे पॅन्थर्स दोन्ही तुमगेल टीमाच्याने एक ग्रुप फोटो येऊ का सगळे ओनर समेत जगली चरकेस आणि नागनकट्टे पॅन्थर्स दोन्ही तुमगेल सगळे टीम एक ग्रुप फोटो येऊ का तशीची जगली चरके सगळे टीम एक ग्रुप फोटो येऊ का तुमगेले ओनर्स वेल्युशर्स कोण असलारी ग्रुप फोटो केवे येता तशी नागनकट्टे पॅन्थर्स तुम्ही एक ग्रुप फोटो येऊ का हाजी नंतरची मॅच श्रृंगेरी रायझिंग स्टार्स आणि सुधींद्र वॉरियर्स श्रृंगेरी रायझिंग स्टार्स आणि सुधींद्र वॉरियर्स प्ले रजिस्ट्रेशन करू का तुमगेल नेक्स्ट मॅच तवलच्या मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच उणे स्कोर लायक बॅटिंग केला तशी लायक कॅप्टन्सी केलेला नागेश बाळिगा 14 रन बॉलिंग लायक गल्ला लास्ट ओवर सुहासाने लायक गल्ला जाल्यार नागेश बाळिगाले स्कोरय आशिल्ले तशीची कॅप्टन्सी लायक केला देखून मॅन ऑफ द मॅच नागेश बाळिगा वतास Dhanyawad Satish. So the match starts between Mahamaya Cricketers versus Gopur Gladiators, and Mahamaya Cricketers, after won the toss, they elected to bat first. Surprisingly, they elected to bat first, and their innings starts. First ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार ये गेंद रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त बल्लेबाज ने रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला
और गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। ये गेंद इस वक्त हल्के से पुश कर दिया, गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंची पॉइंट पर अनंत राय। जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के आज का मैच नंबर 5 यहाँ पर शुरू हो चुका है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था, इन्हें तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार हल्के से स्टीयर कर दिया, खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर। एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 2 रनों पर। निस्संदेह जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, महामाई क्रिकेटर्स को एक बेहतर शुरुआत की यहाँ पर सख्त जरूरत है। और इस बीच गौतम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। Yeah, bowled out. Absolutely fantastic delivery. Flighted one and he just got the rid of the batsman. हल्के से गेंद को पुश करना चाहता लेकिन गेंद की फ्लाइट को, गेंद के धीमेपन को, गेंद के स्लोनेस को इस वक्त समझ नहीं पाए और आखिरकार गेंद को गलत लाइन पर खेलना चाहता, भुगतान उन्हें करना पड़ा। फ्लाइट में बीट हो गए और गेंद सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराते हुए यहाँ पर बेल्स डिस्टर्ब होते हुए तो 2 रनों पर पहला विकेट खो चुका है और 4 गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गौतम आउट होने वाले बल्लेबाज आदि, जबकि नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त अनीश भट्ट इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। इस बार एक्स्ट्रा बाउंस हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर। विकेट कीपर स्वयं अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड किया उन्होंने और दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर कर चुके हैं। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर अक्षय इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, जबकि गौतम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया सीधे, ये देखते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही है और वाइड का इशारा अंपायर का। वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और इस बीच गौतम ये गेंद terrific. This is a terrific from the bowler. Gets some extra bounce at the last moment. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। पहले ओवर की समाप्ति 4 रन बिना किसी नुकसान के, 4 without loss at the first over. Slow start made by the batsmen of Mama cricketers after being won the toss and elected to bat first in the match number 18 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2024. They made a slower start against Gopur Gladiators and a fantastic first over came student from Gautam, who conceded just 4 runs in the first over and got the wicket of Adi. And the bowler who will be starts the fresh proceedings is Ramesh. The second over starts in their innings. गेंदबाजी इस वक्त रमेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहली गेंद फ्लाइट एंड फुल टॉस ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद को बीट करने में सफल, इस वक्त फील्डर को बीट करने में सफल, मिड ऑफ सीमा ने कसे बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद पर खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त खेला था और जहां तक सवाल है रनों का तो इस वक्त रन प्राप्त करते हुए अनीश और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर अनंत जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और कुल मिलाकर पहले 2 गेंदें काफी बेहतर साबित हो चुके हैं बल्लेबाज के लिए, जिसमें 5 रन वो बटोर चुके हैं। लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, 1 more run added to the total in the face of extras और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, रमेश फिर से एक बार तैयार, पटकी हुई गेंद हल्के से पुश किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका है, एक बेहतर स्कोर अगर खड़ा करना है तो एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत। चिप किया over the fence and he's gone, just chipped away full tossly over the fence and because of these rules and regulations of this tournament is concerned, this is called out. तो पहला विकेट, दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका। आउट होने वाले बल्लेबाज अनीश भट्ट, it's 11 for the loss of 1 wicket with a couple of balls left in this over. और इस बीच वरुण नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और रमेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए वरुण के लिए ये गेंद पटकी हुई गेंद हल्के से गेंद को शेयर किया खूबसूरती के साथ, जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। अंतिम क्षण में गेंद पर बल्ला उड़ाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ लेट कट कर दिया इस वक्त गेंदबाज की दाईं ओर से। 4 रन बटोरने में सफल वरुण और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 15 रनों पर। रमेश
अगली गेंद straight forward, got involved, and he took that one successfully on his follow through. So third wicket gone. Varun departs and 2 overs completed. 15 runs on the board, 3 wickets lost with just 3 overs to go in their innings. और 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ विघ्नेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद. तीसरा ओवर अनंत राय जो कि इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से यानी स्टेज एंड की ओर से, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अक्षय के लिए. और अक्षय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. एक बार फिर पूरी तरह फील्डिंग का मुआयना करने के बाद और अनंत राय की ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त सुबह के 11:05 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का प्रकोप इस मैदान पर बढ़ता हुआ. और अनंत राय की गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. सो ही स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और फिर से एक बार अनंत राय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी और वाइड का इशारा. लगातार 2 वाइड अनंत राय इस वक्त फेंक चुके अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. फुल टॉस आउटसाइड एज एंड गॉन ओवर द फेंस. बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था और गेंद इस वक्त निकल चुकी है विकेट कीपर के दाईं ओर से. फाइन 4 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं. 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओपनर 3 इन प्रोग्रेस. और 4 रन इस वक्त जुटा अक्षय के खाते में. और इस बीच अनंत राय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बॉल्ड ऑफ हिज लेग्स. ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक करना चाहा था, गेंद उनके पैरों पर टकराई और उनके पैर पर टकराने के बाद सीधे लेग स्टंप पर टकराती हुई बिल्स डिस्टर्ब होते हुए. और इसी के साथ अक्षय जो धीरे धीरे अपने कदम जमा रहे थे क्रीज पर, उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है. और इस विकेट के पतन के साथ स्कोर है इस वक्त 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. अनवित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे अनंत राय की गेंदों का. तो जैसा कि मैं फरमा रहा था, धूप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप का कहर मैदान पर बढ़ता हुआ, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए जो काफ़ी मात्रा में इस मैदान के चारों ओर मौजूद हैं. निस्संदेह 31 से 32 डिग्री सेल्सियस मंगलोर का तापमान इस वक्त दाखिल किया गया है. निस्संदेह यहाँ पर गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एसवीटी ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई आज इस श्रृंखला का दूसरे दिन का 5वां मैच, कुल मिलाकर इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का 18वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ मंगला महामाया क्रिकेटर्स और गोपुर ग्लैडिएटर्स के बीच में इस वक्त संघर्ष जारी है. फुल टॉस लेग स्टंप से बाहर, बड़ी मुश्किल के साथ विकेट कीपर ने गेंद को रोका और जब तक दोबारा वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलने का. 1+1 2 वाइड्स एडेड टू द टोटल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. तो गेंदबाज अनंत राय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद, रिवर्स शॉट, फैंटास्टिकली प्लेड विद अ ट्विस्टेड बैट एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल. बल्लेबाज के पास समय था कि गेंद को विद रिवर्स शॉट खेले और गेंद को खेल भी दिया उन्होंने काफी तेजी के साथ और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. तो इस चौके के साथ 28 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है. एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास नाकामयाब. पिछले गेंद के मुकाबले परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद 27 द स्कोरबोर्ड सेज फॉर लूजिंग 4 विकेट्स. और गेंदबाज अनंत फिर से एक बार तैयार. धीमी गेंद फुल टॉस के तौर पर इस गेंद धीमी गेंद को मोड़ने में चूके और फॉरवर्ड शॉट लेग पर गेंदबाज ने आकर गेंद को विकेट कीपर ने आकर गेंद को फील्ड कर लिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. अंतिम गेंद इस ओवर में अनंत का दाहिने हाथ के बल्लेबाज विघ्नेश सामना करते हुए. फुल टॉस गेंद को हल्के से खेला. इस वक्त धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी. पेस के चतुर परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस जिस अंग्रेजी में कहते हैं, अनंत राय ने बेहतर तरीके से इस गेंद पर किया और सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को प्रदान करने में सफल. ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर. महामाया क्रिकेटर्स इस वक्त जोड़ चुका 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 3 overs completed in Mahamaya Cricketers innings. 2 overs to go. Still in overall calculation in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं.
दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस मैदान पर एक बेहतरीन माहौल यहाँ पर छा चुका है। और श्रीनिवास गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को स्कूप किया और इसी के साथ अपना विकेट यहां पर खो बैठे हैं विघ्नेश। तो यहां पर गेंद पर बल्ला अड़ाया था जरूर, लेकिन फुल टॉस गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट सीमा रेखा के ऊपर से, और आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक और विकेट गिर चुका है। 28 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका है, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। और गेंदबाज श्रीनिवास इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुका है। इंतजार है इस वक्त नंबर 7 बल्लेबाज का। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 7 बैट्समैन एंड द शॉर्ट मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। धनुष इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, छोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वक्त अन्य खिलाड़ी उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज धनुष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि श्रीनिवास इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। उन्हें दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और ओवर की अगली गेंद लेकर श्रीनिवास इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज धनुष के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। धनुष एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार इस वक्त श्रीनिवास की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, कंसेक्यूटिव वाइड्स, और 2 लगातार वाइड रन इस वक्त प्रदान कर चुके हैं श्रीनिवास। 30 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए धनुष के लिए। पटकी हुई गेंद, छोड़ दिया गेंद को इस वक्त, वाइड का इशारा अंपायर का। काफी ऊंची गेंद थी, बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, और आखिरकार वाइड इसमें घोषित करते हुए 3 लगातार वाइड, हैट्रिक वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज श्रीनिवास अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त अभी भी तराशते हुए। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद, बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और गेंद सीधे पहुंच चुकी है विकेट कीपर के हाथों में। 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और एक बार फिर से गेंदबाज श्रीनिवास अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, लंबे कद के खिलाड़ी, और अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ड्राइव किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से हाफ स्टॉप, फॉलो थ्रू में बैकअप होता हुआ रन आउट का खतरा इस बीच, लेकिन खतरा टल चुका है, निशाना चूक चुका है फील्डर द्वारा फेंका गया हुआ थ्रो का, और बल्लेबाज एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार श्रीनिवास, अगली गेंद, इस बार चिप किया, गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के आगे टिप्पा खाती हुई, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और धनुष इस वक्त सामना करते हुए श्रीनिवास की गेंदों का। ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर की दिशा में, जगह नहीं बना पाए ठीक तरह से, और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया। अपनी ऊपर की ओर छलांग लगाने के बाद गेंदबाज द्वारा रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार श्रीनिवास गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद, कट करना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, 2 लगातार डॉट गेंदों के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 33 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs scored by the batsmen of Mahamaya cricketers, and now just in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से नंबर गिरीश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त अन्वित, और अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ महामाया क्रिकेटर्स की पारी में। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, गुड वन, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेटर लाइन। गेंद को इस वक्त स्कूप करना चाहता हल्के से, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, अगली गेंद,
इस बार गेंद विकेट कीपर के हाथों में और सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपकने में सफल। टॉप एज पर शायद गेंद टकराई थी और अपने पीछे की ओर जाकर सीमा रेखा के अंदर बेहतर जजमेंट के साथ विकेट कीपर पई जो है उन्होंने इस कैच को लपका और इसी के साथ छठा विकेट गिर चुका है और अनविथ आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। अब गेंदें बाकी हैं सिर्फ 4 उनकी पारी में। एक और विघ्नेश नंबर 2 इस वक्त क्रीज पर मौजूद महामाया क्रिकेटर्स के लिए इस वक्त सामना करते हुए। बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंचे इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग पर, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे, थ्रो करना चाहा लेकिन जैसे ही विकेट कीपर ने भापा कि वहां पर कोई बैकअप नहीं है, अपने थ्रो को उन्होंने रोक लिया, थ्रो नहीं किया और इस बीच बल्लेबाज यशस्वीतम 1 रन यहां पर प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 3 balls नाउ लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज गिरीश, बेहतर गेंद इस बार, चूंकि विकेट कीपर रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा धीमा थ्रो लेकिन थ्रो में इतना दम नहीं था कि वो बल्लेबाज से पहले सीमा नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच सके और बल्लेबाज 1 रन तेजी के साथ यहां पर चुरा चुके हैं। 35 रन, 2 गेंदें बाकी, जस्ट 2 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स और 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। Top edge and just collected that one inside the fence by the wicketkeeper. Single run added, 36. And the last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गिरीश तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज धनुष सामना करते हुए। Full toss, driven down to mid off and has got a boundary. So he just finished the innings in a style with a boundary. Exactly 40 runs scored by Mahamaya cricketers, and now the target for Gopur Gladiators is 41. So 41 Gopur Gladiators have to score in the stipulated 5 overs with the required run rate of exactly 8.20 runs per with the help of 10 wickets. They have to score for victory. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 41 रनों का लक्ष्य, 41 the target for them in 5 overs. 5 ओवर में बनाना है गोपुर ग्लैडिएटर्स को। उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर गोपुर ग्लैडिएटर्स की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So the innings of Gopur Gladiators is now going to start, and Ramesh, the opener, is now going to face the first delivery of their innings, and Pradeep, the non-striker. Meantime, the bowler is Adi, and the first ball of their innings is now coming up. 41 the target for them, 41 रनों का लक्ष्य और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और पहली गेंद लेकर आदि तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रमेश इस वक्त सामना करते हुए और आज के इस 5वें मैच का द्वितीयार्ध यहाँ पर शुरू होता हुआ। फर्स्ट बॉल, oh, terrific. This is a terrific delivery with a fantastic bowling action from Adi. और निस्संदेह बेहतरीन हाई आर्म एक्शन उनका और इस वक्त बेहतरीन आउट स्विंगर गेंद फेंकी थी उन्होंने और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाई। गेंद हवे में स्विंग होती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। एक बार फिर से ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, पॉइंट पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। जहाँ तक गेंदबाजी का एक्शन है, आदि का काफी बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय शैली के गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर कट किया इस वक्त और मिस जजमेंट, यहाँ पर मिस जजमेंट। गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक स्पिन होती हुई अपनी दिशा को बदलती हुई और इस घुमाव, इस टर्न को समझ नहीं पाए इस वक्त डीप पॉइंट के फील्डर और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है पहले टिप्पे के बाद। आफ्टर फर्स्ट बाउंस 4 रन मिल चुके हैं। अगली गेंद
इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया फ्रंट फुट पर जाने के बाद शॉट एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 6 रन बिना किसी नुकसान के। जहाँ तक यहाँ पर 41 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक बेहतरीन शुरुआत की गोपुर ग्लैडिएटर्स को सख्त जरूरत। Oh, down the track, just gone for a big one this time. Not succeeded. Fantastic delivery from Adi. और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और एक बार फिर से आदि इस वक्त तैयार 5वीं गेंद लेकर बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार कट किया, मिस जजमेंट। एक बार फिर से मिस जजमेंट। गेंद टिप्पा खाने के बाद फिर से एक बार स्पिन होती हुई, घुमाव लेती हुई, टर्न लेती हुई और इस टर्न को समझ नहीं पाए, इस घुमाव को समझ नहीं पाए, स्पिन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी है फील्डर को वंचित करने के बाद। तो बेहतर ओवर आदि का समाप्त हो चुका। हालांकि 9 रन जरूर बने, लेकिन इन 10 रन जरूर बने इस ओवर में, लेकिन इन 10 रनों में से 2 चौके जो प्रदान किए उन्होंने वो फील्डर की गलती की वजह से थी, इसमें गेंदबाज की कोई गलती नहीं थी। तो इस वजह से बेहतर ओवर कहा जा सकता है आदि का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के, 10 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ, फर्स्ट बॉल ड्रिवन दैट वन इनटू द गैप एट एक्स्ट्रा कवर फॉर अ बाउंड्री। फैंटास्टिक स्ट्राइक और खूबसूरती के साथ गेंद को खेला इस वक्त खाली क्षेत्र चुनते हुए। पॉइंट मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रनों के लिए बल्लेबाज। तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। Bowling just gone for a big one and this time he lost his leg stump. परफेक्ट यॉर्कर लेंथ गेंद थी और गेंद लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा गई और आखिरकार मिड लेग स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। प्रदीप की पारी समाप्त। 14 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है, जबकि दूसरा ओवर उनका प्रगति पर रहा है। तो 14 रनों की आरंभिक साझेदारी यहां पर टूट चुकी है। उनका स्थान ग्रहण करते हुए नए बल्लेबाज के रूप में गौतम पई, जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज वरुण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त कवर पॉइंट पर गेंद पहुंचे और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 15 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। वरुण फिर से एक बार तैयार। ये गेंद चिप किया सीमा रेखा से बाहर, आउट इस वक्त घोषित और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिर चुका है। तो रमेश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 15 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर गोपुर ग्लैडिएटर्स and still have to score 26 more runs for victory. New batsman Anantara is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करेंगे वरुण की गेंदों का और वरुण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अनंतराय के लिए। फुल टॉस कट किया खूबसूरती के साथ और गेंद को रोका गया सीमा रेखा के अंदर एक हाथ से फील्डर द्वारा और इस बीच सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त पेविलियन वापस लौट चुके हैं और फिर से एक बार वरुण अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गौतम पाई के लिए। फुल टॉस drives perfectly struck. This is an outstanding struck. गेंद को इस वक्त फुल टॉस गेंद को कबूल करते हुए इस वक्त ड्राइव कर दिया मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर और 2 ओवर की समाप्ति हो चुके 21 रन और चाहिए। इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर नाउ for Gopur Gladiators. 21 needed in remaining 18 deliveries. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त महामाया क्रिकेटर्स का, तो इस वक्त उनके गेंदबाजों को कमबैक करना है तो एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी क्योंकि पहले 2 ओवर में बेहतर शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज। हालांकि 2 विकेटें वो जरूर खो चुके हैं लेकिन 20 रन जोड़ने में सफल पहले 2 ओवर में। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ अक्षय पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश किया अनंत राय ने बल्ले का भीतरी किनारा और इस बार निशाना टकरा चुका है। पैरों के जरिए गेंद को इस वक्त ढकेला था गेंदबाज ने लेकिन इससे पहले के निशाना टकराए बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर
2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। अक्षय फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, इस बार गौतम पई सामना करने के लिए तैयार। अक्षय की गेंदों का अगली गेंद, फुल टॉस, ड्राइव किया स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल, फैंटास्टिकली स्ट्रक। और फॉलो थ्रू में इस वक्त रोकने की जरूर कोशिश की थी गेंदबाज है, लेकिन रोक नहीं पाए और काफी बेहतरीन तरीके से स्ट्रेट हिट एरिया पर गेंद को ड्राइव किया था इस वक्त मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच में से चौके के लिए। 25 for 2 नाउ। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक 4 रनों के लिए। तो गौतम इस वक्त काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए 2 लगातार चौके इस वक्त जड़ चुके हैं। पहला स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, दूसरा एक्स्ट्रा कवर पर स्क्वायर ऑफ द विकेट। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बीच गेंदबाज अक्षय फिर से एक बार तैयार, अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस बार गौतम पई के लिए ड्राइव किया, खूबसूरत, फैंटास्टिक, 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गौतम का जजमेंट जो है काफी बेहतर रहा है। खाली क्षेत्र चुनकर काफी तेजी के साथ तीनों स्ट्रोक्स को उन्होंने खेला था और वहां पर फील्डर थोड़े से स्क्वायर और सीधे मौजूद थे जरूर रहा है, लेकिन गेंद तक पहुंचने का कोई मौका इस वक्त बल्लेबाज ने प्रदान नहीं किया फील्डरों को। तो बेहतरीन स्ट्रोक। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद को जाने दिया इस वक्त अंपायर वाइड इस वक्त घोषित करते हुए, विकेट कीपर के हाथ में गेंद को जाने दिया था। 34 नाउ, जस्ट 7 टू गेट। और ऐसा कहना पड़ेगा गोपुर ग्लैडिएटर्स हेडिंग टुवर्ड्स टू देयर विक्ट्री एट दिस सिचुएशन। अक्षय कट किया, बेहतरीन स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस और एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। सिर्फ कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है गोपुर ग्लैडिएटर्स को, 13 गेंदें बाकी, सिर्फ 6 रन चाहिए विजय के लिए। अनंत राय स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं, अक्षय की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया इस वक्त, गेंद पहुंची पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 36, 3 overs completed, 36 on the board, 5 runs to get, 2 overs remaining, 2.5 runs per over, the required rate at this situation for them. And at this situation, Gopur Gladiators looking in a commanding position. तो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए विघ्नेश और अनंत राय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और 5 रन सिर्फ बनाने इस वक्त गोपुर ग्लैडिएटर्स को। और फील्डिंग में जमावट करने के बाद पहली गेंद लेकर तैयार विघ्नेश। पटके विकेट, कट बिहाइंड का मौका जरूर था, लेकिन विकेट कीपर गवाते हुए। दैट वाज एन डिफिकल्ट चांस एट द लास्ट मोमेंट। बल्लेबाज ने रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराया और लगभग ऐसा कहना पड़ेगा विकेट कीपर के आगे गेंद टिप्पा खाती हुई। जीत और कोशिश जरूर की थी विकेट कीपर ने गेंद की, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने जरूर किया। 1 रन का इजाफा। 37, 4 नीडेड इन रिमेनिंग 11 बॉल्स। गौतम पई सामना करने के लिए तैयार विघ्नेश की गेंदों का। इस बार बेहतर स्ट्रोक, लेकिन रन लेने से मना किया इस वक्त अनंत को और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 10 गेंदें बाकी है, रन से चाहिए सिर्फ 4। 4th ओवर इन प्रोग्रेस और विघ्नेश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हल्के से गेंद को पुश किया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 9 गेंदें अब बाकी हैं, सिर्फ 3 रन चाहिए और अनंत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक बेहतर साझेदारी इस मैदान पर बनती हुई इस वक्त गोपुर ग्लैडिएटर्स के लिए। विघ्नेश इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया और इसी के साथ गोपुर ग्लैडिएटर्स रजिस्टर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बाय 8 विकेट्स विद 8 balls to spare. They defeated they defeated Mamaya Cricketers in the match number 18 by 8 wickets, and with that 8 wickets comprehensive victory with 8 balls to spare, they bagged the complete points. Dongerkery Rising Stars versus Sudhindra Warriors, and that match is now coming up live exclusively right in front of you within just while. तो तब तक अगला मैच एक छोटे से अंतराल के बाद यानी एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरू होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक तब तक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब मैच नंबर 19 मैच नंबर 19 इस श्रृंखला का शुरू होगा श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स और सुधींद्रा वॉरियर्स के बीच में। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
गोपूर ग्लॅडिएटर्स आणि महामाया क्रिकेटर्स दोन टिमांच्यानी तुमगेले ग्रुप फोटो काढूक हांगा स्टेजाला येऊ का. गोपूर ग्लॅडिएटर्स आणि महामाया क्रिकेटर्स विथ द ओनर सगळ्यांनी हांगा ग्रुप फोटो घेऊ का. गोपूर ग्लॅडिएटर्सा तुलना मॅन ऑफ द मॅच ಗೌತಮ್ ಪೈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ 19 ರನ್ ತಜೋಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ಪೈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. उपेंद्र शणे मंगलपाडी उपेंद्र शणे मॅन ऑफ द मॅच देऊ काय. मंगलपाडी उपेंद्र शणे. Thank you very much, Gopi Bharji, and thank you very much, Gopi. And we are into the match between Mahamai Lipkakshan and Shringeri Rising Stars versus Sudhindra Warriors. The news here is that captain of Shringeri Rising Stars are, after winning the toss, elected to field first, and Sudhindra Warriors will go into bat first. So that opening batters already there came into middle. Striker Sridhar. Non-striker. Non-striker name. Anant attu. Anda. Racha. Non-striker nama. Anant. Sridhar. Ananta. Sridhar. Ananta is on strike and Sridhar is in non-striker's end, and bowler will go into start the proceedings from the far end. A little bit correction, yes. Ananta is in non-striker's end. Sridhar, left-hand batter, is on striker's end, and Suraj will go into start the proceedings from the commentary box end. So Sudhindra Warriors have to bat like a Warriors if they wanted to win this match, because they are not really having that much of good performance so far in this league stage matches. And yesterday is a different day. Today definitely is going to be another day, and you need to come with a positive frame of mind. Whatever you have done in the previous day, you need to forget and need to correct that one, what the mistake you did, and need to come with a positive frame of mind. The first ball that Sridhar gets his first run, and by steers the ball down to backward point region for a single, and with that single Sudhindra Warriors off the mark with that single, and even Sridhar also off the mark with that single. Suraj away from us, right arm over the wicket to Anant. Oh, lovely delivery, absolutely perfect one there from Suraj, almost drawing the batsman onto back foot in the negation. This is a really good line which is bowled by Suraj in the negation, pitching in the right area, the moving delivery a little bit outside the line of off stump, and the batter completely missed that delivery. Suraj again bowls one more identical mirror display of previous delivery, absolutely perfect one. The Xerox copy of the previous, so same line and same length,
And same reaction which is coming from the batter as well. And even the wicketkeeper also gets the ball and back to bowler. So now some suggestion which is coming from his partner Sridatt about the technique of how to play that away going delivery of Suraj bowling away from us. Right arm over the wicket balls. This time he drives that one down to extra cover. They're going for the quick single. Fielder is not interested for the run out because maybe he's thinking about if it is an overthrow taken place, it's going to be a bonus run for the opposition team. So that he's not interested and they completed the single. With that single, Skobar moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Sridatt is on strike now, left and right combination. That's why Suraj coming around the wicket this time for the left hand batter. The fielder, opportunity of run out is created in the non-strikers and it is gone. Anand this time wanted a single, but ball went very quickly to the hands of the fielder down at short and man region. He's making no mistake at all, quickly releasing the ball from his hand to the hands of a bowler, and bowler complete the formalities of run out. Again, team has got a shackling start here. 2 for the loss of 1 wicket. Akshay is the new batter in. He's in non-strikers and Suraj will go into ball to Sridatt. Cuts at 1, but again the lack of placement. Ball went straight to the hands of a backward point fielder. Just a single here for Sridatt. With that single, Skobar moves on to 3. Fantastic over which is comes to an end there from Suraj. Really a great over, tidy over, wicket taking over as well. Wicket taking in the sense not for the account of Suraj, but run out which is taken place in that over. Altogether the tidy over bowled by bowler Suraj for Rising Stars. So one more star of Rising Stars. Siddharth came into attack from the commentary box and he will go into ball the second over of the innings of team Sudhindra Warriors. Just like I mentioned, the worries which is not complete out of Sudhindra Warriors because they lost some matches yesterday in their league stage matches. So today, absolutely they have to win all the matches if they wanted to remain in the competition. Otherwise, very difficult for them to get the place in that next round of this prestigious SVT Trophy 2024. Siddharth. Down the wicket, getting away from the line of the ball, but wide call by umpire. Good judgment there by Sridatt, seeing the line of the ball and quickly getting away from the line of the ball. But the ball went to the hands of wicketkeeper. With that extra score, moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Short pitch delivery, pulls that one. Good stop by the fielder. Lovely stop by the fielder at the short square leg region. And a short pitch one, and Datta pulls that one down the ground. And kept it down and hits that one very firmly and equally well fielded by the fielder at square leg region. Oh, lovely delivery, perfect delivery to ball to the press leg. Whenever the new batter coming into the middle, the bowler enjoying to ball the deliveries, and Siddharth in the negation bowled a fantastic delivery to defeat the bat of Akshay. Away from us. One more very good delivery, different line compared to the previous delivery. This is almost in the off volley, and the batter Akshay couldn't manage to take the advantage of that off volley from Siddharth. Maybe he's a little bit early into the stroke of the ball, which defeats his bat, Siddharth. Balls again, that ball missing the line, a little bit outside the line of the leg stump, but little margin for error, and bowling to the legs of the batter. Always if the ball misses the stumps, then it's going to be a wide. With that extra score, but moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket to Siddharth again. Right arm over the wicket, balls to Akshay. Akshay drives that one down to mid. On misfield! The fielder definitely really not making a good technique of collecting that one, because he's not really bending down, and ball just passing between under his hands, which is not really in the ground level. When the ball is coming in the ground level, you need to put your body behind the ball. महामाया टीम एक पटी स्टेज का महामाया टीम. So lucky and welcome boundary comes up here for team Sudhindra Warriors. Sudhindra Warriors have to get some runs on the board, because that boundary will going to give a lot of confidence for the batter Akshay, even though misfield by the fielder, but 4 runs which goes to the account of the batter as well as for this team. 10 on the board. Siddharth again bowling away from us. Right arm over the wicket, balls to Akshay.
Oh, a fantastic delivery. What a great one there from Siddharth. Outstanding delivery. So last delivery remaining in this over. Scoreboard remains on 10 on the board. So very unlucky Siddharth because unless that is a boundary which is came from that over, he bowled 2 wides and one boundary. Right arm over the wicket. Balls again. They will complete the single because the ball went very slowly to that short mid of short extra cover region. One more over completed. After completion of over number 2, searching for the right track, Sudhindra Warriors are 11 on the board. They're going exactly 5.5 runs per over. Welcome for the day number 2, a day night of cricket tournament which is organized by SVT Volunteers Association in the name of SVT Trophy 2024 Season 2. Again, the bowler will go into ball here from the commentary box end, Bala. Bala, one more very talented player for the side of rising stars of Sringeri. He will go into ball the 3rd over. There is a fielder out down at short fine leg, one at short square leg, short fine leg, behind the square and in front of the square. Mid wicket is there, mid on is there, mid off, short cover point, short third man. One more fielder down at short third man and a backward point. That means 4 men in the offside, 4 men in the onside. Wicketkeeper standing a little bit away from the stumps, and the bowler will go into starts his fresh over. Suraj getting some ideas to the Bala, to how to bowl, and maybe that the field set which is wanted to change, that changing the fielder, in fact bringing that short third man fielder into backward point, and backward point bowler fielder goes into short third man. Bala right arm over the wicket. Driven down to mid-off region. They quickly will going to get the single there because both the batters has got a very good understanding between the wicket and no hesitation at all to cross off for that 1 run, 12 on the board for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily these two batters try to get some partnership, which is very important for team Sudhindra Warriors to get some good score. Bala. Again bowler's back dry, but lack of placement. Little bit played that one away from the body, and ball pitched on the middle stump. And not that much of shot enough to go for the cut shot. He just went with the stroke, and bowler on his follow through. Bala fields the ball and back to his bowling mark. Bala will go into ball 3rd time in this over. Away from us. Right arm over the wicket, passes umpire. Again, nicely driven right in the gap. Beautiful shot. Absolutely glorious extra cover drive there from Sridattam. This time a ball just moving away from the good length spot. It just looks like he wanted to get the ball away from the right-hander batsman. But batsman just getting a position very nicely. And bat and pad came together. And placement is exquisite in that occasion from Sridattam. Top edge opportunity for one of the fielder. And cover fielder will go into complete the catch. Sridattam, after he got the boundaries, little bit excited. He wanted to get one more. But this time he got a leading edge of the bat, ballooning up in the air, and cover point fielder making no mistake at all. And wicket number 2, which is back into pavilion. Partnership which is looks like we're going to get some good score here, but unfortunately is back into pavilion. 16 on the board, the new batter in. Karuna Sagar, one more all-rounder for the side. They will go into face Bala. Right arm over the wicket. Nicely placed that one. Diving effort from that fielder, but not good enough to stop the boundary. The welcome boundary, and Karuna Sagar is off the mark with the boundary. Very important here for team Sudhindra Warriors. They have to rotate the strike. They have to get 1 or 2 boundaries in each over. And the scoreboard now moves on to 20 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Bala, final time in this over. Bowling away from us, passes umpire Karthik. Right now, over the wicket. Misjudgment by the batter. Absolutely, that was a couple of inches inside the line. No question of calling that wide. Good call from umpire. 1 more over completed. After completion of over number 3, 3 in fact, and the scoreboard now moves on to 20 on the board for the loss of 2 wicket. That means another 2 more overs remaining in the innings of team Sudhindra Warriors, and wait and see how well these 2 batter left and right combination will go in to get some acceleration in the run rate.
The field umpire, Ashwath Kinnigoli and Karthik Manglore. The two field umpires, and here again Narasimha. Pulls that one, and absolutely perfect one. Very good stop, but not good enough. Very good attempt by the fielder, but I think unfortunately couldn't manage to stop that one, because after ball touching his hand, ball went into the boundary line, out of the boundary line for 4 runs. The welcome boundary comes off again for the team Sudhindra Warriors, and batter Akshay pulls that one very nicely. That was short pitch delivery there from Narasimha, and batsman have to pull that one down the ground, and he pulled that one very well. So with that, boundary scored moves on to 24 on the board. Narasimha bowling away from us, right arm over the wicket to Akshay. Bowler's back drive on his follow through. Narasimha able to stop the speed of that stroke, but couldn't manage to stop the single from the batter Akshay there, and with that single score now moves on to quarter century. That means 25 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Narasimha changing the angle, drives nicely. Oh, that was absolutely exquisite extra cover drive there from Karuna Sagar. Picked up his second boundary, and with that boundary scored moves on to 29 on the board for the loss of 2 wicket. Karuna Sagar played 2 very good quality half drives, and again Narasimha balls again, get the placement, but this time it couldn't manage to get past that extra cover fielder. Suraj, the fielder down at a short extra cover, fields the ball, and ample time for the batter to complete the single. With that single scored moves on to 30 on the board for the loss of 2 wicket. Narasimha to Akshay. This time a ball kept low. They're going for the single, chance of run out, and they misses the stumps. They completed single. No call from, no signal from umpire. Maybe it was a little bit bat involved, and that's why umpire not interested. One more single. With that single scored moves on to 31 on the board for the loss of 2 wicket. Narasimha away from us to Karuna Sagar. Karuna Sagar just controlling the stroke. Once he wanted to drive the ball, quickly realizing that it's not a short pitch delivery, that one to drive the ball. Just pushes that one down to back of point region for a single. He will go to retain the strike for the next over. After completion of over number 4, it's 32 on the board. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. So wait and see how well the bowler will go into ball that last over. Nayak. Bowler name, please. Bowler name. Ravalnath Nayak brought into attack to bowl the last over. Karuna Sagar is on strike. He's batting on double figure 10, and his partner is also batted very well so far, batting on 12 with the help of both are got 2 boundaries each. And but it's not enough. They need to get some runs in this last over. Ravalnath Nayak cuts it very hard. Good piece of fielding there by the fielder. Just a single. Always is going to be a frustration for the batter when you are not getting a boundary. Just a single. With that single scored moves on to 33 on the board. 33 for the loss of 2 wickets back into pavilion. Ravalnath Nayak this time to Akshay. Driven up easily, and he need to go back. 33 for the loss of 3 wicket in the over number. Last is in progress, and a very good innings of Akshay, which is comes to an end. He scored 12 valuable runs with the help of 2 boundaries, and a new batter in his Narasimha. One more very good cricketer, a good all-rounder for the side of team Sudhindra Warriors, and he need to get some runs in the remaining 4 deliveries. Not too many deliveries remaining in the innings of team Sudhindra Warriors. Have to get 1 or 2 boundaries in this last 4 deliveries. 33, which is the total score, and 4 balls remaining. Fine leg, square leg, mid wicket and mid on. Here is Ravalnath Nayak. This time pulls it beautifully right in the gap. Just like I mentioned, they needed some boundaries in this last over, and with that boundary, scoreboard jumps into 37 on the board. 37 for the loss of 3 wickets, and
juicy full toss, and batsman Narasimha no way to miss the opportunity to dispatch that one into the boundary. Again, nicely turns that one down to mid-wicket region for a single. With that single, Skobodna moves on to 38 on the board. 38, and the last two deliveries remaining in the innings of Team Sudhindra Warriors. Ravalnath Nayak back into strike, and bowler back into his bowling mark. Nayak bowls, tries, lack of placement, straight to the answer fielder. Fumble from the fielder, but not more than a single, just a single. So with that single, Skobodna moves on to 39 on the board, and the last delivery of their innings which is coming up. Ravalnath Nayak will go into ball that last over. Narsim Shenai will go into face last delivery. Cuts, and just a single, off stop by the fielder. They come back for the second, the last delivery. No, they are not interested. And of course, Narasimha interested, but his partner Karunasagar is not interested. That's all. They are completed their 5 overs quota, and they managed to get exactly 40 at the rate of 8 runs per over, and they set a target of 41 to win the match for Team Rising Star. And Sringeri Rising Star, of course, wait and see how well they've managed to win this match. And that's equal battle is on. It's not a big total, not a small total, but I want to say it is a competitive total from Sudhindra Warriors, putting some good score, 40 runs at the rate of 8 runs per over, and the target will be 41 now for Team Rising Star Sringeri. We'll take a short break here, and after a short break, we are back in the game. Thank you. Welcome back for the innings of Sringeri Rising Star. They have to get 41 to win this match, and Nagesh will go into start the proceeding, and in front of him Suraj will be the striker, and in a non-striker and Nagaraj, and it's going to be a start of the innings of Team Rising Star. 41 required. Nagesh balls. Batsman wanted to turn that one onside region, but ball just deflected from his leg. Shortcut man fielder Akshay fields the ball, and there is no chance at all for any run. A good start here by Nagesh Bhatt, and pitching the ball in the right area and getting some extra bounce as well. Nagesh balls. Batsman went for the reverse sweep, and wide call by umpire. A wide call by umpire, and this time batter wanted to play the reverse sweep, and ball missing that line which is outside the line of off stump. First run came here, one without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Nagesh Bhatt, right arm over the wicket balls. Lovely delivery, absolutely perfect one. And Suraj once again going for the cut shot. This time ball is little bit kept low, and compared to the previous two deliveries, which is a little bit extra bounce, but the ball went little bit kept low, so batsman missed it completely. Nagesh balls. This time chip that one, and he missed it.
quite deliberately the fielder at extra cover, not trying for the catch. He knows that ball will go into travel out of the boundary line. Huge wicket here for Sudhindra Warriors. The Suraj departs for 0. So, unfortunately, Suraj drives the ball but couldn't manage to keep it down. Ball went in the air, uppishly played. When you are playing uppishly, there always going to be an opportunity for the position to break the wicket. So, new batter in is Bala and walking towards the middle with some responsibility. A very talented player, and no doubt at all, the Bala has got all the potential of playing the good innings for his team. And wait and see how well Bala will going to contribute from his bat. But Nagesh has got a vital breakthrough here. The kind of over which is required in the beginning, and almost he succeeded to produce 3 very good deliveries. In that he conceded 1 wide. Otherwise, absolutely it's a good bowling performance from Nagesh. Bowling away from us, right arm over the wicket. To Bala, Bala down! Drops catch by the fielder. Good attempt in fact, but the fielder is there in the mid-off region. Vivek just diving to his front, just try to take the catch. Unfortunately, ball which is slipped out of his hand, and both the batters completed a single. With that single, scored Namuzan to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Slight a bit of exchange of the field. The fielder from mid-wicket going towards a short extra cover, and the same fielder, extra cover fielder, coming into that mid-wicket region. Nagesh to Nagraj. Balls sensible, absolutely sensible batting here from Nagraj. Just right behind the line of the ball, and pushes that one down to short cover point region for a single. With that single, Nagraj is off the mark, and total score of team Rising Star moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. So far, it's a very tidy over from Nagesh, but job which is not yet over. 1 ball remaining in this over, and Bala certainly will try for a run in that last delivery. That was going to be a wide. That's a big problem actually. If you see that this particular line is an excellent line for the right-hander batsman, being the fact that left-hand batter is on strike, that will go into be a wide. That's a big problem when you're having a left and right combination. Bowler have to change the line. Pushes a very loose stroke, but managed to get the single. Deliberately, Bala pushes that one soft and comes into play. Picked up a single, and first over completed after completion of over number first, chasing a total score of 41 to win this match. Total score is 5 on the board. That means in remaining 4 overs, 24 deliveries, they need to get another 36 runs to win this match. 36 required from 24 deliveries. The match is evenly poised, but I think the team Sudhindra Warriors opening bowler Nagesh Bhatt produced a very good over, tidy over. Narasimha Shenoy. Full toss and he got a wicket. So maybe that the intention of Narasimha Shenoy that I want to bowl 1 full toss delivery, it invites the batsman to go for the cut shot, and after receiving the invitation, Bala and cuts that one, but fails to keep it down, and ball went out of the boundary line, and wicket number 2 which is back into pavilion. It's 5 for the loss of 2 wicket. Looks like now Sringeri Rising Stars are a little bit under pressure. Narasimha bowling away from us. Ball to Narasimha, and it's going to be a delivery. Umpire didn't call wide because batsman shuffled across the line after delivery. When you shuffled across the line after delivery, I think the bowler absolutely trying for the wicket. The ball just missing the leg stump in the occasion, and no damage done. Narasimha again cuts that one beautifully. Well stopped by the fielder. Absolutely good stop. What could be a certain boundary? Then the fielder down at a short extra cover managed to stop the boundary. Absolutely good stop indeed. 1 more single. With that single, scored numbers on to 6 in the over number 2 in progress. Narasimha to Nagraj. Again the ball which is kept low. Absolutely it is an unplayable delivery, I want to say, because ball is kept low and very difficult for any batter to judge that
Low delivery from Narasimha. 2 delivery remaining. 6 on the board. Pulls that one. Oh, misfielded. Misfielded by the square leg fielder Anant in the negation. And what could be a certain dot ball. They went into the boundary. Welcome boundary comes up here for Rising Star. 10 on the board. Narasimha. Balls. It's going to be a wide. This time punishable from umpire. With that extra score, but Namuzan to 11 on the board for the loss of 2 wicket in fact back into pavilion. Narasimha. Balls, lovely delivery, beautiful one, half-hearted shout, no damage done, 2 overs gone. Good over there from Narasimha, excluding that boundary which is misfielded by the fielder. Otherwise, it's going to be a great over from Narasimha. After completion of over number 2, it's 11 on the board for the loss of 2 wicket. Now, 30 required in remaining 3 overs, asking run rate exactly 10 runs per over. Akshay no. Akshay. Perfect pass. Perfect pass. Akshay will going to bowl that ball this third over of the innings of team Sringeri Rising Stars, and so far it's been a great bowling performance by the bowlers of Sudhindra Warriors, but job which is not yet over. Akshay will go into bowl the third over to the right-handed batsman Narasimha. Narasimha steers that one down to third man division, and Karuna Sagar, the fielder down at short third man division, fields the ball, returns the ball, and they completed a single. With that single, scored Namuzan to 12 on the board. 29 required from 11 balls. Akshay, right arm over the wicket. Nagaraj drives beautifully. This time completely controlled that one, and he maybe played that one a little bit uppishly, but good enough from him to land that one just inside the boundary line, and one bounce into the fence for 4 runs. With that boundary, scored Namuzan to 16 on the board. Akshay, right arm over the wicket balls. One more loose delivery which is outside the line of off stump. Nagaraj not happy with himself. He knows that this is one more delivery he can deliver down to extra cover and the cover point region, but he missed it completely. Then Akshay back to his bowling mark. Narasimha having some word with Akshay to how to bowl the deliveries. Scoreboard is 16 on the board. Edged, and third man fielder Karuna Sagar have to adjust with that spin, which is ball after getting a leading edge of the bat of the batter Nagaraj. Ball definitely going to spun, and he just adjusting that one. One more single, 17 on the board. Akshay. Balls nicely driven right in the gap, absolutely glorious. Quite deliberately, if you see that how well the batter extends his front foot and getting the gap between cover point and back point region, and with that boundary scored Namuzan to 21 on the board. (21 on the board). That means 20 runs required for the victory in remaining 13 deliveries. The match is evenly poised. Akshay, right arm over the wicket, balls to Narasimha. Narasimha drives that one. Again, chance of run out in a non-striker. A little bit correction. Strikers and the throw which is not really up to the mark. So Narasimha fails to gather the throw from the fielder. They completed a single. So after completion of over number 3, chasing a total score of 41 to win this match. Their total score is 22. That means 19 more runs required for the victory in 2 overs. 19 required from 2 means exactly the asking run rate is 9.5 runs per over, and it's going to be absolutely a great match in front of very good spectators here. Score 22.
So Karuna Sagar will go into ball that very important over. The important over not for the team which is fielding team, but even for the batting team as well. This is going to be decider over. Karuna Sagar bowling from the commentary box end. Right thumb over the wicket, slash and slashes it hard and went out of the boundary line. This is all happening when you are needed some runs, no other option at all. Batter have to look for the run, have to look for the boundaries. By doing that, this kind of cricketing stroke we can see regularly from the batters. Unfortunately, Narasimha played a very good cut shot, but it's not good enough for this format to get the runs. But he himself back into pavilion after playing a good knock for his team. Siddharth is a new batter in. It's 22 for the loss of 3 wicket. Karuna Sagar starts well with the wicket, but job which is not yet over. 11 balls are remaining. 19 more runs required. Lovely delivery, using his height very well. Karuna Sagar getting some extra bounce in that occasion, beaten by the bounce of the delivery. Siddharth completely beaten, then wicketkeeper behind the stump. Narasimha Shennai did the rest and back to bowler. 10 balls are remaining. (19) required. Right arm over the wicket bounce. One more dotted delivery. They're going for the run. This is going to be a suicider. Absolutely suicider, because no run at all in that occasion. But Nagraj, of course, he knows that he is the one. He wanted to back in the strike desperately. His team wanted some runs. And unfortunately, the wicket number 3, which is back into pavilion in the form of run out. Ravalnath is a new batter in. Ravalnath Nayak. 19 required. 41 target. 22 on the board. Karuna Sagar so far so good. 3 balls, no runs. This is turning out to be a great over. Now it's a little bit adjustment in the field. Karuna Sagar bowling away from us. Right arm over the wicket. Nagraj tries, lack of placement, straight to the hands of extra cover, just a single. And the bowler will not going to bother about that single. He know exactly need to restrict the boundaries. And with that single scope, Namuzan to 23 on the board. That means 18 more runs required for the victory in remaining 8 deliveries. Karuna Sagar to Ravalnath. Ravalnath not quite getting a hold of that one properly, but managed to rotate the strike in that occasion with that single scope at Namuzan to 24. 17 required, 7 balls remaining. It's turning out to be a great over from Karuna Sagar, but he knows that the job which is not yet over, they need to complete 1 deliveries without any boundaries. But at the same time, Sringeri Rising Star knows that they have to get at least 1 boundary in this last delivery so that they can keep the hope of winning this match in the last over. Nicely turns that one to mid-wicket region. Misfilled there by the fielder and stopped by the fielder. Absolutely good one. At last they managed to, they're going for the third and opportunity of run out, and it's gone. So just a couple of runs, nothing has happened. 2 runs when they're coming for the third run out taken place. So 2 runs in the sense, scoreboard is 26. That means 15 required in last over. So reason why the batter 26 15 required. 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. So Nagraj is coming back to the third run because he wanted to take keeps the strike for the next over. He's a settled batsman in the middle, and that's why he wanted to back in the strike desperately and wait and see how well this strategy will going to work out. Ashwin is a new batter in. Abhishek is the bowler, will going to bowl the last over. Depending 15 runs, I think it's not that much of pressure for the bowler, I want to say.
Because in this format of game, at least he wanted to bowl one or two good deliveries. It's good enough for them to win this match. But a lot of pressure for the batter because he needed the 4 boundaries in the last over. And it's going to be a little margin for error. If he missed 1 or 2 deliveries, then it's going to be a tremendous pressure for the batter. I request the fielding team, please make it fast. Please don't waste the time. We're going to start next match after this. Match will be played between Ugrana Sevaks versus Agrasali Super Kings. The match will go into fallout after this match. So one more extra fielder which is added in the offside region. Altogether 5 fielders in the offside region. Very interesting. Maybe the bowler will go into try the deliveries on the offside. And very interesting. And Abhishek again bowling. The fielding set is not yet over still. Sir, new ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ. Same jersey. Abhishek. Right arm over the wicket. Swept and just a single. But he don't want to run there. They're not taking any run there because Nagraj wanted to keep the strike. 5 balls, 15 required. Right arm over the wicket balls. Full toss, lofted it and is gone. No ball called by umpire but 1 run. Free hit delivery, 1 run added, 14 required from 5 balls. The match which is not yet over. To SS, 13 required. Oh my goodness, no ball, plus 4. Can you believe this? Bowler under tremendous pressure. The players 5 are runs. line boundary line ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಮಗ್ಸೋಚುಗ. ಬೌಂಡ್ರಿನ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. 8 required from 5. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? 33. 8 required from 5 balls. Abhishek drives at 1, right in the gap. A good piece of fielding by the Karnasagar. He wanted a single. Oh my goodness. Probably that will be an overthrow. And Narasimha in that occasion, the managed to collect that throw from the Karnasagar. 4 balls, 8 required for the victory. Four ball, 8 runs required for the victory. Abhishek will go into ball the next delivery. Nagraj is on strike. Abhishek is on attack. Right arm over the wicket, delivers to the right hand batter. Drive that one, lovely shot. Beautifully played. Short pitch delivery and Nagraj off the back foot punts that one. Straight back to bowler. No chance at all for the fielder. And the welcome boundary comes up here for the team. 4 required from now 3 balls. All in sudden, Sudhindra Warriors are just losing the momentum. Swept hand, got the boundary and won the match. Siddharth fails to depend at 15 runs in this last over. And unfortunately, team Sudhindra Warriors, they fails to win this match, but rising star Sringeri winning this match absolutely in a close encounter. And Nagraj is the one is kept his now cool and played that one fantastic knock for his team and takes the match away from the opposition. Check. तवलचे मॅच भारी एक क्रुशियल आशिल्लें. लास्ट मोमेंट ते येयले तसले मॅच अंतू
रायझिंग स्टार्स मॅच विन जाला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रायझिंग स्टार्स मंगळूर. आज मॅन ऑफ द मॅच फर्स्ट तुला लास्ट ते इराबोनो टीम विन केला दिसला नागराज पै मॅन ऑफ द मॅच हांका अनंत भंडारकरांनी स्मरणीक दिवका म्हणून म्हणून घेतास. नागराज पै भारी लायक एक बॅटिंग परफॉर्मन्स दिवन अखेरी तयार बोनो टीम विन केला. कंग्रॅच्युलेशन्स. तशीची मुखारची मॅच आता जतास अग्रसाळी सुपर किंग्स आणि उग्राणा सेवक्स. अग्रसाळी सुपर किंग्स टॉस विन जावन फिल्डिंग घेतला. उग्राणा सेवक्स हांका बॅटिंगाक इन्वायट केलेलं आसा. बारी चंद एरी येदोल ते टुर्नामेंट सकट जतास तुमगे सकडाले सहकार जाऊ का. अनेक कसं म्हणारी संजवाड़ा 4:30 गंटेक संजवाड़ा 4:30 गंटेक सन्मान कार्यक्रम जाता. कोणे सीधा प्रसार तुम्ही पळिता सगी 5 जन सीनियर स्वयंसेवकांक ह्या वेदिकेंतू एक सन्मान कार्यक्रम SVT वॉलंटियर्स असोसिएशन तर्फे चलचा आसा. ताजे नंतर क्वालिफायर मॅच प्रारंभ जाता. फायनल दोन्ही टीमाचे रात्री 8 गंटेक चलता. या कार्यक्रमाक सक्कट जनांना अत्यधिक संख्येन येऊन उपस्थित जावक म्हणून म्हणून घेता असच. तशीच आता दोन टीम रायझिंग स्टार्स मंगळूर आणि सुधींद्र वॉरियर्स दोन्ही टीमाच्या एक ग्रुप फोटो एक स्टेजला येऊ का. ग्रुप फोटो का रायझिंग स्टार्स मंगळूर आणि सुधींद्र वॉरियर्स. दोन्ही टीमाने एक ग्रुप फोटो एक येऊ का म्हणून म्हणून घेतास. ओर टू कमेंट्री बॉक्स. Dhanyawad Satish. So what a fantastic match ended. And now one more good match is now going to start between Agrasali Super Kings versus Ugrana Sevak. First ball, played that one and he lost his wicket in the very first delivery. आदि इस वक्त गेंद को मोड़ा था उन्होंने, लेकिन फुल टॉस गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. So next one, रमनाथ और गेंद को हल्के से इस वक्त पुश कर दिया अंतिम अक्षर में और एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. बल्लेबाज जो कि रमनाथ खाता खोल चुके हैं. संदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और विनोद इस वक्त गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. उग्राना सेवक जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, लेकिन फील्डर मौजूद इस वक्त गली क्षेत्र पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनके पानी का यहाँ पर प्रगति पर निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा
एक बेहतर शुरुआत की जरूरत उग्राण सेवक को, जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। पटकी हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, इस बार नॉन स्ट्राइक रन पर मौका और ओवर थ्रो। इस वक्त ओवर थ्रो के रूप में 4 रन प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर। और ऐसा कहना पड़ेगा कोई बैकअप नहीं था वहां पर। और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर उग्राण, 6 for the loss of 1 wicket in the first over for उग्राण सेवक। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो विनोद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रामनाथ प्ले दैट वन। और इस बीच पैरों पर गेंद टकराई, अंतिम एक्शन पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए विनोद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद कट किया खूबसूरती के साथ और गेंद इस वक्त पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पंचम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का, तो संदीप इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में पहली गेंद लेग स्टंप पर गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त मिड विकेट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज सैंडी के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ बदलने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 for the loss of 1 wicket। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 12 for the loss of 1 wicket इन दी ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त उग्राण स्ट्राइकर्स के लिए चाहिए एक साझेदार यानी पार्टनरशिप। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद फुल टॉस, गेंद को फुलर गेंद को इस वक्त पीछा करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 12 रनों पर। और फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार टॉप एज गेंद इस वक्त शॉर्ट रन पर पहुंच चुकी है। इस बीच रन का खतरा और इस बीच बल्लेबाज बच चुके हैं। अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचने में, क्रीज तक पहुंचने में सफल। इससे पहले कि गेंद को थ्रो करे इस वक्त फील्डर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। पंचम एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. So tidy bowling performance from Pancham is continuing in this over. Full toss, turns it away, finds the gap. Boundary results. For the loss of 1 wicket, second over in progress. पंचम bowls, दाहिने हाथ ओवर द विकेट कट किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद कवर पॉइंट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ
2 ओवर की समाप्ति. 2 overs completed, 19 runs on the board. Ugrana Sevaks scored with a run rate of exactly 9.5 runs per over in their in the match number 20 of this tournament against Agrasali Super Kings. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और देखते हैं कि कौन सा गेंदबाज तीसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हैं. दोपहर का वक्त काफी तेज धूप मैदान पर छा चुकी है. सूरज आसमान की बुलंदियों को छू चुका है इस वक्त अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ. और इस बढ़ते हुए धूप की तीव्रता के साथ भीषण गर्मी भी इस मैदान पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए जो कि काफी मात्रा में इस मैदान पर मौजूद है. कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस भीषण गर्मी तक एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर त्योहार वाला माहौल इस मैदान पर छा चुका है. और गेंदबाज इस वक्त तैयार और बल्लेबाज के पैर पर कुछ हद तक इस वक्त बाधा आई है. कुछ हद तक स्प्रे लगाने के बाद वो इस वक्त अपने बैटिंग मार्क पर लौटते हुए और गेंदबाजी शुरू करते हुए विघ्नेश इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद टॉप एज और आसान सा कैच इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में. So the new man is now comes out to the middle और वासुदेव इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद. गेंदबाज full toss driven down takes the cover gone through for a quick single and this time he won't survive. One more wicket loss gone through for an unnecessary single and because of that one of the batsmen lost his wicket. One more wicket fallen and now it's 19 for 3. और सैंडी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज विघ्नेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद एंड दिस टाइम कट बिहाइंड द विकेट. यस इट गॉन. He's gone, caught behind the wicket. He's got a big nick on that. And wicketkeeper behind the stumps finally made no mistake. Sandy departs. And now Ugrana Sevaks looking in trouble. It's 19 for the loss of 4 wickets. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. तो दीक्षित ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. तो गेंदबाज इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त पैरों पर गेंद टकराई. गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था चूके और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया और स्कोर इस वक्त नहीं मिला. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे मुक्तेसर के गणेश कामत हाणे येयलसची हांकां वेदिकेरी येवको मोडणीक म्हणून घेतास. तो अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार विघ्नेश बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद उछाला. गेंद को नॉट क्वाइट मिड विकेट काउंटर फॉर अ क्विक सिंगल और इस बार मौका हो सकता है रनआउट का. लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. अगली गेंद
कट किया खूबसूरती के साथ into the gap but well stopped just inside the fence made by the fielder and because of that the batsman got only a single run for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 3 overs completed and still the batsmen of Ugrana Sevak searching for the right track. It's 21 for the loss of 4 wicket after completion of 3 overs. Still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ దంబేకల్లు ఛాలెంజర్స్ అని జగలీచర్ కేసు దంబేకల్లు ఛాలెంజర్స్ అని జగలీచర్ కేసు दोन टीमांनी प्लेयर रजिस्ट्रेशन कोरका ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ అని జగలీచర్ కేస్ థ్యాంక్ యూ So back to this game and now it's 21 for the loss of 4 wicket and the 4th over starts in their innings. गेंदबाज इस वक्त तैयार अजित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पवन सामना इस वक्त करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अजित ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा missing 2 for Sadi off stop at the last moment and wide declared it by umpire. Single run added to the total in the face of extras और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और फिर से एक बार गेंदबाज अजित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार पवन इस वक्त सामना करते हुए drives perfectly down to mid off gone to for a quick single and get it comfortably at last. स्टोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार 1 रन पूर्ण करने में उन्हें कोई दिक्कत ही यहाँ पर महसूस नहीं हुई और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट और अजित इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार विकी इस वक्त सामना करते हुए और अगली गेंद अजित full toss driven and finds the gap. Fantastically struck by Vicky this time. गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया था खूबसूरती के साथ मिड विकेट फीडर की दाईं ओर से गेंद निकली और मिड विकेट फीडर गेंद को रोक नहीं पाई चौका यहाँ पर प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन दी ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस और फिर से एक बार अजित दाईं हाथों पर द विकेट full toss pulls and once again he's got the gap. Once again he finds the gap. Consecutive boundaries for him. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त एक बार फिर से खेलते हुए गेंदबाज बल्लेबाज माफ कीजिए विकास और चौका नंबर 2 इस ओवर में प्राप्त करते हुए अजित एक बार फिर से फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट कप्तान करते हुए इस वक्त अग्रसाली सुपर किंग्स के और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए विकी के लिए ये गेंद पटकी हुई गेंद उछालना चाहा एक बार फिर से गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस गेंदबाज के लिए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और फिर से एक बार अजीत अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए विकी सामना करने के लिए तैयार अजीत की गेंदों का lofted and this time he lost his wicket. ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को जमीन के सारे खेलना चाहता लेकिन अचानक का गेंद को उछाल दिया उन्होंने हवा में और आखिरकार छोटी मगर बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है विकास का 9 रन बनाए 2 चौकों की मदद से 5वां विकेट गिर चुका है 31 रनों के योग पर स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. New batsman Gaurav is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अजित की ओवर की अंतिम गेंद का और अजित दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद bowled him lost his off stump and one more wicket fallen. Fantastic delivery from Ajit and he just got the rid of the batsman. So wicket number 6 down and now they are 31 for the loss of 6 wicket and 4 overs completed in their innings for Ugrana Sevaks. Last over remaining in their innings.
Sushant, the bowler, is now brought into the attack, and the first ball of the fresh over is now coming up. और अंतिम ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ यहाँ पर उग्राना सेवक्स के पारी में। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार पवन ने इस वक्त सामना करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, और ओवर की पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। पहले गेंदबाज को विचलित करना चाहा, स्टंप से एक्सपोज किया, लेकिन उसके बाद अपने सही स्थान पर लौटे, और लेकिन इस गेंद पर बल्लेबाज ने जो विचलित करने का प्रयास किया था गेंदबाज को, गेंदबाज इस वक्त विचलित नहीं हुए और बिल्कुल सही लेंथ और लाइन के साथ गेंद उन्होंने फेंकी इस वक्त, और बल्लेबाज इस गेंद पर कोई रन बनाने में सफल। अगली गेंद पटकी हुई गेंद, ड्राइव किया मिड ऑफ पर, गेंद को रोका गया इस वक्त बैकअप करते हुए, और एक रन का इजाफा, एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 5th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। 4 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए इस वक्त ऋषित, लॉफ्ट इट एंड इज गॉन, hit that one full tossly over the fence at mid on, and 7th wicket down now, and the score is 32 for the loss of 7 wickets. With just 3 balls now remaining in overall calculation in their innings. Manjunath, the newcomer, is now comes out to the middle. नंबर 9 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर मौजूद और सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज सुशांत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार मंजूरात के लिए, लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद। टर्न्स इट अवे, डिलिकेट, एब्सोल्युटली डिलिकेट, और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका है। हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था, और एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बाकी, और देखते हैं इन 2 गेंदों पर पवन क्या करते हैं। और इस बीच सुशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, डाउन द ट्रैक, मिसेस एंड अ वाइड, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए गेंद बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, और एक रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और फिर से एक बार गेंदबाज सुशांत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद, पटकी हुई गेंद और वाइड का इशारा, एक और वाइड, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर, और स्कोर बढ़कर इस एक रन के साथ पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट इज गोइंग टू बी 2 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। और सुशांत इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी उन्हें कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। सिर्फ 2 गेंदें बाकी हैं इस वक्त उनके ओवर में, और इस बीच पवन पूरी तरह स्टंप्स एक्सपोज करके विचलित करने का प्रयास किया, खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन बेहतर फील्डिंग वहां पर, और मिड विकेट पर जो फील्डर थे उन्होंने रोका आफ्टर फर्स्ट बाउंस, दोबारा दूसरे बाउंस के बाद फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 36 रन, 36 for 7। Quite some funny things is going on there at the middle of the pitch in fact। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर उन्होंने ललचाया था, दूसरे रन के लिए 2 कदम दौड़े और रुक गए, और विकेट कीपर को ललचाया कि वहाँ पर विकेटों पर वो निशाना दागे, लेकिन आखिर मौके पर विकेट कीपर ने कोई जोखिम उठाना मुनासिब नहीं समझा, तो एकमात्र रन मिला इस बीच। 36। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। और मंजुनाथ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, उनकी पारी का अंतिम गेंद है, और गेंदबाज सुशांत गेंदबाजी लेकर तैयार। फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंचे पॉइंट पर, नो बॉल का इशारा। 1+1, 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। बीमर गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज ने,
और 2 रन इस वक्त टीम प्राप्त करता हुआ यहाँ पर उग्राना सेवक्स. 38 now for the loss of 7 wicket. Still 1 ball left in their innings. सुशांत इस बार पवन के लिए अंतिम गेंद लेकर पटके विकेट. बेहतर स्ट्रोक, फैंटास्टिकली स्ट्रक, and he finished the innings in a style with a boundary. So the innings is up, their stipulated overs are completed, and they managed to score 42 on the board for losing 7 wickets. And now the target. And now the target for Agrasali Super Kings is 43. They have to score for victory. 43 they have to score in the stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. Required run rate exactly 8.60 runs per over, and their inning starts with Vijay Chhatwal. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर पारी की शुरुआत होगी अग्रसाली सुपर किंग्स की. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. धन्यवाद. थैंक यू. सांजवाडा 6 घंट्याक एक फ्रेंडली मॅच आसा. त्या फ्रेंडली मॅचाच्या एक 11 जन खेळण्यातील तांगेले नांवां पळयता, नोट करून घेयाची. आदित्य पै कोण म्हळ्यार स्ट्रायकर्स, सतीश स्ट्रायकर्स तुलना ताजे ओनर आदित्य पै. तशीच नागनकट्टे पॅन्थर्स तुलना ताजे ओनर संदेश ओके. तशीच सुधींद्र तुलना संजय प्रभू फ्रेंडली मॅच आका सांजे 6 घंट्याक. संजय नायक मागीर विनायक पै आमगेला जगली. मागीर अग्रसाळी चैतन्य नायक सांजे 6 घंट्याक. मागीर गौतम पै गौती. दंबेकल्लू नरसिंह पै सांजे 6 घंटे एक फ्रेंडली मॅच आसा. मागीर श्रेयस भट जोडमठ श्रेयस भट. Thank you very much, Gopi, and thank you very much, Gopi Bhattji. And we are into the innings of team Agrasali Super Kings. They have to get 43 to win this match in stipulated 5 overs. That means 30 ball, 43 required, excluding wides and no balls. They have to get 43 out of 30, and it's competitive total here for set there by the team Ugrana Sevaks. Have to depend at once. For that they need to bowl very well against Super Kings. So the opening batters are there, came into the middle, Vivek and Vinod. Vivek will be the striker, Vinod will be the non-striker. Coming back to the field set, wicketkeeper standing far away from the stumps. There is a slip cordon. There is a fielder down at backward point, one fielder at cover point, mid-on, mid-wicket square leg in front of square, one fielder out there in the fine leg, little bit squarer. And field umpires, umpire Prakash Kinnigoli as well as umpire Karthik Manglore. First ball, lovely delivery, wicketkeeper misses it, but great delivery to start with. The bowler absolutely bowled Jaffer in the negation, and unplayable delivery as well from Pawan. I already mentioned, is one bowler who really one of the inspiration as far as the bowling is concerned in this particular tournament with that strong line. The batter Vivek is not ready in the negation, so that bowler will go into going back to his bowling mark, bowling second time in this over. Right arm over to Vivek. Oh, one more fantastic delivery, beaten by the pace, and of course that ball is a low full toss, and Vivek can drive the ball to the extra cover, but he's not really expecting that much of pace in that ball.
missed it completely. Little bit late to react to that drive. And oh, that's going to be a one more good delivery indeed. And a slight bit of fumble. Opportunity of run there. And opportunity of run there, but because of a total misunderstanding between the wicket, they fails to get the run there. Vivek not interested when we know this is interested. When misfielded, then we know this is going back. Then Vivek wanted to get the run. So altogether, there's no communication and no understanding. And luckily, they are safe. One more very good delivery indeed. Absolutely fantastic stuff here from the bowler Pawan. And so far he bowled a very tidy line and length. And this time it's a little bit extra bounce. The batter Vivek couldn't manage to get that one to the middle of the bat. And again Pawan Bowles try to guide that one down to third man region in the negation. That's why they're situated the fielder in that slip cordon. They're very good field set here by Pawan, and he bowling as far his field. That's very important for the bowler. They need to bowl as far his field, and so far he bowled a fantastic 4 deliveries, stopped the runs from the bat of Vivek. Cuts it hard, lovely shot. This time he's just going back. He's just going back and getting the ball a little bit shorter outside the line of off stump and make the placement exquisitely in down to backward point region for 4 runs. So last delivery of the over, which is a slight bit of shorter one from Pawan, and batter capitalized that one to get the boundary. So with that boundary, they got the first run, in fact, in that last delivery of the first over. At boundary which is came into that last delivery, and that means they required another 39 runs. 43 target and scoreboard is 4 on the board. So that means 39 required. Again, slower one, change of pace. Adi did bowled a slower one. We know the quickly reading the slowness of the ball. Just played that defensive stroke down to mid-on, and there is no chance at all for any run. One more tall bowler, Adi. Bowles this time, Vinod drives that one for a single fumble from the fielder, but very luckily that ball went to the hands of the bowler. Rishit, the man, the young talented fielder down at short mid-off region, fields the ball, and with that single score, moves on to 5 on the board. Adi to Vivek, and very good thinking there from the batter point of view. Vivek not only played that one defensively, but he played that one soft end, which comes into play, so that he managed to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board. Vinod upishly played straight to the hands of backward point region. That's end of Vinod. Adi strikes with a very good slow delivery again. The batsman a little bit early into the stroke, tried to get the boundary down to backward point region, and couldn't manage to convert that into the boundary because the fielder is in the right position and to get the catch. Wicket number first, which is back into pavilion at a score of 6 on the board. It's 6 for the loss of 1 wicket. So new batter in is Vignesh, slowly walking towards the middle. The left-hand batter, very useful left-hand batter, and for Agrasali Super Kings. And wait and see how well Vignesh will going to get partnership along with his partner Vivek. Adi wanted to come round the wicket because of the left-hand batter is on strike. Vignesh, mid-on, mid-wicket, square leg and short fine leg. Upishly played, catches is a call. Catch has been taken there by the backup point region. Back-to-back 2 wickets. Adi strikes with the 2 very good deliveries. A slower one again there from Adi. Vignesh early into that push, and the ball went to the hands of backward point region. The wicket number 2 back into pavilion. Back-to-back 2 wickets. That means Adi is on hat-trick. So far there is no hat-trick in this tournament, SVT Trophy 2024 edition 2. And it's a golden opportunity for Adi to get the hat-trick. And Pancham, the young talented batter, will going to face the hat-trick delivery of Adi. Adi from the far end. To Pancham. Pancham this time wanted a single. Vivek is not interested. Vivek is not interested, quite understandable, as Vivek knows that this is the last delivery of the over. He wanted to keep the strike for the next over. So he's not just asking Pancham to stay there in the striker's end. So over number 2 completed. After completion of over number 2, chasing a total score of 43 to win this match. They got only 6 on the board.
That means they have to get, there are a long way to go. In fact, there are 36 more runs required for the victory. And they got only 3 overs to spare. 12 runs per over is the required run rate. Asking run rate is climbing up. That may be the danger signal here for Agrasali Super Kings, because once the asking run rate is going over 10 runs per over, definitely it's going to be a big ask. Unless and until if they fail to get one big over, it's very difficult for Team Super Kings to win this match. Vasudev Bhatt is in action from the far end. We're going to bowl a third over around the wicket to Vivek. Vivek came as opener for the side, is batting on 4. Out of 6 deliveries. Again, lovely delivery, drawing the batsman onto the back foot. The very good delivery indeed there from the bowler Vasudev. Absolutely, it's going to be a fantastic delivery, as Vivek wanted to get that one to the third man region. That's why he's just going back, but he's not getting that much of shot enough to steer that one. And no chance at all for any run. 17 remaining and 36 runs required for the victory. Again, just getting away from the stumps, wanted to get that one into extra coverage and misses the line completely. Back-to-back 2 dotted deliveries, and Vivek playing so many dotted deliveries here, and problem continues. At least they need to rotate the strike. Cuts it hard, good stop, a very good stop by the fielder, and they will get the single for that. So fielding team will not going to bother about their singles. They know exactly they need to restrict the boundaries, and they succeeded so far. Only one boundary which just came from the bat, and scoreboard now moves on to 7. After a long time, scoreboard is moving from 6 to 7. Vasudev balls. Pancham tried to cut that one. He wanted umpire to give the wide, but that's well within the reach of the bat of him, because he's just standing away from the stumps. When you're standing away from the stumps, outside the line of leg stump, it's very difficult for any ball batter to reach that delivery. This time, catch it is a call. Catch has been taken. Pancham takes the catch. Pawan led correction down at Cow Point region. जेवणा तयार झालेलं सर. जेवणाचे तयार झाला. सगळ्यांनी जेवण कोरेत. जेवणाचे फूड कोर्ट अंतू सर्व व्यवस्था झालेलं. To 7 for the loss of 3 wicket. Ajit, new batter, gets that one to third man, backward point region, little bit hesitation for the run, and that lets the manage to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 2-3 wicket. One more tidy over which is comes to an end, and 3 very good overs bowled by the bowlers of team Ugrana Sevaks are putting some pressure onto the batters of the opposition. And now 2 overs remaining. Scoreboard is 7 on the board, 8 on the board, and that means they have to get 35 runs to win this match. 12 balls, 35 runs required for the victory. 12.5 runs per over, the required run rate. Each and every economical over takes the asking run rate very high. So 12.5 runs, 17.5 runs per over, required run rate. This time, catch it is a call, but Ajit gets a boundary. And he gets the gap between Gully and the short third man. And with that boundary, scoreboard moves on to 12 on the board. 31 more runs required for the victory. Sandy from the far end. Ajit again making room, little bit going back and try to get the placement, but couldn't manage to get the placement right as a backward point fielder fields the ball. One more addition to total variation of that single scoreboard moves on to 13 on the board. That means 30 required from 10 balls. So 3 runs per every ball is required. Again, getting away from these stumps, wanted to get that one extra cover. Clever bowling from Sandy. Seeing that batsman try to make a little bit inside out cricketing stroke. He bowled a little bit away from
the batter, and defeated with a fantastic delivery which is outside the line of off stump. Now Vivek is standing outside the off stump and cuts that one pretty hard, and the fielder Pawan, actually it's not a good technique as he was as far as fielding is concerned. He, instead of putting his left foot into the line of the ball, he just tried to catch the ball, and ball just passing between his hands and legs into the boundary for 4 runs. Sandy. Again, lovely delivery. Vivek again going back, but this time Sandy has got extra bounce. Defeated by the bounce, and wicketkeeper did the rest back to bowler. Each and every dot ball will going to create the problem for them to win this match. It's 17 for the loss of 3 wickets. "17 on the board for the loss of 3 wickets. 26 more runs required for the victory, as Sandy again right arm over the wicket, cuts that one. Lovely shot right in the gap between backward point and cover point. One more boundary there. With that boundary, scoreboard jumps into 21 now for the loss of 3 wickets. And the last over remaining, and they have to get 22 runs to win this match. Twenty-two. 22 required from last over. Ramanath brought into attack, ball that last over. He will going to depend a huge run. 22 runs will going to depend in the last over, because even 4 boundaries will, which is required, six boundaries which is required for Super Kings to win this match. Otherwise, very difficult for them to save this match. So next match, Dongerkery Challengers takes on Jagali Cherkis. Rivan down to cover point division for a single. Now, 22 is a score, 21 which is required from 5 balls. So 5 boundaries will go into tie the match, but 1 extra along with that definitely wins the match for Super Kings. Ramanath. Lovely delivery, and that is what they really required. Now 4 balls are remaining, 21 required. I think it's very difficult. Unless until bowler will go into do the mistake of bowling wides and no balls. It's a victory which is sure. Excellent stroke, reverse stroke which comes into play from Vivek, but it's too late. "25 on the board. 18 required. 18 required from 3 balls. 1 more boundary. 18, 14 required now. 2 balls remaining. 13 required. 13 required from 2 balls. Even 2 boundaries will not going to help. Vivek, I think, is very late. He has getting some boundaries from this bat. Lovely delivery, beautifully bowled by the Ramanath. Scoreboard is 30 on the board, 13 required from last ball. Again, delicately played, but not good enough. They won the match by 8 runs. Won the match by 8 runs at last. A victory for team Ugrana Sevaks against Agrashali Super Kings. Congratulations for team Ugrana Sevaks. We are coming to the next match, Dongerkery Challengers versus Jagali Cherkis. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi.
अग्रसाळी सुपर किंग्स आणि उग्राणा सेवक्स दोन टीमांनी एक ग्रुप फोटो येऊ का? अग्रसाळी सुपर किंग्स अग्रसाळी सुपर किंग्स सगळे टीमांनी एक ग्रुप फोटो येऊ का? पुढली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच उग्राणा सेवक्साचे रामनाथ. उग्राणा सेवक्साचे रामनाथ पुढली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच स्टेजला येऊ काउंटिंग म्हणून घेताच. तशीच अग्रसाळी सुपर किंग्स हा सगळे टीमानं एक ग्रुप फोटो स्टेजला येऊ का? So, पुढली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच रामनाथ येईल असं हंका नरसिंह भटमामाना मॅन ऑफ द मॅच देऊ काउंटिंग म्हणून घेतास. score. धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर मैच नंबर 21 21st मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन तंबेकल्लू चैलेंजर्स वर्सेस जगली चरकेस. I request the scorer please to be reported here. फर्स्ट बॉल गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई नो बॉल का इशारा और इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के और तंबेकल्लू चैलेंजर्स जो कि इस वक्त फील्डिंग करता हुआ और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त मौजूद जगली चरकेस के और अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज फुल दैट वन और स्ट्रोक खेलने के बाद काफी हंसी उनके चेहरे पर दिखाई देते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त फ्री हिट गेंद थी इस वक्त और इस वजह से बल्लेबाज बच चुके. एक रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा. Driven that one perfectly down to mid on. In fact, gone through for a quick single और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और फिर से एक बार पवन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. जगली चरकेस का जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत है. पवन अगली गेंद लेकर तैयार. बेहतर गेंद फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका. 4 रन बिना किसी नुकसान के बन चुके हैं और जहाँ तक एक कारा बिगातू पोन मिळाला स्टेजर कारा बिगातू होंडा कारा बिगातू पोन मिळाला कोणे चुकला म्हणजे स्टेजर आयला झालं. Left to bat, swings and he's got the boundary. Fantastically struck. And just he smashed away through the onside at the last moment. And pick the gap firmly और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ और गेंदबाज की अगली गेंद इस बार स्ट्राइक इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर. He took a good catch at the last moment और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है.
अनंतेश की पारी समाप्त 8 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है. It's 8 for the loss of 1 wicket in the over number. First completed, huh? Over completed. First over completed. 8 runs on the board. 1 wicket lost for जगली चरकेस. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल, इस वक्त दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ. वी मल्लिया इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. वासुदेव सामना करते हुए पुल किया और उनका विकेट यहां पर गिर चुका है. और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका है. 8 for the loss of 2 wicket at the start of the second over. ऑन साइड पर गेंद को पुल किया था, लेकिन आखिरकार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है. और इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट के नियमानुसार यहाँ पर ये आउट कहलाता है. तो नए बल्लेबाज का आगमन. दिलीप इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. नॉन स्ट्राइकर एंड पर विट्ठल भट्ट माफ कीजिए. और इस बीच दिलीप फुल टॉस. गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, कट करना चाहा, चूंकि गेंद उनके पहुंच से बाहर और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है. कुल मिलाकर 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. फुल टॉस ड्रिवन डाउन टू मिड ऑन एंड दे गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल. और 1 रन यहाँ पर बटोरते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. और इस बीच गेंदबाज तैयार. लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. इस बीच गेंद को मोड़ना चाहता, लेकिन गेंद बल्लेबाज के पहुंच से बाहर और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन का इजाफा. और अगली गेंद पटकी हुई गेंद क्रैक्स इट अवे थ्रू द ऑफसाइड. और 4 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए. पंजों पर उछलते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट. खूबसूरती के साथ गेंद को पंच कर दिया था. 4 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 14 रन बन चुके हैं. और फिर से एक बार गेंदबाज वेंकटेश मल्लिया. और इस बार गेंद को खेलना चाहता, बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर टकराया, लेकिन आफ्टर फर्स्ट बॉल कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. और स्कोर इस वक्त 14 रनों पर रुक चुका है. और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज. Straight into the hands of square leg fielder. 1 more wicket fallen. Two overs completed, 14 runs on the board, 3 wicket lost for जगली चरकेस. और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए छोटे कद के खिलाड़ी प्रथम, लेकिन काफी प्रतिभाशाली. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा. और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर. कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा जगली चरकेस को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो. और इस बीच प्रथम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. Full toss, smashed it away and he's got a boundary. Straight past the bowler, he smashed back. और 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 19 for the loss of 3 विकेट. और प्रथम इस वक्त तैयार. ऑफ स्टंप से काफी बाहर विकेट कीपर चूके और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. 5 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे. स्पेक्ट्रा वाइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और 5 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 24 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. प्रथमेश अब तक इस ओवर में 10 रन प्रदान कर चुके हैं वो. और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर. शॉट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा. लेग बाय का इशारा. 25 now for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. और गेंदबाज प्रथमेश की अगली गेंद. Full toss, driven and brilliant stop with his legs made by the fielder at extra cover. He prevented a certain boundary and the batsman got only a single for that stroke. Fantastically stopped with his legs.
और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 26 रनों पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रथम better against here and sensible, delicately played at the last moment, just opening the pace of the blade, but and steering it away nicely, just wide of wicket keeper, down to a third man, and he got a boundary for that stroke. Fantastically struck. Came from the bat of Dilip. And the नेक्स्ट scoreboard मॅच is आहे महामाया क्रिकेटर्स आणि एक एंट्री गोर कमांडिंग म्हणून घेताच महामाया क्रिकेटर्स 30 for the loss of 3 wickets. और प्रथम तैयार। फुल टॉस परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और इस बार विकेट कीपर चूके और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रन यहाँ पर मिल चुके हैं और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 20 runs already scored in this over, and this is turning out to be a fantastic over in Jagli Cherke's point of view. Run number 21st came in this over. 35 now for the loss of 3 wicket. So prolonged over from Pratham came to 21 runs came from this over, and after 3 overs Jagli Cherke, after being a slower start, they are looking in a good situation now. 35 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs. पुंडलीक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ऊपर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 12 गेंदें बाकी उनकी पारी में। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। दोपहर के 1:15 यहाँ पर बज चुके हैं और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस बीच पहली गेंद लेकर पुंडलीक स्टीयर करना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रख चुका है 35 रनों पर 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर स्टार्टेड। पुंडलीक इस बार गेंद को इस वक्त टॉप स्कोप खेलना चाहा था, लेकिन बल्ले का निचले हिस्सा टकराने के बाद बैक टू द बॉल की दिशा में गेंद आते हुए और यहाँ पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 बेहतर गेंदें पुंडलीक इस ओवर में फेंक चुके हैं। तीसरी गेंद लेकर तैयार। Full toss, off the toss and dropped, but well stopped inside the fence. Chance of a run out, but missed by the bowler. तो मुश्किल से मौका जरूर छूटा था इस वक्त, लेकिन चौका रोकने में सफल और एकमात्र रन उनके टीम के खाते में जुड़ता हुआ 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पुंडलीक तैयार। Full toss, turns it away and collected cleanly, and no one is backing up at the striker end. Single run added. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 37. This is turning out to be a good over so far in the Mangalore challenges point of view. Just 2 runs came from this over. Good one, fantastic delivery from the bowler. Wicket keeper misses, and this time he won't survive. He lost his wicket in the face of a run out and a 4th wicket fallen, and now it's 37 for 4. Fourth over in progress in their innings. Match number 21 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2024, is now progressing here. This tournament is proudly presented by SVT Volunteers Association in the name of Volunteer Premier League Season 2 2024. So number 6 batsman is now comes out to the middle और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और पुंडलीक turns it away firmly and finds the gap as well. So 41 for the loss of 4 wicket. Last over starts in their innings. संजय पहली गेंद, इस बार गेंद कौन साइड पर मोड़ा, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर रन पूर्ण कर चुके हैं। तो 1 रन उन्हें मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 42 for the loss of 4 wicket. Just 5 balls now left in overall calculation in their innings. तो अपनी अगली गेंद लेकर संजय इस वक्त तैयार। पवन पई इस वक्त सामना करते हुए संजय की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट संजय अगली गेंद लेकर तैयार।
turns it away, gone through for a quick single and get it comfortably. सिंगल रन एडेड और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 43 for the loss of 4 wicket with just 4 balls now remaining in their innings. और संजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज दिलीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और संजय अपनी अगली गेंद लेकर बेहतर एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम टॉस्ड अप डिलीवरी और बल्लेबाज ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहते थे चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला बेहतर गेंद थी और संजय एक बार फिर से तैयार फुल टॉस ड्रिवन एंड ब्रिलियंटली स्टॉप्ड इनसाइड द फेंस he saved the certain boundary and no run added to the total. 2 balls left and now संजय कम्स और जहां तक सवाल है इस वक्त विकेटों का तो विकेटों को इस वक्त सही करते हुए अंपायर और 2 गेंदें इस वक्त बाकी है 43 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 4 विकेट के नुकसान पर और अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए Again swings and finds the gap. No, brilliant, absolutely brilliant stop made by the fielder inside the fence, and they come back for the second run this time and made it comfortably. बेहतरीन स्टॉप और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा और यहाँ पर 2 रन उनके खाते में जुड़े गए 45 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 45 for 4. The last ball of their innings is now coming up. संजय तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अंतिम गेंद misses and they gone through for a single but they won't get that one and 5th wicket fallen in the final delivery of their innings and the innings is up. Their stipulated overs are completed. They managed to score 45 for the loss of 5 wickets in the stipulated 5 overs and now the target for Dongerkery challengers is 46. They have to score for victory and their innings starts now with Rijesh Atwal 46 the target in 5 overs 46 रनों का लक्ष्य और देखते हैं Dongerkery चैलेंजर्स के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद और एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम यहां पर उपस्थित होंगे जब Dongerkery चैलेंजर्स की पारी की शुरुआत यहां पर होगी धन्यवाद थैंक यू हर घर में अब एक ही नाम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय मेरे भारत बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा Vijay Dixit is very excited. The match is started here and the first ball which is the first run taken by the batters of Dongerkery challengers that are chasing a total score of 46 to win this match. They got a first run. Anantesh right arm over the wicket bounce. This time a sensible batting here from both the opening batters. They're looking towards a rotation of strike and Pundalik also got his first run from the bat, 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Pratham Shanai, Little Master will go into face Anantesh. Full set one nicely. Very good stop there by that square leg fielder. What could be a certain boundary and unfortunately Prathamesh will not going to get the boundary there but he will going to get a single for that with that single scored moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Anant bows to Pundalik. Pundalik pulls that one down to square leg region. They're going for the quick single there and with that quick single scored moves on to 4 on the board in the over number first in progress. 2 young talented batters opening the innings here for Dongerkery challengers. Again, they wanted to, Prathamesh wanted to get that one into square leg region, but couldn't manage to get that one from the bat. No call from umpire means it's from the bat. One more single. The scoreboard is 5 on the board. Again, wanted to get that one into the onside region. Unfortunately, because of extra bounce, ball hitting a face of Pundalik.
tidy over there from Anantesh. After completion of first over, it's 4 on the board without loss of any wicket in the over number 6, first which is completed. So 4 overs remaining and need to get another 39 runs to win this match. 42 which is a target, 42 which is required, 46 going to be a target, 42 required from 24 deliveries. Gopalakrishna for Prathamesh, wanted a single, a misunderstanding between the wicket, costing a wicket of Pundalik. So Pundalik unfortunately back into pavilion, the total misunderstanding between the wicket and the costing run out here. So Pundalik back into pavilion, replacing him Venkatesh Malya is in non-strikers then. Gopal Krishna right arm over the wicket, a very good improvisation and going for the quick runs. Oh my goodness, Prathamesh without seeing the fielder, he wanted to get the run, but unfortunately ball went very quickly to the fielder. But Prathamesh saying that Gopala Krishna, why you are not responding for that run? There could be a single, but I don't think it's going to be a single there. And both opening batters are unfortunately they're back in the pavilion in the form of run out. So one more young player came into middle. Pawan Bhagat will go into face Gopal Krishna. Plays it nicely down to square leg region. They're going for the run. Chance of one more run out there. And this time batter survived from that run out so that one more single been added to total. With that single scoreboard now moves on to 5 on the board. 5 for the loss of 2 wickets up back into pavilion. Venkatesh Malya will go into face Gopala Krishna. The Dongerkery, of course, they're given some chances for the youngster. We can see that Dongerkery has got many young players in that team. So they're giving the opportunity for the youngsters to get some experience from playing some big tournament like SPT Trophy. One more single in dedication. Good piece of fielding there by Nakul down at mid-off. And with that single scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 2 wickets. Slow progressing here for the team Dongerkery. And here again Gopala Krishna right arm over the wicket. Nicely plays it down to mid-off region. They're going for the quick single, chance of run out. Direct, it might be the close call for the umpire. But ball misses the stump and Pawan just survived from that run out. So last time in this over, Gopala Krishna bowling away from us. Right arm over the wicket, bounce, pulls that one right in the gap. It's going to be a boundary. Welcome boundary comes up here for Dongerkery. So after completion of over number 2, total score 11 on the board for the loss of 2 wickets. 35 more runs required for the victory in remaining 3 overs. The Bittal Bhatt will go into ball the 3rd over of the innings of Dongerkery. Pawan will be the striker. 4 fielders in the onside, 4 in the offside. Wicket keeper standing well up in the stumps. Well up to the stumps. Short pitch pulls that one straight to the answer fielder. Chance of run out created in the non-strikers end. But high throw coming from the fielder so that Pawan will go in to complete the single. With that single scope, Namuzan to 12 on the board. 34 required from 17. Again, a good piece of fielding there by the short fine leg fielder. White call by umpire. And now 33 required for the victory from 17 deliveries. Venkatesh. X delivery, which is well pitched up delivery, extra bounce, appeal for leg before wicket, or maybe they're trying for handling the ball, what might be the chance here for getting out, but umpire says it's not out, not quite intentional. Outside the line of off stump, and one more dotted delivery from the bowler Vittal. Vittal bowling a tidy over here. Pulls it in the gap. The one more boundary takes its total score into 17. 29 required from 14 balls. So Dongerkery trying their level best to get the victory here against Jagali Cherkes. Again, straight to the answer fielder. Opportunity of run out created in the striker's end. And umpire says not out.
And but my batter has survived from that run out. One more dotted delivery. Each and every dot ball will going to create the problem. ನರಸಿಂಹ for ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಮನ Tamil ವೈರೇವ್ಕ ಬಾಳ್ಮಾಮ್ ನರಸಿಂಹ ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಮ್ ನರಸಿಂಹ ಬಾಳ್ ಮಾಮನ ವೈರೇವ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರಿ So last time in this over, Vital, right arm over the wicket to Venkatesh. Venkatesh drives that one right to the gap. One more boundary comes up. So needed such kind of brave and gutsy batting here for Dongerkery if they wanted to win the match. After completion of over number 3, chasing a total score of 46 to win this match, Dongerkery managed to score 21 on the board. That means 25 more runs required for the victory in 2 overs. 12 and half runs per over is the required run rate for the team. Maybe that is a big ask, but not impossible in cricket. Everybody knows that cricket is unpredictable game. You can't say anything in cricket until you are getting your last run, until you are bowling the last delivery. It's very difficult to say which team will go to win this match. Improvising that one nicely. Absolutely perfect reverse stroke which is played by Pawan. Not a reverse stroke, but just helping it down. Just like a left-hand batter pulling the ball down to backward point, and he got this boundary for that. With that boundary score, numbers on to 25 on the board. 21 more runs required for the victory. Pawan. Bows drives that one towards the mid-wicket. Good fielding there by the fielder. Just a single. With that single score, numbers on to 26. That means 20 required from 10 balls. That means every delivery required 2 runs for the team Dongerkery challenges to win this match. Pawan, right arm over the wicket, bowls to Venkatesh. Lovely delivery in the 8 ball, just kept low in the last moment when the batter going for the cut shot. 9 deliveries remaining, and they have to get 20 runs to win this match. 20 from 9. Pawan bowls wide outside the line of off stump, and nothing much to do with the delivery. Wide signal by umpire. One more addition. With the addition of that single score, but numbers on to 27 on the board. And 19 more runs required for the victory. 9 remaining. Was it straight to the hands of mid-wicket? They cross off for a single. With that single score, but numbers on to 28 on the board. 18 needed from 8. Pawan back on strike. Pawan to Pawan. Good thinking. Absolutely good thinking by the youngster. Seeing the line of the ball, judging the line of the ball very well. You're getting away from the line of the ball. White call by umpire. One more addition to the total. Addition of that single score, but moves on to 29 on the board. 17 required. Cuts straight to the answer fielder. Opportunity of run out created in the non-striker's end, but bowler misses the throw from the fielder. And no runs scored. 7 required. 7 balls remaining, in fact. 17 required. 7 balls remaining. Excellent delivery and leg by. So lucky run. 4 runs in the form of leg by. With that leg by scoreboard, numbers on to 33 for the loss of 2 wicket. 13 required. Toss, try to turn that one onside division. Appeal for catch there. And very interesting to see that wicketkeeper Ananthesh saying that why you are appealing, man. That ball not hitting the leg of the batter, but ball hitting the ground, and he is keep on appealing for the catch. And driven that one down to mid-off region for a single overthrow, but difficult to get the runs. Score remains on 35. 11 required. 4 balls remaining. Vasudev. Full toss, pulls that one, and he got out. Gopalakrishna is pulls that ball, and unfortunately that ball went outside the line. Eleven required. One more big shot. Oh, the out call by umpire. All happening here. And 11 required from
2 balls, 2 boundaries will not going to help the team Dongerkery Challengers. Tapan Pai will be the new batter, and 11 required from 2 balls. Vasudev enjoying his bowling some full toss deliveries to get some wicket to his account, and 2 balls remaining, 11 runs required for the victory. Dotted delivery. Just a formalities left in this game. 1 ball, 11 required for the victory. And it's going to be a welcome victory for Cherkes after they're losing consecutive 2 matches. This time pulls that one, but gone. 3 wickets here for Vasudev, and a victory for team Cherkes. They won the match by 10 runs against Dongerkery Challengers, and they got a very important points. And that's it. We are into the next match. The next match will be played between Satish Strikers versus Mahamai Cricketers. We'll take a short break here, and after the short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the mic. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋರರ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Dhanyawad Satish. So the match number 22nd is now going to start between Satish Strikers versus Mahamaya Cricketers. और सतीश स्ट्राइकर्स जो कि इस वक्त फील्डिंग करता हुआ, महामाया के दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और पहली गेंद लेकर तैयार विघ्नेश शेणई और गोपाल भट्ट, जबकि गेंदबाजी गोपाल भट्ट इस बार रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अन्वित मल्लिया इस वक्त मौजूद, जबकि विघ्नेश सामना करने के लिए तैयार गोपाल भट्ट की गेंदों का। दाहिना तो पर विकेट फुल टॉस बीमर के तौर पर गेंद थी, गेंद को छोड़ दिया इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में और नो बॉल का इशारा अंपायर का। जगली चरके तवळचे जगली चरके साचे मैन ऑफ द मैच वासुदेव कामत मैन ऑफ द मैच भाई वासुदेव जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली और गेंद को उछालने के प्रयास में चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 1 रन बिना किसी नुकसान के। Full toss, driven that one, and this time this could be in trouble. Oh, he misses. विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करने में चूक दिखाई और यहाँ पर गेंद उनके हाथों से चूक कर निकल चुकी है। थर्ड मैन से बाहर 4 रनों के लिए, तो 5 रन यहाँ पर जोड़े जाएंगे और इन 5 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। महामाया क्रिकेटर्स के लिए इस मैच में विजय दर्ज करना जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है। तो पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला इस वक्त मिड विकेट पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद बेहतर, absolutely fantastic one, kept lower at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर
बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। गोपाल भट्ट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विघ्नेश के लिए। इस बार ड्राइव करना चाहा और रन आउट यहाँ पर होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग गेंदबाज द्वारा और आसान सा रन आउट इस वक्त होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर। और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है, जबकि स्कोर है इस वक्त 7 रन, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। Over has been completed. First over completed, 7 runs on the board, 1 wicket loss, mixed start for Mahamaya cricketers. Aniket starting the fresh proceedings from that side end, that means from the stage end. और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार और इस बीच बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट वांटेड टू कट दैट वन आफ्टर बीइंग रॉक्ड ऑन द बैक फुट, चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। Bounded, gone for a big one and lost his wicket. The ball was pitching almost a block hole and after beating the bat stuck to his off stump. Second wicket fallen and now they are looking in trouble, Mahamaya cricketers. 7 for the loss of 2 wickets. Number 4 batsman is now comes out to the middle. Aditya Bhatt इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अनिकेत और दाहिने हाथ राउंड द विकेट। फुल टॉस, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि गेंद कुछ ज़्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो अनिकेत एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस बार ड्राइव किया मिड ऑन पर, कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक। Scoreboard stays at 7 for the loss of 2 wickets. और इस वक्त अनिकेत आदि के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेला मिड ऑन पर, बेहतर स्टॉप, ब्रिलियंटली स्टॉप्ड इनसाइड डिफेंस और बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने का मौका। काफी ऊंची गेंद आई थी अंतिम एक्शन में, वाइडिश मिड ऑन फील्डर के ऊपर से जैसे ही निकले ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को ढकेला इस वक्त सीमा रेखा के अंदर। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। अनिकेत दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेला, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन कोई बैकअप नहीं वहां पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बल्लेबाज इस वक्त बच चुके हैं और बेहतर फील्डिंग यहां पर फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा, लेकिन उन्होंने थ्रो जरूर किया लेकिन वहां पर कोई बैकअप नहीं था। थ्रो निशाने पर भी, स्टंप्सों पर भी नहीं टकराया और बल्लेबाज आखिरकार बाल बच चुके हैं इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन ओवर यहाँ पर अनिकेत का समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किया, 1 विकेट भी प्राप्त किया और उनके इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इस वक्त 8 रन सिर्फ जोड़ चुका है 2 ओवर के बाद महामाया क्रिकेटर्स 2 विकेट के नुकसान पर। तो जीके भट्ट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए आज का 9वां मैच यहां पर शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर 22वां मैच इस श्रृंखला का, 9th मैच ऑफ द डे 2 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी 2024 is now started and brilliant, this time he's got a nick on that. That was a straightforward chance and the chance was gone in vain. He's got a big nick on that at the last moment और यहां पर विकेट कीपर इस मौके को गंवाते हुए और आखिरकार बल्लेबाज के लिए जीवदान के साथ साथ 4 रन इस वक्त प्राप्त होते हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस चौके के साथ 26 रनों पर, माफ कीजिए 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्ट्रोक्स को रोका अंतिम क्षण में, रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया, 1 रन का इजाफा। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड दिस इज द 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। स्टिल द बैट्समैन ऑफ महामाया क्रिकेट आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक एट दिस सिचुएशन और गेंदबाज
Full toss, and this time it's gone over the fence. 5 wides. 5 wides into the account of Mahamaya cricketers. The bowler bowled 2 for the leg stump और 5 वाइड इस वक्त उनके खाते में जुड़ते हुए 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच जीके भट्ट अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया विकेट से हटते हुए, स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार जीके भट्ट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा और इस बार रन आउट का निशाना चूक चुका है। इस बीच निशाना चूक चुका है विकेट कीपर का, बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुका। हालांकि थोड़ी सी देरी से जरूर दौड़े थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन वहां पर विकेट कीपर का थ्रो निशाने पर नहीं टकराया, स्टंप्सों पर नहीं टकराया, फलस्वरूप बल्लेबाज 1 रन के साथ सुरक्षित अपना छोड़ बदल चुके हैं। 20 driven perfectly and it's went over the fence. तो बेहतर जजमेंट इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर का, गैच को लपकने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाना कि गेंद सीधे सीमा रेखा के पार जाने वाली है, फुल टॉस, तो गेंद को उन्होंने छोड़ दिया और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 3 wickets down, 20 runs on the board, and Varun, the number 5 batsman, is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, पूरी तरह स्टंप्स को कवर कर इस वक्त खड़े हुए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार जीके भट्ट। बेहतर गेंद थी, पैरों पर टकराई, अगर पैर नहीं होता तो शायद गेंद स्टंप्सों पर टकराती यहाँ पर, और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 3 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 20 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs. Still the batsmen of Mahamaya cricketers searching for the right track. विघ्नेश हेगड़े स्टार्टिंग फ्रेश प्रोसीडिंग्स, फर्स्ट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इन फैक्ट विघ्नेश अगली गेंद लेकर तैयार, ड्रिवन डाउन टू मिड ऑन, कान गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सतीश स्ट्राइकर्स के गेंदबाज, और विघ्नेश फुल टॉस, टॉप एज, चांस एंड टेकन, टॉप एज पर गेंद टकराई और स्क्वायर लेग पर फील्डर खड़े हुए थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो विघ्नेश हेगड़े यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और चौथा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। अनीश भट्ट नंबर 6 बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करेंगे विघ्नेश हेगड़े की गेंदों का, और विघ्नेश हेगड़े अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए कट किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर बेहतर फील्डिंग, वहां पर गेंद को रोका गया सीमा रेखा के अंदर, नॉट मोर देन अ सिंगल। स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ। और विघ्नेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज विघ्नेश हेगड़े swings straight into the monitor screen, and one more wicket fallen. So LED स्क्रीन पर जाकर गेंद टकराए थे और 5वां विकेट गिर चुका। 22 for 5 now, and we are just waiting for the number 7 batsman. धनुष कामत 7वें बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं। कुछ बातचीत करने के बाद अनीश भट्ट के साथ, जो कि दूसरे छोर पर मौजूद है, कुछ बातचीत करने के बाद स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज, और विघ्नेश अगली गेंद, ये गेंद वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और विघ्नेश फिर से एक बार तैयार,
Better again. Fantastic delivery. Just missing outside the off stump, and the batsman wanted to cut that one at the last moment. लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और एक बार फिर से विघ्नेश and in the air but fell and brilliantly stopped inside the fence. और वहां पर प्रथमेश जो फील्डर थे जिन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका सीमा रेखा के अंदर, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलता हुआ और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. So the scoreboard says at 23 for the loss of 5 wicket, and 3 runs came from this over, and pretty good one in Satish Striker's point of view came to an end. 23 for 5, 4 overs completed. Last over starts in their innings. अंतिम ओवर शुरू होता हुआ उनकी पारी में. प्रथमेश नायक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अनीश भट्ट इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर यानी 6 गेंदों में मामा क्रिकेटर्स के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं. इस बार गेंद को खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स नहीं मिलेगा. Scoreboard stays at 23 for the loss of 5 wicket. 5 balls now left in overall calculation in their innings. और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार. Driven and this time he finds the gap just wide of the bowler down to a straight hit area. और 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 27 now for the loss of 5 wicket. With that boundary, scoreboard is now moving up to 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा और बेहतर फील्डिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टॉप. ही कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक. 3 गेंदें हो चुके हैं इस ओवर में, 3 गेंदें बाकी. स्कोर रुक चुका है 27 रनों पर और प्रथमेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार अनीश भट्ट के लिए. फुल टॉस एंड 1 बाउंस इनटू द फेंस. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर. 31 for the loss of 5 wicket with just 2 balls to go in their innings. और 2 चौके इस ओवर में बल्लेबाज अनीश भट्ट झट चुके हैं पहले 4 गेंदों में और 2 गेंदें अब बाकी कुल मिलाकर उनकी पारी में. तो प्रथमेश इस वक्त तैयार अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर. बल्लेबाज अनीश भट्ट के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद पहुंचे पॉइंट पर खुद अपने आप से नाखुश. इस वक्त अनीश भट्ट रन नहीं मिलेगा और अंतिम गेंद अब बाकी उनकी पारी में. The scoreboard says at 31. The last ball of the innings is now coming up. गेंदबाज इस वक्त तैयार प्रथमेश अनीश के लिए. Bowled out, absolutely misjudgment. Perfect leg-cutter delivery, and at last he got the breakthrough by the bowler प्रथमेश. और misjudgment की बदौलत यह विकेट गिर चुका है पारी के अंतिम गेंद पर अनीश भट्ट का. So the innings is up. The stipulated overs are completed. Mahamaya cricketers managed to score 31 runs in the stipulated 5 overs. Another target for Satish Strikers is 32. They have to score for victory. As far as the victory is concerned for them, exactly 6.40 the required run rate. 32 they have to score in the stipulated 5 overs. अब देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब सतीश स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो अब वक्त है ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. నెక్స్ట్ అండర్ ఆర్మ్ టీమ్ శ్రీనివాస అని టీమ్ గోపాలకృష్ణ. టీమ్ శ్రీనివాస आणि टीम गोपालकृष्ण सीनियर कॅटेगरी मॅच. 2 टीमाचे कॅप्टन आणि टॉस आहे का. टीम श्रीनिवास आणि टीम गोपालकृष्ण. Thank you very much, and good afternoon, cricket lovers. And after that lunch break, we are straight away back in the game, and a very interesting game is in progress. Team of Satish Strikers need to get 32 runs in their stipulated 5 overs, and wait and see how well Satish Strikers will go in to get these runs. But a lot of hard work which is required for Mahamai cricketers, and because Satish Strikers, they are in a winning track. In fact, they are after the
two defeats in the league stage matches. They managed to bounce back very well, and there goes on winning their previous 2-3 matches. And wait to see how well they will continue their winning track in this match. First ball. Left arm round the wicket. The batter tried to reach to the pitch of the delivery. Adi in the negation. Misses the line completely in the negation. The very good start from the bowler. Aditya Bhatt. He's got a very good height, so getting some extra benefits of height, getting some extra bounce as well, and good carry to the wicket keeper. Again, wow, what a delivery. Absolutely, that was a peach of the delivery, isn't it? Drawing the batsman onto the front foot. And Adi really not understand what kind of delivery it's going to be. But that was an absolutely outswing delivery, which is defeats the defense of Adi. Then the wicketkeeper behind the stump did the rest. Absolutely good stop. Left arm balls, full toss delivery, nicely plays it down to backward point region, but not more than a single in that occasion. With that single, scored Namuzanto. Of course, they got their first run, one without loss of any wicket. Absolutely very exciting crowds here watching the game of cricket of this most prestigious SVT Trophy 2024. Lovely delivery. Again, batsman going for the single. Quick run taken by both the batters. G.V. Bhatt in the occasion got a single and he's up the mark with a single. And scored Namuzanto 2 on the board without loss of any wicket, chasing a total score of 32 to win this match for Satish Strikers from the far end. Oh, what a delivery. Absolutely. That was really a zapper there from the bowler. That was really get an extra bounce in the occasion. Have a look at that one if you have a replay for this delivery. This is one of the best delivery everyone going to enjoy. Just like an international cricket, that ball is coming like just moving away from the right-hand batter. One more beautiful delivery. He's just enjoying his bowling. Great piece of bowling performance from Aditya Bhatt. After completion of first over, it's 2 on the board without loss of any wicket. Coming back to the spectators, we have a special guest for this day, because we have the special spectator from England, Mr. Wo and Joy, are enjoying the game of cricket, and warm welcome for them for this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2024. They are enjoying the game of cricket in our right of commentary box in the dugout of Satish Strikers. Maybe the Satish Strikers are getting some extra supporters for them, and with getting extra supporters, and wait and see how well they are going to get this 32 runs to win this match. GK Bhatt will go into face. Now, equation, 24 balls remaining. They need to get 30 runs to win this match. It's going to be anybody's game. It's going to be anybody's game. Vignesh Shenoy will go into starts his fresh over from the far end. Talking about England. England is the country which is taught cricket for the country. And here is for the first delivery. Right arm over the wicket. Pulls that one, but straight to the answer fielder. Good piece of fielding there by fielder on his follow through, and batsman tried to hit the ball by hitting the ball down the ground, tried to get the boundary towards mid-off region in fact, but couldn't manage to get the placement right. Vignesh balls to GK, but this time ball is definitely going to be a wide ball, just missing the direction, and tried to get extra pace in that ball, but missing the direction, and ball going down outside the line of leg stump, and wide call by umpire. With that extra score, Namuzanto 3 on the board without loss of any correction for the loss of without loss of any wicket. Again, went for the cut shot. Absolutely struggle time continues here for Satish Strikers batter. The bowlers of Mahamaya really enjoying that afternoon condition with the direction of the wind they're bowling, so that they're getting extra pace and extra bounce as well. Vignesh balls to GK Bhatt, cuts it down to backward point region, but not more than a single. With that single, scoreboard is moving after a long time. It's 4 on the board without loss of any wicket in the over number 2nd in progress. Absolutely good competition is going on between these two teams. Both the teams desperately wanted to get a victory here, especially for the Mahamaya cricketers. They know that they wanted to win this match if they wanted to remain in the competition. Oh, lovely delivery indeed. Little bit away going delivery. Adi wanted to reach that one, but unfortunately for him, that ball just missing his bat. Otherwise, going to be a chance of caught behind the wicket, and no chance at all for any run. And really, the runs are very hard to combine against a disciplined bowling performance by the bowler. Vignesh bowls one more delivery, shouldering his arm.
misjudgment. Maybe the bowler batter is coming little bit across the line of the delivery. That's why umpire not interested to call that wide. When you are trying to chase the ball, you are almost shuffling across the line of the delivery. Then now that line will going to be extended for the right-handers. That's why umpire not interested. Again, Vignesh, right arm over the wicket bounce. This time, plays it out short. Final region. Opportunity of run out is created. Pramod couldn't manage to pick the ball. Otherwise, going to be a danger here for Aditya. One more very, very tidy over, which is comes to an end, I think so. 2 overs gone after completion of over number 2. It's 4 without loss of any wicket. And what a fantastic bowling performance continues here for Mahamaya cricketers. 4 which is deducted from 32. That means that 28 more runs required for the victory in remaining 18 balls. 18 ball, 28 required. The difference between run and ball exactly the 10. And that represents what team's strikers, Satish strikers have to bring down very quickly. Akshay Kamath from the far end. Right now over the wicket bounce to GK Bhatt. Pulls that one, but straight to the answer fielder. Chance of run out in the non-strikers and it's going to be a suicider. So Satish strikers that lost their first wicket. This shows the result of the frustration when you are not getting the runs. And GK Bhatt in dedication pulls the ball but not find the gap. Didn't find the gap and mid-wicket fielder fields the ball, returns the ball. And that time a batsman is not in the picture. Anirudh is a new batter in for Satish strikers. A good bowling performance which is continuous here from Mahamaya. Again, Adi, after he's trying all orthodox cricketing stroke, he's just trying for the unorthodox cricketing stroke. That is a switch it he attempted, but missed it completely. And really under pressure now, Aditya. But first time seeing that he's feeling that much of pressure because of disciplined bowling performance by the bowlers. Akshay Kamath, right arm over the wicket to Aditya, but lofted and he gone. This all happening when you are hard to combine the runs from the bat. You need to do something special. You need to break the shackle, and by breaking the shackle means he himself is going to be out by trying for the boundary. He fails to keep it down. Ball went into the mid-off region, but went outside the circle. So one more wicket is back into pavilion. They are looking in a deep, deep trouble now. Satish strikers. 4 for the loss of 2 wicket. Akshay. So far, so good in this over. Right arm over. Pulls one more wicket. All happening in this match that Satish strikers, all batsmen looks like they are in under pressure. Couldn't manage to handle the pressure. Short pitch delivery batsman going for the full. And played that one uppishly and pays the penalty for that. 4 for the loss of 3 wicket. But first I'm seeing that the Mahamaya cricketers bowlers are doing such a fantastic job. At one stage, after completion of 2 overs, 4 for the loss of 2 wicket. Now 2.3 overs is the same runs which are remaining, but they lost 3 wickets. And here again the bowler from the far end, Akshay. To Vignesh, sensible batting. Absolutely sensible batting in the dedication there from Akshay, because you can't win the match without rotating the strike. You need to rotate the strike. Along with that, you need to get some boundaries in the middle of that. Then only they can chance here for Satish strikers to win this match. But so far, Mahamaya are looking in a commanding position. Top edge opportunity and good catch. Very good catch taken there by Vignesh. All we can see that the supporters of Mahamaya cricketers are absolutely enjoying the performance of their players. Now it's 5 for the loss of 4 wicket. This is a competition between run and a wicket. It's a competition between run and a wicket because they got a 5 and they lost the 4 wickets here. They're absolutely in a serious trouble. 3 overs completed. 3 overs completed. The 5 on the board. That means in remaining 2 overs, they need to get 27 runs. 27 runs required in 2 overs. That means asking run rate exactly 13.5 runs per over. 13.5 runs per over is the required run rate for Satish strikers to win this match.
Varun Kamath, right arm over the wicket balls to Vignesh. Oh, one more wicket. Now it's a 5 for 5. Just like I mentioned, there is a competition between a wicket and a run. They have lost 5 wickets for just 5 runs. So 11 ball, 27 required for the victory. The new batter in is the Prajwal with the jersey number 8. Really, it's not up to the mark. The performance of the batting performance of such strikers is not really up to the mark. Right arm over the wicket, puts that one again straight to the answer square leg region. Chance of run out in a non-second. Of course, the fielder fields the ball very well, but fails to return the ball very quickly. But the fielding team will not going to bother about that singles. They knows that they need to restrict the boundaries. And 6 on the board for the loss of 5 wicket. Gopal back on strike. Varun Kamath from the far end. To Gopal again. Look at he pushes the ball from his legs. I think I don't know why they're appealing. Batsman can do that. Batsman can do that with. He just wanted to avoid the ball to hit the stump, so that it was. Naturally, any batter definitely they trying to do that, not to hit the stumps. And appeal coming from the fielding team, umpire on mode. Varun, right arm over, like a lovely delivery, beautifully bowled, perfect one. The problem continues here. What a great piece of bowling performance here by the bowlers. I'm first time seeing that. The Mahamai cricketers, the bowlers are doing absolutely the fantastic job from their bowling from the far end. Right arm over the wicket. What talking about? They're doing a fantastic job. Here is a little bit mistake there from Varun, has bowled far outside the line of off stump, and white call by umpire with that extra scoreboard moves on to 7 for loss of 5 wicket. So still they have to get another 25 runs. It's definitely going to be a huge ask in front of strikers. One more delivery, going to be a wide ball, just missing the direction. Umpire called a wide. The bowler is not impressed with the decision of umpire, but umpire in a right position to judge what really happened. Ball just moving from the outside the line of off stump, and once again getting extra movement, so that ball called as a wide. Lofted, one more wicket. The wickets are tumbling like a house of cards here of strikers, Satish strikers. It's 7 for the loss of 6 wicket. 8 for the loss of 6 wicket, correction. So now last 2 over remaining, and they needed another 24 runs to win this match in last over. But even that 6 boundaries will make the match tie. A very good stop by the fielder. Oh my goodness, it's a collision. This is a collision between the bowler and the batter, and fortunately no damage done. Looks like both are okay here. And so last little correction. Now last over going to commence. 6 balls remaining. They need to get another 23 runs to win this match. They needed 6 boundaries in the last over. So Prathamesh is on strikers end. Needed 6 boundaries in 6 balls. Anvit Malya. Anvit Malya knows that one good delivery which is good enough for them to win this match. But Prathamesh knows that 6 boundaries which is required for the victory. Again, they're going for the quick single, and that single is not going to help them to win this match. 22 runs required for the victory in 5 balls. So 5 balls, 22 required. 5 boundaries will not going to help Satish strikers to win this match, unless bowler will going to do the mistake bowling no balls and wide balls. Definitely the victory which is going to be a surety of strikers. Again going for the pull shot, not getting that one from his bat. Just a formalities left in this game. And 4 balls remaining. 21 more run required for the victory. Outside the line of offside too much, and wide call by umpire with that extra scoreboard now moves on to 11 for the loss of 6 wicket.
21 from 4. Driven upishly, one more wicket. All the wickets we can see of Satish strikers, every batters are played at one upishly, and they're back in the pavilion. Venkatu is the new batter in. 21 required from 3. Balls deflected from the legs, so no chance of any run. Now 2 balls and 21 required for the victory. Just a formalities left in the game. After this match, the match will go into commence. It's going to be underarm cricket. Catch it is a call, and that ball went out of the boundary line. That's it. One more wicket is back into pavilion. They're bundled out. No, 1 wicket remaining. The last wicket remaining. Kushal Pai, the new batter, he will going to face the last delivery of their innings. Lovely delivery, and that's it. The comprehensive victory here for team Mahamaya cricketers. Defeated their opposition by 20 runs, and absolutely that will give a lot of confidence for the teams when they're going to play their next match. So hard luck. So both the teams looks like they're not maybe they're not having any chance of playing for the next match. So now we are talking about the next match. Underarm team Srinivas will going to take on team Gopalakrishna, and it is going to be underarm cricket will going to commence, and it's going to be a very interesting. The two teams will go into play, and all the best for the team. And time to change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. ಊಟದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋರರ್ ಯಾರಾದರೂ ಊಟ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಗಾರರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. बी पूलाचे भारी इंटरेस्टिंग असा भारी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट. आता तुम्ही फुडले मॅच पळयला. सतीश स्ट्रायकर्स मॅच डिफीट जाला. 4 पॉइंट तांगेले आसा. आता नेक्स्ट अग्रसाळी आनी तांकां गोपूर ग्लॅडिएटर्स मॅच आसा. तांदो अग्रसाळी विन जाल्यार अग्रसाळी नेक्स्ट राउंड क्वॉलिफाय करता. गोपूर ग्लॅडिएटर्स विन जाल्यार रन रेट मॅटर करता. 4 पॉइंट जाता. तांतू बी पूल अंतू आत्ता फर्स्ट पोजिशन आरी नेक्स्ट राउंड उग्राणा सेवक्स एंट्री जाल्याची. आणि अनेक टीम कंचे म्हण पळोवच्याक आमी अग्रसाळी सुपर किंग्स आनी गोपूर ग्लॅडिएटर्स मॅच आसा त्या मॅचा वयरी डिपेंड जाता. आणि फर्स्ट ए ग्रुपान कशी दोन्ही टीम रायझिंग स्टार्स आनी नागनकट्टे पॅन्थर्स 2 टीम एंट्री जाला नेक्स्ट राउंडाक. आता तुमगेले इधराक अंडर आर्म मॅच जाता. तशी बारी इंटरेस्टिंग मॅच सकट जाता आसा. 4:30 गंटेक विशेष जावन 5 जनाक सन्मान कार्यक्रम आसा. ताजोटोची 6 गंट्याक फ्रेंडली मॅच जावची आसा.
फुडली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच महामाया क्रिकेटर्साचे अक्षय कामत 1 रनाक 3 विकेट काडले. अक्षय कामत फुडली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच. ಅಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है अबव 45 कैटेगरी का. टीम श्रीनिवास और टीम गोपाल कृष्णा के बीच, और यहाँ पर दोनों आरंभिक बल्लेबाज मौजूद. एकनाथ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि नागेश गेंदबाजी शुरू करते हुए. एकनाथ जिन्होंने पिछले मैच में 68 रन बेहतर बनाए थे, स्कोर 69 रन इन द प्रीवियस मैच. 69 रन बनाए थे, अनबीटन 69 स्कोर्ड इन द प्रीवियस मैच. और इस वक्त पहली गेंद को खेलने में सफल और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो फिर से एक बार गेंदबाज किया गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर इनटू द गैप, और दोनों फील्डर यहां पर टकरा गए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, और 4 रन बिना किसी नुकसान के टीम श्रीनिवास इस वक्त जोड़ चुका है. 5 ओवर प्रति पारी जो कि खेले जाएंगे. और इस बीच अगली गेंद, और एकनाथ के लिए पैरों पर गेंद टकराई, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. फुडली मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच अक्षय कामत. 1 ओवर अंदू 3 विकेट काणो लायकीक बॉलिंग परफॉर्मेंस दिला अक्षय कामत. कंग्रॅच्युलेशन्स. Left head, and this time he's got the distance. So terrific form of the previous match is now continuing from Eknath. He scored 69 runs in the previous match, unbeaten 69 runs. And this time he continuing his form right from the previous match. और इस बीच छक्के के लिए गेंद को उछाल दिया, और इस बार बेहतर गेंद थी. गेंद को थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए. लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के. निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है टीम श्रीनिवास का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एकनाथ की उपस्थिति क्रीज पर बेहद जरूरी है. इस बार ऑन साइड पर 4 रनों के लिए. फैंटास्टिक स्ट्राइक, 18 without loss in the first over in progress. And the first over in fact has been game stolen. First over completed, 18 runs on the board, yet to lose any wicket, and this is a perfect start आमगेले हरिओम आमगेले मंगळूर दक्षिणाचे शासक जावन आशिल्ले श्रीयुत वेदव्यास कामत हांगा उपस्थित आसाची. हांकां आमगेले ऑर्गनायझर जावन आशिल्ले सुधीर भक्ता हाणें वेदिकेर आपण अडकमणी म्हणून घेता आसा. वेदव्यास कामत MLA ऑफ मंगळूर साउथ हांकां आयोजकाल तर्फेन हार्दिक जावन आशिल्ले स्वागत. Swings and 6 runs. Fantastic strike. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर. एक बार फिर से हार्दिक स्वागत हम करते हैं श्रीमान वेदव्यास कामत, जो कि शासक है मंगलूर के, और इस वक्त उनकी उपस्थिति स्टेज पर हमें दिखाई देती हुई. और इस बीच उछाला 6 रनों के लिए. 1 more 6, 30 रन बिना किसी नुकसान के, 30 विदाउट लॉस. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और जहां तक सवाल है इस वक्त टीम श्रीनिवास का, तो इस वक्त कम से कम 60 का आंकड़ा उन्हें पार करना होगा अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है. तो विवेक गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, और एकनाथ रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वी तमिक रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए
लेग बाई का इशारा और लेग बाई किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर बिना किसी नुकसान के 31 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और विवेक बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट इज ऑफ स्टंप। और जस्ट बनाते हुए गेंदबाज विवेक और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है। एक नाथ पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, दुर्भाग्यवशात इस मैच में कुछ ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी नहीं दिखा पाए और आखिरकार बोल्ड आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए पहला विकेट गिर चुका है, जबकि स्कोर है 31 रन 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। 1.4 ओवर्स बोल्ड इन देयर इनिंग्स। अज्जू नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद था और सामना करने के लिए तैयार रहा विवेक की गेंदों का। और विवेक इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ उभरता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार रहा। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के व्यू का, तो ठीक उसी तरह का क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और विवेक का फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ड्राइव्स स्ट्राइक टू फील्डर एंड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। और गेंद इस वक्त फील्डर के हाथों से छूटी, इस वक्त मिड ऑन फील्डर के हाथों से और सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। कुछ हद तक तेज रफ्तार के साथ गेंद उनकी ओर आई थी और आखिरकार चौका प्राप्त करने में सफल बल्लेबाज। और 35 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। अज्जू के बल्ले से चौका यहाँ पर रख चुका है, अगली गेंद लेकर तैयार। दिस टाइम बाउंड हिम, गॉन फॉर अ बिग वन एंड द सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन देयर। विवेक गेंदबाज जो कि इस वक्त जश्न मनाते हुए विकेट प्राप्त करने के बाद और दूसरा विकेट गिर चुका है अज्जू के रूप में। इट्स 35 for 2 इन द ओवर नंबर 2 कंप्लीटेड। सो रमेश स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और इस वक्त तो नया ओवर प्रारंभ करते हुए और पहली गेंद लेकर तैयार। टॉप एज मौका हो सकता है स्वयं गेंदबाज के लिए, लेकिन वहां पर कैच को लपकने में असफल और इस बीच 1 रन जरूर मिला। हालांकि 2 फील्डर इस वक्त गेंद के नीचे आ गए थे, आखिरकार गेंद उनके बीच टिप्पा खाती हुई और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 36 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और रमेश फिर से एक बार तैयार, बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 प्रोग्रेस। गुड प्रोग्रेसिंग हियर फॉर टीम श्रीनिवास। और रमेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने तो ऊपर द विकेट, बाउंड हिम, गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस हिज विकेट। नेटवर्क जुड़ा दिल का कर धन डाउन कर लो खुशियां सारी। हो आया जश्न का अब मौका, नेटवर्क जुड़ा दिल का कर धन डाउन कर लो खुशियां सारी। जोश दिलों में बेनित है गेम मेरा सुपर है, अभी धुन पे है नाच दुनिया सारी। तो दिनेश भाई नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और रमेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 37 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 15 balls gone in their innings, 15 balls have to go. Lost it and a clean struck. 6 runs और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। Get it,
सिर्फ दे तो रमेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और बेहतर स्ट्रोक पिछले गेंद पर लगा चुके हैं बल्लेबाज छक्के के रूप में। अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दिनेश सामना करते हुए। ड्रिवन नॉट क्वाइट मिडली गेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। एक रन मिलेगा इस बीच और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज तैयार। Lofted, driven, finds the gap and a boundary. 48 for the loss of 3 wickets and 3 overs had been bowled. They are looking in a commanding situation now. 2 overs left in overall calculation in their innings. 2 ओवर का खेल बाकी और चौथा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए गुरु ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ओवर की पहली गेंद। इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंचे मिड विकेट पर, गेंद को रोका गया सीमा रेखा के अंदर। एक रन 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इनफैक्ट। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। Lofted 6 runs, 50 comes up for team Srinivasa, 55 for 3 now, 4th over in progress। और इस बीच गेंदबाज फिर से तैयार। Just trying to repeat the same thing, this time not succeeded और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन इस बीच नहीं मिलेंगे। 55 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैयार। Just gone for drive, not connecting that one properly और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 55 रनों पर स्कोर रुक चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। Lofted and that one a big one. 6 runs into the count of batsman. $61 for the loss of 3 wickets. और अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज this time but just trying to repeat the same thing, not succeeded और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 4 completed, 61 runs on the board, 3 wicket lost for team Srinivasa and now just the last over remaining in the innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी अब उनकी पारी में। राम स्टार्टिंग अ फ्रेश ओवर, फर्स्ट बॉल पहली गेंद को खेल दिया। इस वक्त वाइड स्पीड ऑन पर रन नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 61 रनों पर। 61 द स्कोर, 3 विकेट्स डाउन, 5 बॉल्स रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और राम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Lofted, flat version, 6 runs। for the loss of 3 wicket. Now just 4 balls remaining in overall calculation in their innings. और गेंदबाज राम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद। जस्ट वांटेड प्ले रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड, रन से नहीं मिलेंगे। स्कोर रुक चुका है 67 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 67 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 balls now remaining in their innings. Misses and a chance of a stumping missed by wicketkeeper. 2 balls left in overall calculation. Scoreboard stays at 67 for the loss of 3 wickets. Ram swings and 6 runs. So the last ball of their innings is now coming up. 73 the score. Lofted, and he just finished the innings in a style with a 6. 79 the total score for team Srinivas, and now the target for team Gopala Krishna is exactly 80. 80 रनों का लक्ष्य, ठीक 80 रनों का लक्ष्य
टीम गोपाल कृष्णा के लिए इस वक्त रखा टीम श्रीनिवास ने एग्जैक्टली 80 रन दे हैड टू स्कोर इन द स्टिपुलेटेड 5 ओवर्स और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त उनकी पारी का तो एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम हाजिर होंगे धन्यवाद थैंक यू श्रेयस बिरसाचे रमेश मालिमा मांगा येईल सजी हांका वेदिकेर येवको म्हणून प्रितीन निमून घेता सर तशी जी मुखारचे मॅच कटारी वीर आणि टीम वीरविठ्ठल हांगेलमध्ये चलचे आसा दोन कॅप्टनांनी टॉस येवको म्हणून निमून घेता Thank you very much, Gopi Bhattji, and thank you very much, Gopi. So welcome back for the innings of team Gopalakrishna. They have to get 80 target for team Gopalakrishna against team Srinivas, and wait and see how well the team Gopalakrishna will going to get this total of 80. And everybody knows that this is a small ground, and he won 80 runs. Definitely, it's going to be chaseable. The perfect example is yesterday, the 100 plus runs also chased in this particular cricket ground. So that is very difficult to say who will going to win this match. But altogether, I think it's a competitive total on the board. And now Srinivas will go into ball. Srinivas will go into defend this 79 and 80 runs required for the victory for team Gopalakrishna. So hard hitter of the ball, and Nagesh, and famously known as Kapil with the nickname, and starts with the wide. Ajju bowled the wide outside the line of leg stump, and go with that extra. They started their journey is one without loss of any wicket. Ajju from the commentary box and right arm over the wicket, bows to right-hander batsman Nagesh. Delivers. Again, that's going to be a wide. 1+4, 5 gifted runs. All the runs, which is definitely the extra runs, will going to be a bonus run here for the team Gopalakrishna. They will going to enjoy that extra runs because they're chasing 80 plus runs to win this match. 80 runs to win this match, and now the scoreboard is now 6 on the board. Ajju. Right arm over the wicket, bows to Nagesh, lofted, and lofted that one handsomely for a 6. And one more delivery, which is maybe the ball which is having a little bit bat onto that, so that umpire not interested. The score remains on 12 on the board without loss of any wicket. Right arm around the wicket, bows, lovely delivery indeed. Ball just curving back around the legs of the batter, and again that ball is going to be a dotted delivery. Good comeback here by Ajju after that 6. He bowled very good 2 deliveries. Right arm around the wicket, bows, lofted, and lofted that one for the huge one. 18 on the board now. The 2 6s which came from this over definitely going to be handy for the team Gopalakrishna. One more wide. That will going to be the bonus run. One more bonus run. Extra deliveries need to ball. And all runs are going to be very crucial in this match. Scoreboard now moves on to 19 on the board. Balls bowled him, cleaned him up with the beauty of the delivery there by Ajju in the occasion. Kapil again wanted to get that one to mid-wicket region, misses the line completely. The first wicket is back into pavilion of Gopalakrishna. It's 19 for the loss of 1 wicket. The last delivery which is remaining in this over, and Ramesh will go. Ramesh replacing Kapil, and wait and see how Ramesh will go into. How Ramesh will go in to get some runs from his bat. Wait and see. Has Ajju got a success at last in his first over, in the last ball remaining? Right arm over the wicket, bounce. This time again that ball is well within the reach of the batter. Misjudgment by Ramesh. Dotted delivery. First over completed. Chasing 80 to win this match. Gopalakrishna are 19 for the loss of 1 wicket. Warm welcome for Vedavas Kamatji, our proud MLA of South Constituency. Definitely is enjoying the game of cricket, especially the underarm cricket, which is a proud game of our coastal Karnataka, especially in the South Kendra district and Kasaragod district. They are playing that underarm cricket. And one was one of the most popular
game, underarm cricket. Of course, in this SSBT trophy, we have both underarm and overarm cricket. Again, that ball, absolutely fantastic one. Ball just coming along the carpet, and that is a good line to ball, as well as very good to see that bowler bowling along the carpet, along the ground. Again, Prakash Pai, right arm over the wicket balls. Lofted, straight to the answer field of Ajju, taken a very good catch. So one more wicket is back into pavilion, and Gopalakrishna team, which is looking in a trouble. So wicket number 2, which is back into pavilion. We are talking about the cricket tournament. Of course, in coming February, everybody knows that GPL Utsav will going to commence in Sahyadri Engineering Cricket Ground. And Kodial Sports Association organizing the Festival of Cricket at the GPL Utsav under the leadership of MLA Vedivas Kamaji. And here is again next delivery, right arm over the wicket, driven and right in the gap. 6 runs signal by umpire. So this kind of cricketing stroke which is badly required here for the team Gopalakrishna if they wanted to win the match. The new batter just came into middle. Gurudutt started to freeze his arm and he got a 6 here from the first delivery which he is faced of the bowling of Prakash. Lovely delivery, one more wicket. Oh, the leg spin magic is doing a trick here for team Srinivas. So one more wicket is back into pavilion now. Team Gopalakrishna are looking in trouble now, and the scoreboard is not moving, and absolutely the team which is Team Srinivas, in fact, they got 79 runs, and 79 is not easy unless you are getting 2 to 3 6 at least, which is required in every over, and it's very difficult sometime against good bowling performance. So Mahesh is one more. The batter will go into face next delivery of Prakash Pai. So far, he's so good in his bowling. Bowls some excellent deliveries. Mahesh will go into face the next delivery of Prakash. Oh, bowled him, cleaned him up. Absolutely fantastic display of leg spin bowling performance here from Prakash Pai, led direction. One more wicket, that means he is on hat-trick. Prakash Pai is on hat-trick. If he manages to get the hat-trick, it's going to be a first hat-trick of this tournament, the SVT Trophy 2024, which is proudly organized by SVT Volunteers Association in this cricket ground. The new batter in is Tilak. Prakash Pai. Bowling over the wicket now, changing his angle, keeping 4 fielders in the onside region and 4 in the off. Mid-off, extra cover point and short third man. Full toss, driven, lack of placement. Ball went straight to the hands of Eknath, one who got a lot of runs from the bat in this tournament. A fantastic over which is comes in India from Prashant. Absolutely good over. After completion of over number 3, it's 22, it's 25 on the board. 2 overs gone, 25 on the board. Still they have to get another 65 runs in 3 overs. 55, correction, 55 required from 3 overs. Eknath will go into ball his first over, one who got 65 runs in the morning match. Left arm batter and left arm bowler. Left arm around the wicket, balls. Loose delivery, pulls that one handsomely down to wideish mid-on for a 6. Little margin for error. You can't bowl the short pitch delivery when the dimension of the cricket ground is very small. The need to bowl accurately, and the short pitch definitely going to be punished by the batters. Left arm. Was caught behind the wicket. He's gone. Eknath strikes. After that 6, immediately, very next delivery, he managed to pick the wicket. And one more wicket is back into pavilion. Scoreboard is 31 on the board. That brings Ramapai into strike. Ramapai, one more senior most cricketer and experienced campaigner,
came into middle now with a lot of responsibility. Team is required some runs. The partnership pitch is badly required for Gopalakrishna if they wanted to win this match. Eknath, successful bowler. Third time in this over. Left arm. Far above southern line of off stump. Wide called by umpire. One more extra. 32. 32 on the board. Over number 4 in progress. Eknath. 3 in progress. Driven upishly and straight down the ground. 6 signal by umpire. Absolutely fantastic struck. And just that ball which came from the bat. They just middled that one very well. And they played that one very straight. With that 6, Coburn moves on to 38 on the board. 42 required. One more wide. One more extra. Need to re-ball that one. 39. This time lofted and he got a distance. Absolutely exquisite cricketing stroke. Just leaning into the drive, and he played it and aptly know that the small ground, it's a safe stroke to play, especially in front of the wicket. Scoreboard jumps into 45 on the board. One more lofted drive. He's on fire. He's on fire. You know exactly the kind of treatment which is required now. If the team is wanted to win the match, they needed to get a big stroke like a 6. And scoreboard jumps into 51 on the board. Driven, set to the hands of Aju. And no runs scored. Over number 3, which is Comston end. And 2 overs remaining. 29 runs required for the victory. Asking run rate exactly 14.5 runs per over. Just talking about the GPL Utsav, that will go into commence in the February 23, 24, 25. That means the Friday, Saturday and Sunday will be the Festival of Cricket in Sayadri Engineering College at Adyar. Coming February, please note the date, 23, 24 and 25. So Kiran Pai will go into ball the 4th over. Driven, straight to the hands of Aju. No chance of any run. 11 balls remaining. 29 required. Coming down the track and he misses the line. Kiran Pai strikes. So lot of noises we can see here in the ground, enjoying the game of cricket. And we are finding some good crowds today because Sunday holiday, they wanted to get some enjoyment, especially in this cricket ground. We are witnessing some fantastic game of cricket yesterday. The day number 1 day and night cricket tournament is organized today. Final day of this cricket tournament again. Oh, very lucky, absolutely very lucky. Ball hits the stump, but the bails are not off. That shows how slowly Kiran Pai is bowling. Even the ball hits the stump. Unfortunate for him that he will not going to get the wicket. So Kiran Pai again. Third time in this, 4th time in this over. Right arm over the wicket balls. Again, lovely delivery. Very good delivery in the air. Just a single. With that single, Scober moves on to 52. That means 28 required in remaining 8 deliveries. .28 required, 8 deliveries remaining. Driven upishly and safely, and he got a 6. 22 required, 7 balls remaining. Swept, and he will go to get the boundary. Now, 18 required from last over. Match is definitely going to be more interesting. .18 required from the last over. Rampai keeping the hope of winning this match alive for Gopalakrishna. He's batted really very well so far. Vittal Das is a batter, will go into face.
18 required from 6 balls. That means three maximum required. 3 sixes which is required for Gopal Krishna of this last over. The Sudhir is the one who is going to try for one good over, and is depending 18 runs in this last over. Sudhir, right arm over the wicket. He wanted to get the single, and oh my goodness. Absolutely. It's a disaster dismissal for Rampai. Absolutely disaster. The Rampai is the last hope of winning this match for Gopala Krishna, but the intention of Vittal Das is that he wanted to pick the single and wanted to give the strike for Rampai. lot of argument is going on here. The umpires are talking about which batsman is going to be out. So need to respect the umpire decision. Umpire will going to decide which batsman is going to be out, because when the time of bails which is removed, the batter one who are near to that stumps, that batter will going to be out. That means the Rampai, the batter will be the batsman going to be out. So we need to understand the frustration, because Rampai knows that is a very important wicket. So that's what the frustration we can see. That's all happening in cricket. It's a part of cricket. And everyone need to take that one with the true spirit of cricket. Please respect the decision of umpire. Yes, continue the match. Yes, no problem. So 5 balls, 18 runs required for the victory. The new batter in. 18 required from 5 balls. Excitement still here in this match. If 1 6 which is badly required for Gopala Krishna, Sudhir will going to try for one good delivery. 18 required. Mid on. Mid wicket, square leg. Coming down the track, driven that one firmly, boundary comes up. The match is not yet over. The match which is not yet over, now 14 to get from 4 deliveries. Sudhir, right arm over the wicket. Driven, one more boundary. He keeps hope of winning this match alive. Back-to-back 2 boundaries. 10 required from 3 balls. Sudhir, right arm over the wicket. Bounce, loose delivery, lofted, straight to the answer for Shivanand at mid wicket. Now, last chance. 10 required from 2 balls. Ten required from 2 balls, and very senior player Venugopal Chennai walking towards the middle. Venugopal Chennai will go into trying for his luck. He need to get 1 boundary and 1 6 if his team wanted to win this match. Venugopal Chennai got opportunity to become the hero here for this match, but Sudhir is also want to become a hero. Here you go, driven, but no run at all for that stroke. That means the last ball, 10 required. Even 6 will not going to help the team Gopala Krishna to win this match. Sudhir, right arm over the wicket, delivers. Driven, again no run. The victory of 9 runs for team Srinivas. Absolutely fantastic match which is comes to an end. And team Gopal Krishna, they tried their level best to win this match, but at last Srinivas winning this match with a close encounter
Absolutely nail batting finish. And Srinivas, they won the match. Thank you. Congratulations for the winners. नेक्स्ट मॅच टीम कटारी वीर आणि टीम वीरविठ्ठला. कटारी वीरा टॉस विन जाऊन फिल्डिंग तुम्ही फिल्डिंग देऊ का म्हणून निघून घेता सर. कटारी वीरा टॉस विन जाऊन फिल्डिंग जल्दीत लोगी तुम्ही फिल्डिंग देऊ का. So thank you very much. We are coming to the another above 45 category underarm cricket match. Team Katari Veeras takes on team Veera Vittala, and before the match will go into start of above 45, I request Mr. Trivikram to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. आमगेले मोगाचे बाबण्णा म्हणून म्हणता आम्ही वेदव्यास कामत मंगळूर दक्षिणाचे शासक प्रीतीने त्यांनी हंग द्यायलेची तुम मस्त धन्यवाद तुमका. టాస్ Toss won by Katari Veeras and they elected जी हाँ, स्वागत है सभी को इस दोपहर. एक कटारी वीरा फील्डिंग रबू का कटारी वीरा टीम आता नहीं. जी हाँ, सभी को स्वागत इस मैच. और अब हमारे सबके चहीते एमएलए साहब डी वेदव्यास कामत जी ये अब बैटिंग करते हुए इस बार फील्ड के साथ फील्ड सेटअप हो रहा है इस बार. और बल्लेबाजी के लिए इस बार डी वेदव्यास कामत हमारे एमएलए जी मैंगलोर साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे चहीते एमएलए साहब. देखना पड़ेगा क्या ये अब्बा बड़ी हिट लगा सकते हैं क्या इस बार वेदव्यास जी. तुम्ही घालू वेदव्यास जी को गेंदबाजी करते हुए इस बार आदित्य भट्ट गेंदबाजी करते हुए इस बार वेदव्यास जी को. आमगेले फास्टेस्ट बॉलर आदि भट्ट वेदव्यास कामत बैटिंग भारी चंद शॉट 4 रन. वाव भारी चंद एक बैटिंग ते आमगेले वेदव्यास कामत बाबण्णान म्हणले फास्टेस्ट बॉल कोणास तंका बॉलिंग दिव का म्हणून आदि भट्ट फास्ट बॉलर अनेक शॉट भारी चंद एक डिफेन्स ते कंचे रन पळो का एक 6 जाऊ का आमका एक 6 जाऊ का. कितली फास्ट असता तितली फास्ट घालो म्हणून सांगला बाबण्णानं पळो का. आदित्य भट्ट वापस बाबण्णा का भारी चंद एक शॉट 6 रन. वाव भारी चंद एक शॉट ते आशिल्ल्यान तू फास्टेस्ट बॉलर कोण असा पकडा. फास्टेस्ट बॉलर ओरम. हां आदी घाली आदी
ಓವರಮ್ಮ 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 ಬಾಬಣ್ಣ ಅನೇಕ ಭಾರಿ ಚಂದಿಗೆ ಬಾಲ್ ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌನ್ಸ ಇಲ್ತ ಸಲ ಬಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಕರು ಪಡೆಯಲ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ ಅನಿಕೋಣಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲೇತ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲರ್ ಜೌಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ವೈಡ್ ಬಹುಶಃ ಲೈನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಾಲ್ ಅನೇಕಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ವೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಬೈರ್ ಇಲ್ದ ಸಲ ಬಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಸರ್ ಅನ್ನ ಸೀದಾ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ बॉलिंग कथा आदित्य भट अजित भट भारी चंदे कवर ड्राइव 4 रन दोन्ही फील्डर मध्ये तुलाना वापस आदित्य भट भारी चंदे का बॉलिंग ते आदित्य भटाला सना मटा कट्टर बॉलिंगर तूफान अंडर आर्म आणि ओव्हर आर्म मिक्स करून आता विघ्नेश लेफ्ट आर्म बॉलर भारी चंदे बॉलिंग ते विघ्नेश आला होगूर सट्ट जाऊचा स्वल्प वेळ होता दोन्ही सिक्स पडेला अनेक सिक्स मेलतिಗೆ बोलಕ या बॉल अंतू भारी चंदे शॉट सरन लेफ्ट आर्म लेग स्पिन याद्रायन मारू पडेला यापटी थँक यू व्हेरी मच बारी का लायक फॉर्मर असेल तसं आमगेला शासक धन्यवाद थँक्यू हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जी हाँ जय श्री राम सभी को इस बार टीम वीर विठ्ठल वॉरियर्स के ओर से एक मिनिट तवलची मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच प्रकाश पै टीम श्रीनिवासाच्या प्रकाश पै तवलची मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच एक पटी स्टेज आ का थँक्यू इस बार वीर विठ्ठल वॉरियर्स के ओर से बल्लेबाजी के लिए मुरली और उनके साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं सी ए जगन्नाथ नाईक यांनी वेदिकेवर येऊ का अनेक मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफी देखो निघून घेतात सर और नॉन स्ट्राइक पर इस बार गुरु खड़े इस बार और सहदेव अपने पहले और की गेंद डालते हुए इस बार सीधा लॉफ्ट किया सीधा सीमा रेखा के बाहर अच्छा शॉट इधर लॉफ्ट किया मुरली जी ने सीधा सीमा रेखा के बाहर जाती हुई हालांकि उधर क्षेत्र रक्षक को गेंद लगा फिर भी वो लपक नहीं पाए गेंद को बाहर जाते हुए गेंद इसी के साथ टीम का स्कोर अब 6 रन और एक शॉट अच्छा शॉट इधर सीधा सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद अविश्वसनीय शॉट इधर मुरली जी द्वारा काफी आक्रामकता से खेलते हुए इस बार मुरली जी देखना होगा क्या इस बार भी बड़े हिट लगा सकते हैं कि अपने टीम के लिए मुरली जी सहदेव अपने तीसरी गेंद इस बार विकेट गिरती हुई जाना होगा मुरली को पेविलियन की ओर विकेट गिरा चकमा खा गए थोड़ा सा कमबैक इधर सहदेव का बहुत ही बेहतरीन गेंद बिल्कुल नहीं पड़ पाए गेंद को मुरली
थैंक यू डीजे। इस बार मंजुनाथ बल्लेबाजी कर रही है। इस बार वाइड करार दिया गया। इसी के साथ सीधा सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद। इसी के साथ 5 रन मिलता हुआ इस बार टीम वीर विठला वॉरियर्स को। एक्स्ट्रास उठाकर मारने की कोशिश लेकिन संपर्क नहीं कर पाए गेंद से। डॉट गेंद। आखिरी 2 गेंद बचे इस ओवर के। सहदेव द्वारा इस बार लॉफ्ट किया गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए। छक्का बटोरते हुए अपने टीम के लिए मंजुनाथ। अविश्वसनीय शॉट इस बार। आखिरी गेंद इस ओवर के सहदेव द्वारा इस बार डॉट गेंद। बिल्कुल नहीं पड़ पाए गेंद को। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 21 for the loss of 1 wicket. Veera Vittala Warriors at the completion of 1 over. और इस बार 68 साल के गेंदबाज इस बार जगदीश जी और सीधा लॉफ्ट किया। अत्युत्तम शॉट इधर गुरुद्वारा। अत्युत्तम शॉट इधर सीधा सीमा रेखा के बाहर उठाकर मारा गेंद को। काफी वरिष्ठ गेंदबाज इस बार जगदीश। और सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर अब 31 for the loss of 1 wicket. जगदीश जी इस बार अच्छा शॉट लेकिन उधर सीमा रेखा के पास और अच्छी थ्रो उधर गणेश भट्ट द्वारा। देखना पड़ेगा क्या मंजुनाथ इस बार बड़ी हिट लगा सकते हैं क्या अपने टीम के लिए। चौका बटोर सकते हैं क्या देखना पड़ेगा इस बार। जगदीश गेंदबाजी करते हुए इस बार मंजुनाथ उतना अच्छा संपर्क नहीं। डॉट गेंद। आखिरी 2 गेंद बचे जगदीश द्वारा। काफी सीनियर प्लेयर जगदीश। इस बार खड़े होकर मारने की कोशिश लेकिन हेड हुआ। डॉट खाते हुए इस बार मंजुनाथ। आखिरी गेंद इस बार सीधा सीमा रेखा के बाहर। अच्छी ले में है इस बार मंजुनाथ। अच्छा शॉट इधर मंजुनाथ द्वारा। इसी के साथ ओवर समाप्त जगदीश जी का। टीम का स्कोर बढ़कर अब 36 for the loss of 1 wicket. वीरा विठला वॉरियर्स सामना करते हुए इस बार टीम कटारी वीरास को। गुरु नए बल्लेबाज इस बार। वाइड गेंद। इस बार उठाकर मारा गेंद को गुरु ने। जॉनी जी के गेंद पर अविश्वसनीय शॉट इस बार। गुरु सामना करते इस बार और गेंद सीमा रेखा के बाहर। अच्छा शॉट, अच्छा प्रयास लेकिन भाग्य का साथ मिला और चौका मिला इस बार टीम वीर विठला वॉरियर्स को। डेड बॉल। मिस हुआ गेंद हाथ से। ओह डॉट इस बार गुरु। आग की तरह बरसते हुए इधर जॉनी जी इस बार उठाकर मारा गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर। अविश्वसनीय अद्भुत शॉट इस बार गुरु द्वारा।
बिल्कुल ले में लग रहे हैं अब, काफी आक्रामक दिखते हुए इस बार गुरुजी। नो बॉल करार दिया गया अंपायर द्वारा। फ्री हिट अब इधर, ओ वाह, डॉट गेंद, बिल्कुल नहीं संपर्क कर पाए, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को, टप्पा खाते हुए इस बार गुरु। फुल टॉस गेंद, ये भी संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बढ़कर अब 54 for the loss of 1 wicket. नए गेंदबाज इस बार गणेश भट्ट जी, गेंदबाजी करते हुए मंजुनाथ को इस बार जमीन पर गेंद और स्वीप किया, इस बार सीधा सीमा रेखा के बाहर, चौका मिला इधर मंजुनाथ को, अच्छा स्वीप किया इस गेंद को, अविश्वसनीय शॉट, लेकिन विकेट की तलाश पर इधर गणेश भट्ट जी इस बार उठाकर मारने की कोशिश, सीधा कमेंटेटर्स बॉक्स पर मारा इस बार गणेश भट्ट जी ने, गणेश भट्ट जी के गेंद पर मंजुनाथ ने। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, सीमा रेखा के बाहर 4 रन बटाते हुए इस बार मंजुनाथ। टीम का स्कोर बढ़कर 68। इस बार और एक छक्का मंजुनाथ जी के बल्ले से, अविश्वसनीय शॉट, लह में लग रहे इस बार मंजुनाथ। विकेट की तलाश पर इस बार गणेश भट्ट जी, क्या विकेट निकल सकते हैं देखना पड़ेगा इस बार सीधा हाथ पर जाना होगा मंजुनाथ को पेविलियन की ओर इस बार। हालांकि बहुत ही अच्छे ले में दिख रहे थे, लेकिन टेम्प्ट किया गणेश भट्ट जी ने, जाना होगा इस बार। टीम का स्कोर इसी के साथ 74 for the loss of 2 wickets. नए बल्लेबाज राघवेंद्र, इस बार उठाकर मारा राघवेंद्र जी ने, सीधा सीमा रेखा के बाहर छक्का बटोरते हुए अपने टीम के लिए आक्रामक दिख रहे हैं इस बार। आते ही चौके से किया शुरुआत टीम वीर विठला वॉरियर्स की ओर से, आक्रामकता से बल्लेबाजी करते हुए इस बार राघु जी। नए गेंदबाज विनय, इस बार गेंद हवा में, छक्का, गुरु जी में शामिल है इस बार राघु जी के साथ। अपने टीम के लिए छक्का बटोरते हुए इस बार संपर्क नहीं कर पाए, सिंगल लेकर संतुष्ट होना होगा इस बार दोनों बल्लेबाजों को। राघु जी इस बार बल्लेबाजी करते हुए, विनय जी गेंदबाजी, अच्छी गेंद, देखना पड़ेगा क्या इस बार विनय जी विकेट चटका सकते हैं। इस बार गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, अविश्वसनीय शॉट इधर गुरु द्वारा। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 92। इस बार सीधा सीमा रेखा के बाहर, हवा में गेंद, छक्के में कर दिया तकदीर, अच्छा शॉट इधर। आखिरी गेंद इस ओवर के विनय द्वारा
देखना पड़ेगा अब क्या ये विकेट चटका सकते हैं, क्या देखना पड़ेगा इस बार। विनय आखिरी गेंद अपने ओवर के डालते हुए, डॉट गेंद, डॉट से किया ओवर की समाप्ति। "99 runs is the target given by Veeravichala Warriors to the Qatari Veeras." "99 runs is the target given by Veeravichala Warriors to the Qatari Veeras." इस बार बल्लेबाजी के लिए सहदेव उतरे हैं अपने टीम की ओर से। राघव जी अपने पहली गेंद डालते हुए इस बार गेंद स्टंप्स को लगी, हालांकि बेल्स नहीं उड़ी। इसी के साथ भाग्य के साथ मिला सहदेव जी को। दूसरी गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जाते हुए गेंद, अविश्वसनीय शॉट इधर, अच्छा स्वीप इधर सहदेव द्वारा। इस बार देखना पड़ेगा क्या ये बड़ी हिट लगा सकते हैं क्या। इस बार विकेट की संभावनाएं थी उधर, कैच नहीं लपक पाए रवि भट्ट जी, कैच नहीं लपक पाए उधर। विकेट की संभावनाएं थी लेकिन भाग्य के साथ दूसरी बार मिलते हुए इधर सहदेव को। इस बार उठाकर मारा, सीधा सीमा रेखा के बाहर छक्का बटोरते हुए इस बार सहदेव। You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. इस बार Pressure's on. विकेट गिरते हुए जाना होगा सहदेव को वापस। अच्छा कैच इधर। नेक्स्ट मॅच सुधींद्रा वॉरियर्स आणि नागनगट्टे पॅन्थर्स, दोन टीमांच्या रजिस्ट्री कोर का। सुधींद्रा वॉरियर्स आणि नागनगट्टे पॅन्थर्स दोन टीमांच्या जल्दीतले होगी प्लेयर रजिस्ट्रेशन कोर का। अच्छा कैच उधर मंजुनाथ द्वारा, अविश्वसनीय कैच, लेकिन नए बल्लेबाज अब जॉनी जी। इस बार विकेट वापस जाना होगा ज्ञानेश्वर को Everyone's watching. पेविलियन के ओर। Serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. दो विकेट Got it all, believe it. गिरते हुए When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, Samina, mina, sangalewa. 'Cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa.
This time for Africa. नए गेंदबाज रवि भट्ट जी। इस बार हल्का सा टच हुआ गेंद को, सीधा सीमा रेखा के बाहर जाते हुए गेंद। चौका बटोरा अपने टीम के लिए। विनय इस बार अच्छा शॉट उधर, सीधा सीमा रेखा के बाहर। चौका के ऊपर चौका बटोरते हुए लय में दिख रहे इस बार विनय जी। इस बार सीधा सीमा रेखा के बाहर हवाई फायर करते हुए विनय इस बार। अविश्वसनीय शॉट, छक्का बटोरा अपने टीम के लिए। विनय इज ऑन फायर। इस बार सीधा उठाकर मारा है और एक छक्का, हवाई फायर। फील्डर बने दर्शक, गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में। for the loss of 2 wickets. अच्छा शॉट उधर, लेकिन सीमा रेखा के बाहर। चौका बटोरते हुए इस बार विनय। आखिरी गेंद इस ओवर के रवि भट्ट द्वारा। क्या रवि भट्ट इस बार विकेट चटका सकते हैं, देखना पड़ेगा। 38 for the loss of 2 wickets. इस बार और एक चौका, चौके से किया ओवर की समाप्ति। (42 for the loss of 2 wickets. (57 of 18 balls. नए गेंदबाज श्रीनिवास कामत। बल्लेबाज प्रशांत इस बार नहीं पढ़ पाए गेंद को। डॉट गेंद प्रशांत। श्रीनिवास की दूसरी गेंद इस बार सीधा उठाकर मारा है प्रशांत ने, सीमा रेखा के बाहर, हवाई फायर। अच्छा शॉट इधर प्रशांत द्वारा, दर्शक दीर्घा में गेंद। श्रीनिवास कामत। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल के साथ चौका। अभी फ्री हिट की गेंद श्रीनिवास द्वारा इस बार, देखना पड़ेगा क्या करते इस बार प्रशांत, लेकिन विकेट की संभावनाएं थी, लेकिन लेग बाइस करार दिया गया अंपायर द्वारा इस बार। देखना पड़ेगा क्या विनय अपने लय में बरकरार है कि नहीं, देखना पड़ेगा इस बार। सामना करते हुए श्रीनिवास को इस बार बाउंड्री के पास गेंद, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षक द्वारा।
चौका करार दिया गया अंपायर द्वारा इस बार विनय बिल्कुल नहीं पढ़ पाए इस गेंद को, डॉट हुए। विकेट की तलाश पर इस बार श्रीनिवास कामत। इस बार हवाई फायर सीधा सीमा रेखा के बाहर, अविश्वसनीय शॉट इधर विनय द्वारा। $64. $35 needed in 12 legal deliveries. 35 needed in 12 legal deliveries for Qatari Viras to register their victory. This time Prakash प्रशांत द्वारा अविश्वसनीय शॉट, सीधा हवाई फायर, विकेट बोल्ड किया। इस बार प्रशांत को जाना होगा पेविलियन के ओर। अच्छा गेंद इधर मोहन पै द्वारा। नए बल्लेबाज रवि इस बार उतरे बल्लेबाजी के लिए टीम कटारे विरास के ओर से। उनको साथ देते हुए इस बार विनय नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हुए। इस बार मोहन जी का गेंद बीट किया इस बार रवि को। बीट किया इस बार रवि को मोहन जी ने। देखना पड़ेगा क्या विकेट चटका सकते हैं क्या इस बार। इस बार गेंद पैर को लगा और लेग बाइस करार दिया गया अंपायर द्वारा। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 71 for the loss of 3 wickets. इस बार हल्का सा टच हुआ लेकिन सीधा विकेट कीपर के हाथ पर। 7 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। इस बार सीधा हवाई फायर सीमा रेखा के बाहर उठाकर मारा है। अविश्वसनीय शॉट, बिल्कुल ले में रख रहे इस बार विनय जी। सिर्फ 6 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता। 22 needed in 6 legal deliveries. इस बार फ्लैट छक्का जड़ा इधर। रवि इस बार बल्लेबाजी करते हुए, मुरली गेंदबाजी में। इस बार डॉट हुए लेकिन विकेट गिरते हुए जाना होगा रवि को वापस पवेलियन के ओर।
नए बल्लेबाज गणेश भट्ट। मुरली जी गेंदबाजी में इस बार वाइड करार दिया गया अंपायर द्वारा। तीन गेंदों में 15 रन की आवश्यकता। इस बार गेंद हवा में, चौका करार दिया गया अंपायर द्वारा। आखिरी 3 गेंद बचे इस ओवर के। तीन गेंद में 10 रन की आवश्यकता। इस बार डॉट हुए इधर गणेश भट्ट जी, लेकिन दो गेंद बचे इस ओवर के। मुरली द्वारा देखना पड़ेगा इस बार गणेश जी बड़ी हिट लगा सकते हैं क्या इस बार अपने टीम के लिए। इस बार बोल जाना होगा गणेश को वापस। अच्छी गेंद इधर मुरली द्वारा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए गेंद को गणेश जी। आखिरी गेंद बचे इस ओवर की। नए बल्लेबाज वसंत टीम कटारी वीरास के ओर से बैटिंग करते हुए। आखिरी गेंद इस मैच के। इस बार हवा में गेंद, लेकिन नो मैन्स लैंड पर गिरते हुए गेंद। विजय पक्का किया इधर वीर विठला वॉरियर्स ने विजय हासिल किया। थैंक यू। तवलची मॅच विंजलाल टीम वीर विठ्ठल ऑलरेडी फायनल अपोईल टीम। तवलची मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच वीर विठ्ठलाचे गुरुदत्त तवलचे मॅन ऑफ द मॅच स्टेजार येवक म्हणणे म्हणून घेता सर गुरुजी काही।
धन्यवाद श्रीमान त्रिविक्रम। और जहां तक सवाल है इस वक्त सेकंड लास्ट मैच ऑफ द लीग स्टेज इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट बिटवीन सुधींद्र वॉरियर्स वर्सेस नागनकट्टे पैंथर्स। और नागनकट्टे पैंथर्स ने टॉस जीतने के बाद इस वक्त फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। फलस्वरूप उनके फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके। दोनों आरंभिक बल्लेबाज श्रीदत्त और नरसिम्हा शनाई इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज नागेश। और इंतजार है इस वक्त मैच की पहली गेंद का। इस मैच के बाद लीग स्टेज का अंतिम मैच खेला जाएगा अग्रसाली सुपर किंग्स और गोपुर ग्लैडिएटर्स के बीच। टीम कटारी वीरा सगळे टीम ओनर समेत स्टेजार एक पटेव का टीम कटारी वीरा। Full toss, straight to fielder at first ball, and the batsman departs. Sridatta, the man dismissed, just pushed the ball gently, but can't punch the gap, and cover point fielder took the successful catch. टीम गोपालकृष्ण टीमाचे सगळे टीम ओनर समेत स्टेजावर येऊ का टीम गोपालकृष्ण आणि टीम कटारी वीरा दोन्ही सगळे टीम तुमगे ओनर समेत स्टेजावर येऊ का निमगुन घेता सर। तो करुणा सागर का आगमन होता हुआ पहली गेंद पर पहला विकेट इस वक्त खो चुका। और करुणा सागर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए। और करुणा सागर सामना करने के लिए तैयार इस वक्त नागेश की गेंदों का। और नागेश ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार करुणा सागर के लिए। ये गेंद इस बार स्टीयरिंग इट फाइन जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। खूबसूरती के साथ गेंद को स्टीयर कर दिया था अंतिम क्षण में। और गेंद इस वक्त विकेट कीपर के बाईं ओर से होती हुई सीधे डीप थर्ड बैन सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त करुणा सागर के बल्ले से लगता हुआ। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका। 4 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ थ्रो पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है सुधींद्र वॉरियर्स को अगर उन्हें इस मैच में विजय दर्ज करना है तो। और स्टेज एंड की ओर से दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाज नागेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। और नरसिम्हा शनाई जो कि प्रमुख खिलाड़ी है उनके टीम के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस आउटसाइड एज डाउन टू गली नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। दिस द मैच नंबर 12 ऑफ डे नंबर 2 ऑफ दिस prestigious cricket tournament SVT Trophy 2024 is now progressing here. और करुणा सागर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नागेश की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट पटकी हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त। वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 7 रनों पर माफ कीजिए बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस टक्ड अवे एंड स्ट्रेट टू फील्डर। दिस कुड बी ट्रबल एंड दिस टाइम इज गॉन। टीम कटारी वीराची एक पटी स्टेजावर याची टीम कटारी वीराची स्टेजावर याची तशीच टीम गोपालकृष्ण तुमगेले कितले प्लेयर असं पूरे जण एक पटी ओनर आणि पूरे समेत स्टेजाला येऊ का। तो यहाँ पर करुणा सागर का विकेट गिर चुका है और 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालत तो कुछ हद तक नाजुक से इस वक्त दिखाई देती हुई सुधींद्र वॉरियर्स के। और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ नागेश। और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार नरसिम्हा शनाई। और गेंदबाजी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर नागेश तैयार। हल्के से गेंद को मोड़ा नरसिम्हा शनाई ने स्टंप्स को कवर करते हुए शॉट्स को लेग पर, लेकिन रन इस बीच नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड 7 रन्स ऑन द बोर्ड 2 विकेट्स लॉस्ट एंड अ मिक्स स्टार्ट फॉर सुधींद्र वॉरियर्स। और जहाँ तक सवाल है इस मैच के टॉस का तो नागनकट्टे पैंथर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है सुधींद्र वॉरियर्स के खिलाफ। और उनके पारी के पहले ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हर्षित ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद कट करना चाहा, चूंकि कुछ ज़्यादा उछाल लेते हुए ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और फिर से एक बार हर्षित तक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। फुल टॉस ऑफ द टॉस खेला, मिड विकेट पर रनआउट का खतरा, थ्रो पहुंचा, निशाना टकरा चुका है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है और जोखिम भरा रन न चुराना चाहता, भुगतान उन्हें करना पड़ा और इसी के साथ वो आउट होकर पेवलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज अनंत प्रभु का आगमन इस वक्त होता। वन निस्संदेह इस वक्त सुधींद्र वॉरियर्स को एक साझेदार यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद टेरिफिक, एब्सोल्युटली टेरिफिक फ्रॉम हर्षित। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, ये गेंद को हल्के से ढकेलना चाहा, चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। इससे पहले के शॉट कवर पर फील्डर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करे। बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन के साथ अपना छोड़ बदल सके और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से एक बार हर्षित तक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ निकाला 4 रनों के लिए। फैंटास्टिक स्ट्राइक ऑफ द बैक फुट। गेंद को इस वक्त कट किया था खूबसूरती के साथ, पंजों पर उछलते हुए पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान और 4 रन बल्लेबाज प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। और इस बीच अनंत प्रभु के द्वारा बेहतरीन स्ट्रोक, एक बार फिर से हर्षित तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर, पैरों पर गेंद को टकराई, बैकफुट पर जाकर गेंद को ढकेलना चाहते थे, चूंकि ओवर की समाप्ति और 5 रन सिर्फ इस ओवर में हर्षित ने प्रदान किए। 2 ओवर के बाद ऐसा कहना पड़ेगा अभी भी सुधींद्र वॉरियर्स के बल्लेबाज अपनी सही राह को तराशते हुए जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। मैच नंबर 25 इस श्रृंखला का यहाँ पर प्रगति पर। मैच नंबर 25 ऑफ द टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और नरसिम्हा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज सुहास कामत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिना ओवर द विकेट, लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इनफैक्ट फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार ऑन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। एक बार फिर से स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 14 नाउ, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कट करना चाहा, बॉटम एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, स्क्वायर कट करना चाहता, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराता हुआ, निचला हिस्सा टकराता हुआ, बॉटम एज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और पहले टिप्पे के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें ज़रूर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 30 ओवर इस वक्त प्रगति पर। अनंत सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त गेंदबाज करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए कट करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज इस बीच ये गेंद टॉप एज, मौका, आसान सा कैच इस वक्त मिड विकेट फील्डर के हाथों में।
गोपाल कृष्णा नए बल्लेबाज के रूप में 14 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. फुल टॉस. That's outside edge. Gone through a quick single. He ran quite lately by Narasimha at the last moment, but completed a single run very safely in the end. 15 now. 16 in fact for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. They badly required a couple of boundary at this city to accelerate their run rate. Good one. Absolutely fantastic delivery. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. 17 for the loss of 4 wicket, and the third over has been came to an end. This is going to be one more low scoring match, and 17 runs scored in the first 3 deliveries. First 3 overs in fact. 2 overs left in their innings overall in overall calculation. Match number 25 of this tournament is now progressing here, and the 12th match of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2024, is now progressing here, which proudly presented by SVT Volunteers Association and the name of Volunteer Premier League Season 2 2024. So 4th over starts. Raghavendra, the bowler, starts the fresh proceedings. First ball comes. Right arm around the wicket here he bowls. 4th over starts in their innings. Narasimha is now going to face. First ball. कट किया खूबसूरती के साथ गली पर. नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. स्ट्राइक रोटेट करना इस वक्त बेहद ज़रूरी बन चुका है ये तो बल्लेबाजों के लिए, और स्ट्राइक रोटेट के साथ साथ एक बेहतर साझेदारी निभाना भी बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी बन चुका है. फुल टॉस ड्राइव किया इस वक्त. सिलमिडा पर रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. रन्स आर हार्ड टू कम बाय फॉर द बैट्समैन ऑफ सुधींद्र वॉरियर्स एट दिस सिचुएशन. और एक बार फिर से गेंदबाज इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहता. लेग कटर गेंद थी, और अंतिम क्षण में गेंद नरसिम्हा सेना के पैरों पर टकराई. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नरसिम्हा सेना के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. छेड़ता नहीं करना चाहा, चूंकि गेंद कुछ ज़्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. स्टंप्स को कुछ हद तक कवर करने के बाद गेंद तक पहुंचना चाहता बल्लेबाज ने, पहुंच नहीं पाए. डॉट गेंद, और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार रहा. इस बार गेंद को इस वक्त टैप कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए. तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार रहा, और गोपाल कृष्ण इस वक्त सामना करते हुए. Drives down to mid-off, gone through for a quick single and get it comfortably at last. So 4th over came to an end, 21 on the board, 4 wickets down, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings. Next match last. How important match next? तो गेंदबाजी शुरू करते हुए सौरभ भक्ता. 21 आफ्टर 4 ओवर्स. सौरभ भक्ता पहली गेंद. इस बार बैक टू द बॉलर के दिशा में, और यहां पर आसान सा रन आउट हो चुका है. सीधे गेंदबाज के हाथों में गेंद को खेला था. रन आउट के रूप में विकेट गिर चुका है. 21 for 5. तो सौरभ भक्ता गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. नरसिम्हा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अपने टीम के लिए एक बेहतर पारी नरसिम्हा इस वक्त खेलते हुए. इस बार ट्रैक्स इट अवे इनटू द गैप एंड गॉट अ बाउंड्री. फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ नरसिम्हा शनाई. स्क्वायर ऑफ द विकेट, पंच दैट वन इन बिटवीन पॉइंट एंड कवर पॉइंट, और खूबसूरती के साथ चौका प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक नरसिम्हा शनाई के बल्ले से लगता हुआ. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 25 for the loss of 5 wickets in the over number 5th and the last in progress in their innings. सौरभ भक्ता एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नरसिम्हा शनाई के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी
फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को उछालना चाहा, लगभग बल्ले के अति निकट गेंद टिप्पा खाती हुई और बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से एक बार सौरभ भक्ता गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नरसिम शनाई के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर, वाइड, 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। 3 balls now left in their innings. Driven straight down the ground and finds the gap as well. Fantastic struck came from the bat of Narsim Shanai. Off the toes गेंद को खेला था, straight down the ground और कोई फीडर वहां पर नहीं। लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन पर फीडर मौजूद थे लेकिन थोड़े से स्क्वायर और कोई मौका नहीं उन्हें रोकने का गेंद को, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुके 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक नरसिम शनाई का। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा 4 रनों के लिए। 2 consecutive boundaries for नरसिम्हा शनाई। इस बार गेंद बल्ले का अंदरूनी निचला हिस्सा लगने के बाद, बॉटम एज जिसे कहते हैं, टकराने के बाद गेंद निकली इस वक्त फाइन विकेट कीपर के दाईं ओर से 4 रनों के लिए। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गेंदबाज driven down to mid on, gone through for a quick single. In fact, they're looking for the second, but in fact they come back for the second, and this time he won't survive. And the total score is 35 for the loss of 6 wicket in distributed 5 overs. So they have to score for victory. 36 runs, so now they have to score for victory. DJ, please stop. 36 they have to score for victory. 35 the target. 35 the runs scored by Sutindra Warriors. 36 the target for Nagarkatte Panthers. Exactly 7.20 runs per over. The required run rate for them. They have to score 36 in the stipulated 5 overs. That means in the stipulated 30 deliveries with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. देखते हैं 36 रनों के लक्ष्य तक नागरकट्टे पैंथर्स के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं। उनकी पारी की शुरुआत होगी एक चंद लम्हों बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब नागरकट्टे पैंथर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। एंड नाउ इट्स आल्सो टाइम फॉर डीजे। हमारे गांव में चुत्तर धोने से पहले तमंचे चलाना सिखाते हैं। Thank you, DJ Dikshit. And we are back into the game now. And the team, defending champion Nagarkatte Panthers, need to get 36 runs in their stipulated 5 overs if they wanted to win this match. And they're playing their last league stage matches, and they wanted to finish these last league matches with the victory. And at the same time, Sudhindra Warriors also, even though their performance not really up to the mark in this second edition of SVT Trophy 2024, but certainly they also wanted to finish their journey with this SVT Trophy 2024 with the victory. And wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. And opening batters, Ashit is on strike, the first ball. Again, nicely turns that one. Short pitch delivery. Can't do the mistake when the batter like Ashit in front of you. All we can see that little margin for error. And pitching a short pitch delivery, they need to pay the penalty. The first ball nicely turns that one down to square leg region for a 4, and they started very well. Nagesh bowled a little bit warm up delivery of the evening.
second time in this over. Bounce this time. Oh, wanted to cut that one, but bottom edge of the under edge of the bat ball went to the hands of wicketkeeper. Slower one attempted by Nagesh in the negation. Arshit too early into that cut shot, but fortunately for him, ball which is not carried to the wicketkeeper. Again, Nagesh, lovely Yorker line delivery, negotiated very well by Arshit in the negation. Of course, a good delivery indeed there from Nagesh. He wanted to get Arshit back into pavilion with a beautiful Yorker line delivery, but at last moment Arshit got a bat onto that and he got the single down to short mid-off region. Again, Saurav now joining the party. Loose delivery, full toss delivery, and quite easily turns that one down to square leg region boundary for 4 runs. So they starts well, and already 9 on the board without loss of any wicket in the over. Number first is in progress. Nagesh searching for the right line, right arm over the wicket bounce. Oh, bowled him, searching for the right line, and he got a right line to dismiss Saurav back into pavilion. Absolutely, that ball looks like the batter is in a two-mind whether go for the front foot or back foot, but by thinking itself, the ball did the trick, which is little bit kept low in the last moment. Ball got an inside edge of the bat, and wicket number 1, which is back into pavilion. ते नरसिंहाना कूल जाऊ का नरसिंह अवतार दाखोवचे नज सौरभ आमगेलोची पाप मेळ्ळा म्हूण पाप. The both are very good friends, understandable. Saurav and Narasimha. I am watching these two players are playing for the same team, but unfortunately today they're playing against each other. And but of course, a little bit of fun which is required in the ground. And even Narasimha knows that they're playing both the teams knows that they're playing their last league stage matches. They wanted to get the victory desperately, and this is not a good start for a team. Defending champion Naganakatte. They got runs what they really wanted in the first over, even though they lost a wicket of Saurav, but not really bothered about that wicket. Again, the next one. Bowled him! What a delivery there from Nagesh. Nagesh knows that getting a single wicket is not good enough for his team. He need to get the wicket. In each and every over, so that he got 2 wickets, even the little bit expensive over, but he managed to send 2 batters back into pavilion. A very good finish for the over there from Nagesh. 2 beautiful deliveries, isn't it? Very quality deliveries indeed there from Nagesh to dismiss 2 very good quality batters back into pavilion. Now, after completion of first over, chasing a total score of 36 to win this match. The total score is 9 on the board. 27 required now in remaining 4 overs. 27 required for the victory. From the far end, looks like Karuna Sagar will go into starts this fresh over, and if you see the field there, field set, third man, there is third man, one at backward point, short cover point and mid-off, one fielder down at mid-on and mid-wicket, square leg in front of square and behind the square, wicket keeper standing well behind the stump. Again, first ball, right arm over the wicket, short pitch, nothing much to do with the delivery, it's going to be a wide, absolutely right. It is a bouncer which is going over the head of Arshit, and rightly so, umpire called it wide. 1 from the over, and they got a 10 now. 10 for the loss of 2 wicket. Karuna Sagar from the far end. Right arm over the wicket bounce. Again, try to turn that on onside region. Good delivery there from Karuna Sagar. This time, Arshit little bit shuffled across the line of delivery. Tried to get that one into fine leg region or square leg region. He tried that one, but missed it completely. Then wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Karuna Sagar. From the far end, saving in from the far end, right arm over the wicket balls, beautifully driven down to backward point region for an easy single. With that single, scored Namozan to 11 on the board. 11 means they needed another 25 more runs required for the victory, and this is in 23 deliveries, 22 deliveries, let me correction. Deepak back on strike, jersey number 11 for Naganakatte Panthers, Karuna Sagar. A lovely delivery indeed. Absolutely perfect one there from Karuna Sagar. Pitching the ball in the right area and getting some little bit movement from that delivery. Then Deepak, of course, couldn't manage to judge that line of the delivery, length of the delivery. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump, Narasimha, did the rest. Back to bowler, Karuna Sagar. Delivers nicely played there by Deepak. Absolutely good technique in the negation. Deepak covered his stump
and then off the back foot he plays it down to short mid wicket region for a single. Soft end comes into play in the negation to get the single there, single for Deepak. With that single scored moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 2 wicket. Arshit is a key man for team Naganakatte Panthers. Driven. Okay, look at the control of that stroke. Absolutely good one to watch Arshit. Because once he's made a mind that he wanted to go for the expansive drive towards extra cover, but seeing that the line and length is not good enough for him to drive the ball, just checking the stroke in the last moment and just got a single down to short mid off region, and with that single scored moves on to 13 on the board for the loss of 2 wicket. Karunasagar bowls to Deepak. Oh, lovely delivery indeed. Absolutely perfect one there from Karunasagar. It's a Yorker line delivery, but line which is outside the line of off tempo. So Deepak missed it. Good over there from Karunasagar. Tidy over. And that's what the team Sudhindra Warriors needed in this situation. After that, it's a little bit expensive first overs. After completion of over number 2, chasing a total score of 36 to win this match. 13 for 2. 23 required in 3 overs. Akshay, new bowler, one more very good bowler, the quality bowler for the side of Sudhindra Warriors, and wait and see how well Akshay will go into finish this tournament with one good over for his team. Akshay from the far end. Akshay drives that one, but this time a ball which is went straight to the hands of short extra cover region, so that no question of any run at all. So Akshay starts well with a slower one, and second time in this over from the far end. Right arm over the wicket delivers. Experiment, absolutely the experiment there from Akshay. Maybe he wanted to bowl that delivery which is he wanted to try the slower one, try to get that one around the legs of batter, but ball just missing the line completely. White call by umpire with that extra score, but moves on to 14 on the board for the loss of 2 wicket. Lovely delivery once again, drawing the batsman onto the back foot. It's a good line actually. And one problem here for Rashid is that whenever there is slower one is coming, he's a little bit struggling, because he's the kind of batter, he loves to ball which comes to him very quickly. When it's a slow ball, you have to adjust his stroke, and Akshay is doing a right job so far. This time I'm talking about again the slower one there from Akshay. He got a good run up, but while he's delivering the ball, he delivers the ball little bit late, and that's why it's a bit of confusion for the batter. One more single, 15 on the board, and for the loss of 2 wicket in fact, and Akshay again from the far end. Cuts it and misjudgment. All we can see that the fielder in the short third man region need to see that ball will go into turn, because whenever the ball is edging, whenever the ball which came from the edge of the bat, ball definitely going to turn, and that's what the fielder in the short third man region need to be very careful. They need to judge the turn of the ball. Misjudgment and costing a boundary. With that boundary scored moves on to 19 on the board for the loss of 2 wicket. Akshay from the far end. To Deepak, and Narasimha Senai couldn't manage to reach that catch, and ball runs down to third man boundary for 4 runs. All happening here. Narasimha Senai couldn't manage to extend his hand towards that catch, which is a little bit away from his trying hands. So got one more boundary there. 23 on the board. Full toss, driven firmly, one more boundary. So 3 boundaries came in this over of Akshay. Then team Naganakatte Panthers are looking in driver's seat. 3 gone, it's 27 on the board. That means they needed another 9 runs to win this match in 2 overs. 9 required in 2 overs. 12 balls, 9 runs required for the victory, excluding wides and no balls, 12 balls remaining. And looks like a team Naganakatte Panthers are absolutely completely control this match, because they got a 8 wicket stand, but Arshid is a key man, still batting in the middle. He's got a fantastic tournament from his bat and ball, and he knows that this is the one match, is the last league stage matches. He need to get some batting practice. Off the back foot, driven, but lack of placement. Ball went to the hands of a short extra cover region, and there will be no chance of any run. Gopalakrishna. Ball sniped, lovely placement. What a great shot there from Arshid there.
This time hit the ball pretty promptly, little bit left of that fielder at a short extra cover, and the ball went like a trace bullet. Scoreboard moves on to 31, just 5 runs away from the victory. With this victory, definitely the Panthers will go to get into the topper in the points table. Driven again, the loose delivery, juiceful toss, hammering it down to mid-wicket boundary for 4 runs. Scores are levelled. Just a single run required for the victory. Gopal Krishna. Balls this time, the winning run for team Naganakatta Panthers. They won the match quite comprehensively by 8 wickets against the Sudhindra Warriors. And unfortunately, again, the Sudhindra Warriors couldn't manage to defend at 36 runs, and because of their playing against the defending champion. And congratulations for Naganakatta Panthers. Hard luck, team Sudhindra Warriors, and better luck for the next edition of this SVT Trophy 2024. We'll take a short break here, and after the short break, we are back in the game. The last league match of this cricket tournament, Agrasali Super Kings takes on Gopur Gladiators in this last league stage match. It's a decider match for the team, and it's going to be one more good match in front of very good spectators here. Thank you. तवलचे नागनकट्टे पॅन्थर्स हाचे मॅन ऑफ द मॅच शिवानंद शणै आणि अर्चित तवलचे शिवानंद कामत क्षमकर का अर्चित तवलचे मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच स्टेज आरेव कमांडिंग म्हणून घेता सर.
So very interesting match, a decider match. This is a definitely decider match for Super Kings. Agrasali Super Kings wanted to win this match because if they're going to win this match, then they will go into qualify. But if they're going to lose the match, and the Satish Strikers and Agrasali Super Kings, they will going to get the same points, then net run rate will going to decide the qualifier. So it's going to be very interesting, and Satish Strikers, actually more than Gopur Gladiators, I think Satish Strikers are just watching this match very interestingly. That's the first ball, nicely driven down to square leg boundary for 4 runs. Good start from Vignesh for Agrasali Super Kings. They got a start in the first ball itself, the full toss delivery. The batsman quite easily plays it down to square leg boundary for 4 runs. 4 without loss of any wicket. Gautam Pai and bowling second time in this over. Round the wicket to left-hand batter Vignesh. Vignesh nicely plays it down to cow point region, and Andy, the fielder, Anant down at backward point region, fields the ball, and ample time for Vignesh to complete the single. Good start there from Vignesh, got a 5 runs in just 2 deliveries, and that brings another opening batter into strike. Vinod Kamath is on strike. 4-1 in the offside, 4 in the on. Mid wicket, square leg, fine leg. Backward point, short cover point, short extra cover, mid off. Again, sensible batting there from Vinod. Just soft end comes into play. Allow the ball to coming into his bat, then plays it very nicely between cover point and extra cover. He got the single. With that single, scored moves on to 6 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Gopur Gladiator playing their last league stage matches. And Gautam Pai again balls nicely well behind the line of the ball, just standing tall and allow the ball to coming into bat. Vignesh getting the direction down to backward point region for a single. With that single, scored moves on to 7 on the board for the loss without loss of any wicket in the over number. First is in progress. So very interesting matches going on here. Gautam bowls. Vinod again doing the same thing here. He wanted to rotate the strike. This is a good thinking from the batter's point of view. One more single. With that single, scored moves on to 8 on the board without loss of any wicket. And it's going to be a final delivery of the over number first, and Gautam Pai will go into ball that last delivery. Round the wicket, again well behind the line of the ball. Both the batters are playing sensibly. After completion of first over, and the team Agrasali Super Kings managed to score 9. That means it's a good score in the first over. But they needed to accelerate the run rate in the incoming overs. So very interesting match. I've already mentioned that if Agrasali Super Kings will go into win this match, they will go into qualify. If they're going to lose this match, then of course the team which is very, very interestingly watching outside the ground, that is Satish Strikers. They wanted to see that Gopur Gladiators have to win this match so that they can wait for that net run rate so that they can be in the playoff round. Very interesting match is going on. Here is Ramesh is brought into attack, bowling right arm over the wicket. Short pitch pulls that one nicely between the gap, between square leg and the mid wicket boundary for 4 runs. Short pitch, but it's a very short pitch delivery. The batsman got all the time in the world to get that one right from the middle of the bat, driven that one down to mid wicket for 4 runs. With that boundary, scored moves on to 13 on the board without loss of any wicket. Ramesh, right arm over off the back foot, plays it down to extra cover region for an easy single. With that single, scored moves on to 14 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Ramesh again back to his bowling mark to Vinod. Vinod plays that reverse strip, quite an interesting kind of reverse strip. He's not really tried to hit that one pretty hard, but he knows that he wanted to rotate the strike and he got a single. With that single, scored moves on to 15 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Ramesh again, right arm over the wicket, balls to Vignesh. Vignesh going for the cut shot. First time seeing that Vignesh missing that delivery, which is little bit kept low in that occasion. He wanted to drive that one on extra cover region, and the reason that ball is a little bit keeping low, he missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Ramesh away from us. Balls, oh, what a catch! Oh,
Absolutely, it was an unbelievable catch. It's a stunner which is taken by Ramesh because Vignesh drives that ball very firmly back to bowler. Reaction time absolutely a fraction of second, and he reacted very quickly to the catch and ball stuck into the hands. And but he's taken that catch in his wrong hand. It's not taken in the right hand. It is taken in the left hand, and that's why it's going to be a great catch. Good reaction catch taken there by Ramesh. Wicket number first, which is back into pavilion of Kodial Super Kings. They lost Vignesh, in fact, and the new batter in is Pancham Bhatt. Pancham Bhatt cuts that one pretty hard, but fails to get the placement right as extra-cover fielder fields the ball. Pancham Bhatt is off the mark. After completion of over number 2, searching for the right track, team Agrasali Super Kings managed to score 16 for the loss of 1 wicket, going exactly 8 runs per over, and a tidy over ball by Ramesh. Prashant brought into attack to bowl the third over of the innings of team Agrasali Super Kings. And for Gopura Gladiators, Prashant will go into ball to Pancham. Pancham drives that one down to mid-wicket region for a single. And with that single scored Namuzan to 17 on the board. Again, top edge opportunity of catch, but ball just falling short of the field. A chance of run out. Again, the batsman is safe. 2 chances in 1 ball. The catch for that short square leg fielder, but at the same time, a run out opportunity in the non-strikers, and both the end, Vinod survives. So with that single scored Namuzan to 18 on the board for the loss of 1 wicket. Right arm over the wicket. Pancham cuts it hard and he gone. So short pitch delivery and a little bit lifting of delivery. That's why Pancham couldn't manage to keep it down, and he just slashes that one pretty hard, and ball went outside the ring. So with that 1 wicket, wicket number 2, which is back into pavilion of team Agrasali Super Kings, and with that wicket, a little bit tense moment here for Agrasali Super Kings, that wickets are falling. Scoreboard remains on 18 on the board. Zero number 7, the jersey, Girish, the bowler. Girish bowling right arm over the wicket. Bounce. This time he is just putting body behind the line of the ball, and he picked up a single for that. With that single scored Namuzan to 19, I think. 19 on the board, and Vivek is a new batter in. Girish will go into continue from the commentary box, and right arm over the wicket, balls to Vinod. Vinod cuts that one, but straight to the answer fielder. They're going for the quick single. With that single scored Namuzan to 20 on the board. 20 for the loss of 2 wickets. Slow progressing here for Agrasali Super Kings after they lost 2 wickets, especially the wickets of Vignesh. Absolutely is going to be a vital breakthrough in this innings of Agrasali Super Kings. Vivek is one more experienced campaigner, will go into face Girish. This time a nice returns that runs into the square leg region. They're going for the single, chance of run out. Vinod wants a single. Vivek not interested. And second time we are seeing that Vinod is very lucky actually. And
Once again, one more opportunity of run out which is missed out by the fielding team. Over number 3 completed after completion of over number 3. Great over there from Grish. A very tidy over indeed. Agrasali Super Kings searching for the right track, struggling in the middle. It's 20 for the loss of 2 wicket. Last 2 overs remaining. Andy will go into ball that 4th over. A very experienced campaigner as far as cricket is concerned. Both in underarm and overarm cricket is the player who can contribute from the ball and from the bat. And D1 is very good fielder. So Anant bowling away from us. Right arm over the wicket. If reverse sweep is played, that one down to deep. Lead correction driven down to extra cover region for a single. With that single scored numbers on to 21 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Anant again bowling away from us. Right arm over the wicket to Vivek. Short fine leg, square leg, mid wicket and mid on the field set for Vivek. Andy. Balls cuts at one, straight to the answer fielder. Good fielding there by the fielder. Only single there. Vivek is a little bit frustrated that he couldn't manage to get the boundary. And Vivek is just asking umpire whether the fielder is standing outside the boundary line. But umpire says it's safe now. And one more single. With that single scored numbers under 22 on the board in the over number 4 is in progress. Again, Anant bowling right arm over the wicket to Vinod. Vinod this time got a full toss delivery but lack of placement. Again he couldn't manage to convert that full toss into boundary. Just a single. With that single scored numbers on to 23 on the board for the loss of 2 wicket. So 3 deliveries from Anantesh is a very good one. Even the batters are trying for the boundaries but he's not really settled the batters for that boundary so far. Right arm over the wicket, cuts at one and misjudgment. I'm really surprised for the youngsters in this present cricket, why they are not understanding that when the ball is cut by the batsman, ball definitely will going to spun. And you need to see that because this is all about the experience we need to get. And whenever the batsman cuts the ball will not coming to your way directly. The ball will go into spun and you need to ready for that. And you are not to move to the direction of the ball. We need to wait for the ball. And that's what really happening in the several times in this matches. The fielders fails to collect that ball whenever the batsman going for the cut shot. But lucky boundary for team Agrasali. With that boundary scored was on to 27 on the board for the loss of 2 wicket. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ಮಮ್ಮನ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರೇವಕ್ಕ ಮೊನ್ನೆ ಮುನ್ಗೆತ್ತ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರೇವಕ್ಕ Again, off the back foot, plays it down to cover point region. Again, good piece of fielding there by the fielder. And that's a really good thinking there by the fielder's point of view. And it just stops the boundary for his team. One more addition. With the addition of that single scored numbers on to 28 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Last time in this over, Andy get it bowling to the opening batter, Vinod. Vinod, lovely, delicately played. But straight to the fielder, chance of run out, ball misses the stump. Vivek is so lucky in that occasion because the ball misses the stumps in the Tigers and otherwise it's going to be run out. The single to end the over number 4. Then after completion of over number 4, it's 29 on the board for the loss of 3 wickets. (29) for the loss of 2 wicket. Last over will going to start from the commentary box end. Srinivas got ball in hand. Srinivas Pai will go into ball that last over and the last opportunity for the team Agrasali Super Kings to get some acceleration in the run rate. They're playing the last league stage matches, must-win match here for Super Kings. If they're able to win this match, they're going to qualify. If you lose this match, then they need to wait for to get a net run rate to qualify. Right arm over the wicket, first ball off the over. Number 5, gone! It's absolutely healthy edge. Good bowling there from Srinivas. Batsman Vinod just tried to reach to that delivery and got outside edge of the bat, held the edge, and the wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler.
So wicket number 3 is back into pavilion. The Vinod's struggled innings which is comes to an end. He came as an opener for the side, but couldn't manage to get some boundaries which is badly required for the team Agrasali Super Kings. And Srinivas Pai got a very good breakthrough in the first delivery of his first over and the last over of the innings of team Super Kings Agrasali. Ajit, one more experienced campaigner for the side of Super Kings, came into middle, but only 5 deliveries left in their innings as Srinivas. Boss, one more good delivery. They're going for the run. Chance of run out. Wicket keeper have absolutely got a running race here. And he knows that Ajit they couldn't manage to run quickly. So he doesn't want to take any risk of returning the ball, throwing the ball to the non-strikers. But he himself running towards the non-strikers and completes the job. One more wicket is back into pavilion. The wicket number 4 is gone. So everything is going against the game plan of Agrasali Super Kings, especially in the last over. I already mentioned each and every delivery going to be very crucial here for Super Kings. They need to get some runs desperately in this last over. But so far 2 deliveries which is costing 2 wickets. Vivek back on strike, the experienced campaigner. He got a potential of hitting by the boundaries, and wait and see how well going to finish their innings with some good cricketing stroke for his team. Srinivas so far so good in this over, bowling 3rd time in this over. One more very good delivery. This time Vivek tried to make a little bit room to play the shot, but Srinivas bowled a very good one away from the bat of the batter and dotted delivery. 3 balls completed, 3 balls remaining in this innings of Agrasali, and Srinivas again 4th time in this over. So far it's a quiet over. Right arm over, they get one more delivery. Appeal coming from the wicket keeper behind the stump. Both the umpires are unmoved. And little bit excitement. We can see that behind the stump, Gautam Pai thought he got the wicket. But another 2 deliveries remaining of the innings of Agrasali. Srinivas bowling away from us. Balls to Vivek. This time, good piece of fielding there by the wicket keeper. And little bit comedy of error. We can see that in this previous delivery. Vivek wanted to get the boundary down to 3rd man, and a very good movement there from wicket keeper behind the stump. Quickly went to the direction of the ball, and Vivek doesn't know about that. He thought it might be some runs for him, but last delivery of the innings is coming up. Going for the pull shot, only a single there. Not more than a single. They're looking for the second. Vivek coming back to the second. Oh, we missed it. Very lucky run. They completed 2 runs there. Now looking for the 3rd as well. And they completed 3 as well. Can you believe this? 3 runs they taken. 3 runs taken in this last ball. Absolutely. Even the ball is in the hands of the fielder, but Agrasali, they able to get 3 valuable runs. If Agrasali will going to win the match by 1 or 2 runs, this is going to be a turning point of the match. And very, very interesting to see. And how well the team Gopur Gladiators will going to get the target of 33, which is the target for team Gopur Gladiators. And very interesting match and a must-win match here for team Super Kings Agrasali. And wait and see how well they will going to win this match against team Gopur Gladiators. We'll take a short break here, and after a short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone. Thank you. Thanks a lot.
धन्यवाद सतीश. So first ball and steering it away fine down to a short third man fence for 4 runs. तो so positive start for गोकुल ग्लैडिएटर्स और 4 रन इस वक्त स्टीयर करके बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल है. तो 4 रन मिल चुके हैं इस वक्त और विनोद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. अग्रसाली सुपर किंग्स ने 32 रन बनाए, 33 रनों का लक्ष्य और विनोद अग्रसाली की ओर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पर रन के लिए तो बड़ा रन का खतरा इस बीच, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट करने में सफल और 1 रन बल्लेबाज इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रदीप के लिए और प्रदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद अच्छी गेंद थी. इस वक्त गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज विनोद फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया मिड ऑफ की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर. अब विनोद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट. इस बीच ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए विनोद फुल टॉस. इस बार गेंद को रोकने में सफल. अंतिम क्षण में बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को रोका. वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. विनोद 2 गेंदें इस ओवर में बाकी और विनोद इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Bowled him. Just got his outside of the bat and stuck to his mid and leg stump. First wicket fallen and the man dismissed is Ramesh. And now it's 7 for the loss of 1 wicket for Gopur Gladiators. This is the last league match of the league stage is now progressing here of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2024. Which proudly presented by SVT Volunteers Association, the Volunteers Premier League Season 2 2024. और जहाँ तक सवाल है इस अंतिम लीग मैच का, तो यहाँ पर अरसाली सुपर किंग्स अगर इस मैच में विजय दर्ज करता है तो प्लेऑफ में प्रवेश सीधा कर जाएगा. अगर इस मैच में अरसाली सुपर किंग्स अगर को हार का सामना करना पड़ता है तो 3 टीम के अंक बराबर हो जाएंगे. तो उसके बाद नेट रन रेट देखा जाएगा कि कौन से 2 टीमें प्लेऑफ में प्रवेश करेंगी. तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा अंक तालिका में यानी पॉइंट्स टेबल में इस वक्त है और देखते हैं कौन सी 2 टीमें प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करती है. तो नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद गौतम पई और विनोद इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज गौतम पई इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. फील्डिंग में इस वक्त कुछ जमावट करते हुए विकेट कीपर मिड ऑन के फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है और इस ओवर में अंतिम बार विनोद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर 33 रनों का लक्ष्य 5 ओवर में इस वक्त उन्होंने रखा है और इस बीच गेंदबाज तैयार. कट किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. जस्ट रॉक टू द बैक फुट एंड कट्स दैट वन परफेक्टली एंड द बॉल वेंट लाइक अ बुलेट एट द लास्ट मोमेंट. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर. दिस इज एन एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट फॉर गोपुर ग्लैडिएटर्स चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 33 in 5 overs. They are 12 for the loss of 1 wicket after completion of first over. They made a absolutely good start. दूसरा ओवर शुरू होता हुआ सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. विघ्नेश द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक. सुधीर इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलती हुई और इस बीच गेंदबाज सुधीर अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. सेकंड ओवर स्टार्टिंग इन देयर इनिंग्स. फर्स्ट बॉल कम्स
इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, शॉर्ट गेंद थी और बाएं हाथ के गेंदबाज सुधीर की शॉर्ट गेंद थी और गेंद को मोड़ने के प्रयास में चूंकि ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 12 for the loss of 1 wicket at the start of the second over। और सुधीर इस वक्त बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। विघ्नेश ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, सुधीर ने, रन इस बीच नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से विघ्नेश तैयार, इस बार कट किया, गेंद पहुंची पॉइंट, कवर पॉइंट पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 for the loss of 1 wicket, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार विघ्नेश के हाथों में गेंद आते हुए निस्संदेह एक चमत्कारी गेंदबाजी की सख्त जरूरत अग्रसाली सुपर किंग्स के गेंदबाजों को, अगर उन्हें 32 रनों के अंदर गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों को बांध कर रखना है तो। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, अपील कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. The last league match of the league stage of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2024, is now progressing here। और इस बीच विघ्नेश अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 20 गेंदें बाकी, 20 रन चाहिए विजय के लिए। विघ्नेश इस वक्त तैयार, फुल टॉस, इस बार स्क्वायर, लेकिन फील्डर गेंद को फील्ड करने में सफल, एकमात्र रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 for the loss of 1 wicket। बेहतर ओवर अब तक विघ्नेश का साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 रन वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। 19 बॉल्स लेफ्ट, 19 रन रिक्वायर्ड और गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद ड्राइव किया, इस बार मिड ऑन पर और गेंद को रोका गया बेहतर तरीके से। इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर और 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बेहतरीन ओवर विघ्नेश का समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और अपने टीम की गाड़ी को इस वक्त लगभग सही पटरी पर वापस वो ला चुके हैं इस बेहतर ओवर के जरिए। 18 गेंदें बाकी, 18 रन चाहिए। 18 balls remaining, 18 runs more now they have to score for victory. The required run rate is exactly 6 runs per over। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए पंचम अपनी ओर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। पंचम ओवर की पहली गेंद, इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल, गेंद की उछाल को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, हालांकि कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले जरूर, यूजिंग हिज फीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन अपने गेंद की उछाल को भापते हुए अपने स्ट्रोक को वहीं पर रोक लिया। रक्षात्मक तरीके से गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन के लिए और इस बीच पंचम अगली गेंद के लिए तैयार। ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रनों के लिए। ओवर पिच डिलीवरी और ऐसा कहना पड़ेगा कि ड्रिवन दैट वन परफेक्टली विद अ फुल पेस, full speed in fact, and it's crossed over the fence for a boundary at mid off for 4 runs. Fantastic struck in from the bat of Gautam. Cuts straight and gone over the fence. Consecutive boundaries for Gautam. और इन 2 चौकों की बदौलत अब इक्वेशन काफी हद तक आसान बन चुका है। 24 for the loss of 1 wicket, 9 runs needed, 15 balls remaining। और पंचम इस वक्त कुछ हद तक दबाव प्रेशर में नजर आते हुए तैयार। अगली गेंद, कट्स एंड 1 more boundary, 3 boundaries in a row, hat-trick boundary for Gautam। 5 required, 14 balls remaining in fact, so 5 runs required and still a lot of deliveries left in their innings, 14 deliveries left। और गेंदबाज पंचम तैयार, बेहतर परफेक्ट लेग कटर एट द लास्ट मोमेंट और जाकर आगे जाकर खेलना चाहा, 1 कदम आगे जाकर गेंद को खेलना चाहा, 1 या 2 कदम, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और पंचम एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। बेहतर फैंटास्टिक ऑफ कटर डिलीवरी और रन एक बार फिर से नहीं मिलेंगे तो ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति। So after 3 overs, still they are looking in a commanding situation. 28 for the loss of 1 wicket, 5 required in remaining 12 balls. That means in remaining 2 overs.
And as far as the victory of Agrasali Super Kings is concerned, they badly need some miracle bowling at this stage to get back into this match. Just 5 runs required for Gopur Gladiators for victory in this match, in this last league match of the league stage. Ajit, the bowler, is now brought into the attack, starting fresh proceedings from the commentator box end. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सुधीर के लिए, जो कि एक बेहतर पारी खेलते हुए गौतम के साथ ओवर की पहली गेंद. फर्स्ट बॉल कम्स, right arm round the wicket, cuts, and this time finds the gap, and that's it. The scores are leveled. Scores are now leveled. रनों की बराबरी हो चुकी है. Just a 1 run needed for Gopur Gladiators for victory in remaining 11 balls. Just, it looks like just a formality now remaining in this match. Bowling, absolutely fantastic full length delivery. 10 balls remaining, 1 run required. तो इस बीच अजीत तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Drives, caught and bowled, and is gone. Straightforward catch taken on his follow through by the bowler. Sudhir the man departs. 9 balls remaining, 1 run required, and a good innings came to an end from Sudhir. New man Anant is now going towards to the crease. Andy, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 9 गेंदें बाकी, 1 रन चाहिए विजय के लिए. 1 required in remaining 9 balls. क्लोजिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई गई है अनंत के लिए सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में. और अजित इस बीच तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अनंत के लिए. Bitten, 1 more dot delivery, 8 balls and 1 run. Still 1 run required for Gopur Gladiators. और 8 गेंदें अब बाकी हैं, सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए. तो अजीत एक बार फिर से तैयार अनंत के लिए. In the air and dropped this time, and Anant got a life and a boundary, and with that boundary Gopur Gladiators are won the match with the 7 balls to spare against Agrasari Super Kings in the last match of the league stage, and they back the complete points. तो अब 3 टीमों के अंक इस वक्त बराबर हो चुके हैं और देखा जाएगा कि प्लेऑफ में कौन से 2 टॉप टीमें नेट रन रेट के तौर पर यहां पर क्वालिफाई करती है. तो वहां पर संगठक आपको बताएंगे कि यहां पर कौन से 2 टीमें प्लेऑफ में प्रवेश करेंगी बी ग्रुप से. तो देखते हैं और एक छोटे से ब्रेक हम लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर संगठक पॉइंट्स टीम का ऐलान करेंगे कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त कर चुके. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर द स्टेज प्रोग्राम. थैंक यू, धन्यवाद. आमगेलोटू श्री राघवेंद्र कुडवा हानेसची अंकिक स्मरणी दिवक म्हणून आयोजकांतर्फे नाव निमून घेता सर. राघवेंद्र कुडवा आमगेलोटाची प्रति एक स्पोर्ट्साक सपोर्ट दिताले, तशीच एक फिल्मय प्रोड्यूस केला. उद्यमी युवा उद्यमी कॅनरा
एज्युकेशन हाजे एक मुख्यस्थ श्री राघवेंद्र कोडवा हांका धन्यवाद. हमारे हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा तवलचे मॅन ऑफ द मॅच गोपूर ग्लॅडिएटर्साचे गौतम पै तवलचे मॅन ऑफ द मॅच स्टेजार येवको मॉर्निंग म्हणून घेता सर.
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ 2 ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಝೂಮ್ ಬರದಿದ್ದರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ. गोपुर ग्लॅडिएटर्साचे पुरे प्लेयर्स गोपुर ग्लॅडिएटर्साचे पुरे प्लेयर्स हांगा सवा. तशीच ही अग्रसाळी सुपर किंग्साचे प्लेयर्स आसमंजले एक पण स्टेजाला येद्रा येऊ का. अग्रसाळी सुपर किंग्साचे प्लेयर्स आसला स्टेजाला येद्रा येऊ का. अग्रसाळी सुपर किंग्साचे टिमाचे प्लेयर आसा म्हणजे हांगा स्टेजा येद्रा येऊ का सक्कड जनान. तशीच ही गोपुर ग्लॅडिएटर्साचे सक्कड जनान आस म्हणजे हांगा स्टेजा येद्रा एक पटी येऊ का. तशीच ही क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर दोन्ही मॅच हाजे नंतर जावचे आसा. ओटू 3 मॅच जावचे आसा. क्वालिफायर म्हळ्यार ए ग्रुपा तुलाना A1 पोझिशनार येईल तसल टीम नागनकट्टे पॅन्थर्स A1. तशीच ही बी ग्रुपांतू फर्स्ट पोझिशन उग्राणा सेवक्स. बी ग्रुपांतू फर्स्ट पोझिशन उग्राणा सेवक्स म्हळ्यार क्वालिफायर फर्स्ट क्वालिफायर नागनकट्टे पॅन्थर्स आणि उग्राणा सेवक्साल मध्ये जावचे आसा. तशीच ही एलिमिनेटर मॅच तंतू A2 आणि आम्ही B2 म्हणून सांगितलं. ए ग्रुपाचे सेकंड पोझिशन टीम आणि बी ग्रुपा सेकंड पोझिशन टीम. ए ग्रुपाच्या सेकंड पोझिशन येईल टीम शृंगेरी रायझिंग स्टार्स. तशीच ही बी ग्रुपांतू सतीश स्ट्रायकर्स हांगेलमध्येंतू एलिमिनेटर जावचे आसा. तदनंतर क्वालिफायर 2 तदनंतर फायनल मॅच मागीर अंडर आर्म फायनल मॅच जावचे आसा. सिनियर्स अंतू फायनल दोन्ही पविल तसल टीम वीर विठ्ठल आणि टीम श्रीनिवासा दोन्ही टीम फायनलाक सिनियर विभागातून पविल आसा. हे पुरे मॅच सन्माना कार्यक्रमा नंतर जावचे आसा. हे पुरे कार्यक्रमाक तुम्ही हांगा उपस्थित आसका म्हणून निमून घेतास. हरि ओम.
आता ह्या कार्यक्रमाचे एक सभा कार्यक्रम म्हळ्यार एक सन्मान कार्यक्रम जावचे आसा आमगेले वेदिके येद्र जल्दी तितले आमगे समाज बांधवान येवन आसीन जावका म्हूण निमून घेता आसा हेकड तेकड आशिल्ले सकडांनी जल्दीतले वेदिके येद्राक उपस्थित आसका म्हणून आयोजकाल तर्फेन निमून घेता आसा. सगळ्यांना नमस्कार. SVT ट्रॉफी 2024 वॉलंटियर प्रीमियर लीग यापटी सीजन दोन्हीचे तुमलेद्राक काली तुलाना चलतास काली दनपारा 8 गंट्याक इनॉग्रेशन ಮೂಲಕ प्रारंभ झाला कार्यक्रम काल तुलान तुम्ही लाईव्ह वार जलारी पळयतासाची हांगा कॅनरा स्कूल ग्राउंडार येऊन जलारी तुम्ही या कार्यक्रम आता पळयतासाची. तशी ह्या ಒಟ್ಟು SVT ट्रॉफी 2024 ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು 14 ಟೀಮಾನ ह्यापटी पार्टिसिपेट केलेलं आहे. 182 जण 182 जण वॉलंटियर्स ह्यापटी ह्या 14 टीमांतू भागवहिसून दोन्ही कॅटेगरी सीनियर 10 टीम सीनियर 4 टीम तशी जी ज्युनियर विभागांतू म्हळ्यार 45 वर्ष भितरच्या विभागांतू 10 टीम 45 वर्ष वैर विभागांतू 4 टीम भागवहिसिलेल्या तंतू आता लास्ट अखेरीक अंडरआर्म म्हळ्यार अंडरआर्म सिनियर विभागांतल्यान दोन्ही टीम फायनल एक जावचे आसा. ओव्हरआर्मांतल्यान ज्युनियर विभागांतल्यान ಒಟ್ಟು 4 टीम क्वालिफाय जाला म्हळ्यार यांनी 14 टीमांतू ಒಟ್ಟು 6 टीम मात्र बाकी वरला आणि जावचे मॅच पुरय बारी इंटरेस्टिंग असता. तर ह्या कार्यक्रमा सकड तुम्ही उपस्थित आसूक म्हणून घेता आसा. तशीच आयच्या हे SVT ट्रॉफी 2024 तुमकां गोतेशील प्रकार SVT ट्रॉफीच्या एक SVT वॉलंटियर्स असोसिएशन म्हणून केलेलं आसा. हाजे अध्यक्ष जावन श्री सुरेश बी कामत, उपाध्यक्ष जावन सावकार M किरण पै, तशीच खजांची जावन सुधीर भगत, कार्यदर्शी जावन K मंजुनाथ शणे, मालिक एक्सेल स्टुडिओ, तशीच एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स जावन CA अडिगे दामोदर शणे, हरीश कामत, ताजोटूर रामचंद्र कामत हांणी असोसिएशनाचे मेन मेंबर्स जावन 7 जण आसा. तशीच सब कमिटी आसा म्हळ्यार मस्त जाण सब कमिटी मेंबर्स SVT वॉलंटियर्स असोसिएशन ओटूची काली आजी मात्र एक सदाण एक 1.5 महिन्यातुलान
प्लेयर्स आले एक ओट्टू करची की तांकां ऑक्शनाचे प्रती एक जबाबदारी पळयता आसाची मुख्य जावन सब कमिटींतू रमेश कामत तशीच अनंतराय पै अनिरुद्ध भट अन्वित मल्ल्या दीपक भंडारकर विघ्नेश हेगडे जगदीश शणै विवेक प्रभू कंदेल वसंत माम तशीच अन्वित मल्ल्या विघ्नेश नायक तशीच आमगेले कोंचाडी नरसिंह शणै आणि श्रीनिवास पै लक्ष्मीश मल्ल्या लक्ष्मीश बाळिगा अनिरुद्ध भट्ट जगदीश शणै पै इतली जन SVT वॉलंटियर्स वटूची एक 1.5 महिने तुलाना या टुर्नामेंट यशस्वी जावची खातीर मस्त काम करता आसाची ह्या कार्यक्रम 2 दिवस यशस्वी रितीर जावका जाल्यार हाका मस्त जनाले सहभागित्व आसा वॉलंटियर असोसिएशना मेंबर्स कशें म्हळ्यार एक जबाबदारी घेवन एक मुखार सून ओरका चंद रितीर ओरका म्हळ्यार खातीर जावन एक जबाबदारीयुक्त स्थानार आसर सोडल्यार प्रती एकल्याले तनु मन धन मनस्पूर्वक जावन धन सहाय जायत प्रती एक मनान सहाय जायत प्रती एकल्यान केल्या निमित्त काली आजी येद्दोळ पर्यंत यशस्वी रितीर हे कार्यक्रम चलल आसा ह्या ನೇರ प्रसारारी तुम्ही बेद्रा मीडिया हंतू पळयता आसा म्हणजे तशीच हांगा स्कोर इन ॲप म्हूण आसा तांतू जाल्यार तुम्ही ह्या सकड मॅच पळयता आसाची आतां आनी स्वल्प वेळाची कार्यक्रम प्रारंभ जाता आमगेले लाईव्ह आमगेले टेक्निशियनान रेडी म्हणले कुडले तयार म्हणले कुडले आतां सन्माना कार्यक्रम आमी प्रारंभ करताचे हे एक विशेष जावन आशिल्ले कार्यक्रम तुम्ही फुडली वर्से पळोवन आसा पुरो फुडली वर्से सन्मानाच्या ह्या क्रिकेटा मध्येंतू सिनियर वॉलंटियर सन्माना कार्यक्रम जाल्लो तशी ह्या वर्सय हे सन्मानाचे कार्यक्रम तुमगेले द्राक आतां चलचे आसा रेडी आ श्री हरिगुरुभ्यो नमः आज आम्ही एक व्हड एक सुसंदर्भार येवन पाविल्लो आसा वॉलंटियर्सा खातीर विशेष जावन खेळत आसल्या ह्या एक क्रिकेट टुर्नामेंट वॉलंटियर्सांक एक इम्पॉर्टंट दिवन म्हळ्यार स्वयंसेवकांक एक प्रामुख्य दिवन तांणी जाल्यार देवस्थाना मस्त सकड काम करता देवाल सेव करताची एक खेळा नेवणारे एक मनोरंजना दृश्टीर एक ओट्टू मेळका एक क्रिकेट म्हळ्यार आमगेल्या भारतांत प्रती एकल्याक खूश आशिल्लो तसले खेळ प्रती एकल्यान सान आसतना क्रिकेट खंडितय जावन खेळ्ळ्याची त्या नेवणारे खेळ नेवणारे एक ओट्टू कोरया म्हणून सांगून एक क्रिकेट आयोजन करून SVT वॉलंटियर्स असोसिएशन तांणी फुडली वर्स तशीच ह्या वर्स दोन्ही सिजना प्रति वर्स फुडली वर्स कशें जाला की ताज्या भशेन सकडले तुमगे सहकार्या निमित्त अनेके विजृंभणेर जावं तशी देवान एक अनुग्रह केलेलो आसा तशी आयचे एक सभा कार्यक्रम एक सन सभा कार्यक्रम काल आनी आज तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार क्रिकेटाकच चड महत्व दिला खंयचे विंगड विशयारी एक्टिविटीसार महत्व दिनाशी कोण क्रिकेट खेळटास की क्रिकेट पंद्याटाकच महत्व दिलेलं एक सभा कार्यक्रम म्हळ्यार बहुशा ह्या मात्र तेवूय करचा एक कारण आसा ते कारण कसं नाही म्हणून सांगून SVT वॉलंटियर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले सुरेश V कामत हांणी तुमकां विवरसून सांगताचे हरि ओम प्रथम जावन आमगेले कोड्याल गांवचे देव वीर व्यंकटेशाक नमन करून तशी मम्मय माले आटो करून आमगेले संस्थानाचे गुरुवर्यांक वंदन करून हांगा मेळ्ळेले सर्व जन आज एक क्रिकेटा नेवणारी सक्कडांक ओट जायले आसाची आयले आसाची आमगेले ह्या SVT वॉलंटियर्स असोसिएशना तर्फे हे जावचे कार्यक्रम फुडली वर्स आमी एक चरक्यानाची स्वयंसेवकान ओट्ट जावन आमी स्वयंसेवका खातीर देवळा भायर कसले एक एक्टिविटी कोरका म्हण एक तांणी एक इच्छा प्रकट केल्लेले आमगेले येवन तेन्ना आमी एक क्रिकेटा देखून प्रारंभ करुया म्हळ्यार एक तांकां सांगलें बट आमी कशी कोरका कसं कोरका म्हळ्यार विशय आमकां मस्त ज्ञान नाशिल्लें बाकी पुरो टुर्नामेंटाक आनी एक मस्त व्यत्यास आसता
आम्ही देवस्थाना नावार आम्ही केतन करता की आम्ही शिस्तबद्ध जावन ते एक व्यवस्थित रितीर कोरका म्हळ्यार एक आमगे इच्छा आशिल्ली जाल्यार फुडली वर्स कसं जालें म्हळ्यार कसले एक वेवस्था करूंक आमकां टायम ना आशिल्ले जाल्यार आमी कसं की आमची शक्ती मिरून त्या देवान दिलेले प्रेरण प्रकार एक हेच जाग्यार फर्स्ट इयराचे एक टुर्नामेंट आमी आयोजन केल्लें सक्कट जनान आमकां लायक सहकार दिल्लो ते एक टुर्नामेंट अत्यंत यशस्वी जावन जाल्ले तंत भितरी 12 टीम 8 आनी 4 टीम ज्युनियर विभाग 45 वर्सां तग्गून स्वयंसेवक आले तशीच सिनियर्स म्हळ्यार तांणी 45 वयर कितले एज आसचे पुरो तांगेले एक 4 टीम करून आमी एक टुर्नामेंट केल्ले देवाल दयेन ते भारी यशस्वी जावन जाल्ले तांत भितरी त्या टुर्नामेंटाचे एक मध्यंतू आमगेले सिनियर वॉलंटियर्स आमकां कोण प्रेरण कीत आमी आज देवस्थानांत कसं काम करता आसची देवाले उत्सवांत तशें पुरो वाडच्यान तशें पुरो आनी विंगड खंयचे महोत्सव वळार अशें पुरो अग्रसाळे काम अशें पुरो क्लिनींग अशें पुरो विंगड मस्त काम आसा देवस्थाना वॉलंटियर्स म्हळ्यार बरी एक कान मारचे विशय मात्र न्ही प्रत्येक विशयांतू एक कोण तांत काम करता भजन अशें पुरो तांतूय जाल्यार आमी तांतू भागवयशिल्ल्यार आमी स्वयंसेवक म्हणून घेताची आमकां प्रेरण जावन आमकां कोण आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले मलगडे आमी देवस्थाना येतना कसलेंय काम आसल्यार आमकां कसलें कळना यो रे तुमी हें काम कराची म्हण आमकां आमगेले मलगड वॉलंटियर्सान मस्त आमकां प्रेरण दिवन आमी आज कसं की आमकां एक भागी दिलो देवान तेरा अशें पुरो नित्यान तशें पुरो आमकां खांद मरगोत नातले तांणी आमकां शिकयला तसले मस्त आमगेले समाजात सिनियर व्यक्ती आशिल्लीची तांकां फुडली वर्स आमी एक रेकग्नायज करून तांकां एक आमी गौरव दिवचे कार्यक्रम केल्लो ह्या वर्सा आमी तशीच एक 5 जन आमगेले सिनियर मलगड मनशां तांकां आमी उडगास करून तांकां आमी एक विनंती केल्ली तांणी एक आमगेले क्रिकेट टुर्नामेंटा मदीं येवन आमकां एक शुभाशय दिवन आमगेले एक आतिथ्य स्वीकार कोरका म्हणून आमी एक निंगमल घेतिल्ले प्रकार आज 5 जन आमगेले सिनियर मेंबर्स आमगेले वट आसची तांत पैकी आमगेले आचार्य मठाचे एम जयंत आचार्य मामो तांणी मस्त एक देवस्थानाचे आवरणांतू आसून आमकां सक्कट जनाक परिचित जावन आसून देवस्थाना तांत्रीक कुटुंबांत आसची तांणी ह्या आयच्या दिसाक पाविल्ले आसची तांकां आमगेले एसोसिएशना तर्फेन स्वागत करता तशीच अशोक मामो अशोक शणै पुरा जना परिचय आशिल्लीची तांणी मस्त देवळा काम केला तांगेले बाप्पू सुबाप्पा पुरा जन तांणी देवस्थानांतूची सेव केलेले कुटुंब तांणी जाल्यार खांदेन तशें पुरो वाडच्या विशयान तशें पुरो आमी सान आसतना मस्त तांगेले सगळें काम पळयल्लें आसा तांणी हांगा पाविल्ले आसाची तांकां स्वागत करता तशीच सुरेश अण्णा सुरेश भटमाम कात्यायनी मठाचो आमी खंयच्याय उत्सवांत आमी पळोवन अशें पुरो येद्राक पल्लंकेक दबाजेक शारदा महोत्सव अशें पुरो देवस्थानांत खंयचेय उत्सव अशें पुरो तशीच महोत्सव वळार 13 वळार 5 दीस की 6 दीस की तांणी थंय एक मुख्य तांगेल्या पुरा झोना पेटोवन दिवची तसले एक जबाबदारी तांणी कितलीं वर्स जगून करता आसची तांकां हांव सकलाल तर्फेन स्वागत करता तशीच आमगेल्या देवस्थानाचे मस्त जनाक परिचित जावन आशिल्ले वैकुंठ माव वैकुंठ बुवा म्हणटाची तांगेले सुपुत्र जावन आशिल्ले तसले गुरुदत्त मामू तांकां तांणी मस्त सेव केला देवस्थानांत तांकां हांव सकलाल तर्फेन स्वागत सांगता तशीच अच्युत माम म्हळ्यार पुरो जाणांक गोत आसा आज खंयचे संराधन अशें पुरो आनी नित्य कसले अशें पुरो कार्यक्रम सक्कट जनाक प्रति एकल्याक सोण तशी उदकाचे एक सप्लाय करचे एक तांगेले एक बारी एक विशेष ते अगत्य जावन आशिल्ले एक विशय तो एक चूर तांत आळसाय करनाशी एक मनशान कितले पटी निमगेल्यार येवपास उद्दा दिवचे निमगून दिवचे उद्दा पिवका म्हणून सांगचे शेक्या दिवस जाल्यार अशें पुरो केन्नाय अशें पुरो तांणी ते निरंतर सेव करना त्या आसाची तांकां हांव आमगेल्या एसोसिएशना तर्फे स्वागत करता अशी मुखावेल कार्यक्रम बट मम्मान आनी एक मुख्य विशय कसो म्हळ्यार आमगेल्या देवस्थानाचे एक व्हड मलगड मनीस तशीच एक कोडुगई दानी जावन आशिल्ले आमकां सक्कडांक परिचित खंयचेय विशयार आमगेल्या वॉलंटियर्साल विशय आसचे पुरो देवळाचे कसले कार्यक्रम आसचे पुरो खंयचेय एक प्रोजेक्ट आसचे पुरो ताका कोडुगई दान जावन आशिल्ले तसले आमगेल्या मुणकूर रामदास कामत हांणी फुडली वर्स म्हळ्यार हेच संवसारांत
तन्नी मुक्त पवलेसची सद्ग तंगेले सगळ्या तंगेले गोडगास काढताची तन्नी पुढली वर्ष जाल्यार आमगेले कार्यक्रम आयली येवन आमकां सकडाक हे केलेले तांके ह्या संदर्भारी तांकां गोडगास घालून देव तांगेले आत्माक चिरशांती दिवं म्हणून आमी एसोसिएशना तर्फेन आनी सकडाल तर्फेन मागून घेताची. मुखावेल कार्यक्रम चलता हांव गोपी भट मामाक रिक्वेस्ट करता मुखावेले सन्माना कार्यक्रम चलासून दिवं. धन्यवाद सुरेश अण्णा. सन्मान कार्यक्रम कसला का इत्या म्हणून विवरसून तुमकां सुरेश अण्णान सांगिल्लें आसा. तशीच सक्कर जन सन्मानितांक एक सन्मानपत्र म्हणून SBT व्हॉलंटियर्स एसोसिएशनातून तयार केलेलं आसा. हें सन्मानपत्र कन्नडान आसा. हें सन्मानपत्रान तूं कसं बरयला की ॲज इट इज हांव तुमकां वज्जून तांकां एक सन्मानितांक गौरव समर्पण करच्याक इच्छ पोवता. सुरवेक मलगड जावन आशिल्ले जयंत आचार्य माम दयकून तुमी आमगेल्या एसोसिएशनांनी येद्राक बेश्ट तांकां एक सहकार करता म्हणून म्हणून घेता. जयंत आचार्य माम आता सन्मान पत्र ವಂಜು ಸಂತಾಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಜಯಂತಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಎಂ ಮುಕುಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಂ ರಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ 5ನೇ ಪುತ್ರನಾಗಿ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 4/11/1941 ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ HAL ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಬಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ 5 ವರ್ಷವನ್ನು ಅವರು 1964ರಿಂದ 1969ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು 1970ರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ತಂತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಇವರು ಶ್ರೀ ಭದ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಸತತ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಇವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಟೀಮ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಎನ್ನುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗಲೇ ಆಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ 75 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ 83ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಆಡಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅಂದಿನ ದಿನದ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಮರೆಯಲಾರದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂತ್ರಿ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಎಂ ಜಯಂತಾಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ SBT ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಂಗತ ಆಮಗೆಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತರಫೇನ ಸನ್ಮಾನ ಕೋರ್ಕಮಣು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರ್. तशीच
जयंताचार्य मामा लोटू हंगेले सुपुत्र जावन आशिल्ले मुकुंदाचार्य हांगा उपस्थित आसाची तुमी जलारी तुमगेले बापसूक सन्मान करतना एक सुसंदर्भांतू लगी उपस्थित आसका म्हणून नेमून घेतास. तशीच मुखारचे सन्मानित जावन आशिल्ले श्रीयुत सुरेश भटमाम सुरेश अण्णान येद्रा येवका आमगेले वॉलंटियर्स सुरेश आमगेले अनेक अध्यक्ष जावन आशिल्ले सुरेश वी कामतांनी अनुकूल कोरका म्हणून घेता आसा. तशीच तांगेले सन्मान पत्र वाजून सांगता आसा. सन्मान्य श्री एम सुरेश भट अवरे, दिवंगत रघुनाथ भट, ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಾ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೀರಿ. 40 ವರ್ಷದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ವೈದಿಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ರಥಬೀದಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರುವ ಸೇವೆ, ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ರಥೋತ್ಸವದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ SVT ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಂಕ ಆಮಗೆಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತರಪೇನ ಸನ್ಮಾನ ಕೋರ್ಕ ಮಣ್ಣಿ ಮುಂಗೆತ್ತ ಪ್ರತಿಯೇಕಳ ಸನ್ಮಾನಿತ ವಿಷಯವು आम्ही कन्नडान वाजून सांगता आसाची. ಬಹುಶಃ ಹಂಗ ಅನೇಕ ಮಲ್ಗಡ ಸಚಿ तुम्ही मस्त वर्सुलाना हंका सेव करची पळून आसा पुरो पलंकेला आसा पुरो रथोत्सव वाडची विशयारी जबाबदार घेवन हे पुरे तुम्ही सेवा प्रत्येकलान पळयला म्हण लेखता मुखारची जनरेशनाक यंगस्टर्सांक कोणाक गोतनागी तांके कोळका मळल खातीर जेवन मात्र आमी वाजून सांग सोडल्यारी सेव केतनय प्रत्येकल्या पळून आसताची हंका एसोसिएशना तर्फेन आतां सन्मान करता आसाची. तशीच सुरेश अण्णा ओटू हंगेले धाकलो भाव गणेश भट हांगा उपस्थित आसाची आनी जाल्यार अण्णाक एक सन्मान करतना लागीं उपस्थित आसूं का एक स्मरणीक जावन आशिल्ले
एक समय कळून घेवून निघून घेतास. मुखारचे सन्मानित जावन अच्युत मामा हानेंगसाची अच्युत मामाका एद्र आपण अडकमण निघून घेतास. हांका असोसिएशना प्रकार तयार केलेल्या प्रकार सन्मान पत्र अशी आसा. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಇಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲರಾಗಿದ್ದ ಕೋಡಿಬೆಟ್ ರಾಮರಾಯ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ ಯಾನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳ ತೃತೀಯ ಮಗನಾಗಿ 12/1/1946 ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಭೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೋಟೆಲ್, ಔಷಧಿ ಮಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಭಾರತೀಯ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಡುವೆ ತಬಲಾ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಹಲವು ಭಜನಾ ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತೀರಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ರಥಬೇದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ಬಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ SVT ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಗತ ಸನ್ಮಾನ ಕೋರ್ಕಮನು ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ಗೆತ್ತಾಸ್. हंगेले भाऊ उमेश कामत हानी उपस्थित आसाची हानी येद्रा येवून निमून घेता आसा. मुखारचे सन्मानित व्यक्ती सन्मान्य पी गुरुदत्त कामत हांका येद्रा आपण अडका म्हणून निमून घेता आसा. सन्मान्य पी गुरुदत्त कामत ಅವರೇ,
ಶ್ರೀಯುತ ವೈಕುಂಠ ಕಾಮತ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ತಾವು ದಿನಾಂಕ 6/4/1948ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಪದವೀಧರರಾದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ 12ನೇ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಂಗಳೂರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಳರಿ 60 ವರ್ಷದುಲಾನ ಸೇವೆ ಕರ್ತಾ ಸಹನಿ. ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ SVT ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ಗೆ ಸರ್. तशीची प्रतिवर्ष सन्मान करची कार्यक्रम अशीची नित्य निरंतर जाऊन मुखार जाता. मलगड स्वयंसेवक म्हणणारी 1-2 जण मस्त जन आसाची जाल्यार प्रति वर्ष वन टू हे सन्मान करचे म्हणल्यार आलोचन करताना आईचे सन्मानितांतू अखेरी व्यक्ती अशोक शणी माम हांकां बेकोर आमगेल्या असोसिएशन वतीन येद्रा आपण अडका मंडिंग म्हणून घेता सर. ಹಂಗೆಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಶ್ಯಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೆಯವರೇ, ದಿವಂಗತ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಎಂ ವಾರಿಜಾ ಶೆಣೈ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ತಾವು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರುವುದು, ಬಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದೇವರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಂಗಳೂರು ರಥಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ SVT ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಂಗತ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜತ್ತಾ ಸರ್.
हांगेले श्रीमती निर्मला शणै माय तशीच तांगेले दोग जाण चेडू हांगा उपस्थित आसाची सगळे फॅमिली हांगे लोटो हांगा हे एक अविस्मरणीय जे अशें एक सन्निवेश एक साक्षीभूत जावंक म्हणून घेतास. वीर वेंकटेश चरणारविंद गोविंद श्रीनिवास स्वामी चरणारविंद गोविंद राम राम गोविंदा गोविंदा. तशीच आमगेले वॉलंटियर्साच्या एसोसिएशनात आनी सकाळ मागशी राबोवन एक फोटो. आमगेले एक रामलल्ला प्रतिष्ठापना म्हणल्यार एक प्रभू श्री रामचंद्राले कुडगाच काडका म्हणाल खातीर जावन घालले. तशी जाकेर एक ह्या कार्यक्रमाचे एक धन्यवाद समर्पण आमगेले सुरेश अण्णान दिवका म्हणून येतास. हो एक सुंदर कार्यक्रम देवान चंद्यार चलसन दिला. हो एक कार्यक्रम कशी म्हळ्यार प्रति वर्स अशी देवान आमकां चलसूका अती आमी स्वयंसेवक कोण मलगड आसाची ते ह्या वर्सा खातीर मात्र न्ही ते आमकां मुखार सुनेची तांतू
कंटिन्यू जाताची मस्त जन आसाची इतले स्वयंसेवक नाही आम्ही ह्या वर्साक आमच्यान कितले करूं येता तशें आमी एक तांकां हें कोर न्हू आमगेले कशें म्हळ्यार म्हाका सांगूंक कळना आमकां उडगां साईल तशी एक 4 जनांना आमी सांगून दवरताची फुडें देखून सेव केल्ले केलो जन आतां परगांव आसताची तांगेले आमकां कॉन्टॅक्ट आसना जाल्यार तांणी पक्कने केलो जनाले उडगां आसा आशिल्ल्यान आमकां तिळशील म्हण जाल्यार मुखाल वर्साक आमी तांकां आपोवन गौरव दिताची म्हणून सांगूंक म्हाका इच्छा भोवता तशीच हे कार्यक्रमाक आयिल्ले तांगेले तांणी आनी तांगेले पुरा कुटुंबाचे तांगेले बंधू मित्र तशी आयिल्ले जनांक सगळ्यांकय आमगेले एसोसिएशना तर्फेन हांव धन्यवाद समर्पण करता आमगेले वीर व्यंकटेशू सगळ्यांकय बरें करो म्हणून मागून घेता. हांगाक सन्मान कार्यक्रम मुक्ताय जाता. तुमकां सगळ्यांक ह्या सभा कार्यक्रमात भागी जाल्ल्याक अनंत अनंत धन्यवाद. आता नेक्स्ट मॅच प्रारंभ जाता आसा. फर्स्ट क्वालिफायर्स नागनकट्टे पॅन्थर्स आणि उग्राणा सेवक्स 2 टीमा कॅप्टनांनी टॉस येवका. नागनकट्टे पॅन्थर्स आणि उग्राणा सेवक्स 2 टिमाचे रजिस्ट्रेशन करका तशीच टॉसाक येवका म्हण निमून घेता आसा. हे क्वालिफायर एलिमिनेटर मॅच 5 ओव्हराचे जावन आसता. क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर मॅच 5 ओव्हराचे जावन आसता. सेम रुल्स सुरवे लीग अंद कशी आशिल्ली की त्याच रुल्स हाकाय जाल्यार एप्लाय जाता. क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर ताई मागीर फायनल आज कसं नाही म्हणून सांगून मागीर आमी डिसायड करून सांगताची. नाही रा आणि एक रिक्वेस्ट लाईना लागी मस्जन बेसल्याची लाईना लागी तुमकां मॅच लागी दिसता जाल्यार बाउंड्री लायनाला बॉल येताना फिल्डरान तुमगेल वयर पडची चान्सेस आसा. देखून एक 3 फीट पुणी सोण बेस लाईना लागीची खुर्ची दवर नाका देखोर न्हू एक 2-3 फीट मागशी बेसून ह्या मॅचाचे एक चंदाय पळोवका म्हणून तुमगेला निमून घेता आसा. गोपूर ग्लॅडिएटर्स या टीमाच्या सर्व सदस्यांना ओनर समेत स्टेजला येवका. तशीच अग्रसाळी सुपर किंग्स हे सगळे टीमा ओनर सहित स्टेजार येवका म्हणून घेता आसा. जल्दीतली वग्गी गोपूर ग्लॅडिएटर्स आणि अग्रसाळी सुपर किंग्स. बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा. मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा.
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हॅलो डीजे ऑर्गनायझ कमिटी मेंबरला रिक्वेस्ट करता सजी दय कोण त्यांनी आणि पूरा मॅच जाऊताई लाईन अंपायरिंग कर का दय कोरनु इंपॉर्टंट मॅच जाऊचा असा कंचे रीतीरी एक ಗೊಂದಲ ಆಸ್ಪದ जाऊचा ಅನ್ನೋದು ಮೊನ್ ರೀತಿರಿ कमिटी मेंबर्स ऑर्गनायझिंग कमिटी मेंबर्स दय कोरनु पूरा आणि मॅच जाऊताई 4 साइड तुला ऑर्गनायझिंग कमिटी जबाबदार पूरा तंगल टी शर्ट घालून नवा ऑर्गनायझ कमिटी मेंबर तंका रिक्वेस्ट करता सजी काही वचन त्यांनी लाईन अंपायर अभ्यासू का त्यांनी कसल्या रीती ಗೊಂದಲ ಆಸ್ಪದ दिवचानच अंग अंग
So, welcome back once again after being a grand felicitation program. And now the first qualifier match, qualifier match number 1 is now going to start. First ball, here he comes, played that one this time. And this time, this could be trouble. Oh, just wide throw, and it's gone over the fence. It's gone over the fence. This is an absolutely sloppy. So, boundary results, and that boundary brings the runs account open for them. So, one ball gone. And next one from the bowler. Next one, gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 5 without loss now. 5 without loss in the first over for Ugran Sevaks. And now once again here he goes, Nagesh. Oh, terrific this time, absolutely terrific. Just missing outside the off stump, and the ball went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. So winners of this match straight away going to the grand finale of this competition. Outside the off stump once again, absolutely fantastic delivery. Again a misses, and this is turning out to be a good over so far from Nagesh. 4 tidy deliveries he bowled, and Sandy is now going to face once again Nagesh. Right arm over the wicket bowls. This time 2 for outside the off stump, wide declared by umpire. Single run added to the total in the face of extras. And with that single run, the scoreboard moving up to 6 without loss in the first over. So 2 table toppers team will clash each other now. Is now clashing each other. In fact, first the next one, driven that one down to extra cover, gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 7 without loss in the first over. So 4 gifted runs conceded by the fielders of the next one outside the off stump. So 4 gifted runs conceded by the fielders of Dongerkery in the very first delivery of their innings. And because of that, they managed to score 7 runs on the first over. So first over completed, 7 runs on the board. Pretty good start, city start for Ugran Sevaks. So it's 7 without loss after first over. So 4 overs left in overall calculation in their innings, and now once again the bowler is now brought into the attack. Harshit starting a fresh proceedings. First ball off the toes this time, played that one down to a wideish mid on, gone through for a quick single and get it completely at last. 8 without loss in the first over. As far as the good score is concerned for Ugran Sevaks, they desperately have to make a strong start if they have to post a huge target in front of the batsmen of Dongerkery cricketers when they're coming to bat. In fact, now once again here he bowls. Full toss, turns it away and finds the gap as well. This time boundary for Adi. It just work it away off the wrist. Have a look at this. So this is an absolutely perfect stroke. Just turns it around the corner of the last moment at the situation and flick that one perfectly. This time pitching right on the nearer to the bat at the last minute, just missing outside the off stump. Appealing for caught behind. The meantime umpire just confirming to the square leg umpire. And let's see what the decision they will take after being beating each other. So the scoreboard is now stays at 12 without loss. Just a second over in progress. And the decision came from the umpire, caught behind, and that is the wicket for number first fallen. So the man departs is Adi, and now they are 12 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. So new batsman, number 3 batsman is now comes out to the middle. Outside the off stump, played that one defensively, goes on to the back foot and gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 13 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. And now once again the bowler comes.
turns it away, finds the gap and gets on a boundary. Fantastic strike from Sandy. So, as far as the good score is concerned for Ugran Sevaks, this time this man's presence is most important for them. Sandy steering it away, fine down to a gully area, gone through for a quick single and get it comfortably at last, and with that single run the scoreboard moving up to 18 now. So over has been completed, 2 overs completed. So 2 overs completed. $18 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. Third over starts in the innings. तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तो इस वक्त सैंडी सामना करने के लिए तैयार हो। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका अंग्रेजी में, सैंडी की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है उनके लिए, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है। ऑफ स्टंप से बाहर गौतम पै गौती स्टेज आ रहे का गौतम पै गौती। तो पहले गेंद इस वक्त डॉट हो चुकी है और डॉट गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं। अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त गेंद को कट करना चाहे, एक बार फिर से चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए इस वक्त नागरकट्टे पैंथर्स गौतम पै गौती स्टेज आ रहे का के गेंदबाज। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सौरभ gets an extra bounce at the last moment. Absolutely fantastic delivery. Just wanted to push that one, beating the line completely, beaten by the flight at the last moment. And the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. No possibility of any run. Great delivery from the bowler. और एक बार फिर से गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। कट किया इस वक्त खूबसूरती के साथ into the gap as well. और 4 रन इस वक्त बटोरते हुए सैंडी। ऐसा कहना पड़ेगा, just opening the pace of the blade at the last moment, steering it away down to third man and finds the gap as well. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह सैंडी की इस वक्त यही कोशिश है कि उनकी टीम को एक सही मंजिल तक पहुंचाया जाए और इस वक्त वो बेहतर बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाज इस वक्त तैयार, सौरभ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर सैंडी के लिए। ये गेंद एक्स्ट्रा बाउंस, अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त टकरा चुकी है सैंडी के बल्ले से और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। Just wanted to steering it away. He's got a big reflection on that and wicketkeeper behind the stumps made no mistake. Second wicket gone. Sandy departs and now it's 22 for 2. तो सैंडी का विकेट यहां पर गिर चुका है और नए बल्लेबाज के रूप में वासुदेव भट्ट यानी विन्नो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर 22 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। शाम का वक्त लगभग 5:55 यहाँ पर बच चुके हैं और धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ और धूप बिल्कुल मैदान से गायब हो चुकी है। इस वक्त सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर धीरे धीरे अपना सफर तय कर चुका है। यह गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, पंजों पर उछलते हुए अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त पहुंचे पॉइंट पर, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर और जब तक विकेट कीपर थ्रो को रिसीव करके विकेटों को चटका है। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 3 ओवर्स हैज बीन कंप्लीटेड। सो दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स के बाजों की आवाज, सीटीओ की आवाज इस वक्त सुनाई देती हुई निस्संदेह इस क्वालिफायर मैच नंबर 1 में विजेता प्राप्त करने वाली टीम इस श्रृंखला के सीधे ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करेगी और इस श्रृंखला के मेगा फाइनल यानी ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है नागरकट्टे पैंथर्स और इस वक्त उग्राण सेवक्स के बीच में। तो इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट राघवेंद्र और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार विन्नो यानी वासुदेव। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार राघवेंद्र। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए विन्नो के लिए।
ये गेंद तक पहुंचे, जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट। गेंद पर बल्ला उड़ाया लेकिन ठीक तरह से गेंद को कनेक्ट करने में सफल, लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्वालिफायर मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी के अंतर्गत शुरू हो चुका है। ड्राइव किया इस वक्त, गेंद इस वक्त मिड ऑफ पर, नॉन स्ट्राइकिंग के बल्लेबाज 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है और इस बीच स्कोर यहां पर रुक चुका है 24 रनों पर, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर निस्संदेह एक कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। उग्राण सेवक्स और नागनकट्टे पैंथर्स के बीच में इस मैच इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, और राघवेंद्र इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त थोड़ी सी उछाल लेते हुए ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, गेंद गई इस वक्त ऑफ साइड पर। अंतिम क्षण में जब तक पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 25 रन बन चुके हैं। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और कुल मिलाकर इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और देखते हैं यहाँ पर उनकी 8 गेंदों में वो कितने रन बटोर पाते हैं। इस बार गेंद को उछाला है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है विन्नू का। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त गेंद को उछाला था लेकिन गेंद इस गॉट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और गेंद टॉप एज पर टकराई, पॉइंट पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है, जबकि स्कोर है इस वक्त 25 रन। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है, इस वक्त पवन नायक क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त तो सामने के लिए तैयार राघवेंद्र की गेंदों का और कम से कम 40 यहाँ पर पार करना होगा उग्राण सेवक्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और इस बीच गेंदबाज राघवेंद्र फील्ड में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद कट किया, इस बार थर्ड मिस जजमेंट, लेकिन इस बार अपने आप को संभाल चुके थे इस वक्त गेंद की टर्न, गेंद की स्पिन को देखते हुए और शॉर्ट टर्न बैन फील्डर सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड करने में सफल और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज राघवेंद्र इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग क्षेत्र पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से इस बीच नहीं मिला। तो इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स विद अ रन रेट ऑफ एक्जैक्टली 6.5 runs per over they scored in their first 4 overs and now still in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings। अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इस बीच अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है नंबर 10 जर्सी पहने हुए गेंदबाज सुहास के हाथों। स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू हो चुका है। रामनाथ इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए सुहास की गेंदों का पटकी हुई गेंद उछाला इस वक्त मिडल पर मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई मिडल पर जो फील्डर थे और उनके सिर के ऊपर से निकल गए इस वक्त उनके हाथों पर टकराने के बाद 4 रनों के लिए। तो 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 रन इस वक्त रामनाथ प्राप्त करते हुए, 4 गेंदें इस वक्त बाकी और इस बीच गेंदबाज सुहास तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है, 3 गेंदें इस ओवर में और फेंके जाने हैं और गेंदबाज सुहास इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार पवन सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए, पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है सीमा रेखा के पास। अगली गेंद
इस बार टॉप एज, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात इस वक्त गली पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, जस्ट 2 balls नाउ रिमेनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। तो 33 रन इस वक्त बना चुका है और 2 गेंदें बाकी है इस वक्त, और सुहास इस वक्त तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोड़ा, पूरी तरह सफल होते हुए स्टंप से एक्सपोज करते हुए रनआउट का खतरा था, आसान सा मौका, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज इस मौके को गंवाते हुए शायद गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए थे गेंदबाज, और आखिरकार 1 रन का इजाफा हो चुका है। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, जस्ट लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। सो सुहास and Pawan will be striking last ball of their innings. Here he comes. Turns it away, finds the gap, and he just finished the innings in a style with a boundary. So the stipulated overs of Ugran Sevaks are completed. They managed to score 38 runs for losing 3 wickets. And now the target for Nagankatte Panthers is 39 in 5 overs they have to score to qualify for the grand finale of this competition. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.80 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. देखते हैं यहाँ पर नागनकट्टे पैंथर्स इस लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो इससे पहले क्योंकि पारी की शुरुआत हो। माइक्रोफोन पर अब मैं मेरे काबिल दोस्त एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। तो सतीश, निस्संदेह 39 द टारगेट, इट विल बी कॉम्पिटिटिव अंडर दिस कंडीशंस, आई मस्ट से, क्योंकि इससे पहले भी 32 रन स्कोर को डिफेंड कर चुका है 2-3 मैच पहले एक टीम ने, हमने देखा था। तो यहाँ पर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर सही गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं, तो निश्चित रूप से गेंदबाज उनके सही गेंदबाजी करते हैं उग्राण सेवक से, तो निस्संदेह यहाँ पर वो बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तशीच ही मुखारच्या एलिमिनेटर मॅचाच्या दोन्ही टीम श्रृंगेरी रायझिंग स्टार्स आणि सतीश स्ट्रायकर्स, तुम्ही टीम रजिस्ट्रेशन कोर का तशी टॉस आयोग निमून घेता सर। दोन्ही टीम जलतीतली वग्गी श्रृंगेरी रायझिंग स्टार्स आणि सतीश स्ट्रायकर्स, दोन टीमांनी येऊन जलतीतली वग्गी रजिस्ट्रेशन कोर का तशीच टॉसाक कॅप्टन आणि आयोग निमून घेतास। धन्यवाद श्रीमान गोपीनाथ भट्ट सर। और बिल्कुल सतीश, जैसा कि मैंने फरमाया, इस वक्त 39 रनों का लक्ष्य, 7.80 रन प्रति ओवर। राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर बेहतर गेंदबाजी की जरूरत उग्राण सेवक्स के गेंदबाजों को, जबकि एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है नागनकट्टे पैंथर्स को अगर 39 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है। तो जहां तक इस मैच का सवाल है, अभी भी ऐसा करना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। माइक्रोफोन पर आइए सतीश। Thank you very much, Gopi. And coming back to this qualifier number 1, the two toppers team facing each other to get the place in the mega final, and the level of competition is definitely going to be very high. And being the defending champion of SPT Trophy Season 1, definitely is a little bit under pressure situation for team Naganakatte Panthers, how well they managed to win this match. The first ball right arm over the wicket balls, and the full toss delivery. The batter Harshit, known to be one of the game changer and known to be one of the perfect the batter for the side of team the Panthers to handle the pressure, and wait and see how we're going to handle the pressure here. The second ball, Pancham, right arm over the wicket, drives it on lack of placement, slight a bit of fumble from the fielder, but no question of any run. So very good start there from Pawan. Starts with the 2 dotted deliveries, and the batter Ashit couldn't manage to get any kind of runs in that 2 deliveries. Again from the far end, Pancham right arm over the wicket, balls to Ashit. Ashit again drives that one. This time he played it one little bit square of the wicket, and soft end comes into play. So Ashit off the mark with a single, and team Naganakatte Panthers, they started their journey in the sense they need to get 39 runs to win the match in 30 deliveries. Already there is 4 deliveries, which is 3 deliveries which is completed in this first over, 4th time in this over. Lovely delivery there from Pancham. Needed such kind of start here for team Pawan, little correction. Ugrana Sevaks have to get some good start here. Is again right arm over the wicket, balls again. Lovely delivery indeed there from the bowler Pawan in the negation, and just drawing the batsman onto the back foot with a fantastic line. Almost the ball is coming into the batter in the negation. Saurav just going back and getting his first run. 2 without loss of any wicket
in the over number. First is in progress. Pawan from the far end. Right above the wicket. This time Arshit using his feet to place it down to cow point region. Misfield left by the fielder. Ball going to be a boundary there. Unfortunately, all the efforts which is gone in vain of that bowler. Have a look at the supporters of Naganakatta Panthers. They're really cheering each and every runs with the sounds there. And big oohs and ahs goes around the ground. Absolutely, that shows that the excitement in this particular qualified number one. And Gopi, certainly that boundary will going to give some kind of oxygen here for the team. Panthers, because this is a dried, actually this is definitely is going to be economical over till the 5 deliveries because of the misfield by the fielder, and the team Naganakatte Panthers there got an important 6 runs in that first over. Exactly, Satish. वो चौका जो फील्डर के गलती की वजह से मिला था, वो चौका इस वक्त उनके टीम के स्कोर के एक बेहतर शुरुआत शुरू करने पर मजबूर कर चुका। पहले गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और यहाँ पर अभी भी सतीश ऐसा कहना पड़ेगा, मैच इस वक्त बराबर पर रुक चुका है। 33 रिक्वायर्ड, 24 डिलीवर, नाउ इट्स 23 डिलीवरीज रिक्वायर्ड, और देखते हैं इन 23 गेंदों में क्या होता है उनके पारी में। Absolutely, go Peter, 23 runs, 23 deliveries remaining, and they need to get another 33 runs to win this match. Again, nicely driven down to short cover point region for a single, but if that single score, but moves on to 7 on the board. Adi, the bowler, is in action. He bowled 2 very good deliveries in that over, and he will go into bowl the 3rd time in this over from the far end. Ashit is the batter, will go into face Adi. Right arm over. Oh, that might be the ball which is very close to the stumps, isn't it? Very lucky indeed, Ashit, because he wanted to drive the ball, but because of that ball, he's got a little bit under edge of the bat. Ball just missing that off stump of batter Ashit. Very good 3 deliveries there from Adi. Right arm over the wicket, bounce again, drives that one down to, and he's gone. My goodness, can you believe this? Have a look at the celebration of Ugrana Sevaks, Gopi, because they knows that it's a huge wicket, because Ashish is the batter who got a lot of runs from his bat in this tournament, and again getting his wicket in the 2nd over. I think definitely the team Sevak, Ugrana Sevak they are looking in a top. Exactly, Satish. हर्षित की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी थी उनके लिए, और हर्षित ने गेंद को स्कूप किया था एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन उनका थोड़ा सा अंदाजा चूकता हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर टिप्पा गई, और हर्षित का विकेट निस्संदेह उनके टीम के लिए यहाँ पर ड्रॉबैक साबित हो सकता है। Absolutely, it's going to be a big drawback because he's a man. He's definitely got a potential of changing the complexion of the match. Again, lovely delivery, appeal for caught behind the wicket, more than the confident. You can see the excitement only from the bowler, not from the wicketkeeper. That shows that Adi wanted to put some pressure onto the incoming batsman Nagesh. Is being the captain of the side of Naganakatte Panthers. Of course, Nagesh knows that he need to handle the pressure here, because the bowlers of Ugrana are doing a fantastic job so far. Adi bowls, lovely delivery indeed. Again, Nagesh off the back foot plays it down to a short cover point region for an easy single. Pawan the fielder down at short extra cover. One more tidy over, one more good over in favor of team Ugrana Sevaks, chasing a 39 to win this match. 8 for the loss of 1 wicket. That means in remaining 3 overs, they need to get another 31 runs to win this match. And Gopi, 10.33 runs per over, the required run rate. And certainly under this format of a game, I think it's going to be a big ask, unless one good over in the sense, one productive over which is badly required here for Naganakatte Panthers. Exactly, Satish. यहाँ पर 3 ओवर में 31 रन, under this situation, under this condition, it's going to be difficult, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और निस्संदेह 1 ओवर जिसमें अगर 12 से 15 रन बनते तो निस्संदेह यहाँ पर नागनकट्टे पैंथर्स इस मैच में वापस आ सकता है। फिलहाल तख्ता जरूर भारी लगता हुआ इस वक्त उग्राण सेवक्स का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है नागनकट्टे पैंथर्स के लिए। Absolutely, Gopi. After completing 2 very good overs by the bowlers of Ugrana Sevaks, but job which is not yet over. They need to bowl another 3 good overs if they wanted to win this match. Right arm over the wicket, off the back foot, cuts that one down to extra coverage, and good piece of fielding there by the fielder. Just a single, and Ugrana Sevaks are there putting 100% in this game. They know that the only one game which is remaining, they wanted to win the match so that they can be in the final of this prestigious SVT Trophy 2024. From the far end, Vasudev round the wicket to Saurav. Saurav, ball which is kept very low indeed. Absolutely one of the difficult delivery for any batter to deal with. Absolutely, because ball is pitching outside the line of off stump, and Saurav wanted to drive the ball which is kept with little bit low in the occasion. Ball just passing under the bat of Saurav. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Vasudev again, round the wicket, right arm.
to Saura. Saura plays it down to square leg region, but not more than a single. Of course, of the fielding team, Ugrana Sevaks are not really bothered about the singles. They knows that they need to drive that boundaries, which is very important for the opposition team. And so far, there is no boundaries at all. There are really all we can see that runs are coming in the form of singles. 10 for the loss of 1 wicket. Was the bounce this time off the back foot, cuts at one. Chance of run out in the now striker side. It's gone. Nagesh back into pavilion. This is going to be one more big fish in the net. This is going to be a disaster for the team Nagadakatte Panthers because they're losing the captain. Have a look at the dismissal in the replay in the big LED screen. Batsman tried to cut that one, but couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. But bowler on his follow through, complete the formalities of run out. Wicket number 2 is back into pavilion. Now looks like Nagadakatte Panthers are looking in deep trouble. It's 10 for the loss of 2 wicket. New batter in. Raghavendra, one more very experienced campaigner, very good cricketer, especially the number 4 position is definitely going to be a very suitable player to handle the pressure, and we will see how well, along with Saurav, how well these two batters will go to handle the pressure here. 10 for the loss of 2 wickets. So far it's so good for team Ugrana Sevaks. Driven, but only for the single. They're going for the run. Chance of run out. Direct, it might be the end of Saurav there because he's not in the picture after that attempt. The throw which is coming from the hands of Ramanath down at mid-on region. Skobar Namuzant 11 for the loss of 2 wicket. Still it's long way to go to get the winning runs, which is at 36, which is 39, which is the target. That means 28 more runs required for the victory. Vasudev, right about the wicket. Raghavendra delicately played that one down to back point region for a single. With that single, Skobar Namuzan to 12 for the loss of a 2 wicket. A tidy over, one more tidy over, which is comes in and which is bowled by Vasudev. After completion of 3 overs, chasing a total score of 39 to win this match. It's 12 for the loss of 2 wicket. That means in the remaining 2 overs, Gopi, they need to get 27 runs to win this match. But the problem here for team Nagadakatte is that asking run rate 13.5 runs per hour. Probably this over is going to be a very, very important over for both the teams. Sandeep Kamath will going to bowl that very important over in this over. The Panthers have to get at least 14 to 15 runs if they wanted to keep the hope of winning this match alive for the last over. Right arm over the wicket again. That going to be a wide. Sandy starts with the warm-up delivery of the evening, which is going further away outside the line of off-stump. With that extra Skobar Namuzan to 13 for the loss of 2 wicket. That means 26 more runs required for the victory in 12 balls. Sandy. Balls to Raghavendra, cuts that one. Again, not quite getting that one from the middle of the bat. The lights are on here of Cricket Stadium. Of course, after the light switch is switched on, this ground is looking so more beautiful. And Skobar Namuzan to 14 for the loss of 2 wicket. 25 more runs required for the victory. Improvisation, absolutely perfect there from Saurav. Just getting the ball coming into his bat, and have a look at that. He's changing his position very quickly and getting that one right between third man and the backward point region for a very, very important boundary for Panthers. With that boundary, Skobar Namuzan to 18 on the board, 18 for the loss of 2 wicket. Again, Sadi, and he draw. Oh my goodness. He just hit that one pretty hard, Saurav, and couldn't manage to keep it down. It's absolutely one more huge wicket is back into pavilion of Nagadakatte Panthers. That was absolutely hittable delivery, but hittable delivery in the sense you cannot do the mistake by hitting that one in the air. You need to hit the ball down the ground if they wanted to get the boundaries. And unfortunately, Saurav back into pavilion. It's 18 for the loss of 3 wickets. Still 21 more runs required for the victory in remaining 9 deliveries. Sandy balls leaning into the drive. Deepak in the negation, checking his stroke in the last moment to one more addition to total with the addition of that single. Skobar Namuzan to 19 for the loss of 3 wicket. 20 more runs required for the victory in remaining 8 deliveries. 20 needed, 8 remaining. Sandy to Raghavendra. Raghavendra cuts it in video. Lovely placement. Absolutely, that will going to give a lot of oxygen here for Raghavendra, that boundary. With that boundary, Skobar Namuzan to 23.
Now 16 more runs required for the victory in 7 deliveries. This is going to be a very crucial delivery. Raghavendra wanted one more. Right arm over the wicket bounce. This time place it down to extra coverage and he wanted to keep the strike for the next over. One more over completed, 4 gone. After completion of 4 overs, it's 24 for the loss of 3 wickets in the end. That means, Gopi, last over, 15 required. Do you think it's going to be a possibility for team defending champion Panthers to get that 15 runs in this last over? Because they got lost to all recognized batsmen. But Raghavendra, I think, is the one going to be a key player here for the Panthers to get that 15 runs. बिल्कुल सतीश 15 रन पॉसिबल है अंतिम ओवर में अगर कुछ हद तक ऐसा कहना पड़ेगा आक्रामक बल्लेबाजी अपनाते और यहाँ पर कम से कम एक या दो चौका कम से कम यहाँ पर उन्हें लगाना होगा 15 रन हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर पैंथर्स नागनकट्टे पैंथर्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, यहाँ पर देखते हैं राघवेंद्र जो अंतिम रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है उनकी मदद से क्या इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। Absolutely, Raghavendra will be going to be the key man here for team Panthers. Oh, lovely delivery there, Ramanath. Just like Gopi is mentioned that needed 1 or 2 or 3 boundaries badly in this over if they wanted to win the match. But first delivery, it's not a good start for the team Panthers because they missed 1 delivery. Now 5 balls remaining. They need to get another 15 runs to win this match. Ramanath bowling from the far end. Right arm over the wicket. Bowls cuts that one pretty hard and he going to be gets a boundary there. Now match is really cruising towards a very interesting finish. 28 for the loss of 3 wickets. That means 11 required from 4 balls. Now gate will going to open here for Panthers because of that boundary. Raghavendra definitely will going to get more confident after that getting the boundary. 4 balls remaining, 11 runs required. 1 more boundary will going to put some pressure onto the bowler. And the 1 more boundary will going to release the pressure from the batter. Omanath. Repeat correction. Ramanath bounce and it is going to be a delivery which is umpire called it a wide. Rightly so with that extra scoreboard moves on to 29 on the board for the loss of 3 wickets. 29 in the sense that 10 more runs required for the victory. Ramanath will go into re-ball that delivery, bowling from the far end. Right arm over the wicket. Raghavendra is not ready to face the ball. Dead ball called by umpire. All we can see that everyone under pressure. Batter under pressure, bowler under pressure, even spectators, they are also under pressure. This time lovely delivery. The batsman doesn't want to take a run here. Rightly so, Raghavendra wanted to deal with all the deliveries of the final over. Now 9 required from 3 balls. Little bit 10 required, correction. Scoreboard is 30 on the board. 9 required of 10 required from 3 balls. This time driven, but again they're not really going for the runs. Now 2 balls, 10 required for the victory. 2 boundaries will not going to help team to win this match. So now 2 balls, 10 required from the far end. Right arm over the wicket. Oh, going to be a boundary, but ball looks like hits a stump, changing the direction, unfortunately. But that boundary will not going to help the team to win this match. And bowler, if of course, one more chance for a team Panther is that if the bowler going to do the mistake bowling no balls and wide balls, then only the opportunity is remaining. But 6 required from last ball. Six required. So 6 required from last delivery from the far end. Ramanath bowling from the far end. Ramanath will go into ball 1 good deliveries. Here we go. Last delivery of the match. Ramanath bows. Batsman drives. Misses it completely. And celebration is on. Team Ugrana Sevaks are reached to the mega final of this prestigious SPT Trophy 2024 by defeating the defending champion Naganakatte Panthers in the qualifier number 1. And congratulations for the winners, but nothing much lose the heart here for Naganakatte Panthers. They got one more opportunity to qualify for the finals. So now I think it's a time for the eliminator
round here. The eliminator will be played between Shringeri Rising Stars versus Satish Strikers. So we'll take a short break here, and after the short break, the two teams will go into clash for the get the place in the qualifier number 2 of this prestigious SVT Trophy 2024. Thank you. Right, the eliminator match is now going to start. Shringeri Rising Stars will take over Satish Strikers, and Satish Strikers are now going to bat. Their openers are the crease. So Suraj starts the fresh proceedings. First ball of eliminator match is now coming up. Right arm over the wicket bowls. इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ वाइड स्पिन ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। हालांकि दोनों फील्डर यहां पर टकरा गए थे जरूर, लेकिन एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका। श्रृंगेरी इस वक्त सतीश स्ट्राइकर्स का एक रन बिना किसी नुकसान के। पिछले मैच में उग्रान सेवक्स ने नागनकट्टे पैंथर्स को हराकर इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, और यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया मिड विकेट पर। बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। पुल किया था खूबसूरती के साथ, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों आरंभिक बल्लेबाज अनिकेत और जीके भट्ट। अनिकेत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और सूरज। यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद गेंद चूके सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फ्लड लाइट्स की रोशनी इस वक्त मैदान को जगमगा चुकी है। इस वक्त दिन धीरे धीरे अंधेरे की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ, और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन नज़ारा हम यहाँ पर देख रहे हैं इस केनरा हाई स्कूल मैदान पर। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर से रन नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज सूरज 4 गेंदें वो फेंक चुके हैं, सिर्फ 2 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट अनिकेत इस वक्त सामना करते हुए 8 से 10 कदम उनका रन अप। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, और इस बार 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा चुका है, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 2 रनों पर। 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में सूरज इस वक्त फेंक चुके हैं। एलिमिनेटर दौर का मैच एसवीटी ट्रॉफी 2024-2024 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। दर्शकों से मैदान लगभग इस वक्त भर चुका है, और निस्संदेह से कहना पड़ेगा फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, त्योहार का माहौल इस वक्त छा चुका है, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सूरज दाहिना तो पर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में। फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एंड फ्रॉम सूरज, एंड अ फैंटास्टिक स्टार्ट इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। 2 runs just conceded by सूरज in the first over, और यहाँ पर सतीश स्ट्राइकर्स निस्संदेह पहले ओवर के बाद एक धीमा शुरुआत कर चुका। इस मैच में हारने वाली टीम इस श्रृंखला से बाहर हो जाएगी, और इस मैच में जो टीम विजय दर्ज करेगी उनका सामना होगा नागनकट्टे पैंथर्स के साथ क्वालिफायर मैच नंबर 2 में, और वो मैच इस मैच के बाद यहाँ पर खेला जाएगा। तो क्वालिफायर मैच नंबर 2 में इस वक्त प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष इस वक्त जारी है श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स और सतीश स्ट्राइकर्स के बीच में। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए
सिद्धार्थ ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज जी के भट्ट फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जी के भट्ट के लिए ओवर की पहली गेंद ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो नहीं पहुंचा गेंद को वहां पर मिसफील्ड करते हुए फील्डर सिली मिड ऑफ पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत की सतीश स्ट्राइकर्स को इस वक्त फॉर द राइट ट्रैक फॉर सतीश स्ट्राइकर्स इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट हाजी नेक्स्ट एक अनाउन्समेंट हाजी नेक्स्ट एक फ्रेंडली मॅच जावचे आसा ऑर्गनायझर्स 11 आणि ओनर्स 11 हाजी नेक्स्ट मॅचाची नाव सांगिल्याना तयार आस का ऑर्गनायझर्स 11 तुलाना म्हळ्यार ग्राउंडार मॅच खंयचेय मॅच खेळना तिला सुधीर भक्ता तशीच सुरेश वी कामत गोपी भट लक्ष्मीश बाळिगा दीपक भंडारकर के मंजुनाथ शणे नरसिंह भट कंदेल वसंत कामत जगदीश शणे रामचंद्र कामत आणि सतीश कामत तशी जी ओनर्स 11 तुलाना नाव सांगता आज नेक्स्ट कुठले तयार जाऊ का आदित्य पै संदेश मागीर संजय प्रभू विनायक पै चैतन्य नायक गौतम पै म्हळ्यार गौती नरसिंह पै पक्कण्णा नंदू भट्ट श्रेयस भट सतीश कामत आणि सुधीर पै या मॅच झाली कुठे तुम्ही रेडी आस का धन्यवाद तो यहाँ पर अगला मैच जो कि एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर मुकाबला जारी है इस श्रृंखला के क्वालिफायर मैच नंबर 2 में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बड़ा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद स्विंग किया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनकी ओर आई थी जीत और कोशिश इस वक्त उन्होंने जरूर की लेकिन उनके हाथों से गेंद छूटकर सीमा रेखा को पार कर चुकी है सचमुच ऐसा कहना पड़ेगा गेंद लगभग गोली की रफ्तार में उनकी ओर आई थी रियली द बॉल ट्रैवलिंग लाइक अ बुलेट एट दिस सिचुएशन एट दैट सिचुएशन इन फैक्ट और 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ दैट मींस ऑन 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और बड़ा एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार ये गेंद स्विंग एंड इज गॉन ही जस्ट हिट दैट वन ओवर द फेंस full tossly and he is backing to pavilion GK but the man dismissed and the second wicket lost for Satish Strikers 11 for the loss of 2 wicket third over in progress still the batsmen of Satish Strikers are now searching for the right track और अब नए बल्लेबाज के रूप में विघ्नेश हेगड़े क्रीज पर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए और सतीश स्ट्राइकर्स की ओर से और जहां तक सवाल है इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर इसको कदम बढ़ाते हुए स्ट्राइकर एंड पर कदम बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त बाड़ा की गेंदों का बाड़ा इस वक्त फील्ड में कुछ जमावट करते हुए मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर गली पॉइंट इस वक्त मौजूद स्क्वायर लेग मिड विकेट और मिड ऑन इस वक्त ना ठीक सीमा रेखा के अंदर अगली गेंद फुल टॉस ड्राइव किया रन के लिए दौड़ पड़े नजदीकी मामला लेकिन थ्रो करना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहां पर गेंदबाज विकेट के आगे खड़े हुए थे तो इस वजह से अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदला लेकिन गेंदबाज ने कहा कि भैया आपने को थ्रो करना चाहिए था वहां पर कुछ हद तक बात जरूर बन सकती थी लेकिन वहां पर फील्डर ने थ्रो नहीं किया और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज विघ्नेश के लिए 1 रन का इजाफा स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज बाड़ा एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए बाड़ा की गेंदों का ये गेंद इस बार कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल एंड इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अनिरुद्ध का ऐसा कहना पड़ा कि जस्ट रॉक्ड ऑन द बैक फुट एंड पंच्ड इट अवे थ्रू द ऑफसाइड इनटू द गैप इन बिटवीन मिड ऑफ एंड एक्स्ट्रा कवर एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर बेहतरीन स्ट्रोक अनिरुद्ध के बल्ले से लगता हुआ एक बार फिर से गेंदबाज बाड़ा गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद इस वक्त ये गेंद फुल टॉस स्विंग्स एंड दिस टाइम ही इज गॉन तो यहां पर स्वयं बल्लेबाज ये समझ नहीं पाए ये बिलीव नहीं कर पाए कि यहाँ पर गेंद उनके बल्ले से लगकर किस तरह फुल टॉस सीमा रेखा के बाहर गई है और 16 रनों पर तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल नाउ स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में
इस वक्त एबी डिविलियर्स नहीं है, आदि भट्ट इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, एबी की टी शर्ट वहां पर पहने हुए, 77 नंबर की जर्सी इस वक्त वो पहने हुए, एबी का नाम है पीछे, और आदि भट्ट इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच गेंदबाज बाड़ा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। 3 ओवर के समाप्ति, 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 17 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs scored by Satish strikers with a run rate of exactly 5.66 runs per over, and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. एक prestigious क्रिकेट श्रृंखला, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला एसवीटी ट्रॉफी 2024, जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके एसवीटी वॉलंटियर्स एसोसिएशन वॉलंटियर्स प्रीमियर लीग सीजन 2 2024 के नाम पर, और अंडर फ्लड लाइट्स ये श्रृंखला इस वक्त की शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। और इस बीच नायक गेंदबाजी शुरू करते हुए, चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ सतीश स्ट्राइकर्स की पारी में पहली गेंद इस बार वहां पर बैठ गए, गेंद को इस वक्त जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, और नो बॉल इस वक्त अंपायर घोषित करते हुए 1 रन का इजाफा हो चुका है। 18 रन फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और देखना यह है कि इस फ्री हिट गेंद का बल्लेबाज किस तरह फायदा यहाँ पर उठा पाते हैं। और अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त नायक, यह गेंद चिप किया 1 रन के लिए। अगर फ्री हिट गेंद नहीं होता तो शायद आउट हो सकते थे वो, शायद नहीं बिल्कुल आउट हो सकते थे वो, लेकिन यहाँ पर 1 रन मिला उन्हें, और 1 रन के साथ फ्री हिट गेंद पर 1 रन प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ फ्री विकेट। और इस बीच दाहिना हाथ ओवर द विकेट नायक एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को स्टीयर करना चाहा खूबसूरती के साथ, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को स्टीयर नहीं कर पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। नायक अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। यह गेंद फुल टॉस गेंद शरीर पर टकराई, गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके हैं, गेंद जब तक फील्ड और स्वयं गेंदबाज द्वारा अपनी आगे की ओर आने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन। और ऐसा कहना पड़ेगा, runs are hard to come by for the batsmen of Satish strikers at this situation. They badly required couple of boundaries at this stage to accelerate their run rate at this situation in remaining deliveries. नायक इस बार चूके उछालना चाहा था विघ्नेश ने, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, बेहतर गेंद थी इस वक्त नायक की। और हर डॉट गेंद के साथ यहाँ पर समर्थक श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के अपने टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए, और हर रन के साथ इस वक्त सतीश स्ट्राइकर्स के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का जोश और उत्साह बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद ड्राइव किया लंगोर पर 4 रनों के लिए, खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली प्लेड, इंटेलिजेंटली प्लेड बाय विघ्नेश। उन्होंने पहले ही भाप लिया था लंगोफ और लंगोन के बीच में अगर सीधा गेंद को इस वक्त खेला जाए जमीन के सहारे तो 4 रन प्राप्त कर सकते हैं। अपने इस योजना को 100% वो कार्यगत कर चुके हैं। इस गेंद पर खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया लंगोफ और लंगोन के दरमियान लगभग फ्री हिट एरिया पर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में नायक इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज विघ्नेश सामना करते हुए। यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई और वाइड का इशारा, इस बीच लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। एक दिलचस्प मैच, एक बेहतरीन श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। और इस बीच नायक अगली गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, कुछ बार पुल किया था लेकिन फील्डर में मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। वहां पर रन जरूर था, गेंद फील्डर के हाथों से चूकी थी, और बल्लेबाज अगर नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर दौड़ते तो शायद रन पूरा हो सकता था, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और विघ्नेश इस वक्त काफी असंतुष्ट, नाखुश होकर पेविलियन की ओर लौटते हुए उन्होंने अपना बल्ला भी फेंका, बैट भी फेंका, लेकिन आखिरकार समय बीत चुका था और उनका विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 25 for the loss of 4 wicket after completion of 4 overs, and the last over is now going to start in their innings. नरसिम्हा नायक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार फुल टॉस, गेंद को खेल दिया इनटू द गैप,
gap. Boundary results. Fantastically played. He just picked the gap between mid-off and extra cover and played that one delicately. And he's got a boundary for that stroke. बेहतरीन स्ट्रोक और इस स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 29 for the loss of 4 wicket at the start of the 5th and the final over in fact. तो इस वक्त गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से पुश कर दिया इस वक्त डेलिकेट और सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनाते हुए मिड ऑफ पर जब तक गेंद चंद टिप्पो बाद फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का 30 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स ये गेंद इस बार ड्राइव किया मिड ऑन पर फील्डर मौजूद थोड़ी सी मिस फील्ड लेकिन 1 रन बल्लेबाज को जरूर मिलेगा अगर क्लीन पिकअप होता तो शायद बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था नॉन स्ट्राइकर पर लेकिन गेंद मिड ऑन फील्डर के हाथों से चूकी सीमा रेखा के अंदर 1 रन का इजाफा हो चुका है 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में जस्ट 3 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज नंदू इस वक्त तैयार अगली गेंद ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा फाइन थर्ड मैन से बाहर 4 रनों के लिए इंटेलिजेंटली प्लेड इन द लास्ट मोमेंट गेंद जैसे ही ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी गेंद पर अपना बल्ला अड़ाया और अंतिम क्षण में गेंद को अपने बल्ले के कोने पर लगने दिया एज पर लगने दिया बल्ले के और खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया विकेट कीपर की दाईं ओर से शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की बाईं ओर से 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक 35 रन 2 गेंदें बाकी और बल्लेबाज इस वक्त आदि भट्ट सामना करते हुए ये गेंद इस बार सेंसिबल एब्सोल्युटली सेंसिबल कंसेक्यूटिव बाउंड्री फॉर आदि भट्ट और स्कोर बोर्ड इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 39 रन पर 14 रन केम फ्रॉम दिस ओवर सो फार इन 5 डिलीवरीज दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फर्स्ट बेस्ट ओवर इन सतीश स्ट्राइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल 1 बॉल लेफ्ट द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप गेंदबाज तैयार इस बार चूके विकेट कीपर के हाथों में रनआउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है So the innings is up there, stipulated overs are completed. 39 runs scored by Satish Striker. They started slowly, progressed slowly, but in the final over, they finished very well. They grabbed 14 runs in the final over, and with that last over, and because of that last over, they finished respectively with 39 for the loss of 5 wicket, and now exactly 40 the target for Sringeri Rising Stars. 40 they have to score in the stipulated 5 overs with the required run rate of exactly 8 runs per over to qualify for the qualifier number 2 of this competition. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं तो इस वक्त लगभग अंधेरा सा छाता हुआ और यहाँ पर श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स की पारी यहाँ पर शुरू होती हुई तो देखते हैं यहाँ पर उनकी पारी में क्या होता है और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित यहाँ पर करना चाहूँगा एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को और सतीश पिछले मैच में 38 रन 39 रनों का लक्ष्य नागनकट्टे पैंथर्स उस लक्ष्य को पार कर नहीं पाई थी और 5 या 6 रन से उन्हें विजय पराभव का सामना करना पड़ा था यहाँ पर 1 रन ज़्यादा है 40 रनों का लक्ष्य है श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के लिए सतीश स्ट्राइकर्स ने जो रखा है और 40 रनों का लक्ष्य इस वक्त अगर 40 रनों के लक्ष्य तक पहुँचना है तो निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा सतीश इस वक्त एक बेहतर शुरुआत उन्हें करनी होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर उन्हें एक बेहतर बल्लेबाजी देनी होगी और कम से कम जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है टारगेट तक पहुंचने का सवाल है तो पहले 2 ओवर में कम से कम 20 रन 15 से 20 रन अगर बटोरते हैं तो निस्संदेह श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के लिए यहाँ पर लक्ष्य आसान बन सकता है लेकिन जहां तक सतीश स्ट्राइकर्स का सवाल है उन्हें भी पहली ओवर से घातक गेंदबाजी करनी होगी अगर श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों को 39 रनों के अंदर अगर रोक कर रखना है तो ओवरऑल ऐसा कहना पड़ेगा 40 रनों का लक्ष्य इट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्पिटिटिव इन दिस कंडीशंस in this conditions जहाँ तक विजय के संभावना का सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन माइक्रोफोन पर आइए सतीश Well, Gopi, absolutely very interesting to see that the similar, almost same target and the previous qualifier number 1, there is a target of 39 for team Naganakatte Panthers. Now here is a target for Rising Star, exactly the 40. One run more than the target for the qualifier number 1. So 40 will go into a target and Suraj and Nagaraj, the 2 opening batters, came into middle there and Gopal will go into starts the proceedings. And coming back to these two teams, Gopi, Satish Strikers, they got runs in the last over. That will go into be really a turning point of this match as Adit got some runs in the first over. Now first delivery
The ball by Gopal, which is defeats the bat of Suraj and went into the hands of wicketkeeper, and lot of support coming here for both the teams. And the fans definitely they wanted to see their team in the qualifier number 2. Again, Gopal right arm over the wicket. Suraj cuts at one down to extra cover. They're going for the quick single. And with that single, they open their account. They started their journey, and 40 is going to be a target for the team Rising Stars. So Rising Stars have to rise under floodlight. Of course, the stars definitely will going to rise in the night, not in the daylight. But that's why we need to see that how well the stars of team Sringeri will going to rise here against bowling of Satish Strikers. Satish Strikers have to strike early if they wanted to win the match. Again, nicely plays it down and misfielded. This time nicely behind the bounce of the delivery there by Nagaraj. Delicately played there by Nagaraj. Not really tried to hit that one pretty hard, but he just plays that one with the soft hand and delicately plays it down to backward point region for 4 runs. That's going to be a welcome boundary for Rising Stars. 5 without loss of any wicket. Gopal back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Nagaraj. Nagaraj this time just shouldering his arm. Misjudgment of the line. Absolutely that well within the reach of the batter, so that no question of calling that wide. A good comeback here by Gopal, and score remains on 5 on the board without loss of any wicket. Gopal again searching for the dot ball. Right arm over the wicket. This time definitely going to be punishable from the umpire, so that it's going to be a wide call by umpire. 6 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Each and every run you can see that in the dugout we can hear the big sounds and woos and ahs and coming from the left of our commentary box to cheer their batters. Again, right arm over the wicket. Lovely delivery there. They're going for the quick single, chance of run out, but wicketkeeper couldn't manage to collect that one very quickly. Leg by call by umpire. With that extra, scoreboard numbers on to 7 on the board without loss of any wicket. 40 is the target for team Rising Stars against Satish Strikers. Satish Strikers have to strike with wicket if they wanted to win the match. Again, a lovely delivery. Appeal for caught behind, but just an half-hearted shout more than the confident from wicketkeeper and the bowler. First over completed. After completion of first over, chasing a total score of 40 to win this match, team Sringeri Rising Stars managed to get 7. And that means in 4 overs, they need to get another 33 runs to win this match in remaining 24 deliveries. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Both the teams certainly wanted to be in the qualifier number 2. They will going to get a chance to play against Naganakatte Panthers in the qualifier number 2. So second over will going to start. Aniket, the bowler, will going to start his fresh over. Second over of the innings of team Rising Star. Right arm over the wicket. Lovely delivery to start with. They're going for the single, chance of run out. Direct hit and it's gone. Absolutely good presence of mind here from the wicketkeeper. Not really tried to hit the ball, but just an underarm throw which is good enough for him to hit the stump. That time the batters well short of his crease. Huge wicket of Nagaraj is back into pavilion of team Rising Stars. So just waiting for the new batter. The replacing Narasimha is the new batter in, just came into middle. Suraj pulls that one. Good piece of fielding there by the fielder. Opportunity of run out created. Oh my goodness, no one backup is there. And they will settle for the single. Very good backup by there, Vignesh. Otherwise, certainly it's going to be a boundary overthrow. And fortunately for team Satish Strikers, the fielder from mid-on, Vignesh, really covering the areas. And scoreboard is 8 on the board for the loss of 1 wicket. What a fantastic scenario. We can see that absolutely electrifying atmosphere here in this most prestigious SVT Trophy 2024. Everyone enjoying the game of cricket. Aniket right, arm over the wicket, bowls, wishing the direction, plays it nicely down to short fine leg region for 4 runs. Loose delivery there from Aniket, pitching outside the line of leg stump. Short pitch one all the time in the world for Narasimha to hit that one down to very fine, down to fine leg boundary for 4 runs. So 12 for the loss of 1 wicket. Aniket.
Away from us, balls, full toss delivery, and Narasimha couldn't manage to take the advantage of that full toss delivery. He managed to complete the single, then Skoban moves on to 13 for the loss of 1 wicket. Still, 27 more runs required for the victory, and over number 2 is in progress. Aniket, so far in this over, he conceded 1 boundary. Otherwise, definitely going to be one more tidy over. Last 2 deliveries remaining in this over of Aniket. And Suraj is on strike, the batter who came as an opener for the side. You know exactly the kind of innings which is required for his team if they wanted to be in the qualifier number 2. Aniket, away from us. Right arm over the wicket, cuts it that one beautifully. Absolutely sweet sound coming from the bat of Suraj. He's absolutely struck that one very firmly and punched it away down to deep extra cover point, extra cover boundary for 4 runs. 17 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. 23 required for the victory. 19 balls remaining. Slowly and steadily, Rising Stars started to rise in this match. Right arm over the wicket. Oh, quite dangerously played. Opportunity of run out great. Oh, direct hit and got a gifted runs. My goodness, can you believe this? You can't do the mistake here in the 30-yard match. Try to hit the stumps. Ball suddenly hits the stump, but unfortunately overthrow. 4 gifted runs for Rising Star. Then scoreboard moves on to 21 on the board. Absolutely disaster for Team Satish Strikers. Nothing wrong with the attempt from that fielder that is trying for the run out. But while you're hitting the stumps, you need to see that if you hit the stumps firmly, there could be a boundary. And that's going to be really a gifted run for the team Rising Stars. Dealing with some luck. 21 on the board. 19 more runs required for the victory. 18 balls remaining. GK Bhatt is in actions. Misfielded, they're going for the single. That means 1 + 1, 2 more to the total. The pressure is off now for the batter, from the batters. 23, 17 required from 18 balls. JK Bhatt bowling away from us. Suraj turns that one down to square leg. Not more than a single. Here come the throw, gone. Suraj finding himself short of his crease. Absolutely, it's not a good running between the wicket, I want to say. He runs very slowly. Pays the penalty for that. Wicket number 2 back into pavilion. Will it going to be a turning point of this match? Wait and see. Satish Strikers still got opportunity to back in the game. If they're able to get 1 or 2 wickets and 2-3 dotted deliveries, which is badly required for Team Satish Strikers. 17 more runs required for the victory. 17 balls and 17 runs required for the victory. New batter in is talented Bala with the jersey number 9 in non-striker's end. Narasimha is on strike. GK Bhatt. Ball, oh, lovely delivery. Appeal for caught behind. Have a look at the wicketkeeper, and he's just saying that you should tell that I'm nicked it. But it's the umpire have to tell. Umpire have to say that whether the batsman nicked or not. But have a look at the level of confidence from the wicketkeeper. He's very confident he got a wicket, but it's a little bit extra bounce defeating the bat of the batter. Here is again GK Bhatt. Driven that one right in the gap. Good fielding there by the extra cover fielder. Just a single. With that single, Skoban moves on to 24 for the loss of 2 wickets. 16 more runs required. And deliveries remaining. 15, 16. 15 balls, 16 required for the victory. Left-hand batsman Bala is on strike. GK Bhatt. Full toss. Drives nicely. Straight down the ground. No chance at all for the fielder. One of the safest stroke to play in the 30-yard. Playing it very straight. Very, very loose delivery, I want to say. In a good height, the batsman no chance to missing that opportunity to drive that one down to mid-off for 4. 28 on the board for the loss of 2 wicket. One more cricketing stroke. Little bit fumble from the fielder. Just a single there for Bala. With that single, Skoban moves on to 20.
1 ball remaining. 29 for the loss of 2 wickets. 11 more runs required for the victory. 13 balls remaining. 11 required for the victory. GK. Narasimha drives. What a shot! Crashing cover drive. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, hold down. Yo, you sweet life, fan down. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl. No, tell me no, oh. Baby, come give me a lo. Shawty, come give me a lo. So what a magnificent crashing extra cover drive there from Narasimha, and that will going to release the pressure from the batter, because in 12 balls they need to get another 7 runs to win this match. Certainly Satish strikers needed one good over. Absolutely some miracle bowling required for Satish strikers if they wanted to back in the game. AB balls nicely fixed off his legs down to square leg region for an easy single by Bala. With that single, Skobardna moves on to 34 on the board for the loss of 2 wickets. 6 required for the victory in remaining 11 balls. AB trying for 1 wicket and some dotted deliveries. Right arm round the wicket, balls to Narasimha. Catch is a call, and catch has been taken there by the slip cordon fielder. AB strikes. 1 more wicket is back into pavilion. Thank you, DJ. What a fantastic catch taken there by that short third man. In fact, it's a slip cordon fielder and taken a fantastic catch, which is very low down to him. And before the ball will go into land it, he taken that absolutely a stunner. And because of that wicket, certainly little bit chance here for Satish strikers to back in the game. 34 for the loss of 3 wickets. Still 6 more runs required for the victory. AB bowls a new batter, drives that one down to mid-on. Not more than a single in the occasion. With that single, Skobardna moves on to 35 for the loss of 3 wickets. 5 more runs required for the victory. And 9 balls remaining in the innings of Rising Star. Ball up back on strike. AB bowling away from us. Round the wicket, left the ball, wide call by umpire, little margin for error. 1 more addition. With the addition of that single, Skobardna moves on to 36. That means the 4 required for the victory. 9 balls remaining, not a big ask. But cricket is game of glorious uncertainty. If you wanted to come make this uncertainty, this man have to pick the wicket. Driven nicely in the gap. What a shot. Have a look at the finish for this match. Sringeri Rising Star, they entering into the qualifier number 2 of this SVT Trophy 2024, which is proudly organized by SVT Volunteers Association. And congratulations for the winners. Hard luck, Satish strikers couldn't manage to defend this total against Rising Stars, and Stars of Sringeri. They really rise in this match, and they got a place in the qualifier number 2. तशीच आत्ता जल्ला मॅचा विನ್ನर साक ಕೂಡಲೇ ಅನೇಕ ಮ್ಯಾಚ್ खेळो मेळटा ताजे खातीर ताजे बस फुडें ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट दिवचे खातीर हे ग्राउंड ಅಂತೂ ಕಾಲಿನಿ ಆಜಿ कोण खेळणीचकी ऑर्गनायझर्स 11 आणि ओनर्स 11 म्हणून दोन्ही टीम आउट एक फ्रेंडली मॅच जावचे आसा. तावळी नाव आपण सांगला तशी एक नाव आपण सांगता. ऑर्गनायझर्स 11 तुलाना कॅप्टन सुरेश वी कामत. ऑर्गनायझर्स 11 तुलाना कॅप्टन सुरेश वी कामत. तशी ओनर्स 11 तुलाना कॅप्टन आमगेले पकडना. दोन्ही कॅप्टन ಒಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ जावचे आसा. हंगे तशीच ओनर्स 11चे एक एक नाव सांगता. त्यांनी पकडनाल मक्षरा बुका आदित्य पै स्ट्राइकर्स आयलो. संदेश शणै
संजय नायक संजय नायक विनायक पै नाव पैल मात्र भित्रे एक पटी नाव पैल मात्र चैतन्य नायक वग्यव का चैतन्य नायक नेक्स्ट गौतम पै गौती नरसिंह पै पक्कಣ್ಣ नंदू भट्ट अस्व सतीश कामत अंगस ना सुधीर पै प्रश्तो एक पटी ऑर्गनायझर्स आला एक पटी नाव अपयता सुधीर भक्ता गोपी भट लक्ष्मीश बाळिगा दीपक भंडारकर के मंजुनाथ शणै नरसिंह भट कंदेल वसंत कामत जगदीश शणै रामचंद्र कामत निप्पो सतीश कामत हाँ सुधीर पै आणि रघुराम कामत जल ना दादा जल ऑर्गनायझर्स 11 आणि ओनर्स 11 आज कॅप्टन दोग जण पकड आणि सुरेश अण्णा दोग जण आमगे लोटासाची टॉस जाता सत ओनर्स 11 आणि ऑर्गनायझर्स 11 हेड के ओनर्स 11 आचा टेल ऑर्गनायझर्स 11 सुरेश अण्णा टॉस विन जावनो आम्ही बॅटिंग घेताची
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅನಂತರೈ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅನಂತರೈ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಅನಂತರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. सो आता एक फ्रेंडली मॅच तुमगेला जरा ऑर्गनायझर 11 आणि ओनर्स 11. आता फर्स्ट बॉल घालो का गोपी भट मामा का बिसूच्या बलेला गोपी भट मामा ज्याला ब्रीड जालतो खंचे रंजायनी बॉलर चैतन्य नायक तगेलवರ दोन्ही बॉल घालो का गोपी का नेक्स्ट बॉल पासते वैर गेला बळका घ्यायचा चान्स की म्हणून फिल्डरान हेवची बिडे बॉल तोगू पडल्या ज्याला कंचेरನ್ನು ಕಾಣಿದಾನಿ. आता पास तिन्ही बॉल घालू का अपास लायक एक बॉलिंग ते यॉर्क बळा पय्या मिडला तुला ना कंचेरನ್ನು ना भारी लायक बॉलिंग चैतन्य अपास गोपी भट मामा का अपास बिसूच्या बेळेला बीड झाला गोपी भट मामू खेळण्यातील सुमार वर्ष झाली की म्हणून तशी ताका खंयचे कनेक्ट जायना. नॉन स्ट्रायकर अंडा ते सुधीर बघत असा आता सराना आता कनेक्ट केला गोपी भट मामाना आणि बळ का गोपी भट मामा किती 6 मारत म्हणून ताका एक नॅक मेळ का आशिल्ला. आता गोपी भट मामा बॅटिंग पळया ती 1-6 जाला. नेक्स्ट बॉल घालो का गोपी भट मामा का अपास मारू पळेल जाला रे अपास कनेक्ट जायनी स्टेट बॉलर लायला तशी ओव्हर कंप्लीट जाला. 1 ओव्हरांतून स्कोर 6 रन ओव्हर झाला. दर्शक हे 5 ओव्हर मॅच एक फ्रेंडली मॅच 1 ओव्हर कंप्लीट झाला 6 रन. आत्ता बॉलिंग येता असा गौतम गौटी स्ट्राईक घेवचा का सुधीर बघतो 1 ओव्हर 6 रन 5 ओव्हर मॅच गौतम सुधीरा का ओ लायक बॉलिंग पीठ झालो सुधीर बघतो. सो खंयचे रन ना स्कोर 6 रन. सेकंड बॉल घालो का लेग स्टंपा भायर सिग्नल वाईड 1 एक्स्ट्रा रन मेळ्ळा स्कोर 7. गौतम तगेलवರ दोन्ही बॉल घालो का सुधीरा का अपास ते बीट झाला लायक एक लेग स्पिन बॉलिंग ते भारी चंद बॉलिंग खंचे रन जायनी 1 वाईड मान घालला असताना नेक्स्ट बॉल आता सुधीरा नुकाळा 6 रन लेग साइड का स्कोर 13 रन डीजे नेक्स्ट बॉल बघता का ते बळका घ्यायचा चान्सेस की म्हणून 2 फोल्डर पडला बॉल 4 रन स्कोर 17 दोन्ही ओव्हर जाता 17 नो लॉस. या ओव्हरांनी 2 बॉल असा 5 बॉल घालू का अपास बघता का भारी लायक बॉलिंग द्यायचे एक सिंगल धावून काढला लायक रनिंग
स्कोर 18. लास्ट बॉल. अंपायरांचा बॉल लॅक कर का नातला अंपायर चेंज करता आम्ही हंगा अंपायर सम गेलो. नेक्स्ट बॉल गोपी बाबडो मारू पडेल जाला रे ताणे ऑफ कटर केले प्लेट केलं ओव्हर कंप्लीट झाला. सो 2 ओव्हरांचो स्कोर 18. खंयच्याय विकेट वच्चांनी. आता तिन्ही बॉल घालू का तिन्ही ओव्हर घालू का सतीश कामत सुधीर बघता का 2 ओव्हर 18. तिन्ही ओव्हर फर्स्ट बॉल बघता का बघतान कट करू पडेल बीट जाला लायक एक बॉलिंग ते सतीश आले कंचे रन ना स्कोर 18. तगेलवರ दोन्ही बॉल अपास या बॉल का 6 की कैच बोलो 6 स्कोर 24. सुधीर गेलता 17 रन. नेक्स्ट बॉल लेग स्टंप बाहेर वाईड तशी कीपराने मिस केला बॉल बाउंड्री लाईन बाहेर 4 रन 1+4 5 रन. स्कोर 29. तिन्ही ओव्हर जाता स्कोर 29. नेक्स्ट बॉल लायक बॉलिंग ते चिकी सिंगल खेळले. हो रघुरामन 2 पडलो कसले डॅमेज जाईन दिसता का ना ओके म्हणला ताणे राईट. आता गोपी भट मामाक पुळका गोपी भट मामा एक 6 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮದರಸ ಜಾಲರಿಂದ 4 ರನ್. स्कोर 34. जस्ट 3 ओव्हर जाता या जाते रनिके 2 ओव्हर असा. नेक्स्ट बॉल फुल टॉस 6 रन 6 रन. नेक्स्ट बॉल लास्ट बॉल ओव्हर गोपी भट बाबा फुल टॉस मारू पडेल किती कनेक्ट जाय साईड फिल्डर आला तिथली भितर 1 रन जाऊन काढला. तसे ओव्हर कंप्लीट झाला 3 ओव्हरांचो स्कोर 41 आणि 2 ओव्हर असा. पळका ते सुधीर बघता रिटायर जावन वता असा विंगडाके फुडाके खेळ का म्हणून तशें आता आमगेलो ऑर्गनायझर तुलान येता असा सुरेश बिग कामत. तशी आमगेलो अंदेकलो एक्सपर्ट कमेंट्रेटर हांगा अनंतराय आता बॉलिंग आयला आधी एक इनिंग्स आधी का बारी गडबीड दिसता काही काही वचास राहते वल्टिकेच्या वचास की वचास लेफ्ट हँड बॉलर गोपी भट बाबा का ते क्याचा चान्स ज्याला फिल्डर होतो बडा बॉल बोटीला त्याला होता तिथली भितर बॉल फील्ड गेलते 1 रन काढला. आता बॉल का 42 42 4 ओव्हर जाता असं. आता बॅटिंग का सुरेश दबास ऑप्शन बाहेर बॉल वाईड स्कोर 43. आधी सुरेश का थोडा बॉल ओव्हर असा घ्यायचा चान्स असते फील्डर थोडे लेट झाले तिथली भितर सुरेशान 1 रन काढला. स्कोर 43 सॉरी 44. नेक्स्ट बॉल 6 रन गोपी भट बाबा 6 रन स्कोर 50 झाला 50 रन झाला. ऑर्गनायझर 11 50 रन क्लॅपर बुडणाने 50 रन झाला.
रन करतो नेक्स्ट बॉल लायक एक बॉलिंग ते बीट जाला स्कोर भरती पण असा आधी नेक्स्ट बॉल गोपी भट मामा का 4 रन गॅप अर्धला मारला गोपी भट मामा स्कोर 54 सो लास्ट बॉल नरशिवा तो अंपायर आम्ही चेंज करताची सको सेकंड वॉर्निंग आहे अंपायर ते रेडी असा 63 नंबर टी शर्ट नेक्स्ट बॉल बीट जाला तशी ओव्हर कंप्लीट 4 ओव्हर जाला 4 ओव्हर ಅಂತೂ 54 आणि या लास्ट ओव्हर पळका लास्ट ओव्हर ಅಂತೂ कितले रन करता म्हणून पळका वगेया बॉलिंग वगेया तशी आता आमगेले कमेंट्री चेंज जाता एक्सपर्ट कमेंट्रेटर तशेंच आउट तशेंच कमेंट्री चेंज आमगेले एक्सपर्ट कमेंट्रेटर अनंत राय हॅलो कमेंटेटर चेंज आता आमगेला संजयला दोन्ही बॉल घालू का कोब्बार असा गाण घालल मंके बॉलिंग घालता सा बॉलिंग घाला कोब्बू समज सिरकन घे म्हणू नो बॉल दिला सैड अंपायर मेन अंपायर नरसिंह कोंचाडी नरसिंह शणै तुम्ही उलन घ्यायची 5 मिनिट ब्रेक असा 5 मिनिट ब्रेक असा राबा संजय तंगल डिसिजन ಏನಿ नो बॉल दिला आता फ्री इट्ಟ ಅಪಾಸ್ एक ಕೊಬ್ಬ ಗೊಂಡಗಲು ಕೆಜಲ ಗಲ್ಲೆ ಕೊಬ್ಬ ಗಲ್ಲೆ ಫಾರ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಿಸಿಲ್ ಬೆಟ್ಟಾಕ ವಾರಿಕ ಶೈಲ ಮಳರಿ ಒಂಗ ಉಬ್ಬುನ್ ಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬೂರೆ ಅಪಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಲ ಸಂಜಯು बॉल घालला रामचंद्रन बिसिला ज्याला बॉल तई ಗೊಂದಲ್ತಾಸ कसं म्हणून ಗೊತ್ತ ना संजय कशी येतला रे 36 बॉल एकलो घाल संजय गॅरंटी अपास आयला संजय डोप्पी घालनो घालले बॉल बिस्विला अपास एक फॅना ॲडव्हर्टाईज वारी मात्र ಇಲ್ಲ संदेश लज्जेतास ಚೆಲ್ಲಿ ಬುಳ ಜನಾಂಗ ಬೌಲಿಂಗ್ घालच्या संदेश लज्जेन रबला संजय खुशी झाले यांची चौकाशी मक्का म्हणून मनान तू लेखतास आणि असतास आता बॉलिंग चेंज कर का म्हणून स्पेक्टेटर बरोबर सांगतास आता इला मार्को आणि स्टीवो या विंगड टीमाची मार्को स्टीवो या आता इला पक्कना आनगेल बोलताय पावताना रात्री पुजपोळ नेवेची म्हणून तुम्ही पक्कणान आता बॉलिंग घालवायला ओव्हर हँड काही पक्कणान सुरेखा मला माग जीवा कुडवा ना कसं येताय की तुम्ही करायची म्हणून अंडराम घालतास तुम्ही रात्री पुजपोळ नेवेत बोलताय पावताना रात्री पूज जाता पक्कणा स्टीवो मार्को वाईड घालला मार्को खेळतास स्टीवो बॉलिंग घालतास आपास बॉलिंग घालायला चंद बॉल सुपर शॉट गौतमला तांदू उमती पडतशी ना ना पाणी 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 उमती पण तशी लेखत आपास जायला बटमा बॉलिंग पक्कनाल बॉलिंग का बटमामान सोडला बटमाम कंगी टीव्ही तात्तावळ पळयता वाईड आणि सोडची पळयता असं तशी अपासायला पक्कना बॉलिंग घालू का चंदगोन सोडला बॉल बिसिला कार्तिकाल एक हत्तन कॅच
येऊच वर्ष ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಚ್ಚಿ ಲೈಲಾಂಡು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ನಾಕಾಜಿ ಡಿಜೆ ಗಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸರ್ವಾಂಗ ನರ ಕೊಂಚಾಡಿ ನರಸಿಂಹಶಣಿ ಇಲ್ಲ ಆತು ವಾಂಟೆ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಗಾಲ್ ಗಾಲ್ आवाज बॉलिंग आलो बक्कण चंद बॉल चंद शॉट बटमा आजी धावूंचा का धावले 1 रन धावले अब्बा अनेक भावनी रामचंद्रಣ್ಣ रिक्षी जो गोरका शिलगी मुडू फर्स्ट इनिंग्स एत्तरी स्कोर 67 5 ओवर 67 ಕಡಕ 68 ಕಡುಕ ಸಾರಿ ಅತ್ತ ಬಳಕ ಎತ್ತ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಣಪುರ ಎತ್ತ ಬಾಯಿರಿ ಮುಣು ಬಿಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೂ ಸರ ಪೈಲ್ಸೆ ಬಾಯಿರ ಎತ್ತ ಸಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ನಕಾಜಿ ಡಿಜೆ ಗಲ್ಲ ಮುಣು ಅಂಪೈರ್ ಚೇಂಜ ಕೈಂಗಿ ತಕ್ಕ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚಾಡಿ ನರಸಿಂಹಶಣಿ ಮಾಯಿಜಲ್ಲ ವೈಡ್ ಗಾಲ್ ಗಾಲ್ ಪಕ್ಕಣ ವೈಡ್ ಗಲ್ಲ ಆನ್ ದಕ್ಕನ್ ದೊಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಹತ್ತಾವ ಉಂಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಸಂತ್ ಮಾಮ ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಪೆಟ್ಟ ಎತ್ಸ ಎತ್ತಾಸ आता ಇಲ್ಲ आता एक लेटेस्ट ट्रेंड आहे एन्जॉयचे ओनर जेवण आशिलो विनायक पाई हसता हसता येता असा कसा म्हणून गोत ना सेटिंग जर लागी म्हणून हसता हसता असा कसं म्हणून गोत ना गौतम पाई स्ट्राईक अपास आईला नच्चा कंगी वच्चू नाहीला गौतम पाई थर्ड मॅन अंतू 4 जण रबल्याची कसा म्हणून गोत ना हंगा बॉलर नेम सुधीर पै बॅट्समॅन नेम गौतम पै सुधीर बघता काय सॉरी म्हणा हांव 1 दिसा खातीरचे पै करूया म्हणून लेखील तस नक्के नक्के पण नक्के नक्के बोला सुधीर अण्ण म्हणतात नक्क नाही आमगे इतले पूर पै पण तस सुधीर बघता बॉलिंग आईला गौतम बैटिंग आका कीपिंग गोपी भट मामो चंद कोण सूपर गल्ला सुरेखाजी वाईड गान सोडला गौतम रिवर्स स्वीप एक्सपर्ट तो वसंत माम ते स्कोर बोर्ड बोला नका बॅट्समॅन बोला अपास बॉलिंग आलो सुधीर बघता अंडराम गल्ला कसा म्हणून गोत ना बॉल वाईड गोपी भट मामाला एक भारी चंद कीपिंग एक टाइम कीपर असेल तो आता पास बॉलिंग चंद कोण डॉट बॉल एन्जॉय विनायक धावून तास पावला विनायक पै फ्रॉम एन्जॉय लायक एन्जॉय करता असतात बॅटिंग बिसीला वारा ॲडव्हर्टाईज येईल हंगा गोपी भट मामा का स्टॅम्पिंग एक टाइम मारी गोपी भट मामा हुडकाच की ना की आम्ही विजयदुर्ग टीमात उठू केलता आशिल्लीची हुडकाच की अब्बा विजयदुर्ग टीमात कीपर जावन आशिल्लो गोपी भट मामो हुडकाच ना आसा अब्बा आता बॅट्समॅन चैतन्य सुधीर भगत टू चैतन्य चंद कोर्नु नेलार गल्ला चैतन्यन बिसिला नक्क नक्के रन नक्के गौतम सुरेख म्हणला ताणे अपास बॉलिंग आलो सुधीर बघता स्वीप केला जायनी कसं ना आता या कसं रे ओनर्स कसं न्यायची मग डाऊट कसं न्यायची करतानाची अप्पास आईला बॉलिंग आलो का सुधीर बघता चंद लेग स्पिन सोडला धरले बॉल धरले रामचंद्रಣ್ಣ लाईक कोण बॉल धरला क्लॅप मारायची चांगले ले जातात धरची ओढविषयी क्लॅप मारायची दही कोरनो संगल बॅक बोन जाऊन सुरेश अण्णा इंची लगीची अपास बॉलिंग आलो का सुधीर बघता तो
गवती का अंडराम जायना म्हणून सगळे वर्ल्डाक होत असं तेच तिकून तो कसं नाही करताना ते सगळे वर्ल्डाक होत असं गौतम अंडराम खेळला म्हणून ओव्हर जेल आता आयला लिंगांतू ओड लिंग महालिंग लिंगांतू ओड मठ लिंग मळाची महालिंಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಳೆಯಾಚಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೋ ಲಸಿತ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸೋದಿಸ್ತೀವ ಮೈರಿ तीन बॉल अंडरआर्म 3 बॉल ओवरआर्म घाल का लक्ष्मी 3 बॉल अंडरआर्म नाही अंडरआर्म आणि ओवरआर्म नक्की अंपायर म्हणता असं एक वेळ होकी जल्ला पुरेशील मग काय होते असं म्हणून कंचाडी नरसिंह तळमळता असतं अंपायरिंग अदकून कसं म्हणून गोत ना बॅटिंग गवती बॉलिंग लक्ष्मी बालिंग मालिंग स्टाईल वा मारला बॉल श्रीलंका चमकला बॉल समुद्रांत पडला बॉल तिथला ऐकून मारला त्याने वापस बॉलिंग आईला लक्ष्मीश बाळिगा टू गौतम पाय चंद शॉट मारला मुष्णा वैर बॉल घाला कसा करच म्हणून कळले गौतमाका वसंत माम मागताशील उगुरे बॉल दद बिताव दोरेत ना म्हणून असताच पड वसंत माम अपासा बॉलिंग आलो लक्ष्मीश आईला गौतमान उभारला पट्टा या पट्टी रामेश्वरान बॉल पडला बॉलिंग आलोयला लक्ष्मीश बाळिगा कीपिंग रबला गोपी भट मामो कुलटा राधन रबला कसं करत म्हणून पळया म्हणून बॉलिंग आला चंद बॉलिंग सूपर कीपिंग फील्डर सा कसं नाही काम ना अंगा जगगडना पर नुतर रबल्याची मूस मारताची कसं म्हणून गोत ना बोला आराम रस्ता बोलते बिसिला गौतीन बिसिलल पेट्टा कस पळांगा आशिलाल केस उबून गेला अंगा कसं म्हणून गोत ना आता येईल आपास लक्ष्मी शो बहुजनर अपेक्षा मेले अंडरआर्म काही ना ओवरआर्मची रिव्हर्स स्वीप गल्ला ते बॉल वंचित होताना रमण पेन जेवण करून येऊ का म्हणून विनंती करता बॉल वंचित कोण होतं रमण पेन जेवण करून यायची 23 जण स्कोर 2 ओव्हर मुक्तायन तो आता पूर्ण जणाला कणमणी सुरेश अण्णा दम्मा हात उभारत असते कसं म्हणून गोत ना पण हात उभारत असत दम्मा आता विजयदुर्गा क्रिकेटर साठी कोण गोपी वटमा मंजाना हात मोडतीन रबला मग कसं नाही काम ना आरामे रबताव म्हणून तशी मंजाना हात रबला ते बॉलिंग आयला गोपी वटमाम चंद बॉल चैतन्य शॉट आक 6 आता बुवाईला बॉल घेऊन रघुराम बुवाईला येतो रुपये 2 बॉल एका बॉल पुरो म्युझिक स्टॉप गोपी भट मामा पसायला सुधीर भक्त कीपिंग चंदकोन बॉल घाला आपण शॉट सुरेश अण्णा बॉल धरला उठायला सुरेश अण्णा क्लॅप मार का ये जातो एक बॉल धरते क्लॅप मार दही कोण सगळे ग्राउंड ಮೂವತ್ತರಂಜಲ 38 जाऊ का नाही गोपी भट माम निमगितास कसं जेतास मक्का गोत ना म्हणून अपास बॉलिंग आला भटमाम गोपी भटमाम टू गौतम पाय चंद गेला गौतम एक नमूने LKG स्टुडंट बॉलिंग घाल मग जेता सांगा LKG UKG बेबी सिटिंग आज बॉलिंग घालतास बोलतास जेतास गौतम अपास आला गोपी भटमाम या बोला की एक मर्यादा दिली जिला वाईट बोला की एक रेस्पेक्ट द्यायची म्हणून असतं त्या गौतमाला शिकू का पुरा बॉल मारताना तो दृष्टी पडतो म्हणून गोपी भट मामा पसायला बॉलिंग घालू का पण सुपर बैसून मारला
हे शॉट बैसून म्हणा सुपर ज्याला बॅटा बॉल लागे नाही कसं करूचे विंगड जणांना बॅटिंग आहे काय अन्याय करतासा तुम्ही पळा सिक्स मारला हा म्हणला तुमका LKG स्टुडंट एक बॉलिंग चालू कशी टेस्ट केला आता रघुराम बुवा आमच्या देवस्थान तो एकमात्र बुवा म्हणाले रघुराम बुवा क्लॅप मारायचे सगळे ग्राउंड क्लॅप मार का एक टाइम मारी वांग मारला सिक्स सीधा कुदरळी देवस्थानाला जाऊन पावत असेल तिथले माಡ बल असेल आता बोला का कशी केलं म्हणून नेला दोन गल्ला बिसिला ना शॉट ಏನಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೂನು ಅತ್ತ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗ ಪೂರ ಜನ ಕಣ್ಮಣಿತು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ बॉलर नेम सुरेश अण्णा कसं सगळे वर्ल्ड आगोतच मारे बॉलर नेम कसं स्कोर 43 इतलोड स्क्रीन गल्ला दिसना 25 जाऊ का इतलोड स्क्रीन गल्ला ते आम्ही करचून चंदकोन बॉलिंग संदेश अण्णाला काय ना दिसताच कसं ना मग स्पिन शेरनवानाला पशी स्पिन गेला या म्हणून बिल्ल तो एक ओळख वापस बॉलिंग आलं का बिसीला 4 संदेश अण्णा म्हणला तू शेर जलाव शवा शेर म्हणून तशी चंदकोन बिसीला पेट्ट कशी येला मळारी काली भलान तू गेलं त्या वापस येला सुरेश अण्णा एक बॉल पण सुधीर अण्णाला मारायची दही कोरनू तावळतून नुतर आपला तो कुलटा राहत दोन बळा सुधीर अण्णा कुलटातून हात काढताना बळा कसं म्हणून गोत ना आणि ते जग्गड नसताच मी गेला की मारणाची मारा म्हणून बळा वसंत मामा असताच अंग्या मिजेला मला जीवा ಕೊಡೋಣ अंकಕ್ಕೆ ಅಪಾಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಾಲಾರ್ ಗಲ್ಲ ಚಂದು ಶಾಟ್ ಧಾವನ್ వచ్చిన ಗೋಪಿವಟ್ ಮಾಮ ಅಂದರ್ಲ ಅಪಾಸ್ ಉಡೈಲ 1 ರನ್ 48 ಸ್ಕೋರ್ ಟೀಮಾच्या 48 ಜಲ ಟೀಮಾ ಸ್ಕೋರ್ ಅಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಜಲಲ್ ಪೆಟ್ಟಾಕ ಶೇರ್ನವಾನಾಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಜಲ ಹಂಗ अपास बॉलिंग आला इला चंद शॉट आता गी म्हणू ना जाईन असं जीवसाची 1 रन कंप्लीट केला मालिंग हंग पट्टंग मारता नो बॉल दी अंपायर अपास बॉलिंग आलो सुरेश अण्णा गल्ला ಮತ್ತೆ वैरी कन्नड कळला तशी बॉल दिसन गी म्हणू सुरेश अण्णाक अपास बॉलिंग आयला तई वाह कसा शॉट आहे नेक्स्ट मकडೌಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ಡರ್ ಸಂದೇಶನ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ओव्हर गेला मग अंपायर कशाला रबिल तुम्ही गोल लॅक करून नाही लास्ट ओव्हर 1 रन जाऊ का आता इला आम्हाला वालंटियर ಲೀಡರ್ ವಸಂತ ಅಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಲೇಜ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ देऊ का पूर्ण जण क्लॅप मारायची दही कोरनो हंगे लेजर आम्ही खेळू ना मॅच समित पळच्या ना तशी आता वसंत अण्णाला बॉल पावताना मकडवट रात्री पूज जत्ती म्हणते ना सभा पळा म्हणला बुवान उभारला जरा ना बॅटा मिळली अपासायला वसंत मामू 5 बॉलाक 1 रन जाऊ का ऑर्गनायझर ड्रायव्हिंग सीटर असत अपास बॉलिंग घालू का ना बुवा बोल्डा वसंत माम सुपर वसंत माम हिस्टॉरिकल ते चर्चे जातास कोण వచ్చే आता ಇಲ್ಲ पक्कडना आता डाऊट आहे बॉल भी तो विनिंग की म्हणू आता मका डाऊट आहे मरले कॅनरा गल्साला पावती म्हणू बॉल आता डाऊटच मका वार नाही रे बॉल प्रकाश अण्णा बैटिंग आक वसंत माम बॉलिंग आक धावून गल्ला चंद शॉट जलरी तई बॉल तई ಗೊಂದಲ್ತಾಸ वसंत मामू एक म्हणून बुमरस धावून येता
बुमराचा धावून येऊन अशीची आरामेर घालता स रिंकू सिंग से आपासा बिसिला ना स्टंप करनी 2 बॉलाक इकडे जाऊ का बोल्ड वा नाही वा 2 बॉलाक इकरा वसंत माम 2 बॉल इकडे जाऊ का 4 बॉला 4 डॉट केला वसंत मामाना गल्ला वाईट बॉल अंपायराना आत बिसिला वाईट म्हणून ಕೊಂಚಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ಕೊಪ್ಪುಂಡಬ್ಲದೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ 2 बॉलाक 10 जाऊ का प्रकाशಣ್ಣ 6 मारू का असतास आता बोल गेला वसंत मामो धावून गेला 6 की म्हणून 6 एसवीटी 6 तुम्ही लॅग गेल्याची आता तैते पावता पुढे कशी असेल प्रकाशण्ण म्हणून 1 बॉला 4 घेऊ का दम्मा गायसोकार बसला ते मागशी कसं म्हणून गोत ना वसंत मामाईला बॉलिंग आलो का ना वसंत माम हिरो या मॅचाच्या अनेक विकेट काढू वसंत माम हिरो जल्ला वसंत माम आत बिसी हा बसी थँक्स पूर्जनಕ್ಕೆ ऑर्गनाइजिंग वसंत मामाला फर्स्ट बॉल सरप शाईला बिल्ला तुकून बाहेर येईल सरपच This time for Africa, 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 this time for 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 Africa. या मॅच तो मॅन ऑफ दी मॅच पक्कडना सगळे टीमा सलवलेल्या का डगआउट बशीला पुरत हेडलाइट मुळे बैसू का डगआउट सोड का या मॅचाच्या मॅन ऑफ दी मॅच गोपी बटमाम मॅन ऑफ दी मॅच सेकंड मॅन ऑफ दी मॅच प्रकाशण्णा सतीश स्ट्रायकर टीमाचे सक्कड प्लेयर्स आणि ओनर स्टेजार येवका म्हूण निमगून घेतात Never really knew that you could dance like this. You put some money, speak Spanish. Como se llama? Bonita, mi casa, su casa. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. भंडारा इला हंगा पूर्ण क्लॅप मार्का भंडारी क्वालिफायर 2 आता मॅच जाता सुमिलेद्राका क्वालिफायर 2 हाची विनर्स डायरेक्ट फायनल आवताची ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ అని ನಾಗನಕಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಗಿಲ್ ಮಂದಿತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಅತ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೌಚಾಸ್ सतीश स्ट्रायकर्स सगळे टीम अनेक पटी स्टेजावर येऊ का सतीश स्ट्रायकर्स तुम्हाला ओनर सपोर्टर्स पुरई सपोर्टर्स म्हळ्यारी ओनर सपोर्टर्स मागेरी ओनर्स आणि प्लेयर्स स्टेजार येऊ का सतीश स्ट्रायकर्साचे अंग्रेजी पढ़ती किट पिट तू करती जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन चमकता ओ तो मत बैन दी पूरा लंदन चमकता कहती बिग बैन दी पूरा लंदन चमकता
கொக்கரக்கோ எப்படிய கொக்கரக்கோ இருந்தே இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் கூவக்குள்ளே ரெண்டு கோழி கொக்கரக்கோ आदिभट आणि का आदिभट तावळ आमगेल्या बोंडीना सवली म्हणो कसले कोप्पन अशें येऊ का विघ्नेशाकडे मोगान आपयता आसा आदित्य भट्टाक इनिमेले कोकरको कोकरको सेवल कोकरको सेवल कुवकुळे बेड कोळी कोकरको संग चक्करम पोले मनसु सुंदर वेळे सुरांग निगमाल कनवा पारवानम तुरुकोटद मेघम ಬೆಳಗಿ ಪೊಗದ ಸೋಗಂ ನೇವಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಕೊಕರको ಎವಡಿಯ ಕೊಕರको ಇರುಂದೆ ಇರುಟಲಾಂ ಇನಿಮೇಲೆ ಕೊಕರको வெளிமணி கொலுசுக்குள்ளே துளுக்கிற மனசுக்குள்ளே சந்தோஷம் நிலைச்சிருக்க சாமி கிட்ட கேட்டிருக்க धन्यवाद अनंत. So the match, qualifier match number 2 now going to start between Naganakatte Panthers versus Sringeri Rising Stars. And news is here from the center that the captain of Sringeri Rising Stars, after won the toss, they elected to field first. And the openers for Naganakatte Panthers are Archit and Saurabh. First ball is bar. Leg stump deflected, fine, and he got the boundary for that. Deflected fine this time at the last moment, and he got the boundary for that. Perfectly struck. और इस चौके के साथ इस वक्त खाता यहाँ पर खुल चुका है नागनाकट्टे पैंथर्स का. नागनाकट्टे पैंथर्स जो कि पिछले साल की चैंपियन टीम यहाँ पर क्वालिफायर मैच नंबर 2 में इस वक्त खेल रही है. दाहिना ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर. और सूरज इस वक्त, सौरभ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सूरज प्रभु. क्वालिफायर मैच नंबर 2 अंडर फ्लड लाइट यहाँ पर शुरू हो चुका है. दर्शकों से मैदान इस वक्त खचाखच भर चुका है और निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. सूरज सौरभ के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद, oh got him, got behind the wicket. First blow for Naganakatte Panthers. तो पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है. गेंद को खेलना चाहता, इस गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. गॉड इज आउटसाइड डिफ्लेक्शन और विकेट कीपर ने बेहतरीन कैच विकेट के पीछे लिया और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है और 5 रनों पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त नागनाकट्टे पैंथर्स. गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. सूरज गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए, दीपक सामना करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी. अंतिम क्षण में गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश किया. इस वक्त तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. जहां तक नागनाकट्टे पैंथर्स का सवाल है, इस वक्त पिछले साल की चैंपियन टीम यहाँ पर क्वालिफायर मैच नंबर 1 में उन्हें उग्राण सेवक्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए वो इस वक्त क्वालिफायर मैच नंबर 2 में इस वक्त खेल रही है और निश्चित रूप से इस वक्त चैंपियन का खिताब अगर बरकरार रखना है तो इस मैच में और फिर फाइनल मैच में जीतना जरूरी है उनके लिए. दाइनाथ ओवर द विकेट कट किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची पॉइंट पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत है इस वक्त नागनाकट्टे पैंथर्स को और
अगली गेंद लेकर इस वक्त सूरत तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दीपक इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद चूके और इसी के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति सूरज की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। नागरगट्टे पैंथर्स टॉस हारने के बाद श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतरता हुआ क्वालिफायर मैच नंबर 2 में 7 रन जोड़ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है बचे हुए 4 ओवर्स का, तो देखते हैं यहाँ पर कौन से गेंदबाज दूसरा ओवर इस वक्त फेंकते हैं। हमसे दूर वाले चोट से एसवीटी ट्रॉफी 2024 स्टेज एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए गेंदबाज सिद्धार्थ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई हर्षित इस वक्त सामना करते हुए और इस बीच अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर इस वक्त जाते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए निश्चित रूप से इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है नागरगट्टे पैंथर्स और श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बीच इस श्रृंखला के अंतर्गत। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, सिद्धार्थ दाहिने हाथ ओवर द विकेट हर्षित के लिए। पटकी हुई गेंद इस बार ड्राइव किया, पंजों पर उछलते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट जब तक गेंद पहुंची वहां पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम। और गेंद इस वक्त टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती है ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर का सवाल है इस वक्त नागरगट्टे के पैंथर्स को इस वक्त कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा। और इस बीच फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट फुल टॉस और यहाँ पर बीमर के तौर पर गेंद थी, गेंद पहुंचना चाहा, पहुंच नहीं पाए। 1 रन मिला, 1+1 2 रन एडेड। नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए और इस बीच गेंदबाज सिद्धार्थ दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल फॉर अ बाउंड्री। Just rocked on the back foot and this time cut away in a style square of the wicket and because of that he's got a boundary for that stroke। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार, इस बार ड्राइव किया मिड ऑफ पर, फील्डर वहां पर मौजूद। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ मिड ऑफ फील्डर का। गेंद को इस वक्त ड्राइव तो जरूर किया था लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार सिद्धार्थ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हर्षित के लिए इस बार जगह बनाना चाहा अंतिम क्षण में, पंजों पर उछलते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में खेला गेंद को बैक टू द बॉलर के दिशा में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो चौका प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक यहाँ पर गेंदबाज सिद्धार्थ इस ओवर में कर चुके हैं और 2 लगातार डॉट गेंदें बल्लेबाज को फेंक चुके हैं। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। ये गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed, 15 runs on the board, 1 wicket lost। So the equal battle is now continuing here in the qualifier match number 2 between Sringeri Rising Stars versus Nagaragatte Panthers। नासिक बैंड की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देते हुए और दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल यहाँ पर बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस मैदान पर एक त्योहार भरा माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर इस मैदान पर छा चुका है। तो तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बड़ा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और हर्षित, जहां तक हर्षित का सवाल है इस श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया है और यहाँ पर इस मैच में भी उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन देना है अगर अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर तक पहुंचाना है तो। और उसकी कोशिश वो यहाँ पर इस वक्त करते हुए बड़ा इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड राइट दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट एट द लास्ट मोमेंट एंड ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक।
इस वक्त एक रन का इजाफा, 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। पिछले 4 साल की चैंपियन टीम यहाँ पर क्वालिफायर नंबर 2 में इस वक्त खेलती हुई और गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बीच हल्के से गेंद को पुश किया, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रनआउट का खतरा। इस बीच निशाना चूकता हुआ और यहाँ पर 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। निशाना इस वक्त चूकता हुआ गेंदबाज का और इस बीच 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तो पिछले साल के दोनों फाइनलिस्ट के बीच इस वक्त मुकाबला जारी है। पिछले साल नागनकट्टे पैंथर्स विजयी रही थी जबकि श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स रनर्स अप रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी टीम इस वक्त फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। गॉड अ बड़ा बेंच ऑफ दैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन यहाँ पर गेंद को लपकने में असफल, शायद बल्ले और गेंद का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 17 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। तो यहाँ पर पिछले साल के दोनों फाइनलिस्ट टीमों में से एक टीम इस वक्त इस क्वालिफायर मैच नंबर 2 में बाहर गिरेगी, एक टीम फाइनल में प्रवेश प्राप्त करेगी और फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है इन दोनों टीमों के बीच। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, बेहतर स्ट्रोक 4 रनों के लिए। गेंद को इस वक्त जमीन पर उछालकर आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को भेजने में सफल बल्लेबाज हर्षित और चौका यहां पर प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, फुल टॉस, ड्राइव किया मिड ऑन पर 4 रनों के लिए। कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर हर्षित। तो हर्षित इस वक्त जानते हैं उनकी उपस्थिति उनके टीम के लिए बेहद जरूरी है। पिछले गेंद को जमीन पर पटक कर भेज दिया था मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। इस बार गेंद को खेला मिड ऑन पर, स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक और 4 रनों के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद टॉप एज, मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। हर्षित की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। टॉप एज पर गेंद टकराई, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद गई, सीमा रेखा से बाहर, फुल टॉस और हर्षित की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। इट्स 25 for 2। So 3 overs completed, 25 runs on the board, 2 wickets lost. 4th over starts Raghavendra, the newcomer. Meantime, the bowler is Deepak, the striker, and the bowler is रवलनाथ। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। पहली गेंद लेकर तैयार रवलनाथ दीपक के लिए। चौथा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ, कट किया खूबसूरती के साथ, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टॉप मेड बाय द कवर पॉइंट फील्डर। Certainly that wasn't a boundary at the last moment, लेकिन गेंद को अपनी डाइविंग लगाते हुए अपनी बाईं ओर खूबसूरती के साथ गेंद को रोकने में सफल और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 26 रन, 26 for the loss of 2 wicket at the start of the 4th over in fact। और 11 गेंदें अब उनकी पारी में कुल मिलाकर बाकी। तो यहाँ पर कुछ चोट आई है खिलाड़ी के हाथ में और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो वहाँ पर बेहतरीन स्टॉप किया था पिछले गेंद पर और आखिरकार अपने टीम को कम से कम 3 रन बचाने में सफल और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर, जबकि 3.1 ओवर का खेल यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। निस्संदेह फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, त्योहार भरा माहौल इस मैदान पर छा चुका है। इस वक्त दर्शकों से मैदान लगभग भर चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त तो ग्रांड सेवक्स का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, उनका सामना करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है। क्वालिफायर मैच नंबर 2 में नागनकट्टे पैंथर्स और श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बीच में। और इस बीच खिलाड़ी पानी ग्रहण इस वक्त करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए इस मैदान पर रुक चुका है। फ्लड लाइट्स
कि झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। और जहां तक का सवाल है इस वक्त मैच का, तो इस वक्त बराबर का संघर्ष यहां पर जारी। कुल मिलाकर 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ। अंपायर और खिलाड़ियों के बीच इस वक्त बातचीत चलती हुई और आखिरकार खेल यहां पर रुक चुका है। ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಜನ ಅಲ್ಲ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ पूर्गे क्रिकेट आजा एक आयोजन केलेलं ह्या वर्षाच्या दोन्ही वर्षाच्या भारी तंदारच कनाची केला आणि सर्व आमच्या समाजाच्या सर्वांनाच कना पळून ताका संतोष पाविल आसा आणि ताका आनी मुखार सुटल्यानी सर्वांना शेजस कनाची ताका संपूर्ण देवन घेवन आनी के चंदायर करून तशें काय देवान त्या वेंकटरमणान ताका अनुग्रह करूं म्हणून देवाला प्रार्थना इस वक्त just 11 balls left in overall calculation in their innings और इस बीच बातचीत जारी है। तो एक फील्डर इस वक्त चोटिल हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है। उस बारे में इस वक्त श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के खिलाड़ी इस वक्त संकटों से कुछ बातचीत यहाँ पर करते हुए, और खेल इस वक्त अभी भी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। आपल्याला वेंकटरमण देवस्थान स्वयं सेवक जन अಲ್ಲ ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ पूर्गे क्रिकेट आजा एक आयोजन केलेलं ह्या वर्षाच्या दोन्ही वर्षाच्या भारी तंदारच कनाची केला आणि सर्व आमच्या समाजाच्या सर्वांनाच कना पळून ताका संतोष पाविल आसा आणि ताका आनी मुखार सुटल्यानी सर्वांना शेजस कनाची ताका संपूर्ण देवन घेवन आनी के चंदायर करून तशें काय देवान त्या वेंकटरमणान ताका अनुग्रह करूं म्हणून देवाला प्रार्थना
Scorecard. This is an outstanding boundary results. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the So signs of the perfectly rock. cut after being rocked on the back foot this time, and he's got a boundary for that stroke. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 30 रनों पर। बेहतरीन स्कोर कट इस वक्त राघवेंद्र के बल्ले से लगता हुआ, और 3.2 ओवर का खेल इस वक्त पूर्ण हो चुका है। रवलनाथ इस वक्त तैयार। Again, steer क्या? Just opening the press of the bat. Delicate, absolutely delicate. So, दो लगातार चौके, 2 consecutive boundaries came from the bat of Raghavendra, and he is looking more confident with that couple of boundaries. और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज ये गेंद लेग स्टंप से बाहर straight away. The pressure on the bowler. Bowl 2 for outside the leg stump. Single run added in the face of wide, and with that single run, the scoreboard moving up to 35 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Prolonged over progressing here so far from the bowler Ravalnath. Once again here he comes, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार राघवेंद्र. रवलनाथ अगली गेंद. It pulls, and this time he's gone. Hit that one full tossly over the fence, and a good innings came to an end from Raghavendra. सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दीपक सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर. स्पेक्ट्रा वाइड. स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 37 नाउ विद दैट स्पेक्ट्रा वाइड. और जहाँ तक सवाल है गेंद का, तो गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में 1, और कुल मिलाकर उनकी पारी में 7 गेंदें अभी भी बाकी है. और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं. एक लंबा ओवर गेंदबाज रवलनाथ का इस वक्त प्रगति पर. इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दीपक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद फुल टॉस, टर्न्स इट अवे, एंड इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट. नो बॉल. No ball also called by umpire. 5 runs added to their total. So runs are coming quite freely now for Naganakatte Panthers. और 3 चौके इस ओवर में लग चुके हैं. 42 रन बन चुके हैं. I think 16 runs scored in this over. 17 runs in fact scored in this over. और prolonged over progressing here so far from Ravalnath. और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा इस ओवर की बदौलत अब नागरकट्टे पैंथर्स इस मैच में वापस आ चुका है. दे आर बैक इन द गेम नाउ. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. यह गेंद लेग स्टंप से बाहर. एक और वाइड. फ्री हिट रिमेन्स. 43 for 3 now. तो यहाँ पर एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में. और रवलनाथ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर. 1 more wide. Run number 19 came from this over.
अंतिम गेंद अभी भी बरकरार और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाईनाथ के बल्लेबाज रवलनाथ ये गेंद बेहतर गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। नमस्कार बदल जावन एक फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमगेले स्वीट टीचर फुडें लास्ट इयर आयकला 2-3 ऑब्जेक्ट म्हणून बट आज बरो थ्रिलिंग काल रात्री ऑलमोस्ट हांव 7:30 गंटा आयलो 1:30 आसलो इट वॉज रियली फॅन्टास्टीक एक खुशी कसा जाला म्हळ्यार इवन व्यवस्थेवर बारिश सांगला रियली वंडरफुल नेक्स्ट इयर एक आमगेले एक टीम घेवन लेखला। They are heading towards a huge total now. 49 for the loss of 3 wickets. And good 4th wicket partnership is now building up here. Driven perfectly down to mid-off. And that single brings 50 up. 50 comes up for Panthers. And now 5 balls remaining in overall calculation in the innings. 5 गेंदें इस वक्त बाकी और एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त पैंथर्स अग्रसर होता हुआ दाईनाथ ओवर द विकेट ये गेंद फुल टॉस गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहा गेंद वहीं पर है विकेट कीपर पहुंचे लेकिन बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर 1+1 2 runs added to their total 52 now. टीम करकवण पार्टिसिपेशन तशी तुम्हाला सहकार्य जाता थँक्यू सो मच। So 52 now for the loss of 3 wicket and a free hit delivery for the batsman. Driven into the gap and a boundary. 56 now. So 4 balls now remaining in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार ये गेंद इस बार gone straight into the head of this one of the spectators. A ball hit to the head of the spectators. One of the spectators in fact and he's gone this time. 56 for 4. So have a look at this replay. किस तरीके से गेंद को खेला था और गेंद सीधे जाकर टकराई थी वहां पर कुछ बैठे हुए प्रेक्षक के सिर पर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 56 for the loss of 4 wicket and now still in overall calculation it's going to be 3 balls remaining in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ ओवर द विकेट 3 balls remaining. तो गेंदबाज इस वक्त तैयार दाईनाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार बेहतर absolutely fantastic and this time he's gone. He's gone this time. Gone through for unnecessary single and he's lost his wicket. 56 for 5. So 2 balls remaining and Nagaraj here he comes right arm over the wicket this time driven that one don't extra cover 1 run मिलेगा नहीं इस बार देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा क्या हो सकता है is gone he fell just short out of his crease and 1 more wicket fallen in the face of run out 56 for 6 now. Have a look at this in the replay किस तरीके से गेंद को खेला था और गेंद क्रॉस एंगल से फेंका गया सीधे स्टंप्स को जाकर टकराई बिल्स डिस्टर्ब होते हुए रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है। लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स।
56 for the loss of 6 wicket. The last ball of their innings is now coming up. They are looking in a fantastic situation. Lost it and it's gone. So stipulated 5 overs completed and they managed to score 56 runs for losing 7 wickets by DJ. Please stop. 56 for the loss of 7 wickets for Naganakatte Panthers. They started slowly but finished very well. All because of that, the 4th over which conceded 23 runs by the bowler, and because of that they are back in the game. Now they are finished with 56 for the loss of 7 wickets. 57 they have to score for victory in the simulated 5 overs for Sringeri Rising Star to qualify for the grand finale of this competition. देवस्थान स्वयंसेवक जन हांगा एक रजिस्ट्रेशन भुरगे क्रिकेटाचे एक आयोजन केलेलें ह्या वर्साच्या दोन्ही वर्साच्या भारी तंदारच केला आणि सर्वांगीण समाजाच्या सर्वांनाच पळोवन ताका संतोष पाविल्लो आसा आनी ताका आनी मुखार सुटल्यानी सर्वांना शेंजेस ताका सपोर्ट दिवन घेवन आनी काही चंदायर करून तशें देवान त्या वेंकटरमणान ताका अनुग्रह करूं म्हणून देवाला प्रार्थना नमस्कार बदल जावन एक फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमगेले स्वीट इज फुडें लास्ट इयर आयकलां 2-3 वर्स जाता म्हणून बट आज बरो थ्रिलिंग काल रात्री ऑलमोस्ट हांव 7:30 गंटा आयलो 11:30 आसलो. इट वॉज रियली फॅन्टास्टीक. एक खुशीक आसा जाल्यार म्हळ्यार इवन व्यवस्थेवर बारी सांगला रियली वंडरफूल. नेक्स्ट इयर एक आमगेले एक टीम घेवून लेखला टीम करता म्हणून पार्टिसिपेशन तशी तुमकां सहकार जाता. थँक्यू सो मच. उमेद पडून आमकां जी उमेद आयल्या जाल्यार कांय करूं जायना. Thank you, Nasik band. Kindly request you to stop. A match will go into start in a short while, and everything is ready here for the chasing. And of course, it's going to be a big chase here for the team Rising Stars in this qualifier number 2, because they need to get the mountain of runs. Actually, the 57 is going to be a target for them to reach to the final, the mega final of this SVT Trophy 2024. And wait to see how well these two batters will going to lay the foundation for Rising Star. From the far end, Captain Nagesh will going to start. Right arm over the wicket, full toss, going for the full shot, but missed it completely. And straight away, batter Suraj is asking Squalag umpire to give the no ball. But I think his ball is just digging down, and certainly it's going to be laid very well. Batsman certainly need to get that one into square leg region for 400, but he missed it completely, and no damage done. Nagesh again back to his bowling mark. Right arm over the wicket to again that was bad miss. Wicket keeper behind the stump, Arshit, fails to collect the ball, because always it's going to be a difficult job whenever the ball is dripping down outside the line of leg stump, and it's going to be a bonus run. So 5 gifted runs for Rising Stars, and definitely that's going to be a very, very important runs which is came for Rising Star. 5 gifted runs and 5 without loss of any wicket. From the far end, Nagesh, right arm over the wicket balls. This is going to be a one more wide delivery. The bowler started to feel the pressure. This shows the pressure in this particular game, because it's a do-or-die situation for both the teams, because they need to win the match if they wanted to be in the mega final of this prestigious cricket tournament. But so far we can see that the team Rising Star as well as the team defending champion team Naganakatte Panthers looks like they wanted to be in the final. This is a really action replay of the previous final, edition 1 of SVT Trophy 2024. Both the teams clashed in the final, and Panthers become the champion. Lovely pull shot. Suraj, now right leg coming underneath of the pitch of the delivery. Pulls that one beautifully down to a square leg boundary for 4 runs.
So just like I mentioned, the needed some explosive start in the beginning, and team Rising Star started to rise a little bit in the first over. 10 without loss of any wicket. Nagesh changing his angle, coming round the wicket. Once again wanted to turn that one in the onside region, but this is just a ball is just very close to the stump here. Very lucky that ball is just missing the leg stump of the batter, and umpire unmoored rightly so. Score remains on 10 without loss of any wicket. Nagesh again back to his bowling mark, short run off, round the wicket to Suraj. Suraj turns that one nicely down to fine leg boundary for 4 runs. Absolutely, he played an improvising cricketing stroke down to fine leg boundary for 4 runs. Such a useful cricketing stroke in 30-yard format of a game. Just playing that pedal shot very fine, and scoreboard numbers on to 14 on the board. The kind of start which is badly required for Rising Stars. The both opening batters, especially Suraj, getting some important runs for his team with the help of some extra. Nagesh is a little bit under pressure now after conceding 14 runs already in that over. Right arm round the wicket to Suraj. Suraj this time tried to cut that one. Excellent delivery indeed there from Nagesh. At last he managed to find the line and length, which is a very, very good line to bowl to the right-hander batsman when he is just trying to play the cut shot. Ball just kept low. 14 on the board without loss of any wicket. Wow! Driven up hastily, and Suraj back into pavilion. He's not happy with himself, way that he's hit the ball off the back foot, lofted that one in there, and he's back into pavilion. So 14 on the board for the loss of for the loss of 1 wicket. First over which is comes to an end. 57 going to be a target. That means 14 which is deducted from 57. That means another 43 more runs required for the victory in 4 overs. And Ashit brought into attack, one more out of the key player for the side. Brought into attack, balls, the wide delivery starts with the wide. One more extra, with that extra scope and moves on to ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಓವರ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಹ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ. So again right arm over the wicket, balls again swept that one down to square leg region. They completed a single with that single scope and they're going for is directed, but suddenly ball which is not far away from the wicket keeper with that single scope and moves on to 16 for the loss of 1 wicket. 16 on the board. Rising Stars started to rise a little bit in the first over itself. They got important runs in the first over, so that but the consistency is very important here for Rising Star to getting runs in each and every over. So wicket keepers just going back. Arshit sending the wicket keeper a little back, and again he bowled round the wicket to the left hand bat. Delicately played, absolutely delicately played. Bala is a very intelligent cricketer, and we have a look at that one, way that he played that one. Absolutely one of the best technically and efficient cricketing stroke coming from the blade of Bala. Just steers that one, getting the ball into his bat and quite deliberately edging it down to third man boundary for 4 runs. With that, the boundary scored moves on to 20 on the board for the loss of 1 wicket. Ashit again, right arm round the wicket. Again, one more wide delivery. The Panthers started to feel the pressure. The bowlers started to feel the pressure because runs are coming very quickly for the team Rising Star. 21 already on the board for the loss of 1 wicket. Ashit again, right arm round the wicket to Bala. Bala drive, what a placement. Absolutely magnificent stroke. Bala is just looks like he wanted to get the team into the final. As a mindset of this man, definitely it's looked like that the way that he's batting. 2 absolutely glorious cricketing stroke. The placement is exquisite in the gaze and there from Bala, and scoreboard moves on to 25 on the ball. Oh my goodness, can you believe this? Bala back into pavilion. Both the batters playing the uppish stroke and pays the penalty for that.
So what we're thinking about, the bowler will go into place. Very, very sensible knock and responsible knock. But unfortunately, he trying for the pull shot, but not quite able to keep it down. Ball went out of the ring and is back into Pebble. A new batter into the middle. Right arm over the wicket and off the back foot plays it down to cover point region for a single. With that single, Scober moves on to 26 on the board for the loss of 2 wicket. Siddharth is a new batter, got his first run, and now Nagraj will go in to take the strike of the bowling of Arshit. Arshit right arm round the wicket, balls to Nagraj. Nagraj drives it on, nice looking drive, going for the single, chance of run out, and it looks like umpire will going to say it's not out. Absolutely, everyone just waiting for the umpire, whether he is raising a finger or not. It is really very, very good to see that, because both the batters are really trying to get the quick runs in the occasion, but at last, in the last moment, the batter managed to drag his bat, and umpire told it's not out. Batsman is saved. It's 27 for the loss of 2 wicket after completion of over number 2. They're going exactly 13 runs per over, and that means in remaining 3 overs, they need to get another 30 runs to win this match. And Gopi, absolutely good chasing, isn't it? The Rising Star started to rise a little bit, even though they lost 2 wickets. But a wicket of Bala, I think, is maybe the big damage for them. एग्जैक्टली सतीश, और शायद 2 ओवर में 27 रन बने, इसके मुख्य कारण बाला है, जिन्होंने बेहतरीन 2-3 चौके लगाए थे, उसकी मदद से इस वक्त एक बेहतर स्थिति में नजर आता है। वो 27 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन द जॉब इज नॉट येट ओवर। इस वक्त 30 रन बनाना है 3 ओवर में, और इस वक्त 3 ओवर में कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी बल्लेबाजों को अपनानी ही होगी श्रृंगेरी की, अगर उन्हें 57 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है तो। Exactly, Gopi. 10 runs per over is the required 100 as a Saurav bowling right arm over the wicket. Going to be a wide, and everyone is under pressure now. This is a very important game. Of course, both the teams knows that this is a do or die situation, but both the teams wanted to do before die. And 28 for the loss of 2 wicket from the far end. Saurav looking for some dotted deliveries. Right arm over the wicket. Full toss. Diwan nicely down to extra cover for 4 runs. And Nagraj now, after the dismissal of Bala, is the one got a responsibility to take his team into victory. Just a juicy full toss. Have a look at that one in the replay. Saurav ball the full toss, and batsmen have to deliver that one in the gap, and he finds the gap between mid-off and cover point for 4 runs. With that boundary score, moves on to 32 for the loss of 2 wickets. Saurav again from the far end. Right above the wicket, this time lovely delivery indeed. Saurav just testing the temperament of the batter by bowling that line, because he knows that if it's a batsman going for the hit, he can hit the ball out of the ring so that he can get the wicket for that. But this time, ball misses the bat. Wicket-keeper did the rest back to bowler. Saurav was nice that one. Down to mid-off. They wanted a single, but very difficult to get. The reason? Nagraj hits that one very firmly, so that ball went very quickly to the hands of mid-off, so that no question of any run. Good comeback here by Saurav. 2 very good deliveries after that boundary. Here he go from the far end, right arm over the wicket. To Nagraj again, one more fantastic delivery there from Saurav. Absolutely fantastic comeback here by the bowler's point of view. After that boundary, he bowled 3 very good deliveries to stop the flow of the runs. So now Siddharth coming down the track, having some word with his partner, maybe suggesting that don't lose your confidence, because you lost only 3 deliveries, but still they got opportunity to back in the game. 1 boundary which is good enough for them to back in the game against Saurav from the far end. Right arm over the wicket. Bounce to Nagraj. This time again, misjudgment. Absolutely total misjudgment. What a great comeback here by Saurav. Absolutely unbelievable. 4 dotted deliveries, consecutive dotted delivery put some more pressure onto the batter. 32 for the loss of 2 wicket from the far end. 3rd over is in progress. Everyone is excited. Saurav drives powerfully and gone into the boundary. At last he managed to break the shackle in the negation in the last delivery of the over. With that boundary score, but moves on to 36 on the board now. 2 overs remaining, 21 more runs required for the victory. And Gopi, 10.5 runs per over. And last delivery, which is definitely the badly required, the boundary for the Rising Sun. Because of that, the boundary
gate certainly going to open for team Rising Star. एग्जैक्टली सतीश, पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो चौका लगाया था, निस्संदेह गेंद लगभग काफी तेज रफ्तार के साथ निकली थी और फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए और 2 चौके पिछले ओवर में लगे, 9 रन बने, 2 ओवर में 21 रन अब बनाने, 21 नीडेड इन रिमेनिंग 2 ओवर्स। और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इट्स कुड बी एनीबॉडीज गेम एट दिस सिचुएशन, एग्जैक्टली 10.5 रन फॉर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम। और देखते हैं इस ओवर में उनकी पारी में क्या होता है, लेकिन ये ओवर जो शुरू होने जा रहा है सतीश, दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हो सकता है। Absolutely, Gopi. It's going to be a very, very decider over for both the team because fielding team wanted one good over, the economical or a wicket taking over. At the same time, sensible batting was required for the team Rising Star if they wanted to win the match. What a great match is in progress. Absolutely, the kind of match which is the spectator loves to see, and both the teams are really fighting hard, battling hard to get the place in the mega final of this prestigious SVT Trophy 2024, which is proudly organized by SVT Volunteers Association. From the far end, Raghavendra. Right arm from the wicket, lovely delivery in there. Oh, deflected from the leg. This means certainly Rising Star has got some luck. What could be a dotted delivery? That ball after deflecting to his leg, ball went into the fence. Lucky boundary here for Rising Star. Now 17 required from 11 balls. What a match. Absolutely fantastic match is in progress. Raghavendra. Right arm from the wicket, pulls that one beautifully. Siddharth. Oh, that was a really great cricketing stroke. Have a look at that, the way that is shuffled across the line of the delivery and getting the ball right from the middle of the bat. Place it beautifully down to deep square leg region boundary for 4 runs. Great cricketing stroke. 13 required now from 10. Raghavendra. Ball swallowed him, cleaned him up. Raghavendra's back strongly to this match. Thank you, spectator supporters. Please need to be cool and calm. need to control your emotion. Of course, this is a game of cricket. We are only playing for yes. This tournament is for organized by the organizers. Just to maintain. I request all the supporters of the team. Please be very cool and calm because winning and losing is a part of cricket. So absolutely, one more fantastic delivery came from Raghavendra. What a great comeback here by the bowler. Pitching the line in the right area and absolutely defeated by the quickness of the delivery. And the new batter in his Ashwin came into middle. This wicket certainly will going to open the gate for Panthers as well. Raghavendra bounced. Ashwin went for the pedal shot. Chance of catch and is gone. Ashwin back into pavilion. Back-to-back 2 wickets here for Raghavendra. Absolutely came back. He bounced back with the 2 valuable wickets for his team. Now slowly match is really turning around. And Gopi, what could be the match where just looks like the team Rising Star slowly coming to that target. But that 2 wickets once again put them into back foot. एग्जैक्टली सतीश, चौका प्रदान करने के बाद 2 लगातार बेहतर गेंदबाज ने फेंकी और मैच को इस वक्त पलटने में सफल। अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। स्टिल द मैच इज नॉट येट ओवर। देखते हैं बचे हुए 8 गेंदों में क्या होता है उनकी पारी में। Absolutely, the very important 8 deliveries, 13 required. Ravalnath Nayak is the batter. They're going for the quick single chance for run out and absolutely good running beneath the wicket. The bowler on his follow to Raghavendra tried to pick the ball. But more than the speed of that, the bowler, the speed of running between the wicket of these 2 batter, absolutely excellent. So 1 more run added to total with that addition of that single score, but Namuzan to 45 for the loss of 4 wickets. That means another 12 more runs required for the victory in 7 deliveries. This man, I want to say, Nagaraj is going to be a key man for Rising Star. If they wanted to win the match, this man have to bat till the last ball of their innings. Raghavendra knows that this man is definitely going to be danger. He bowling right arm over the wicket, bounced again off the back foot, cuts that one beautifully down to backward part region, going for the quick single and they managed to complete the single. So this is a clever cricket there from Nagaraj because he wanted to keep the strike for the last over so that he quite deliberately picked up a single. Now Gopi, 11 required, 6 ball remaining. Having Nagaraj in the striker's end, certainly
the team defending champion Nagarakatte Panthers, definitely the captain will not going to relax because he wanted to get if Nagaraj will go into bat till the end. एग्जैक्टली सतीश, नागराज जब तक क्रीज पर मौजूद है वो सिरदर्द इस वक्त बने रहेंगे नागरकट्टे पैंथर्स के कप्तान के लिए। और सेंसिबल क्रिकेट पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर नागराज ने अपनाई, स्ट्राइक रोटेट किया और स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल। अब अंतिम ओवर बाकी, 11 रन चाहिए और अभी भी सतीश मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। Absolutely, match is evenly poised. It's going to be anybody's game. But those who are handling the pressure, definitely they will going to become the winner of this match. Whether it's going to be a batter or whether it's going to be a bowler, wait and see. So ask from the far end. Right arm over the wicket to Nagaraj. Again, lovely, delicately played, but not quite able to get the run. And Nagaraj doesn't want to single. He doesn't want to take any run in this occasion because he knows that the 5 deliveries still remaining. They can get that 11 runs in that remaining 5 balls. But a very good start there from Suhas. He managed to keep the batsman quiet in that first ball. Second time in this over. Right arm over the wicket to Nagaraj. Cuts that one. Missed it completely. 2 very good deliveries there from Suhas. Now certainly batter under pressure. 10 required. 11 required from 4 deliveries. 11 to get from 4. 11 required from 4. Right arm over the wicket, bounce. Going for the cut shot. Misses it completely. 3 dotted deliveries. What a great bowling performance here from Suhas. Absolutely, just what I am talking about, Gopi. Those who are going to handle the pressure, they will going to win the match. And so far, bowler handling the pressure very well. Last chance here for team Rising Star. Right arm over the wicket. Hits that one. And what a fielding. Absolutely a great piece of fielding by the captain of the side. They're going for the second. Run out taken place. Only a single. 2 balls, 10 runs required for the victory. But unless if a bowler bowls any stupidity by bowling no balls and wide balls, no one can stop Team Panthers to be in the finals. What a great piece of bowling there by Suhas. Absolutely great piece of bowling under pressure. It's not so easy, I want to say, when Nagaraj is on strike. But first 3 deliveries, Gopi, absolutely, which is changing the complexion of this game. 2 balls, 10 runs required for the victory. So Bright is a new batter in. He's a non-striker. And now last 2 deliveries remaining, excluding wides and no balls. They need to get 10. That means the 2 boundaries will not going to help the team Rising Star. Going for the big one. Misses the line completely. The celebration is on, but they need to wait for 1 delivery for the celebration. Everyone, the supporters of Nagarakatte Panthers, definitely they're keen to enter the cricket grounds to celebrate, but they need to wait for 1 delivery. Again from the far end. Right arm over the wicket. Balls. Wide signal by umpire. 9 required from 1 ball. This is, I don't know why the bowler is feeling that much of pressure, because he's defending a 10 runs in the last ball. And again from the far end, Suhas. Right arm over the wicket. Balls to Nagaraj. This is going to be a fair delivery. That's it. Defending champion Nagarakatte Panthers, second time consecutive. They came into the finals. The runner-up of the previous edition. They are out of the tournament. The celebration begins. Started spilling ink on the paper and planting in time, but the world is by so wild. They got me slapping the fine. Never got a chance. They never let me spit on the mic. Only cause I come from the land where people in white. Day and night I keep flowing, completing all my demo tracks. Inspired being denied the right by anti-democrats. Unleash my race through music intense. The culture was shocked, they got my whole community tense. That's when I close my eyes and talk to God. Peace of Match कशा? Yes, thank you.
last over remaining, and that last over comes from Manglore. That is the make up the yard. Good dog, get one side for Dongerkery. 2 wide. 49. They are heading towards you total now. ಜನಾಲ ಉತ್ಸಾಹ ಹೋತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉತ್ಸಾಹ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ केलं चांगलं का एफर्ट्स पर पडले बाकी आता मना जाय बस्ती वेळेला अंगा बेस नाम नवीत वेळ बुशी अमक जाय नसले उत्सव जला होता सांगे त्या आणि के बोलून द्या पुरे एंडर तरी मत जॉइन झाला भारी खुश येता क्राऊड असाजी क्राऊड आणि चढ असाजी आणि एक 2 मॅच वरला भारी लॅक केला ऑर्गनायझिंग थँक्यू जॉइन झाला भारी खुश येता क्राऊड असाजी क्राऊड आणि चढ असाजी आणि एक 2 अरेंजमेंट पूरा भारी भारी एक लाईक झाला पिच्चा लाग्या पण आणू फायनल येईल 2 टीम श्रीनिवास आणि वीरविठ्ठल 2 टीमाके गुड विशेस देव का म्हणून म्हणून घेता आईल सक्कड गेस्ट अंक एक पिच्चाला आपण अडका म्हणून म्हणून घेतास तशीच ऑर्गनायझिंग टीमाचे सक्कड जन 15 जन ऑर्गनायझिंग टीमाचे मेंबर्स सक्कडाने पिच्चाला येऊ का सक्कड ऑर्गनायझिंग मेंबर्स दमा विघ्नेश सक्कड ऑर्गनायझिंग मेंबर्स पिच्चाला याची आमगे 15 जन ऑर्गनायझिंग मेंबर्स काही असल्यार एक पटी पिच्चाला येऊ का
सिनियर कॅटेगरीचे फायनल पंद्याट आता चलतास. हेकडे टीम श्रीनिवास आणि नीळ कलर जर्सी टीम वीरविठ्ठला दोन्ही टीमाच्या सीनियर कॅटेगरीचे फायनल मॅच आता चलचास. आणि काल तुलाना तुम्ही पळून अशा पुरो 45 वर्सां भितवेल टीमा तशीची 45 वर्साच्या वयच्या टीमानं पार्टिसिपेट केलेला आहे. दोन्ही फायनल मॅच मात्र नी बाकी वरला या टुर्नामेंटांतू. आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळानं सिनियर कॅटेगरीचे फायनल मॅच जाता असल्यारी ताजे नंतर ज्युनियर कॅटेगरीचे आणि एक फायनल मॅच मात्र जाऊच्या बाकी वरला येदोलताई देवालदेना चंदायरी टुर्नामेंट तुमगे सगळ्याले सहकार निमित्त झालेलं असं. तुम सगळ्यांके हार्दिक धन्यवाद या संदर्भात. तशीची हंगा फायनल मॅचांत उपस्थित आशिल्ल्या सर्व अतिथींका पुनरपी धन्यवाद दिताची. हल्दू कलर घालेल्या टीम श्रीनिवासा तशीची नीळ कलर घालेल्या टीम वीरविठ्ठला. कॅप्टन किरण पै तशीच हांगाच कॅप्टन मोहन पै. किरण पैन सगळे टीमाचे त्यांनी तुमका इंट्रोड्यूस करताची. तुम्ही पुरे टीम मेंबर्साक एक गुड विशेस सांगू का म्हणून म्हणून घेता. गेस्टाल मक्षीची एक एकल्यानं वचून गेस्टाल मक्षीची आमगे सक्कड ऑर्गनायझिंग टीमांनी तांकां विश कोर का म्हणून म्हणून घेतास. अनंतराय पै के एस ला रेव का अनंतराय पै पिच्चाला येऊ का अनंतराय पै. अनंतराय पै असवा अनंतराय पै असवा अनंतराय पै. बाकी प्लेयर्सांना वचेत कॅप्टन मात्र डब्याची दोग जण. मोहन पै कॅप्टन वीरविठ्ठला. दोन्ही टीमाच्या 45 वर्षाच्या वयच्या दोन्ही टीमात फायनल आयला. बदल सांगू का म्हणून जाल्यार तुम्ही काल लाईव्हारी पळोवन अशा पुरो बारी इंट्रस्टिंग गम्मत जलाल मॅच गंची म्हळ्यार कोणाला निमिल्यार सिनियर्स आले म्हणून सांगताची. इथं म्हळ्यार तितली एंटरटेनमेंट केला. 100 वैरी पुरे साधारण ऑलमोस्ट मॅचाक 100 वैर मारनो एंटरटेन कोरनो वरलाल्या दोन टीमय लायक केला. टीम गोपालकृष्ण आणि टीम कटारी वीरा त्यांनी जाल्यार लायक केले. जाता फायनल आयल टीम श्रीनिवास आणि वीरविठ्ठला. मोहन पै आमगेला टीम वीरविठ्ठलाच कॅप्टन तशीची श्रीनिवास टीमांतल्यान किरण पै कॅप्टन. टॉस आता जाताच फायनल मॅचाचे. हेड्स किरण पै टॉस विन जाला फायनल मॅचाच्या. 5 ओव्हर आणतो 100 वैरी की कसं नाही म्हणून जन पुरे सिक्सर आणि बाउंड्री पळोवच्या इच्छा भोवताची. तुमगे स्कोर टार्गेट कितले म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पूर्ण आयलो नमस्कार. हे टुर्नामेंट केलचे म्हळ्यार आमगेले एक भाग्य. हे टुर्नामेंट वेंकटरमण टुर्नामेंट आमी एक व्हडले आमकां पुरा प्लेयर्साक एक भाग्य म्हणका.
हें केलचें हांव केन्ना लेख न्ही हांव क्रिकेट केलता म्हणून म्हळ्यार म्हाका एक्सिडेंट जावन हांगा काही चान्स ना फूड अंडरआर्म केलता आशिल्लो हांव मात लास्ट इयर म्हाका खेळूंक एक चान्स मेळ्ळे हांव लास्ट इयर प्लेयर जावन सेकेंड प्रायज मागीर जुनियरान तो आमकां फर्स्ट सेकेंड प्रायज मेळ्ळें ह्या पंत जुनियर आमकां थर्ड प्रायज जाता देवा दयना प्लस आतां हांव केलता फस्ट की सेकेंड की आमी पूर एक्कची वॉलंटियर्स म्हळ्यार आमी एक्कची मिगे लेखार आनी तो फस्ट दोग जाणे फस्ट दोग जाणे सेकेंड मिगे लेखाक आनी हांव टार्गेट म्हूण कसं न्ही म्हणना फस्ट आमी फिल्डिंग घेतला आतां फिल्डिंग घेता आसाची तांणी कितली स्कोर कर आमी करचें आमगेलें काम डिफीट ऑर विन देवा वेंकटरमणा सोडना हांव थँक्यू. आणि टीम श्रीनिवासाचे कॅप्टन मांद्री आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे मुक्तेसर सावकार किरण पै तशीच मोहन पै आसा टॉस डिफीट जाला जाल्यार फर्स्ट बॅटिंग मेळ्ळा कितली स्कोर एक्सपेक्टेड आमगे स्कोर साधारण 90 वयरी जावका म्हूण लेखला इता म्हळ्यार तांगेल्यान एक 5 जण बॅट्समॅन आसात आमगेल्यान 5 जण बॉलर्स आसात त्या म्हळ्यार तांगेल्यान बॅट्समॅन आसा तांगेले बॅट्समॅनाक आमगे बॉलर्स बांदून घालता आनी एक आसा म्हळ्यार मॅच केन्नाय आमी ह्या फ्री जावन खेळका इता म्हळ्यार फोटो उड्डून ह्या न्ही आमगेले एक फ्री मॅच ह्या म्हळ्यार आमगेले वॉलंटियर्स जाल्यार तांगेले हे एक लायक मॅच आनी ऑर्गनायझिंग सुपर केला इता म्हळ्यार हे ऑर्गनायझर करचें म्हळ्यार इतलें सुलभ हे काम न्ही इता म्हळ्यार आमी व्ही क्रिकेट आसा पूण मॅच करताची वर्स जाल्यार हे ऑर्गनायझर करचें मागीर तितून सुलभ ना जाल्यार एक सण्ण बुट्ट कसरी धरता जाल्यार ताका कोणूय आस्पाद दिनासी चंदरी तरी धांवका इता म्हळ्यार आमगेले वॉलंटियर्स वेंकटराम देवस्थानाचे वॉलंटियर्स मॅच आनी किरण मामू हांव आमी एकच न्हिजावन इता म्हळ्यार आमी केन्नाय ओटू वचूचे तशें आमी मॅच तूं सोलो गेलो आशिल्लेची तांणी विनेगी आमी विनेगी तांतू मागीर कसं सांगू ना दोन टिमाकय ऑल दी बेस्ट तशीच ऑडियन्सान 6-4 येतना दोन टिमाकय एनकरेज करता म्हणून घेता थँक्यू. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. तशीच घंटे 8:30 ದಂಡವಲ್ಲ ಜವಣ ತಯಾರು వెంకటరమణ దేవస్థాన స్వయం సేవక జన हांगा एक रजिस्ट्रेशन भरपूर घेवन आसतना क्रिकेटाचे एक आयोजन केलेलें ह्या वर्साच्या दोनी वर्साच्या भारी तयार आसतना केला आनी सर्व आमच्या समाजाच्या सर्वान आसतना पळोवन ताका संतोष पाविल्लो आसा आनी ताका आनी मुखार सरकारी सर्वान अशीच आसतना ताका सपोर्ट दिवन घेवन आनी के तयार करून तशें देवान त्या वेंकट Last over remaining and that last over comes from Mangalore. ಭಯ ಇರೋದು ಬದುಕೋಕೆ ಆಸೆ ಇರೋದು Right, the match starts, the grand finale of seniors group above 45 years category. The match, the final match is now going to start between Team Veera Vittal versus Team Srinivasa, and Team Veera Vittal is now going to bat. So the captain of Team Srinivasa, after won the toss, he elected to field first, and because of that, their fielders are now spread out on the field, and the openers for Team Veera Vittal are the crease are Murali and Gurudat. In fact, the bowler starts the fresh proceedings is Ajju. So first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच 45 वयोमिति के ऊपर के विभाग का इस वक्त शुरू हो चुका है. टीम वीरा विट्ठल और टीम श्रीनिवासा के बीच अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, और गेंद सीधे पहुंचे बल्लेबाज को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो फिर से एक बार अज्जू गेंदबाजी इस वक्त आगे
बढ़ाते हुए 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके हैं। अगली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस रन के साथ मुरली इज नाउ ऑफ द मार्क एंड द रन अकाउंट बिगिन फॉर टीम वीर विट्ठल। 80वें और 90वें दशक के 80s एंड 90s डिकेड्स के गतकाल के भूतपूर्व खिलाड़ी एसवीटी ट्रॉफी 2024 टायटल स्पॉन्सर आभरणाचे महेश कामत आणि आता वेदिकेर येता सजी हांका सकडाल तर्फेन हार्दिक स्वागत प्रीतीपूर्वक जावन स्वागत करता सगळे टुर्नामेंटाक एक टायटल स्पॉन्सर दिवन सहकार केला जाल्यार आभरण ज्वेलर्साचे श्रीयुत महेश कामत हांका हार्दिक जावन आशिल्लें स्वागत। धन्यवाद। और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, तो वाइट का इशारा अंपायर का, और वाइट के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर, और 4 बेहतर गेंदें फेंकने के बाद इस वाइट को उन्होंने फेंका है, और अज्जू एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट, ढीली गेंद और इसे डिस्पैच करने में सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा चूके, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत की जरूरत टीम वीर विट्ठल के सीनियर बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और इस बीच गेंदबाज अज्जू, ये गेंद उछाला, स्ट्राइक आउट, ड्रॉप्ड, ही ड्रॉप दैट वन। फील्डर इस वक्त लंगों पर मौजूद थे और यहाँ पर रन आउट हो चुका है। हालांकि एक नाथ के हाथों से गेंद चूकी जरूर है, लेकिन अंतिम क्षण में वहां पर रन आउट नॉन स्ट्राइक रन पहुंच चुका, पहला विकेट गिर चुका है, और मुरली आउट होकर पेविलियन वापस लौटते, ही इज डिपार्टिंग एंड नाउ टीम वीर विट्ठल आर free for the loss of 1 wicket in the first over. And now the new batsman is now comes out to the middle, in fact. इस बीच सामना करने के लिए तैयार गुरुदत्त, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए प्रकाश भाई, 1 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। पूनम बिल्डर्साचे श्रीयुत दामोदर शणै हांणी येयला सजी, पूनम बिल्डर्साचे दामोदर शणै हांकाय आयोजकाल तर्फेन हार्दिक जावन आशिल्लें स्वागत करता सजी, दयकोरनो तुमी वेदिकेर येवका म्हण निमून घेता सज। तो इस वक्त प्रकाश भाई गेंदबाजी शुरू करते हुए गुरुदत्त के लिए स्वीप करना चाहा, पहले गेंद पे लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए बिल्कुल जमीन के सहारे, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद टॉप एज एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस for a huge one. It's got a top edge on that, but the ball have got a power to cross over the fence at long off for a 6. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। मंजुनाथ नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है इस वक्त। बॉल्ड हिम, जस्ट गॉन फॉर स्वीप एट द लास्ट मोमेंट, नॉट सक्सीडेड, और उनका मिडल और लेग स्टंप यहां पर उखड़ कर गिरता हुआ, और दूसरा विकेट यहां पर खो चुका है टीम वीर विट्ठल 9 रनों के ऊपर। तो जैसा कि मैं फरमा रहा था, 80s एंड 90s डिकेड्स के गतकाल के भूतपूर्व बेहतरीन खिलाड़ी जीएसबी समाज के अपने गतकाल के वैभव को यहाँ पर अनावरण करते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर उन खिलाड़ियों का खेल देखने का सौभाग्य हमें यहाँ पर नसीब हो रहा है सारे दर्शकों को। नए बल्लेबाज, एक और बेहतर बल्लेबाज अपने ज़माने के मोहन पई इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार प्रकाश भाई की गेंदों का अंपायर से गार्ड इस वक्त लेते हुए, और प्रकाश भाई इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम वीर विट्ठल इस वक्त जोड़ चुका है। Just gone for a big one, missing the line completely. Quick piece of work made by wicketkeeper behind the stumps, flicking the wickets. लेकिन बल्लेबाज मोहन पई क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर एसवीटी ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रस्तुति कर चुके एसवीटी वॉलंटियर्स एसोसिएशन वॉलंटियर्स प्रीमियर लीग सीजन 2 2024 के अंतर्गत 2024 के अंतर्गत अंडर फ्लड लाइट्स अबव 45 कैटेगरी का मैच, फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले यहाँ पर खेला जाता हुआ टीम वीर विट्ठल और टीम श्रीनिवास के बीच। और इस बीच प्रकाश पई गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, मोहन पई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार।
Good one, absolutely good one. Once again a quick piece of work made by wicket keeper. लेकिन एक बार फिर से मोहन पाई क्रीज पर मौजूद था और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बेहतर रन लेंथ और लाइन के साथ प्रकाश पाई इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. बल्लेबाज को कुछ ज्यादा रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स यहाँ पर खेल सके. और दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रकाश भाई अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार बेहतरीन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलिंग. 3 डॉट balls in a row. And this is turning out to be a fantastic over. And a fantastic over has been came shown. And 2 overs completed. And after 2 overs, still the batsmen of team Veera Vittal searching for the right track. It's 9 for the loss of wicket after completion of 2 overs. And still in overall calculation, it's going to be 3 overs remaining in the innings. 3 over का खेल बाकी. और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में टीम वीरा विट्ठल के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. कम से कम 60 से 70 रन के आंकड़े तक पहुंचना होगा निर्धारित 5 ओवर में, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है मैदान का छक्के का वो काफ़ी छोटा है. तो इस वजह से जितना ज़्यादा रन आप बनाएंगे उतना आपके टीम के लिए बेहतर होगा. तो 2 ओवर में सिर्फ 9 रन अब तक जोड़ चुके हैं टीम वीरा विट्ठल के खिलाड़ी बल्लेबाज. और किरण पई गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तैनात ओवर द विकेट. पहली गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ मिड ऑन पर अज्जू के द्वारा मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. सीधे गेंद उनके हाथों में पहुंची थी और काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद पहुंची थी और इस गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में सफल. और अज्जू इस वक्त चौका प्रदान करते हुए और इस बीच स्कोरबोर्ड इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर. लॉफ्टेड 6 रन्स, dispatched it in a style over deep backward square leg fence, and that is an absolutely perfect struck. 19 for the loss of 2 wickets now. और बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से और स्कोर इस वक्त 19 रनों पर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और गेंदबाज किरण पाई एक बार फिर से तैयार. फ्लाइटेड, जस्ट ट्राइंग टू रिपीट द सेम थिंग, नॉट सक्सीडेड. इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. 1 रन मिलेगा. लेग बाई का इशारा और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर. निस्संदेह यहाँ पर इस प्रतिष्ठित एसवीटी ट्रॉफी 2024 सीनियर कैटेगरी का खिताब अर्जित करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है टीम श्रीनिवास और टीम वीरा विट्ठल के बीच. लॉफ्टेड बाय मोहन पाई फॉर 6 रन्स. और 2 कदम आगे निकलते हुए मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और खूबसूरती के साथ उछाल दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर. और फिर से एक बार किरण पाई अगली गेंद लेकर तैयार. ढीली गेंद स्क्वायरर, 2 स्क्वायरर, 6 नंबर 2. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 32 रनों पर. तो धीरे धीरे मोहन पाई अपने बाजुओं को यहाँ पर खोलते हुए एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस मेगा श्रृंखला का. लॉफ्टेड 6 नंबर 3, हैट्रिक 6 फॉर मोहन पाई. एंड नाउ ही इज लुकिंग ऑन फायर. अपने बल्लेबाजी के गतकाल के बल्लेबाजी का अनावरण यहाँ पर वो करते हुए मोहन पाई. और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर. 29 runs came from this over from Kiran Pai. And after 3 overs, they are looking in a good situation after being a slower start. और 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी. और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज किशोर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार गुरुदत्ता. तो ओवर की पहली गेंद लेकर किशोर इस वक्त तैयार. तैनात ओवर द विकेट. 12 गेंदें सिर्फ बाकी उनके पारे में, यानी 2 ओवर शेष. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. तैनात ओवर द विकेट. लॉफ्टेड दिस टाइम बाय गुरुदत्त. 6 रन्स स्ट्रेट ओवर द कमेंटेटर बॉक्स स्टैंड. और छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर. नाउ इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर द बैटिंग साइड. इस बार लेग स्टंप पर आती हुई कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी. वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर. 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए किशोर. ये गेंद बाउल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर बिग वन एंड इज गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. किशोर गॉट द ब्रेक थ्रू एंड 3rd विकेट गॉन. बल्ले और पैर के बीच में अंतर छोड़ा था और उस अंतर से गेंद निकलती हुई सीधे जा टकराए मिडल ऑफ स्टंप पर. गिर लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए. देखिए मॉनिटर में किस तरीके से हुआ था. दिस इज द रीप्ले इन अ बिग एलईडी स्क्रीन. और विकेट नंबर 3 इस वक्त गिर चुका है. 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट 2 overs to go after 1 over to go after this one. In fact, Raghavendra, one more good striker of the ball, is now comes out to the middle.